Now we are into the second day and final day of this cricket. The very interesting points table. All the teams which is participating in this particular cricket tournament, the seven franchise teams are participated, and altogether each and every team need to play 6 matches of their league. So far, points table is looks to be very interesting here. So as per the points table, no, only one team which has played 5 matches, that is Udupi Tigers. They played 5 matches, won 2, lost 3. And now is a match between Kamath Super Kings versus NJ. Yes, that means as far as the points table, both the teams played 4 matches each. And that means NJ has played 4 matches, they won 2 and lost 2. And they got 4 points and they got minus 1261 net run rate. Kamath Super King, and as far as the performance in this cricket tournament is concerned, they yet to open their account in the points table. 4 matches out of 4, they lost all 4 matches, and they got minus 1.845 run for 845 is the net run rate. 2 matches remaining for Kamath Super King, and that definitely they wanted to win that remaining 2 matches, and for that they need to work hard in all the departments, the batting, bowling, and fielding department. And in the points table, I think now AR Titans are in a top in a points table after they winning 4 matches out of 4. They got 8 points with a very good net run rate of 0.958. Shetty Warriors are in a second place. They won 3 matches out of 4 and they lost 1. They got 6 points and their run rate is 2.808. It's a very good run rate they maintain, Shetty Warriors. Yes, AC Waves are there in third place as for the run rate, because 3-4 teams have got the same points, but number of matches is different. SAC played 4 matches, won 2, lost 2, and they got 4 points, and net run rate is 0.261. AS Tigers, 5 matches, out of that 2 won, 3 lost, and 4 points they got, and minus 0.385 is the net run rate. Udupi Tigers, they're in 5th place. 5 matches, lost 3, won 2, got 4 points, and minus 0.421.
So points up looks to be very interesting here. And only two teams which has played 5 matches, that is here Strikers as well, Udupi Tigers. And other 4 teams have to play another 2 matches. And I think it's going to be more interesting points table. Looks like Air Titans are in a top, or maybe they are in a top, means they are already they qualified for the playoff round. As for the points table, we can see that they are in the top 1-8 on 4 matches, all 4 matches. They got 8 valuable points. I request extra player from both the teams. Please report here immediately. The umpires are in the middle today. In place of Vivek, we have Viraj. So one more very talented young umpire. Along with him, Atmaram, experienced umpire. So very good cricketer. Both are very good cricketers. Are in the middle. The condition today is a very bright and sunny morning. And compared to the yesterday, it's a cloudy and overcast condition in the morning. But today, it was a perfect weather condition. Very bright sunny morning, and today the morning itself it looks to be very hot here, 27 to 28 degrees Celsius in the morning itself, the temperature. And wait and see, when time progresses, temperature of this match definitely going to be very high, because the level of competition is going to be very high to get the place in the playoff of this prestigious cricket tournament. Meanwhile, in the morning, as always here in community box, a very, very friendly atmosphere. We have our scorer, then in the scoring app. We have Kirtan who is operating a scoring app. Operating a scoring app, and we have all the technicians, cameramans of M9 Sports for the day number 2. Altogether, it's a successful day number 1. Has got a very quality live coverage of this cricket tournament, KVC Premier League Season 3. Altogether, it looks like it's a very good condition out here. And as always, myself, Satish Salyan in English, will going to share a mic with my friend Mr. Gopi in our national language, Hindi. And even Imi will going to share the mic as well in the middle in state language. Meanwhile, a little bit wet condition out here in the pitch because of a little bit watering done in the early morning, so that we can see that the wetness in the both the side of the wickets. Looks like the captain of Kamath Super Kings won the toss, elected to the field first, and need to have some game plan, and the strategy is definitely going to be key. Little bit surgery required in the batting department and the bowling department for Kamath if they want to win the match. They know exactly the importance of winning 2 matches. They doesn't want to finish this tournament with without point. They wanted to open the accounts. For that, they need to play very well. Of course, they got some good players in the side, no doubt at all. But yesterday's, which is not belongs to KSK, they started very well in the first match. They are very close to the victory. And after that, I think the level of confidence is not that much of enough after they faced the loss in the first match. Then they keep on losing the matches. But this is a different day, new day. Of course, the past is past, but you need to focus on the present. And who knows, today, the day number 2, maybe it belongs to Kamath Super Kings, so that they're having some game plan. They have some strategy. And more than anything else, I think the believing in your strength is so important. They need to believe in their strength
the kind of team you are having. You need to believe that your team has got a potential of giving any kind of competition for any opposition. What the plan they need to do in this particular match, because team NJS and they got not that much of bad league matches as far as points table is concerned. They won 2 matches out of 4, and they got 4 points. And certainly the NJS they wanted to win the match because they are in a competition as well, even though they are in the sixth place in the points table. But one victory takes them into they can improve their the position in the points table. In the competition, as of course, the Udupi Tigers also they won 2 matches, but they played 5 matches. That's why if NJS will going to win this match here, then certainly their position will go into very high in this points table. So that's the position here in the morning, the points table of this prestigious KVC Premier League Season 3. Everyone is ready here. The opening batters came into middle for NJS. So I request extra player from both the teams. Please report here in commentary box immediately. The extra player of KSK as well as NJS, please report to the commentary box immediately. After winning the toss, captain of KSK elected to the field first, and the wait and see how well they're going to take the advantage of toss here. And coming back to the UCG cricket ground in the morning is always a better condition for the bowlers, because you can see that a little bit still there's a wetness in the pitch, and at the same time there's not that much of wind in the cricket ground. Of course, there was a little bit wind passing out here because the time is exactly 9 past 40, and we are hoping that the condition will going to improve quickly because of the bright sunshine. Signal coming from umpire Atmaram at square leg Viraj, first time in this particular cricket tournament, KVC Premier League Season 3. So opening batters are in the middle, left and right combination. I think so Vedant is in non-strikers end, and in the non-strikers end Lokesh. Two very good opening pair, left and right combination. Always it's useful when you're having a left and right combination in the beginning. Definitely going to be a little bit headache for the opposition team, because even for the bowler as well, they need to change the line and length whenever each and every time when the strikes are rotated. Different line, different length is required. At the same time, different field set is required. So that it's so important for these two opening batters to get some good start, and wait and see how well they will going to get the start here. Anup is in action. We will going to start the proceedings. So is the first delivery of the final day. This time a first delivery itself, a Vedanta lofted that one, but straight to the hands of mid-wicket. Dream start here for Anup. Just like I'm mentioning about the morning, it's not that much of easy for any batters to get the distance right. There is no wind at all in the ground. Nothing wrong with the stroke, but something wrong with the placement. Unfortunately, he hit that one right from the middle of the bat, but you need to see that where the fielder is situated, because only 2 fielders outside the circle, and if you are choosing one of that fielder means you are not just observing the field set. He just wanted to play at the merit of that ball, but you need to see where the fielder is. The first wicket is back into pavilion, and Anup is producing a very good start here. The dream start from Anup. He picked up a valuable wicket. A danger man, Vedant departs. The new batter in is Srisha. So one more fantastic performer, a very young, talented the player Srisha. He got a very good tournament in this, very good tournament from the bat and ball. A very good all-rounder for the side, and now he came in a very important position
That is number 3. Always the very good batters coming in the number 3 places. They're a very important place in the batting order. Right arm over the wicket, second ball. Beautifully ball. Deviation straight away for run up. Just getting help from the wetness of the pitch. We can see that's the movement of the delivery. Just a deviation he has got. Shaping a little bit outside the line of off tempo. Forcing the batsman Lokesh to onto the back foot to play that one defensively. And there is no possibility of any run. 0 for 1. NJS. Anup bowling from the commentary box end. Right arm over the wicket delivers. This time reverse sweep comes into play. Beats the infield. Running down to deep cover point region. Bowler. The fielder chasing the ball. But ball just winning the race against the fieldsman. The welcome bounty coming up here for Team NJS. They started their open the account with the boundary. Unorthodox cricketing stroke, but quite useful one in the power play overs. So confident in that occasion, Lokesh. Even though he playing a little bit risky stroke, but he very confident, seeing that there is no protection has been given in the deep cow point region. Once he beat the infield, the outfield is very quick in the UCG cricket ground. At the same time, the hardness of the ball, taking that ball very quickly down to deep cow point boundary for 4 runs. Anup again, away from us, right arm over the wicket, beautifully ball, tried to york the batsman in the negation. Just ball is shaping towards the leg stump in the negation, Yorker line delivery, and Lokesh couldn't manage to play that one well, hitting his legs. Then there's no possibility of any run at all. Good comeback there by Anup. 4 for the loss of 1 wicket in the over number first in progress. Again Anup bowling away from us. Right arm over the wicket, past the umpire. This time he went for the big shot, and ball is in there for a while. I think it's a thick outside edge of the bat. The trying hands of wicket keeper in the negation, not really able to take that catch. Ball is just landed between short third man and wicket keeper, and Lokesh is lucky here. The fantastic bowling performance here from Anup. Again squared him off with a beautiful delivery. This time he lofted down to deep extra cover region. There is a fielder than the deep extra cover, and able to cut it off. And before that, the throw coming from the deep, ample time for Lokesh to complete that couple of runs. So first over completed. After completion of first over, scoreboard is exactly 6 on the board. 6 for the loss of 1 wicket after completion of 1 over. So good start anyway, bowling in power play and conceding 6, not a bad one. And a most important thing to see in this particular over, Anu picked up a valuable wicket of left-hand batter Vedant. Kirtan Shetty is in operation from the far end. This time again, lovely improvisation down to deep backward square leg region. Again, a couple of runs here for Shisha. I've already mentioned he's a very quality player and very young, talented the batter in the middle. Picked up a couple of runs in his. Quite unfortunately, that was a little bit disturbance in the deep backward square leg. Ball might be hitting the dog. The sleeping there in the mid-wicket region. Again, he going for the pull shot, missed it completely. And might be a little bit problem here for the bowler in the far end. We can see that little bit wetness. We can see the wetness in the pitch. So 8 for the loss of 1 wicket. Shisha facing Kirtan. Right arm over the wicket. Oh, again that ball is got a big outside edge of the bat, but luckily that ball didn't carry to that short third man region on the wicket keeper. That ball landed safely between wicket keeper and third man. One more single is added to total. Ball is not really coming to the bat. That's why Shisha not quite able to reach the pitch of the delivery. It's a little bit early into the stroke.
And he got outside edge of the bat. Scoreboard now moves on to 9 for the loss of 1 wicket. That brings Lokesh into strike now. Kirtan Shetty asking that deep mid wicket fielder to come little bit square, little bit fine towards the mid wicket, between mid wicket and deep backward square leg. This time lovely delivery, extra bounce in the negation, defeating the bat of Lokesh. He's looking for the pull shot, but because of that ball, he's got a little extra bounce. He missed it completely. Then wicketkeeper behind the stump did the rest, and there is no possibility of any run. 9 for the loss of 1 wicket. Again, Ketan delivers a full Z1 quite handsomely, and he got the distance as well into the gallery. The first sixer of the day, number 2, which is came from the bat of Lokesh. This time he's got a very good height to pull that one, just using the deftness of the crease, transferring his weight onto the back foot, and then dispatched that one stylishly down to deep backward square leg boundary for a 6. 15 for the loss of 1 wicket. Ketan delivers, lovely shot, stand and delivered effortlessly. The great stroke coming from the blade of Lokesh. So after that, the first quiet over, domination continues in the second over. The last 2 deliveries, very expensive indeed. 2 sixes in a row from the blade of Lokesh. That ball is definitely in the slot. That ball definitely in the slot. We can see in the replay how well he managed to deliver that one towards a deep long off, just clearing the park down at deep long off for a 6. And with that 6, we got a couple of 6, scoreboard jumped into 21. That means 16 runs, which is 15 runs, which is came from that over of Kirtan Shetty, has become very expensive. So that's the one problem what so far Kamath Super Kings has faced. They're not really having that much of potential in the bowling department, especially considering that the 2 overs of the power play need to have some kind of bowler who can restrict the runs in that power play, and that's why they are facing that much of difficulties in the league matches. 4 league matches, they couldn't manage to control the flow of the runs in the power play overs. Even Kirtan, of course, a little bit correction. Even Anupi's got a very good start from the first over, but another expensive over is bowled. Riston came into ball from the commentary box and right arm over the wicket, and Shisha did a very good job just going back and standing tall and just turning that one down to short mid wicket region for a easy single. Little well pitched up delivery. That's why Shisha is not that much of tall player, so that he want to become a tall in the negation to face that well pitched up the delivery, and he managed to pick the single down to short mid wicket region. 22 for the loss of 1 wicket in the over number 3rd in progress. Now Lokesh back on strike. So far he's looking pretty good in this innings. This turn, ball the full toss delivery. This time he lofted, but finding the fielder this time. No ball called by umpire. And they're coming back for the second as well. Oh my goodness. Lucky escape here for Lokesh here. That was a full toss, means that's a beamer above the waist level. And he made a switch it. Finds the fielder. Fortunately for him, that umpire quickly realizing that is a beamer. And it's called a no ball, and that means it's going to be a free hit delivery. 25 for the loss of 1 wicket. Krishnan delivers, he lofted right in the gap. This time one bounce collected by the misfielded that one, and the boundary coming up. Not a good effort from the fielder in the mid wicket region. Can be stoppable, but again the misjudging the bounce in the negation, and the timing of a jump is not proper from Anup in the mid wicket, so that ball gone over the row for 4 runs. He's on fire. Lokesh, scoreboard is 29 on the board. Again the juicy short pitch delivery. This time he couldn't manage to control that full shot. Anup making no mistake at all. The wicket number 2 is back into pavilion of JSC. But I think Lokesh has played a big hand here for his team. The kind of batting is required in the power play, the kind of batting required after power play is did all the damages in that 3 overs before he's back into pavilion. The very good innings is comes to an end of
Lokesh, and wicket number 2 is back into pavilion of team NJS. 29 for the loss of 2 wicket. One can imagine the body language of team NJS. They wanted to win this match, but not only they wanted to win the match, but they wanted to win the match with a big margin, so that it will going to help them in the points table to get some the very good place. And wait and see. So far, I think strategy really working out. The new batter is coming to the middle is none other than Dhanush. He's in non-striker zen. One more very quality batter for the side of NJS. The perfect number 4 position for him. Very cool customer. Now Shisha will go into face. Ristan delivers between the 2 legs. That ball passed and it's like a wide call by umpire. Not the between the 2 legs. I think the ball is outside the line of leg stump. That ball is passed, and rightly so umpire call that is a wide. 30 for the loss of 2 wicket in the over number 3 in progress. Ristan away from us. Right, a moment wicket. This time Trisha full that one, but right in the gap towards the mid wicket region and almost in the cow corner between deep mid wicket and long on. And before the fielder from long on to run across towards that place, I think the ample time for Shisha to complete that couple of runs. Not quite able to control that full shot, half-hearted full shot there from Shisha. And he got a valuable couple of runs. Now one fielder is added towards the mid-wicket for Shisha. Ristan. Right, I'm over the wicket. Again, a lovely delivery there from Ristan, and equally well played there by Shisha. Is again, there's a tackle, that bouncing delivery. Last delivery remaining in this over. The well pitched up one. And again, almost in the body level of Shisha. But he managed very well. Just coming well behind the ball. Line of the delivery. Soft end comes into play to pick the single. And with the single, scoreboard moves on to double 3. 33 for the loss of 2 wicket. Ristan, final time in this over. The last delivery of the over number 3. Dhanush facing his first delivery. Ristan, right arm over. Full that one, quite handsomely. Down to deep backward square leg. One bounce for 4 runs. The fielder there in the deep backward square leg. Durga Prasad, I think, is tried his level best, but this is a hard tennis ball. The Wilson, which definitely having a more bounce, very difficult to collect the ball after one bounce, going over the head of trying hands off in the direction of Durga Prasad and bounded to finish the over number 3. 3 overs completed. A very good start here for NJS. They scored a 37 for the loss of 2 wicket. Absolutely fantastic. 12.33 runs per over. The run rate progressing here. And wait and see how many runs they will going to score in the remaining 3 overs. Time to change in commentary box as well. It's time to invite Gopi to take over the microphone in our national language. And welcome, Gopi. Good morning to you. And different morning, isn't it? Compared to the yesterday, it's a overcast condition, cloudy weather condition. But today, the bright and sunny morning and perfect condition for the final day of this prestigious KVC Premier League. धन्यवाद सतीश। तो बिल्कुल सही बात आपने फरमाया और इस बार गेंद को खूबसूरती के साथ निकाला है लॉन्ग ऑफ पर और गेंद को जब तक फील्ड किया जाता बल्लेबाज के पास मौका 2 रन प्राप्त करने का। स्कूप किया था इनफील्ड क्लियर करते हुए 2 रनों के लिए। और जैसा कि आपने फरमाया सतीश, निस्संदेह बेहतरीन वातावरण यहाँ पर छा चुका है। पिछले दिन के मुकाबले यहाँ पर सुबह का वक्त काफी बेहतरीन, सूरज इस वक्त प्रकट हो चुका है अपने प्रखर धूप को मैदान पर फैलाता हुआ। और इस केवीसी प्रीमियर लीग 2022 इस मेगा श्रृंखला का दूसरा दिन का पहला मैच यहां पर खेला जाता हुआ। गेंद को सही डाउन द ग्राउंड उछाला है, लॉन्ग ऑफ सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। बेहतरीन स्ट्रोक इस वक्त, गेंद की लाइन को पहचानते हुए गेंद को स्कूप किया स्ट्रेट हिट एरिया पर लॉन्ग ऑफ और लॉन्ग ऑन के दरमियान। और इस बीच चौका प्राप्त करते हुए बल्लेबाज और यहां पर बेहतरीन प्रगति करता हुआ 43 रन जोड़ चुका है 2 विकेट के नुकसान पर। टीम एनजेएस एक बेहतर प्रगति यहां पर करता हुआ। और ये गेंद ऑफ द टोस, गेंद को इस वक्त खेल दिया मिड विकेट की दिशा में, गेंद जाती हुई 1 रन का इजाफा यहां पर हो चुका है। इट्स 44 नाउ और
फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट इन द ओवर नंबर 4 इन प्रोग्रेस। और धनुष बॉलर इस वक्त स्ट्राइक पर आ चुके हैं। सिर्फ एक गेंद का अब तक उन्होंने सामना किया, 4 रन वो बना चुके हैं। 0-4 नंबर की जर्सी यहाँ पर वो पहने हुए और सामना इस वक्त करने के लिए तैयार। तो लगभग पिच पर कुछ नमी मौजूद है और गेंदबाज जो कि इस गीलेपन का फायदा उठाने में अब तक कुछ ज्यादा सफलता उन्होंने प्राप्त नहीं किया है, लेकिन यहाँ पर अभी भी उन्हें मौका जरूर है इस पिच के नमी वेटनेस का फायदा उठाने का। और जैसा जैसा यहाँ पर वक्त गुजरता जाएगा, धूप गिरती जाएगी, पिच यहाँ पर सूखता जाएगा और धीरे धीरे ये पिच बल्लेबाजों के लिए सहकारी बनता जाएगा। यहाँ के उर्वा क्रिकेट के मैदान के आमतौर के स्वभाव के अनुसार। और यहाँ पर देखते हैं गेंदबाजी में क्या करिश्मा करते हैं गेंदबाज इस नमी पर। ये गेंद गेंद को पुल किया लॉन्ग ऑफ पर 6 रनों के लिए। और यहाँ पर सीमा रेखा पर जो फील्डर खड़े हुए थे लगभग सीमा रेखा के ऊपर गिर गए गेंद को देखते देखते, और गेंद उनके सिर के ऊपर से निकल गई लॉन्ग ऑफ सीमा रेखा जब आ रहा। और इस स्ट्रोक को अगर आपने देखा होगा तो एब्सोल्युटली विद द एक्सक्यूजिट टाइमिंग ही जस्ट लॉफ्टेड दैट वन। ज्यादा एफर्ट भी नहीं लगाया था स्ट्रोक पर और गेंद को इस वक्त खेल दिया खूबसूरती के साथ धनुष ने वाइड इस लॉन्ग ऑफ सीमा रेखा से बाहर छक्के के लिए। और इस छक्के के साथ द 50 कम्स अप फॉर टीम एनजेएस। 50 came in just in 3.4 overs this, and this is an absolutely terrific progressing year for them. तो यहाँ पर टीम एनजेएस तो जहां तक टीम एनजेएस का सवाल है, 4 मैचेस अब तक उन्होंने खेले हैं, 2 मैच में उन्हें विजय मिला है और 2 मैच में पराभव का सामना करना पड़ा। तो इस मैच को एक बेहतर रन रेट के साथ वो जीतते हैं तो निस्संदेह प्ले ऑफ प्रवेश करने की उनकी साध्यताएं और उज्जवल हो जाएगी। तो इस बात को मद्देनजर रखते हुए इस वक्त टीम एनजेएस के बल्लेबाज आक्रामक बल्लेबाज यहां पर अपनाते हुए, और जहां तक सवाल है कामत सुपर किंग्स का, तो 4 मैचेस में चारों में भी उन्हें पराभव का सामना करना पड़ा है और प्ले ऑफ के लगभग सभी द्वार उनके लिए बंद हो चुके हैं। लेकिन बचे हुए 2 मैचों में विजय दर्ज करके अपनी प्रतिष्ठा को वो बरकरार रखने की कोशिश में ये गेंद इस बार गेंद को डीप मिड विकेट पर 1 रन मिलेगा, दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े और दूसरा रन यहां पर पूर्ण कर चुके हैं। बेहतरीन रनिंग बिटवीन द विकेट, खुलकर बल्लेबाजी करते हुए यहां पर बल्लेबाज और 2 रनों के साथ स्कोर अब बढ़कर पहुंच चुका है 53 रनों पर। इट्स 53 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स एंड 4 overs had been bowled. So exactly 13.25 the present run rate here now प्रोग्रेसिंग या फॉर देम। और निस्संदेह यहाँ पर एक लंबे स्कोर की ओर अग्रसर होता हुआ टीम एनजेएस। तो जहाँ तक जैसा कि मैं पहले भी फरमा चुका, कामत सुपर किंग्स का सवाल है, इस श्रृंखला में अब उन्हें खोने के लिए कुछ भी नहीं है। 4 मैचेस में चारों में उन्हें पराभव का सामना करना पड़ा, लगभग इस श्रृंखला से वो बाहर हो चुके हैं। लेकिन अपनी प्रतिष्ठा को बचाने के लिए बचे हुए 2 मैचेस में उन्हें विजय दर्ज करना इस वक्त जरूरी बन चुका है। और यहाँ पर इस मैच में उनके गेंदबाज काफी पिट चुके हैं और 2 ओवर का खेल बाकी है। और इन 2 ओवर में देखना है कि कामत सुपर किंग्स के बल्लेबाज किस तरीके कामत सुपर किंग्स के गेंदबाज किस तरीके की वापसी यहां पर करते हैं। और धनुष इस वक्त सामना करने के लिए तैयार, काफी आक्रामक यहां पर नजर आते हुए। और कार्तिक इस वक्त गेंदबाजी यहां पर शुरू करते हुए और फील्डिंग में जमावट यहां पर चलती हुई। कुल मिलाकर कमेंटेटर बॉक्स एंड की ओर से कार्तिक का गेंदबाजी शुरू इस वक्त करते हुए धनुष के लिए। ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार, ऑफ ब्रेक गेंदबाजी, टॉप एज गेंद हवा में लेकिन खाली क्षेत्र पर टिप्पा खाते हुए डीप कवर पॉइंट पर फील्डर जो है काफी पीछे तैनात और 2 रनों का इजाफा यहां पर हो चुका है। M9 स्पोर्ट्स के जरिए इस श्रृंखला का सीधा प्रसारण आप देख सकते हैं यूट्यूब पर, जो इस वक्त M9 स्पोर्ट्स कर रहे हैं एक्सक्विजिट लाइव टेलीकास्ट। और जहां तक सवाल है इस मैच का, तो आज का पहला मैच इस दूसरे दिन का खेला जाता है। यह गेंद ऑफ द टॉस गेंद को खेल दिया, फुल टॉस गेंद थी, गेंद पहुंची मिड विकेट पर और 2 रन आसानी के साथ दोनों बल्लेबाज यहां पर पूर्ण करते हुए गेंद के फ्लाइट को समझते हुए फ्रंट फुट पर जाने के बाद ऑफ द टॉस गेंद को इस वक्त खेल दिया था वाइड लॉन्ग ऑन की दिशा में बल्लेबाज धनुष ने और 2 रन यहां पर बटोरने में सफल। 57 रन 2 विकेट के नुकसान पर बन चुके हैं और चौथा ओवर सिर्फ उनकी पारी का यहां पर प्रगति पर। एक बार फिर से गेंदबाज की ओर की अगली गेंद, ये गेंद इस बार ऑन साइड पर उछालना चाहा सफल होते हुए, लेकिन चूंकि और गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथ में। रन से इस बीच टीम को मिला 58 रनों पर स्कोर बोर्ड पहुंच चुका है और गेंदबाज की ओर की अगली गेंद फ्लाइटेड, गेंद को उछालना चाहा
ऑफसाइड पर गेंद गई ऑन साइड पर, बल्ले का अंदरूनी किनारा टकराने के बाद दूसरे रन के लिए बल्लेबाज दौड़ पड़े और 2 रन यहां पर पूर्ण कर चुके हैं। रन आसानी के साथ इस वक्त बनते हुए टीम एनजेएस के लिए और एक बड़े स्कोर की ओर वो इस वक्त अग्रसर होता हुआ, और खासकर क्रीज पर मौजूद ये दोनों बल्लेबाज एक बेहतरीन बल्लेबाज यहां पर अपनाते हुए। इस बार पैरों पर टकराई गेंद ऑन साइड पर उछालना चाहता, फ्लाइट की थी इस वक्त गेंद को टॉस किया गया था कि बल्लेबाज इस गेंद पर आक्रामक स्ट्रोक खेल सके। इस फ्लाइट को समझ नहीं पाए, गेंद उनके पैर पर टकराए और रन इस गेंद पर बल्लेबाज को नहीं मिला। कार्तिक एक बार फिर से तैयार, कदमों का इस्तेमाल करते हुए आगे निकले, यूजिंग स्पीड जिसे कहते हैं, स्ट्राइट डाउन द ग्राउंड, गेंद को ड्राइव कर दिया लॉन्ग ऑन की दिशा में गेंद जाते हुए, और जब तक गेंद को थोड़ा सा दौड़ लगाने के बाद लॉन्ग ऑन सीमा रेखा के अंदर फील्डर फील्ड करे, बल्लेबाज के पास मौका 2 रन प्राप्त करने का। एब्सोल्युटली कॉपी बुक स्टाइल स्ट्रोक, फ्रंट फुट पर जाते हुए स्टेप आउट करते हुए क्रीज से निकले थे, गेंद की फ्लाइट को समझते हुए गेंद की लाइन पर बल्ले को लाते हुए गेंदबाज की बाईं ओर से गेंद को इस वक्त ड्राइव कर दिया था स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड। इस बार ऑन साइड पर मिड विकेट फील्डर के हाथों में, और इसी के साथ धनुष का विकेट यहां पर गिर चुका है। थोड़े से सफल होते हुए ऑन साइड पर उछालना चाहा मिड विकेट के ऊपर से, लेकिन नाकामयाब, और प्लेसमेंट बिल्कुल गलत था। उछाला तो जरूर लेकिन प्लेसमेंट बिल्कुल गलत, और यहां पर डीप मिड विकेट के फील्डर ने कोई गलती नहीं की। एक बेहतर पारी पर पर्दा यहां पर गिर चुका है धनुष का, और तीसरा विकेट यहां पर खो चुका है 62 रनों के योग पर, जबकि 5 ओवर का खेल उनकी पारी का यहां पर समाप्त हो चुका है। टीम एनजेएस इस वक्त एक सुस्थिति में नजर आता हुआ, और अंतिम ओवर उनकी पारी का शुरू होता हुआ केवीसी एंड की ओर से, और गेंदबाज एशलिन इस वक्त गेंदबाजी शुरू करते हुए, रक्षित इस वक्त प्रक्षित इस वक्त सामना करने के लिए तैयार, जो इस वक्त लॉन्ग ऑन डीप मिड विकेट और बैकवर्ड स्क्वायर के इस वक्त तैनात है, जबकि ऑफ साइड पर लॉन्ग ऑफ और डीप एक्स्ट्रा कवर मौजूद, और ओवर की पहली गेंद लेकर गेंदबाज दाहिने हाथ ओवर द विकेट, एशलिन की गेंद, ये गेंद बेहतर गेंद थी इस वक्त ऑफ स्टंप पर आते हुए, गेंद को ऑन साइड पर स्विंग करना चाहता लेकिन गेंद को वो कनेक्ट नहीं कर पाया और गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में। रन से इस गेंद पर बल्लेबाज को नहीं मिला, तो स्कोर रुक चुका है 62 रनों पर 3 विकेट के नुकसान पर। 62 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट इन द ओवर नंबर 6 एंड द लास्ट इन प्रोग्रेस इन देयर इनिंग्स। और एशलिन गेंदबाजी यहां पर आगे बढ़ाते हुए, ये गेंद इस बार बेहतर गेंद थी, विकेट कीपर इस वक्त स्टंप्स के अति निकट इस वक्त खड़े हुए थे, गेंद को उछालना चाहा, चूंकि गेंद की लाइन पर नहीं आ पाए और गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में। और 2 बेहतर गेंदें इस ओवर में एशलिन इस वक्त फेंक चुके हैं, और प्रक्षित इन दोनों गेंदों में स्ट्रोक्स लगाने में असफल रहे हैं इस ओवर में। और अगली गेंद लेकर इस वक्त गेंदबाज एशलिन तैयार, दाहिने हाथ ऊपर द विकेट गेंदबाजी करते हुए, ये गेंद कदमों का इस्तेमाल करते हुए गेंद को उछाला इस वक्त लॉन्ग ऑन सीमा रेखा से बाहर, गेंद 6 रनों के लिए। इस बार शॉर्ट गेंद थी और बल्लेबाज के पास काफी समय था कि वो गेंद को देखकर परख कर उछाल सके, और गेंद को वाइड लॉन्ग ऑन सीमा रेखा से बाहर उछाल दिया 6 रनों के लिए, और इस छक्के के साथ स्कोर अब बढ़कर पहुंच चुका है 68 रनों पर। तो 2 डॉट गेंद खेलने के बाद जो दबाव बना हुआ था बल्लेबाज के ऊपर, तीसरे गेंद में छक्का झड़कर उस दबाव को पूरी तरह वो उतार चुके हैं। और एक बार फिर से गेंदबाजी यहां पर आगे बढ़ाते हुए, दाहिना तो ऊपर द विकेट, ये गेंद उछाला लॉन्ग ऑफ पर, फील्डर मौजूद नहीं, गेंद उनके सिर के ऊपर से 6 रनों के लिए। लगातार दूसरा छक्का यहां पर प्रक्षित के बल्ले से, और इन 2 लगातार छक्कों की बदौलत वो अपने इरादों को और बुलंद यहां पर कर चुके हैं। द स्कोरबोर्ड इज नाउ राइजिंग अप टू 74 नाउ with that 6, और गेंदबाज एशलिन अगली गेंद इस बार ऑन साइड पर 6 नंबर 3 नहीं होगा, इस बार कैच वहां पर लपक चुके हैं फील्डर, और एक बेहतर छोटी मगर बेहतर पारी पर पर्दा गिर चुका है प्रक्षित का, और एशलिन यहां पर विकेट प्राप्त कर चुके हैं। 74 रनों पर चौथा विकेट यहां पर गिर चुका है। 74 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट एंड लास्ट बॉल नाउ हैव टू गो इन देयर इनिंग्स। अंतिम गेंद बाकी, बेहतरीन पारी इस वक्त प्रक्षित की समाप्त हो चुकी है, छोटी मगर बेहतर पारी, और इस वक्त अंतिम गेंद एशलिन गेंदबाजी करने के लिए तैयार, दाहिने हाथ के बल्लेबाज इस वक्त स्ट्राइक लेते हुए एशलिन की गेंदों का
ये गेंद ऑन साइड पर उछालना चाहा, गेंद हवा में और गेंद के लाइन से अपने शरीर को अलग करते हुए दौड़ पड़े बल्लेबाज, एक रन पूर्ण करने में सफल। और अंतिम गेंद पर द प्लैटिनम जुबली इज अप 75 दे स्कोर्ड for losing just 4 wickets in their stipulated 6 overs, and now they set a huge target in front of Kamat Super Kings of 76 runs in 6 overs they have to score for victory. 76 they have to score for victory with the required run rate of exactly 12.66 runs per over. और जहाँ तक सवाल है लक्ष्य तक पहुँचने का, तो देखना यह है कि कामत सुपर किंग्स के बल्लेबाज इस लंबे से एक विशाल से लक्ष्य तक पहुँचने के लिए कौन सी रणनीति बल्लेबाजी में अपनाते हैं। 76 रन बनाने, 76 टारगेट, एंड देयर इनिंग्स नाउ गोइंग टू स्टार्ट। और एक छोटे से ब्रेक के बाद हम आपके सामने उपस्थित होंगे मेरे काबिल दोस्त अंग्रेजी में सतीश के साथ, जब यहाँ पर कामत सुपर किंग्स की पारी की शुरुआत होगी। धन्यवाद, थैंक यू। So welcome back. Thank you very much. So big total to chase down. 75 is the total score. 76 to win this match for Kamat Super Kings, and you needed some super batting from Super Kings if they wanted to win the match, because they need to climb the mountain of runs, one of the highest total score of this tournament, which is scored by Team NJS. And thanks to the innings of Lokesh and his partners Prakshit, as well as the contribution from Dhanush and then Shesha. And altogether, the teamwork takes the team total score into 75 and 76 to win this match. I request NJS team, NJS, please make it fast. And within 25 minutes, you need to complete your 6 overs quota. Please cooperate with the organizer. So from the far end, the start of the over number first, right arm over the wicket, delivers. And copybook style of defensive stroke, not only played defensively, but going for the run as well. And a chance of run out in the strikers end, but ball missed the stumps completely, so that they got extra run in the form of overthrow. 2 runs to start with. Ganesh, so far I think it's not really had a very good tournament. In the first match, I think he's able to contribute from the bat, but then afterwards, unfortunately, couldn't manage to deliver. But he's got the potential of playing a big innings, and of course, can deliver any kind of the big stroke in his bat. And in this particular situation, needed some responsible innings from the bat of Ganesh. This time again, a lovely delivery indeed. Just lifting of one outside the line of off stamp and well behind the line of the delivery. Ganesh just opening the face of the bat, just gave the direction towards a backward point region for an easy single. With that single, scoreboard moves on to 3 on the board without loss of any wicket. Bowler from the far end, Vinit Bharadwaj.
Vedant Bharadwaj, little correction. Vedant Bharadwaj disappointed from the bat and is out for first delivery, is out for Golden Duck. But he's a very good all-rounder. He can come back from the bowling as well. He's an opening bowler, opening batter for the side of Team NJS. Now he's keeping one fielder in the deep backward square leg and deep long on for the left-hander batter Karthik. Karthik facing his first delivery. And Vedant Bharadwaj from the far end. Right arm over the gate, using his feet. Ball is in there. Chance here for the fielder. Shisha takes a good catch. Loose stroke played there by Karthik, using his feet, but not really coming to the close of the pitch of the delivery. Little bit played away from that pitch and couldn't manage to control that stroke. And half-hearted lofted stroke faced the penalty for that. Shisha takes a good catch. Vedant got a very important wicket here. KSK once again they got a very shackling start. 3 for the loss of 1 wicket. Vedant from the far end. Right arm over the wicket. Delivers beautifully bowled without seeing the line of the delivery across the line. Ganesh wanted to swing his bat but not quite able to meet the line of the delivery. Missed it completely. Then wicketkeeper behind the stump. Lokis did the rest and there is no chance of any run at all. Long way to go here for Kamath Super Kings to win this match. Condition is not that much of bad here for the batter. They can dominate the bowler if they bat well. This time he pulls that one quite handsomely down to deep mid wicket region. Protection is given in the deep mid wicket. So very good field set here by the captain of Team NJS, putting the one fielder in the deep mid wicket region for the full shot, so that Ganesh have to settle for a single. With that single 4 on the board for the loss of 1 wicket in the over number first in progress. Again from the far and Vedanta. Right arm over the wicket, delivers beautifully ball. Try to reock that one in the negation. Again Durga Prasad watching the ball in the last moment, just closing the face of his bat to try to work that in the onside region. Luckily that ball just has got a bat onto that. Very good over there from Vedanta. Bharadwaj produced a very good over here for his team. And 1 wicket and 4 runs in that particular over, chasing 76 to win this match. And as always, they got a shackling start here. KSK 4 for the loss of 1 wicket. So some news from international cricket. Of course, Women's World Cup is going on. India facing South Africa in a must-win match, do-or-die match. And batting first, they scored a 274 for 7 and set a target of 275 to South Africa. And highlight of the innings, Smriti Mandhana has got 74 runs, the top scorer. Then Shapali Verma has got 53 out of 46 deliveries. Then Captain Mithali Raj has got 68 runs and Hamanpreet Kaur has got 48 runs. So here is our first delivery of the over number 2nd, and Ganesh picked up a single down to wideish long on. With that single, scoreboard was on to 5 on the board for the loss of 1 wicket in the over number 2nd in progress. Anant with the jersey number 55, double 5. Bowling away from us, right arm over the wicket to Durga Prasad. Again, a lovely delivery, wicketkeeper behind the stump did the job in a fraction. Vedant completes the job. Durga Prasad might be little bit coming down and try to use his feet. Is out of the crease and wicketkeeper behind the stump. Vedant in a fraction completes the job. Just in a blink of eyes, he completes the job. And Durga Prasad again the disappointed with himself, seeing that they're chasing a big total, so there's no other option at all for the batter. Have to look for some the big stroke, have to look for some acceleration of run rate. By doing that, I think they couldn't manage to handle the pressure to climb the mountain of runs. 76 to win this match. They are struggling here in the middle. 5 for the loss of 2 wickets. The new batter just came into middle. Nitin Kumar
Facing bowler's back drive, straight to the hands of non-strikers. Stamps appeal for an out and chance of run on the non-strikers, and one more wicket is back into pavilion. And after that, ball is deflected from the hands of the bowler on his follow throw, falls into the stumps in the non-strikers, and that time Ganesh, I think, is in the crease, inside the crease, so that no question of run out. But at the same time, is Nitin is wanted a run there. There is no possibility of any run at all. He is just looking for the blind run, face the penalty for that. The bowler Anand quickly realizing the opportunity of run out in the strikers and returns the ball. And the wicket number 3 is back into pavilion of KSK. 5 for the loss of 3 wicket. Disaster continues here for KSK. The last 4 matches of the league, they're playing their 5th match, and today also I think the much disappointment performance here from KSK. But a very good performance here from team NJS. And off the back foot, cuts at one, straight to the hands of fielder. Chance of run out again in the non-strikers end. This time I think the ball is a little bit outside and off stump, going for the cut shot, and the backward point fielder fields the ball, and there is no chance of any run at all. 5 for the loss of 3 wicket. Kirtan is the new batter. Wow, lovely delivery indeed. Again, that was a line, and length is so impressive from the bowlers of NJS. And again, we can see that the bowler from this end, Anant, so far is bowling a very tidy line and length. 5 for the loss of 3 wicket. Right arm over the wicket, delivers lofted at one down over the extra cover region. Ball running down to deep extra cover region, and meanwhile, I think it's going to be a boundary. Good placement here from Kirtan. Just making a little bit room to play the shot, inside out cricketing stroke, and he got the placement right to get the boundary. So 2 overs completed, chasing 76 to win this match. Run the 9 for the loss of 3 wicket. 2 overs completed. Srisha. It's a very young, talented bowler from the far end. Will go into ball. So just 19 years old, Srisha, bowling from the far end. Right arm over the wicket to Ganesh. Oh, lovely shot! Srisha from the far end. Right arm over the wicket, delivers. Oh, lovely delivery. Right on the block hold, beautifully bowled. These are really very impressive actually, and good comeback given that the punishment has been given by the batter in that occasion. It's managed to control that line again. Little bit outside the line of off stump, and it's a very effective indeed. Shisha, right arm over the wicket again, fulls that one, not quite able to get hold up that full shot, but he still managed to get the single down to deep long on region, and with that single scoreboard moves on to double figure. Little bit correction, scoreboard now moves on to 16 now for the loss of 3 wicket. Shisha from the far end, reaching for the delivery outside the line of off stump, a chance of run out, but he missed that stump completely. One more addition to total, scoreboard moves on to 17 on the board for the loss of 3 wickets. Srisha again, bowling from the far end.
Right arm over the wicket again. A lovely delivery. Wicketkeeper behind the stumps. So far is very good behind the stumps. Again, he asking for the umpire to give the stump out, but this time I think Ganesh is inside the crease there. So just an excitement rather than the confidence I feel from behind the stump. Right arm over the wicket. Went for the reverse sweep. Missed it completely. It's a very good comeback by the bowler, again, Srisha, in this particular over. After conceding that 6, then he bowled a very good 5 deliveries. It's a very good comeback. And matured, looks like he's a very matured bowler. The matured player for the side of Team NJS. The way he is handling the pressure. It's not an easy, isn't it? Whenever the batter is looking, whenever the batter hit 1-6 against you, and very next 5 deliveries he bowled, keeping the batsman so quiet. And that's the kind of comeback is required. And that's a good sign of the matured bowlers. 18 for the loss of 3 wicket. Now 3 overs remaining. Wait and see the kind of reply coming from these two batters. But so far I think the match is inching towards a one-side match. And wait and see how Kamath will go into bounce back here. Time to change in commentary box. It's over to Gopi. And in our national language, Hindi. Thank you. So 18 for the loss of 4 wicket and fourth over first ball और गेंद को इस वक्त उछाला था लॉन्ग ऑफ पर और लॉन्ग ऑफ के फील्डर ने आखिरकार कोई गलती नहीं की तो इसी के साथ ये विकेट यहाँ पर गिर चुका है. It's 18 for the loss of 4 wickets in the over number 4 in progress. और गेंदबाज इस वक्त गेंदबाजी यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए नए बल्लेबाज सामना इस वक्त नए बल्लेबाज क्रीज पर मौजूद. ये गेंद इस बार गेंद को ठीक तरह से खेलना चाहता लेकिन ठीक तरह से खेल नहीं पाए. गेंद पहुंची स्लिप डाउन पर और इस बीच रन से मिलेंगे बल्लेबाज को 1 और स्कोर इस 1 रन के साथ बढ़कर अब पहुंच चुका है 19 रनों पर. 19 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट इन द ओवर नंबर 4 इन प्रोग्रेस. और गेंदबाज की ओर की अगली गेंद दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए ये गेंद उछाला गेंद हवे में और विकेट कीपर गेंद को लपकते हुए और इसी के साथ एक और विकेट यहां पर गिर चुका है. विकेट नंबर 5 डाउन एंड दिस इज द फोर्थ ओवर इन प्रोग्रेस. KSK Kamath Super Kings looking deep in trouble. तो धनुष इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए ये गेंद अच्छी नहीं गेंद ऑफ स्टंप से काफ़ी बाहर और वाइड का इशारा अंपायर का और वाइड के इस रन के साथ स्कोर अब बढ़कर पहुंच चुका है 20 रनों पर 5 विकेट के नुकसान पर. जबकि चौथा ओवर उनका यहां पर प्रगति पर और गेंदबाज धनुष गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए फ्लाइटेड गेंद ऑन साइड पर गेंद को उछालना चाहा चूके पूरी तरह और गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में रन से नहीं मिलेगा. हर डॉट गेंद के साथ इस वक्त दबाव बढ़ता हुआ KSK के बल्लेबाजों के ऊपर और निश्चित रूप से यहाँ पर उन्हें एक आक्रामक बल्लेबाजी की सख्त जरूरत है. गेंद लेग स्टंप से बाहर रन के लिए दौड़ पड़े 1 रन मिलेगा और 1 रन के साथ एक 1 + 1 2 runs now in fact added to the total and with that couple run the scoreboard moving up to 21 for the loss of 5 wickets in the over number 4 in progress. और धनुष की ओर की गेंद इस बार गेंद को ऑन साइड पर पुल किया है. फील्डर काफी पीछे तैनात 1 रन मिलेगा और 1 रन के साथ स्कोर अब बढ़कर पहुंच चुका है 22 रनों पर. 22 now for the loss of 5 wicket in the over number 4 in progress. अभी भी एक लंबा सफर तय करना बाकी 54 और रन चाहिए
इस वक्त विजय के लिए। और गेंदबाज की ओर की गेंद इस बार ऑन साइड पर गेंद को उछालना चाहा, गेंद पहुंची शॉर्ट थर्ड मैन पर, एक रन इस बीच मिलेगा और एक रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 23 रनों पर। 23 for 5 now and 4 overs had been bowled. तो पांचवा ओवर यहाँ पर प्रारंभ होता हुआ। पहली गेंद, ये गेंद लगभग गेंद उनके हाथों से फिसल गई थी इस वक्त और डेड बॉल इस वक्त घोषित और स्कोर इस वक्त रुक चुका है 23 रनों पर। 53 more runs now they have to score for victory in remaining 2 overs. That means in remaining 12 overs with the required run rate of exactly 26.5 runs per over. निस्संदेह यहाँ पर कुछ चमत्कारी बल्लेबाजी ही अब उन्हें इस मैच में वापस ला सकती है। ये गेंद पैर पर टकराई, ऑन साइड पर स्विंग करना चाहा, चूके और जहाँ तक रनों का सवाल है तो रन इस वक्त नहीं मिलेंगे। 11 balls remaining in overall calculation in their innings and 53 more runs now they have to score for victory. Absolutely difficult task in front of KSK कामत्सुपा किंग्स। और अगली गेंद, ये गेंद बेहतर गेंद थी इस वक्त, एक बार फिर से पैरों पर गेंद टकराई और रन से एक बार फिर से बल्लेबाज को नहीं मिलेगा। स्कोर रुक चुका है 23 रनों पर, 10 गेंदें बाकी है और 53 रनों की दरकार। 53 टू गेट फ्रॉम 10 डिलीवरीज। पटकी हुई गेंद ऑन साइड पर उछालना चाहा, नॉट क्वाइट मिड लेंगे, ही गेट्स इन अ सिंगल फॉर दैट और स्कोर एक रन के साथ बढ़कर पहुंच चुका 24 रन है। नाउ द लास्ट चांस इन फ्रंट ऑफ द बैट्समैन ऑफ कामत्सुपा किंग्स। 52 to get from 9 deliveries, almost 9 sixes required in the last 9 deliveries. और गेंदबाज एक बार फिर से तैयार, तैनात ओवर द विकेट। ये गेंद चूंकि बेहतर गेंद थी, लेग कटर गेंद ऑफ स्टंप से बाहर की ओर निकलते हुए गेंद की लाइन पर नहीं आ पाए और गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में। रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला। स्कोर रुक चुका है 24 रनों पर 5 विकेट के नुकसान पर। इट्स 24 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट इन द ओवर नंबर 5 इन प्रोग्रेस। और गेंदबाज इस वक्त तैयार, ये गेंद लेग स्टंप से बाहर, गेंद इस वक्त शॉर्ट फाइनल की दिशा में पैरों पर टकराने के बाद एक बार फिर से बल्लेबाज को रन यहाँ पर नहीं मिलेगा। स्कोर रुक चुका है 24 रन 5 विकेट के नुकसान पर। अंतिम गेंद लेकर इस वक्त गेंदबाज यहाँ पर तैयार, दाहिने हाथ ओवर द विकेट। ये गेंद बॉल्ड आउट। बेहतरीन गेंदबाजी इस वक्त, बिल्कुल सीधी रफ्तार के साथ, थोड़ी सी डिविएट होते हुए और इस इन कटर गेंद पर यह विकेट यहाँ पर बल्लेबाज गेंदबाज प्राप्त कर चुके हैं। छठा विकेट गिर चुका है। 24 for 6, लास्ट ओवर रिमेनिंग, 53 टू गेट नाउ फ्रॉम लास्ट ओवर। they have to score for victory in last over. प्रदीप इस वक्त गेंदबाजी शुरू करते हुए और अंतिम ओवर शुरू होता हुआ। विनीत गेंदबाजी शुरू करते हुए और अंतिम ओवर शुरू होता हुआ केएस के की पारी में पहली गेंद लेग स्टंप से बाहर, वाइड का इशारा। 25 for 6 नाउ, 51 टू गेट इन रिमेनिंग 6 डिलीवरीज। और गेंदबाज इस वक्त अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार।
टॉप एज और गेंद शॉर्ट थर्ड मैन पर 1 रन का इजाफा. इट्स 26 for 6. Exactly 50 runs required in remaining 5 deliveries. और गेंदबाज एक बार फिर से तैयार. दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी आगे बढ़ाते हैं. पैड पटकी हुई गेंद लेग स्टंप पर आती हुई वाइड का इशारा. 27 for 6 now. 49 to get from 4 deliveries. 49 to get from 4 deliveries. और गेंदबाज विनीत इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए. फुल टॉस पुल किया इस वक्त मिड विकेट पर. फील्डर गेंद के नीचे आते हुए और एक बेहतर जजमेंट के साथ इस कैच को लपकने में सफल. 7वां विकेट गिर चुका है. 27 for 7 now. Now 49 to get from last 3 deliveries. Absolutely impossible task in front of KSK now at this situation. तो 3 गेंदें बाकी. ऑन साइड पर गेंद को उछालना चाहा चूंकि गेंद सीधे विकेट कीपर के हाथों में और रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिलेगा. ओनली 2 balls नाउ लेफ्ट इन देयर इनिंग्स. सिर्फ औपचारिकताएं ही अब इस मैच में बाकी रह गई है. 49 रन चाहिए बचे हुए 2 गेंदों में और अगली गेंद लेकर गेंदबाज तैयार. ये गेंद इस बार ऑन साइड पर उछालना चाहा और क्वाइट मिडली गेंद रन के लिए दौड़ पड़े. 1 रन मिलेगा. 28-28 and the last ball of the match is now coming up. 2 balls in fact left. 2 balls left. और विनीत गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए. अच्छी गेंद ऑन साइड पर बोलना चाहा. बल्ले का भीतरी किनारा टकराने के बाद उनके पैरों पर टकराने के बाद गेंद वहीं पर गिर गई. रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला. स्कोर रुक चुका है 28 रनों पर 7 विकेट के नुकसान पर. अंतिम गेंद द लास्ट बॉल ऑफ द मैच इज नाउ कमिंग अप. विनीत इस वक्त गेंदबाजी करते हुए. अंतिम गेंद फुल टॉस ऑन साइड पर मोड़ा डीप मिड विकेट पर. नॉट मोर देन अ सिंगल and the stipulated overs are now completed. They finish with 29 for the loss of 7 wickets and KSK Kamat Super Kings are lost the match by 46 runs. So 46 runs comprehensive victory for team NJS against Kamat Super Kings, and with that big margin victory they are better their run rate and also they bag the complete points. So the next match that starts with just short while, and we'll be back right after the short break with my friend Satish in English when the next match will going to commence. Thank you. Thank you very much, Gopi. So, back to this match number 2 of the day, number final. SAC Waves takes on City Warriors. I request extra player from both the teams, please report here. I request extra player. Extra players from both the team, please report to the commentary box immediately. Extra player of Shetty Warriors
as well as extra player of SAC Waves. Please report to the comment box immediately. The captain of SAC Waves won the toss, selected to field first, and that means City Warriors are elected to. Correction, City Warriors will go into bat first here. Coming back to the points table, and now City Warriors are in the second place in the points table. 4 matches, they won 3 and lost 1, and got 6 points. And at the same time, SAC Waves, they played 4 matches, won 2, lost 2, and they got 4 points. That means it's a very important match for both the teams. As far as City Warriors, they definitely wanted to be in the top after. If you're able to win the match, they wanted to retain that second place. And at the same time, SAC Waves, if they wanted to remain in the competition, certainly they wanted to win this match, because the 4 teams will go into qualify for the playoff round of this prestigious KVC Premier League Season 3. Shetty Warriors, please send your extra players towards the commentary box. Shetty Warriors, extra players. The signal coming from umpire Atmaram at square leg Rajeshwar. The first ball, right arm over the wicket, and quite nicely driven down to mid-on to pick the single. There is no fielder in the mid-on. Mid-on going back into deep long on, so that quite easily the batter picked up a single. Then is off the mark, and SAC Waves are won without loss of any wickets. Second time in this over. Right arm over the wicket, beautifully bowled. Equally well played there by the batter. Bowler's back drive, but not quite able to beat the infield. Mid-off fielder quickly run across towards the straighter version, straight mid-off region, fields the ball, and with that the single, both the batters are open the account. 2 without loss of any wicket in the over number first in progress. Third time in this over, again a lovely delivery indeed. Achitesh is on strike. Right, a more lovely delivery indeed. Again, negotiated very well by Achitesh in the irrigation. Just that ball is jagging back into the batter with a very good height. And Achitesh off the back foot. That just to get the placement right down to backward point and cover point between. And picked up a single for that, with that single 3 on the board without loss of any wicket. Ram Ganesh balls a beautiful delivery indeed. Absolutely, so far in this particular tournament, Ram Ganesh is looking so good. And it's just getting some extract from the pitch, getting some movement of the delivery as well. Wow, look at that one. Absolutely perfect one. That was a fantastic bowling performance from Ram Ganesh.
And beautifully bowled. Very good over is completed there by Ram Ganesh, as always, for Shetty Warriors. He is the one who is always leading from the front. His performance is concerned. He's got a very good tournament from the ball and bat. The first over completed is searching for the right track. SAC Waves got a very slow start and skiddy start, and they got only 3 without loss of any wicket. Now, change in bowling. Malesh brought in the attack. Malaysia bowling away from us. I request the fielding team a little bit make it fast. Short fine leg. There is a short mid wicket, deep mid wicket, and deep long on. Short third man, backward point, short cover point, short extra cover, mid off. Malaysia bowling away from us. Right arm over the wicket. This time across the line of the net. We're swinging that one. Ball is in there. Mid wicket fielder in the right position. And wicket number first is back into pavilion. Look at the disappointment in the face of the batsman. You know exactly he got that one right from the middle of the bat, but not really getting that much of enough power behind the stroke. So that ball landed safely into the hands of a mid wicket. And the first wicket of SAC Waves are back into pavilion. It's a very important breakthrough of Malesh. Little bit shuffled across the line of the delivery. Swings that one, but clean speed is not good. 3 for the loss of 1 wicket. Shetty Warriors, they won 3 matches out of 4. And even SAC Waves, they played the same number of matches, but they won 2 and lost 2. Again, away from us. Right arm over the wicket, delivers. Drive straight to the, fielder misjudgment by the short extra cover region fielder. Ball running down to deep extra cover boundary for 4 runs. Just up and over in the negation. The batter Siddiq just lofted that one. Might be a little bit misjudgment. The timing of the jump is not perfect in the negation by the fielder at short extra cover. And ball is having just a fingertips and going over the top for 4 runs. 7 for the loss of 1 wicket. A very important boundary which is came from the bat of Siddiq. Malesh delivers. Beautiful, slower one. Absolutely change of pace. Perfect one indeed. And Siddiq misreading the slowness of the delivery. Couldn't manage to judge that slow from Malesh. Back of length delivery in the negation. The slower one. Excellent change of pace here from Malesh. Right arm over delivers. Again the slower one. Again a little bit early into the stroke. Siddiq got outside edge of the bat because of that extra bounce that defeats the wicketkeeper's hand as well. And short third man fielder fields the ball, and there is no possibility of any run. Good comeback by the bowler in that occasion. The ball, the very tidy line and length. Malesh, right arm over the wicket, delivers again a mistiming straight to the hands of short mid wicket. They're going for the single quite easily in the end. With that single, scoreboard moves on to 8 on the board for the loss of 1 wicket in the over number 2 in progress. So far, it's a very quiet going here. SAC Waves against Shetty Warriors. Very good toss to win here for Shetty Warriors. So far, it's a very good going. Akif is the batter. He lofted over the top, down to deep extra cover region boundary for 4 runs. No need to run for that. Absolutely perfect execution in the negation there from Akif. He's a very good player. He's a very good quality player in the negation. That was nothing much wrong with the line of the delivery. He's making just a little bit room to play the shot. You know exactly where the fielder is. 1 to 2 fielders outside the circle. There is no fielder in the deep extra cover. Once he beats at infield, this is a quick outfield in New Suzuki ground, and a welcome boundary coming up here for SAC Waves. Completion of over number 2. It's a 12 for the loss of 1 wicket. Now it's a run rate looks a little bit better compared to the previous over. The first over they got only 4 runs. Second over they got 8 runs.
Altogether 12 runs in 2 overs means they're going exactly 6 runs per over. Looks like no change in bowling. Ram Ganesh will going to continue from the far end. Siddiq is on strike. Ram Ganesh from the far end. Walked outside edge of the bat. Siddiq is outside edge of that, no doubt at all. Siddiq have to walk back to the pavilion. This is a fantastic piece of bowling there from Ram Ganesh. And Siddiq might be asking something here from umpire, square leg umpire. That was a beautiful delivery indeed. Just got a little bit deviation. And he got outside edge of the bat, the caught behind. So wicket number 2 is back into pavilion of SAC Waves, 12 for the loss of 2 wicket. That was a really very good delivery in there. Very good delivery from the bowler Ram Ganesh. Just moving away, shaping away from the right-hander batsman, moving from the good land spot. And this is the one area where definitely that line will going to test the temperament of the batsman, because the batsman, of course, is in a two-mind whether go for the front foot or back foot because of that line. And he just nicked it. And the big nick, in fact, wicketkeeper behind the stump, making no mistake at all. 12 for the loss of 2 wickets. So new batter, Ashwath, will going to face the first delivery. Ram Ganesh was a beautiful delivery in there again. Copybook style of defensive stroke, well forward in relegation. But no question of any run. Ram Ganesh on his follow through, quickly moving to his right and fields the ball. There is no addition for the total score. Remains at 12 for the loss of 2 wickets. So far it's a very quiet over. Ram Ganesh back to his bowling mark. Right above the wicket. Try to cut that one again inside edge of the bat. And luckily that ball not really hits the stumps. Looks like almost it drags that delivery into the stumps. Fortunately that ball went straight to the hands of wicketkeeper after one bounce. So far it's a so good year from Ram Ganesh. Delivers. Again extra bounce and extra turn in the delivery for Ram Ganesh, keeping the batsman very quiet. So far I think Ram Ganesh did a great job for City Warriors. They got a success because of his all-round performance, especially in the bowling. This time he's bowled him. This is what the batsman, the last thing wanted to do after playing back-to-back 2 dot deliveries. He wanted to break the shackle, but he's just choosing a wrong delivery for that, because that ball came in right in the block hold of the batter. Try to flicks that one, hits that one against the line of the delivery, face the penalty for that. Ashwath departs, 12 for the loss of 3 wicket in the over number 3 in progress. So far, Ram Ganesh is the only one bowler. Is bowled a number of maidens in this over, maybe 1, 2 or 3 maidens in this particular tournament. Now again the one ball remaining to get another maiden. 2 wickets already in this particular over. Ram Ganesh right arm over the wicket, taps that one down to cover point region, misfield by the fielder. Opportunity of getting one maiden here. One more maiden had missed out because of that misfield by the cover point fielder. Excellent over there from Ram Ganesh. Once again, I want to see the bowling figure of Ram Ganesh. 2 overs, no maiden, conceded 4 runs and picked up 2 valuable wickets. Outstanding. This is a match-winning bowling performance here from Ram Ganesh. So still searching for the right track. SAC Waves are struggling in the middle. And 13 for the loss of 3 wicket. Now 3 overs remaining in the innings, and wait and see how well SAC Waves will go in to come out from the trouble. And needed some brave batting performance here from the juiced batters. Of course, Akif is the one who can play a big innings for his team. And before the next over will go into come, it's time to ask Gopi to take over the microphone in our national language, Hindi. And Gopi, outstanding bowling performance coming to Ram Ganesh. So far, we have observed so many good bowlers in this particular tournament. But Ram Ganesh, I think, is definitely
is getting a place in the top because of his excellent bowling performance. So far, he is leading from the front, and because of his performance, I think City Warriors, they won the toss, elected to field first, and everything going in their favor. Exactly, Satish. There is no doubt about that. राम गणेश ने जिस तरीके की गेंदबाजी की है, उस गेंदबाजी की बदौलत सिटी वॉरियर्स गेंदबाजी के जरिए बेहतरीन शुरुआत यहाँ पर कर चुका है और चौथा ओवर उनकी पारी का यहाँ पर शुरू होता है। कट किया बैकफुट पर जाने के बाद थोड़ी सी मिसफील्ड इस वक्त और थोड़ी सी झिझक भी हुई थी दोनों बल्लेबाजों के बीच, लेकिन अंतिम क्षण में 1 रन प्राप्त करने में सफल। और जैसा कि आपने फरमाया सतीश, राम गणेश का जहां तक सवाल है, इस श्रृंखला में बेहतरीन गेंदबाजी का प्रदर्शन उन्होंने दिया, ना सिर्फ इस मैच में बल्कि पिछले मैचेस में भी गेंदबाजी के जरिए उन्होंने अपनी छाप इस श्रृंखला में जमाई है। निस्संदेह उस सफलता के सिलसिले को, पिछले मैचेस के सफलता के सिलसिले को इस मैच में भी वो आगे बढ़ाते यहाँ पर नजर आते हुए, और उनकी एक और बेहतरीन गेंदबाजी की बदौलत इस वक्त सिटी वॉरियर्स एक बेहतर स्थिति में नजर आता हुआ। ऑफ स्टंप से काफी बाहर गेंद, वाइड का इशारा इस बीच, और वाइड के इस रन के साथ स्कोर अब बढ़कर पहुंच चुका है 15 रनों पर 3 विकेट के नुकसान पर। गेंदबाजी इस वक्त शुरू कर चुके हैं रविंद्र, और सामना इस वक्त करने के लिए तैयार बल्लेबाज अकीफ, और गेंदबाज की ओर अगली गेंद, ओह एब्सोल्युटली टेरिफिक वन in swinging Yorker and pitched right on the block hole and stuck to his leg stump. Bills are disturbed, and that is an absolutely perfect in swinging Yorker bowled by the bowler Ravindra. तो बैकफुट पर जाकर गेंद को इस वक्त उन्होंने कट करना चाहता, लेकिन गेंद जिस तरीके से हवे में घुमाव लेकर आए इन स्विंगिंग के तौर पर, उस घुमाव को वो समझ नहीं पाया और लगभग ठीक गेंद उनके ब्लॉक होल पर टिप्पा खाने के बाद बल्ले को वंचित करते हुए सीधे लेग स्टंप पर जा टकराई। बिल्स डिस्टर्ब होते हुए, और यहाँ पर विकेट नंबर 4 यहाँ पर गिर चुका है। इट्स 15 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट। और जहाँ तक सवाल है सिटी वॉरियर्स का, तो टॉस जीतने के बाद जो सिटी वॉरियर्स ने टॉस जीतने के बाद एसएसी वेव्स ने जो फील्डिंग का बल्लेबाजी इस बार गेंद को उछालना चाहा, गेंद नॉट क्वाइट मिडलिंग इट, इनफैक्ट द बॉल रनिंग डाउन टू अ डीप कवर पॉइंट। 2 रन इस बीच मिलेंगे, स्क्वायर ऑफ द विकेट गेंद को इस वक्त उछाला था, और 2 रनों के साथ स्कोर अब बढ़कर पहुंच चुका है 17 रनों पर 4 विकेट के नुकसान पर। 17 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट्स इन द ओवर नंबर 4 इन प्रोग्रेस। एक बेहतर लेंथ और लाइन के साथ गेंदबाज रविंद्र इस वक्त गेंदबाजी करते हुए, इस वक्त गेंदबाजी करेंगे सुनील, जो कि सामना करने के लिए तैयार रविंद्र की गेंदों का। दाहिने हाथों पर विकेट, ये गेंद इस बार हल्के से गेंद को चेक किया था स्ट्रोक को, और स्ट्रोक तो रोक लिया, गेंद हवे में थी लेकिन फील्डर लॉन्ग ऑफ पर काफी पीछे तैनात, और इस बीच 1 रन का इजाफा हो चुका है, और 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 18 रनों पर 4 विकेट के नुकसान पर। काफी देर तक गेंद हवे में रही थी पिछली गेंद पर, और आखिरकार भाग्यशाली रहे बल्लेबाज की गेंद लॉन्ग ऑफ फील्डर के आगे टिप्पा खाती हुई, और इस बीच बल्लेबाज को रन यहाँ पर नहीं, रन मिला सिर्फ 1। रविंद्र एक बार फिर से तैयार, ये गेंद पटकी हुई गेंद ऑन साइड पर पुल किया है, गेंद को बैकवर्ड स्क्वायर लेग सीमा रेखा के अंदर गेंद को जब तक फील्ड कर लिया गया, बेहतरीन फील्डिंग के जरिए बल्लेबाज के पास मौका था 2 रन प्राप्त करने का। गेंद को लॉफ्ट किया था, इस वक्त पुल किया था कहना पड़ेगा शॉर्ट गेंद को, और 2 रन इस बीच बल्लेबाज बटोर चुके हैं। तो इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 20 रनों पर। प्रसाद शमशीर माफ कीजिए, इस वक्त सामना करने के लिए तैयार, ये गेंद उछालना चाहा, बेहतर गेंद थी, पेश का चतुर परिवर्तन के तौर पर धीमी गेंद फेंकी थी, गेंद को टॉस किया गया था इस वक्त, और इस धीमेपन को समझ नहीं पाए और बीट हो गए, गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में। 4 ओवर की समाप्ति, 4 ओवर की समाप्ति के बाद अभी भी ऐसा कहना पड़ेगा एसएसी वेव्स स्टिल सर्चिंग फॉर द राइट ट्रैक। 20 रन्स दे हैव टू स्कोर, 20 रन्स दे स्कोर्ड इन देयर फर्स्ट 4 ओवर्स, and still in overall calculation it's going to be 2 overs remaining in their innings. सुबह का वक्त 10:55 यहाँ पर बच चुके हैं, और धूप अपना कहर यहाँ पर ढा चुका है, और इस बढ़ते हुए वक्त के साथ साथ धूप की तीव्रता भी यहाँ पर बढ़ती हुई, और भीषण गर्मी का एहसास न सिर्फ खिलाड़ी बल्कि दर्शक भी यहाँ पर करते हुए जो इस मैदान के इर्द गिर्द इस वक्त मौजूद है। कुल मिलाकर ऐसा कहना पड़ेगा एक बेहतरीन क्रिकेट श्रृंखला केवीसी प्रीमियर लीग सीजन 3
2022 और इस मेगा श्रृंखला के अंतर्गत इस श्रृंखला के दूसरे दिन का दूसरा मैच यहां पर प्रगति पर सिटी वॉरियर्स और एसएसी वेव्स के बीच में, और एक बेहतर गेंदबाजी का सिलसिला इस मैच में जारी रखते हैं सिटी वॉरियर्स के गेंदबाज। और यहां पर गेंदबाजी पर उतरते हुए प्रदीप नायक, और इस वक्त सामना करने के लिए तैयार सुनील शमशीर नॉन स्ट्राइक लाइन पर मौजूद। फील्डिंग में जमावट यहां पर चलती हुई, हवा का रुख कुछ हद तक तेज, जिस तरह से वृक्ष के झाड़ के पत्ते, वृक्ष के डाल के पत्ते जिस तरह लहरा रहे हैं। और इस बार आसान सा कैच हो चुका है, एक्स्ट्रा कवर पर दूसरे प्रयत्न में गेंद को लपकने में सफल। एक और विकेट गिर चुका है और कुल मिलाकर विकेट नंबर 5, 20 रन 5 विकेट के नुकसान पर। तो जैसा कि मैं फरमा रहा था, जिस तरह वृक्ष के डाल के पत्ते इस वक्त लहरा रहे हैं, उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि हवा का रुख उतना तेज नहीं है लेकिन उतना धीमा भी नहीं है। और ये जो हवा मैदान पर गुजर रही है काफ़ी हद तक इस भीषण गर्मी से दर्शकों को और खिलाड़ियों को दोनों को राहत यहाँ पर दिला रही है। कुल मिलाकर ऐसा कहना पड़ेगा एक क्रिकेट के लिए एक पर्याप्त वातावरण इस मैदान पर छा चुका है। और यहाँ पर इस श्रृंखला का मैच नंबर 17 यहाँ पर खेला जाता हुआ सिटी वॉरियर्स और एसएसी वेव्स के बीच में। और अब नए बल्लेबाज उदय का आगमन यहाँ पर होता हुआ, और इस वक्त गेंदबाजी के लिए तैयार गेंदबाज प्रदीप नायक, और फील्डिंग में यहाँ पर जमावट करते हुए ऑन साइड पर सिर्फ एक खिलाड़ी 20 गज के दायरे के अंदर तैनात स्क्वायर लेग पर, जबकि ऑफ साइड पर 3 खिलाड़ी, कवर पॉइंट और शॉर्ट थर्ड मैन। और अगली गेंद, यह गेंद टॉप एज, एक और विकेट हो सकता है, नहीं, इस बार विकेट कीपर भी नहीं पहुंच पाए और गेंदबाज भी नहीं पहुंच पाए। गेंद उन दोनों के बीच टिप्पा खाते हुए, और इस बीच 1 रन का इजाफा यहाँ पर हो चुका है। ऐसा कहना पड़ेगा एक करारा स्ट्रोक खेलना चाहते थे, गेंद को ठीक तरह से खेल नहीं पाए, टॉप एज पर टकराए, लेकिन गेंद खाली क्षेत्र पर टिप्पा खाते हुए, और इस बीच बल्लेबाज 1 रन बटोरते हुए 21 रन 5 विकेट के नुकसान पर 5वां ओवर यहाँ पर प्रगति पर। प्रदीप इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए, ये गेंद आक्रामक स्ट्रोक खेलना चाहा, एक्स्ट्रा क्विकर गेंद टिप्पा खाने के बाद नीचे रहते हुए, और गेंद सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथों में, बल्लेबाज को वंचित करने के बाद बेहतर गेंद थी और रन इस गेंद पर बल्लेबाज को नहीं मिला। और एक बार फिर से गेंदबाजी यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए, इस बार लेग स्टंप से बाहर वाइड का इशारा, 1 रन का इजाफा, 22 ना। उदय किरण इस वक्त सामना करते हुए प्रदीप की गेंदों का। निस्संदेह जहां तक एक बेहतर स्कोर खड़ा करने का सवाल है एसएससी वेव्स का, तो इस वक्त उन्हें चंद चौके और छक्कों की सख्त जरूरत है। इस बार ऑन साइड पर गेंद को मोड़ दिया है खूबसूरती के साथ मिड विकेट पर, लेकिन वहां पर प्रोटेक्शन मौजूद, और सिर्फ एकमात्र रन इस बीच बल्लेबाज को मिलेगा। और 1 रन के साथ स्कोर अब बढ़कर पहुंच चुका है 23 रनों पर 5 विकेट के नुकसान पर। 23 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट इन द ओवर नंबर 5 इन प्रोग्रेस। पूरी तरह शफल होकर इस वक्त खड़े हुए बल्लेबाज गेंदबाज को विचलित करने का प्रयास वो करते हुए, ये गेंद पैरों पर टकराई, रन से नहीं मिलेंगे। बेहतरीन गेंदबाजी, और लगभग उनके पैर को कॉन्सेंट्रेट करके केंद्रीकृत कर इस गेंद को फेंकी गई थी गेंदबाज द्वारा। बेहतर गेंदबाजी, और यहाँ पर रन इस गेंद पर नहीं मिला, तो स्कोर रुक चुका है 23 रन 5 विकेट के नुकसान पर। जबकि इस ओवर की अंतिम गेंद लेकर प्रदीप नायक तैयार, और शमशीर सामना करते हुए। फील्डिंग में जमावट अभी भी चलते हुए, शॉर्ट स्क्वायर के फील्डर को थोड़ा सा स्क्वायर इस वक्त तैनात किया गया है दाहिने हाथ के बल्लेबाज शमशीर के लिए। और इस ओवर की अंतिम गेंद लेकर प्रदीप तैयार, दाहिने हाथों पर द विकेट गेंदबाजी करते हुए। ये गेंद फुल टॉस उछालना चाहा, चूंकि गेंद सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथ में, और इसी के साथ ओवर नंबर 5 की समाप्ति यहां पर हो चुकी है। और 5 ओवर की समाप्ति के बाद अभी भी ऐसा करना पड़ेगा, एसएससी वेव्स आर नाउ स्टिल सर्चिंग फॉर द राइट ट्रैक। लास्ट ओवर नाउ रिमाइनिंग, अंतिम ओवर का खेल बाकी। देखना यह है कि इस बचे हुए अंतिम ओवर में उनके बल्लेबाज और कितने रन यहां पर बटोर पाते हैं। कल 15 मैचेस इस श्रृंखला का पहला दिन था। कल 15 मैचेस खेले गए थे। रात को 12:30 पर अंतिम मैच समाप्त हुआ था, और उसके बाद आज सुबह 9:30 को आज का पहला मैच शुरू हुआ। और यहाँ पर अब
इस श्रृंखला के दूसरे दिन का दूसरा मैच, यानी कुल मिलाकर इस श्रृंखला का 17वां मैच यहाँ पर प्रगति पर, और प्रथमार्ध यहाँ पर प्रगति पर, और गेंदबाज ग्रंथ इस वक्त गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए। उदय किरण सामना करने के लिए तैयार रहा। तो ग्रंथ नया ओवर प्रारंभ करते हुए विकेट कीपर फील्डिंग में इस वक्त जमावट करते हुए सिटी वॉरियर्स के, और ओवर की पहली गेंद लेकर ग्रंथ इस वक्त तैयार रहा। अपने रन अप में कुछ बाधा, और एक बार फिर से अपने गेंदबाजी के मार्ग पर जाते हुए उदय किरण के लिए अगली गेंद लेकर तैयार रहा। बाएं हाथ राउंड द विकेट, ओवर की पहली गेंद, ये गेंद ऑन साइड पर पुल किया इस वक्त इनटू द गैप एंड इट्स गॉन ओवर द फेंस फॉर मेनी अ माइल्स। बल्लेबाज के पास पर्याप्त समय था कि वो गेंद को उछाल कर खेल सके इस बार, और इस बार उछाला मिडल ऑफ बैट कनेक्टेड, और गेंद को खूबसूरती के साथ भेजने में सफल, डिस्पैच करने में सफल, डीप मिड विकेट सीमा रेखा से बाहर छक्के के लिए। बेहतरीन स्ट्रोक उदय किरण के बल्ले से लगता हुआ, और इस छक्के के साथ स्कोर अब बढ़कर पहुंच चुका है 29 रनों पर। इट्स 29 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट। पहली गेंद पर छक्का प्रदान करने के बाद स्ट्रेट अवे दबाव अब गेंदबाज के ऊपर, फुल टॉस, उछाला, लंग ऑफ पर मौका हो सकता है, फील्डर गेंद के नीचे आते हुए, और आखिरकार इस कैच को लपकने में सफल। इस बार फुल टॉस गेंद थी, इस बार एक बार फिर से गेंद को ऑन साइड पर उछालना चाहा, लेकिन गेंद टॉप एज पर टकराई, ऑफ साइड पर गई, लॉन्ग ऑफ पर फील्डर खड़े हुए थे। एक बेहतर जजमेंट के साथ सीमा रेखा के अंदर उन्होंने इस कैच को लपका, और इसी के साथ ये विकेट नंबर 6 यहां पर गिर चुका है। 29 फॉर द लॉस ऑफ 6 विकेट्स एंड जस्ट 4 बॉल्स नाउ रिमेनिंग इन देयर इनिंग्स। तो ग्रंथ अगली गेंद, ये गेंद बेहतर गेंद थी, एब्सोल्युटली जस्ट चेंज ऑफ पेस एट द लास्ट मोमेंट, बोर्ड मच स्लोवर डिलीवरी, और गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में। गेंद तक पहुंचना चाहा था बल्लेबाज शमशीर ने, लेकिन पहुंच नहीं पाया, और गेंद सीधे विकेट कीपर के हाथों में पहुंची। रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला। एक बार फिर से ग्रंथ गेंदबाजी यहां पर आगे बढ़ाते हुए बाएं हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए, फुल टॉस गेंद, कदमों का इस्तेमाल करते हुए आगे निकले, स्ट्रोक खेलने में चूके, विकेट कीपर भी गेंद को गैदर नहीं कर पाया विकेट के पीछे, और जब तक गेंद को फील्ड किया जाता शॉर्ट थर्ड पैड पर बाई के रूप में 1 रन दोनों बल्लेबाज दौड़कर पूर्ण कर चुके हैं। 30 रन बन चुके हैं इस वक्त 6 विकेट के नुकसान पर। इट्स 30 फॉर द लॉस ऑफ 6 विकेट्स विद जस्ट कपल ऑफ बॉल्स नाउ रिमेनिंग इन देयर इनिंग्स। ग्रंथ बाएं हाथ राउंड द विकेट, ये गेंद यूजिंग हिज फीट, कदमों का इस्तेमाल करते हुए गेंद को ऑफ द टो स्कूप कर दिया, डीप मिड विकेट पर दूसरे रन के लिए दौड़ पर, स्ट्राइक रन पर थ्रो पहुंचा, और यहां पर बल्लेबाज बच नहीं पाएंगे। 7वां विकेट यहां पर गिर चुका है, 31 for the loss of 7 wickets, and now just a last ball remaining in their innings. अंतिम गेंद बाकी SAC वेव्स की पारी में, और उस अंतिम गेंद का सामना करने के लिए नौशद इस वक्त क्रीज पर कदम बढ़ाते हुए एज ए नंबर 9 बैट्समैन। तो अंतिम गेंद ग्रंथ गेंदबाजी करेंगे, बल्लेबाज जो इस वक्त दाहिने हाथ के बल्लेबाज है नौशद सामना करने के लिए तैयार। गेंदबाज ग्रंथ की अंतिम गेंद का बाएं हाथ राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज नौशद के लिए ये गेंद पटकी विकेट ऑफ स्टंप पर आई, रन के लिए दौड़ पड़े, यहां पर आउट घोषित स्क्वायर लेग अंपायर द्वारा, और इसी के साथ पारी के अंतिम गेंद पर 8वां विकेट गिर चुका है, और इसी के साथ उनके निर्धारित ओवर्स समाप्त हो चुके थे। स्टिपुलेटेड ओवर्स आर नाउ कंप्लीटेड एंड SAC Waves scored 31 runs for losing 8 wickets in the stipulated 6 overs, and now they set a victory target of 32 for Shitty Warriors, and as far as the required run rate is concerned, exactly 5.33 runs per over they have to score for victory. 32 the target for them in 6 overs they have to score, and let's see can they reach the target or not. और उनकी पारी की शुरुआत यहाँ पर चंद लम्हों बाद होगी, और एक छोटे से ब्रेक के बाद हम आपके सामने उपस्थित होंगे अंग्रेजी में सतीश के साथ, जब यहाँ पर शिटी वॉरियर्स की पारी की शुरुआत होगी। धन्यवाद, थैंक यू।
I request SAC Waves, please enter the ground. Please don't waste the time. Opening batters are walking towards the middle. Malesh and Krishna, the two batters are walking towards the middle. So 32 runs target for Shetty Warriors to win this match, and wait and see how well SAC Waves will go into defend this total. Not a big total to chase down now for Shetty Warriors. Just seeing that their batting department, they got some potential in their batting department. That means SAC Waves they need to bowl very well if they wanted to win the match against Shetty Warriors. They got a very good players in the side, and even SAC Waves, they got a very good bowling department as well. Especially the bowling department have to do little bit hard work in the fielding department as well, because in this particular cricket tournament we have some witness depending a small total as well. Of course, the lowest score which is dependent in this particular tournament is 29, and so that even in this particular match 32 to win this match, you cannot underestimate that total. So everything is ready here. The bowler Akif, he's got a ball in his hand, and he always starts the proceedings for this side of SAC Waves. Needed some attacking bowling performance. Right arm over the wicket, delivers, and this time set to the answer field, a chance of run out there, and a wide throw coming from the fielder. That's why the wicket keeper couldn't manage to make that run out. Krishna, very, very lucky indeed. Lucky escape. What could be a certain chance of run out, because the batsman drives that one firmly down to deep extra coverage, and Malesh. And already after that stroke, he went for the single along with the stroke. But Krishna, seeing that his partner has already made his mind to take the single, he responded. But fortunately for him, that throw is wide from that field at extra cover. One without loss of any wicket. Akif delivers down the leg stump. This time it's going to be a wide. Yes, it is a wide kill signal by umpire Rajeshwar. And straightaway is asking Akif to not come in front of me. That was a protected zone. After you're delivering the follow through, if you after delivering the ball, if you're going to your right, means you're coming in front of umpire. That means you have to go to your left, so that I think it will give a lot of right view for the umpire to judge. Again, outside the run of off time, going for the cut shot in the irrigation. Not that much of shot enough for Krishna to go for the cut shot, but he managed to got a bat onto that. There is no possibility of any run at all. 2 without loss of any wicket. 32 is the target. Akif with a very good bowling action, moving away from us. Right, over the gate, lofted. He lofted handsomely down to long off, but not quite able to beat the infield. The long off fielder takes the catch. Now umpire have to see that, clarify as it is out. And that was cleanly taken at deep long off. I want to see what really happened in this dismissal. The long off region fielder stationed in the right position. Maybe umpire is clarifying whether the catch is taken cleanly or not, and I think that catch is taken cleanly at deep long off region. So first wicket is back into pavilion of Shetty Warriors. That is the kind of start which is needed for SAC Waves. Once it looks like when Krishna has got that one right from the middle of the bat, but that ball I think is when that ball went in a flatter version. Maybe is required some stroke which is along the direction of the wind. You need to little bit high stroke. Definitely will going to help to get the distance right, but unfortunately that ball's landed inside the boundary line. 2 for the loss of 1 wicket. Akif. Right arm over the wicket to Malay. Oh, that was a very good delivery indeed. Try to reach that one. Maybe the intention of Malesh to push the ball down to backward point region. Maybe he wanted to steer that one down the third man region.
Luckily, that ball didn't got outside edge of the bat. Little bit extra bounce as well here for Akif. Nothing much that much of moment of the delivery, but just a straighter one. But line is so good in that occasion. Line and is so good to keep the batsman quiet. 2 for the loss of 1 wicket. Akif, right arm over the wicket, full toss delivery. Again, not really getting that much of timing, but he got a placement right towards a deep cover point region for a valuable couple of runs. With that couple of runs, scoreboard moves on to 4 on the board for the loss of 1 wicket here in over number first in progress. It's experienced campaigner C.A. Malesh for the side of Shetty Warriors facing his next delivery. Akif, right arm over, again the full toss delivery, low full toss, and that's why he couldn't manage to get the placement right, and ball went straight to the hands of short mid. First over completed, decent start from Akif. It's a very quiet over indeed, 4 and 1 wicket, and that's the kind of start which is needed for SAC Waves when they are depending the total like 32 to win the match for the opposition. Now 28 more runs required for the victory in remaining 30 deliveries. Just under 6 runs per over the required run rate for City Warriors to win this match. Nothing much bother about that run rate because the condition is certainly going to be very favorable for the batting. It's a bright sunny morning. We can see that the pitch is dried up. Ball nicely coming to the bat as well. But even I think some help for the bowler as well. Some part of that pitch, if you're able to get that line and length proper, they can create the problem just like what the bowlers of Shetty Warriors did. Please don't waste the time. Please cooperate with the organizers because you have to complete your 6 overs quota within 25 minutes. So please keep it in mind. The captain, the fielding team captain, Team NJS and ASK Titans will go into play their next match. Please cooperate with the organizers. Please go for the toss immediately from the far end. Start of the over number second, looking for across the line. He wanted to swing that one down to square leg but missed it completely. Good start from the bowler. Ashwath, correction, from the KVC Premier Advertisement Board end. Fantastic cricket tournament, systematically organized in this most beautiful and historical UCG cricket ground. Ashwath from the far end. Right arm over the wicket again. The went for the reverse sweep again. The batter wanted to hit a big stock without seeing the line of the delivery. Blind attempt here from the batter Ram Ganesh. Ram Ganesh is a very good bowler. In fact, even he can contribute from the bat as well. Top order batter for the side, is a very good all-rounder. Now Malesh just walking towards Ram Ganesh to maybe say things. Maybe it's just talking about the strategy and the game plan in this second over. Ashwath right arm over the wicket, bows this time opening the face of the bat. It steers that one, but no question of any run. There's a fieldsman there in the short third man. So far it's a very good start from Ashwath in this particular over. Four for the loss of 1 wicket. It's a very good start in this over. 3 dotted deliveries to start with. And in this power play, I think it's a good job by Ashwath, bowling from the far end. Right arm over the wicket, is ball, lovely delivery, not that much far away from that off stump. And looks like once that ball is going to be the full toss and the batsman will going to take that one in the full. But that ball is just landed in front of the trying bats of Ram Ganesh, and that ball just got a little bit deviation in coming delivery. They missed the off stump completely. 4 fantastic deliveries here from Ashwath. Right arm over the wicket, using his feet, but again not quite able to get the timing behind the strokes. The intention of Ram Ganesh to go over the top of that extra cover fielder, but he mistimed that one. Good piece of bowling here again from Ashwath. Just a single run conceded so far in 5 deliveries. Just a 6 on the board, 5 on the board, correction, for the loss of 1 wicket. Ashwath to Malesh, lofted, and he got the distance.
just clearing that deep long on region and last delivery of that Ashwath. That means all the efforts are gone in vain in that particular over because of that one big stroke which is came from the blade of Malish, just breaking the shackle in that particular over, and because of that 6 score jumped into double figure, now 10 for the loss of 1 wicket. Straight away coming back to the equation, 22 more runs required for the victory in 4 overs. 11 did be correction, 11 on the board, not 12, it's 11. That means 21 required for the victory in 24 deliveries. Not that much of a bad line in that previous stroke which just came from Malish, but Malish making that one very pull. The bowler trying to york the Malish, but Malish taking that one right in from the middle of the bat, and when the batter sitting very straight and very difficult for any fielder to take that catch, but that ball got a distance as well, and a fantastic straight hit coming from the blade of Malish. 11 for the loss of 1 wicket. No change in bowling from the commentary box, and Akif will go into ball. After that power play, it's a fielding spreading out here. Deep backwards qualifier mid wicket and deep long on. Deep cow point and deep backward point and deep extra cover. The fielders are in the offside in the deep. Short backward point, short extra cover, short mid wicket, short fine leg. Akif, I request make it fast, please don't waste the time. Akif bowling with the run-up from the edge of the circle. Right arm over the wicket, Akif delivers. Again, lovely delivery indeed, forcing the batsman onto the back foot. But Ram Ganesh, maybe his intention to pick the single and give the strikes to Malish. That's what, but that is extra bounce here from Akif, and keeps the batsman very quiet. 11 for the loss of 1 wicket in the over number 3 in progress. Akif once again back to his bowling mark. Away from us. Right arm over the wicket, delivers. Went for the reverse sweep and missed it completely. Wicketkeeper fails to collect the ball, and they got opportunity to cross off for a single. And it's from the bat, I think so. Inside edge of the bat of the batter, deflected from the bat, and hits the hands of wicketkeeper. One more addition, 12 for the loss of 1 wicket in the over number 3 in progress. Akif trying his level best. Of course, he got 1 wicket in his first over. Now he's bowling with more protection in the deep. Malish is back on strike. Akif back on nice bowling mark. Right arm over the wicket, delivers. Pulls that one. Lack of placement. Straight at hands of short mid wicket. Again, a little bit extra bounce, and Malish looking for the pull shot, but a little bit across the line of the delivery, and that not that much of the shot enough to pull that one where he wanted to do. That's why that ball is went straight to the hands of short mid wicket, and there is no possibility of any run. 12 for the loss of 1 wicket. Akif back to his bowling mark. Right arm over the wicket. This time short pitch, just up and over, down to backward point region. Chase here for the fieldsman. Good piece of fielding there by the fielder, but not quite able to stop a couple of runs here for Malish. Width is offered by Akif outside the line of off stump, and he's just climbed that one. Malish just got an uppercut in the negation, and not really getting that much of timing behind that uppercut. Otherwise, definitely he will going to get a bounty for that. But a couple of runs. Good piece of fielding the builder at backward point, chasing the ball very well. And scoreboard now moves on to 14 for the loss of 1 wicket, chasing 32 to win this match. Again, Akif. Right arm over the wicket. Again, the lack of placement, misfield there by the fielder. There is hesitation for the run, but at last they're going against the single, rightly so. Doesn't want to take any kind of risk here. And Malaysia again fails to make a placement right.
And that was a low full toss, what Malaysia wanted to drive that one down to mid-wicket region. Off stop by the short mid-wicket fielder. 14 for the loss of 1 wicket. Akif bowling away from us, right arm over the wicket, final time. Again, down the leg stump, going to be wide. This is the one area what SAC Waves have to be very, very strict. And the conceding extra runs means it's give a lot of confidence for the batters. They're depending a small total, just 32 to win the match for the opposition. Already scoreboard is 15 on the board for the loss of 1 wicket. That means another 17 more runs required for the victory in remaining 19 deliveries. Akif again bowling away from us. Right arm over the wicket, bowls again, pushes that one right in the gap. No problem whatsoever as far as rotation of strike is concerned. Keeps the strike for the next over. Over number 3 completed, chasing 32 to win this match. Is 16 for the loss of 1 wicket. So another 16 required. That means half of the job is completed in half of the innings. That means 3 overs completed, 16 they completed. Another 16 to get from another 3 overs. 18 deliveries, 16 to get. And from the far end, it's the start of the over number 4. Looks like Shamsher is back on attack. It's a very good bowler. Needed some restriction from his bowling if they wanted to win this match. Shamsher from the far end. Right arm over the wicket, off the back foot, beautifully driven, and not more than a single there for Malaysia. With that single, scope was on to 17 on the board for the loss of 1 wicket in the over number 4 in progress. So far, it's a very quiet cricket is going on, quite understandable because both the batters are playing as per the condition required. No need to panic at all, but I think the run rate certainly is going to be the key in this league matches. Oh, it's gone. Absolutely magnificent delivery. Absolutely magnificent delivery. Deviation in the delegation. And Ram Ganesh in the delegation tried to steer that one down to third man region. But because of that extra bounce and deviation in that delivery, lovely shaping away from the right-hander batsman. Unplayable delivery. And the batter have to play that shot delivery because of that line and length showing impressive from Shamsher. And wicketkeeper behind the stump did the rest. Wicket number 2 is back on top of it. And 17 for the loss of 2 wicket. Just like mentioning about Shamsher, he's got a potential of giving some breakthrough for the team of SAC Waves. And he got a vital breakthrough here. So new batter Ashwath Shetty came into middle, left-hand batter. So that different fielding set here for the left-hand batter. Deep mid-wicket, one at deep backward square leg. One at wideish long on. Long off is there. And now extra cover fielder going back to deep extra cover. There's a back point almost in a gully region. One at short extra cover. There is a wideish long off for the left-hand batsman. And one at short fine like this inside the ring. Shamsher is a successful bowler. Angling round the wicket now. Nice looking off drive. But a little bit extra bounce for that short mid-off fielder. Short extra cover fielder. In fact, he missed it completely from his hand so that the batsman opened the account with the single. Ashwath 18 for the loss of 2 wicket. Shamsher back to his bowling mark. Malaysia back on strike now. So far is cool and calm. Again, a nice placement to get the placement down to deep cover point region for a easy single, walkable single for Malaysia. And with a single, scoreboard moves on to 19 for the loss of 2 wicket. 32 is the target. That means another 13 more runs required for the victory. It's over number 4 in progress. Shamsher just checking the direction of the wind is so important to see because they need to ball that line and length against the direction of the wind. Again, far above side and above time. Maybe a little bit experiment here from Shamsher. That is too much.
He wanted to bowl that outside the line of off temp so that they want to beat the bat of the Ashwath, but that ball is going further away. Addition of that single, scoreboard marker 20 now. 12 required. Drives that run along the carpet down to deep long off region for an easy single, walkable single. And with that single, scoreboard was on to 21 on the board for the loss of 2 wicket. 11 required for the victory. Malesh back on strike. Right arm over, delivers. Going for the cut shot, beautifully bowled. So good over, and one more over completed, chasing 32 to win this match. And now, last 2 overs, they required 12 runs for the victory. 11 required for the victory in 12 balls. So 11 more runs required for the victory, and the batters are in the middle, Ashwath as well as Malesh, and sudden change in bowling from the commentary box end. So looks like the bowler Sudesh Malia is brought into attack with lot of responsibility, because this is the very important over for SAC Waves. They needed the economical over. They needed some wicket taking over in this particular over. Then only they can take this match into the final over. Outside now, lovely shot. Beautifully driven that one. Leaning into the drive towards extra cover region. Before the fielder from the deep long off to run across towards his right to field the ball down at deep extra cover. And ample time for the batters to complete that couple of runs. With is offered, and batsman stretching his front foot, leaning into the drive, and picked up a very valuable couple of runs, and in that couple of runs, scoreboard was under 23 now. 9 required for the victory. Again, now far outside the run of off temp. One more addition to total. Each and every extra takes the match away from the fielding side, and bringing the batting team's Shetty Warriors strongly into this match. 8 required for the victory. Oh, lovely delivery. That was the kind of delivery required, isn't it? And that's the kind of delivery required in the early of this over. But he already considered some runs, 3 runs in this particular over. Sudesh Malia still is trying his level best to keep the batsman quiet in this over. That was a fantastic line indeed, for the perfect line to bowl to the left-hander batter. Sudesh again. Moving away from Azhar, right arm over the wicket, balls beautifully bowled again. Sudesh wanted to hit the ball. It had one more towards a mid-wicket division, but against the line of the delivery. And there's a little bit change of pace as well there from Sudesh. He bowled the slower one, just reducing the pace, and that's why the batters left early into the stroke. Missed it completely. 2 dotted deliveries. It's a good comeback. A very good comeback now. 8 runs required from 9 deliveries. Sudesh. Right arm over again, the one more dotted delivery. Now 8 balls remaining, 8 runs required for the victory. Excellent comeback here for Sudesh Malia. And now something is going in mind of the batters. A little bit under pressure. So Malesh straight away coming down the track and saying something to his partner, why you are standing well outside the line of leg stump. But that's why the bowler bowling that line, beating you 3 times. And you better to come little bit on the middle and off stump so that he can reach the ball, and wait and see how well the left-hand batsman Ashwath will go into play the next delivery of Sudesh. This time he pulls that one, not lack of pleasant chance of run out in outsider's end. The throw is not good enough, and extra runs there. Really not a good to see that. Look at the bowler; he's putting his 2 hands to his head.
because he knows that he's tried his level best. Almost it's a dotted delivery. If there's any fielder out there in the very good fielder there, he fielded well, no doubt at all. But the return is not good from that fielder. Needed the little bit quickness in that throw. Opportunity of run out is created. Again, then bowler himself tried to hit the stump. He missed the stump. Again, the opportunity is offered to come back for the second. 26 on the board for the loss of 2 wickets. 6 runs required for the victory in 8 deliveries. 7 deliveries. 6 required. Driven firmly down to deep long on. They're running hard, but not more than a single. So very good over from Sudesh Mallya. Absolutely tried his level best. The good try from Sudesh Mallya. He bowled 3 consecutive dotted deliveries, but still, I think the match looks to be very interesting. 27 for the loss of 2 wicket. A last over remaining. 5 runs required for the victory. Five runs required in the last over. Now they have to introduce a new bowler, SAC Waves, and wait and see how well the Shetty Warriors will going to get that 5 runs. So far, I think it's a very good fight back by SAC Waves, even though they're depending that very small total of 32 to win the match for the opposition. But so far, they're depended very well. Now, the left-hand batter Ashwath is on strike. Little bit struggled in the previous over against the bowling of Sudesh. Bowler from the far end, Sirajuddin, bowling the last and final over, the important over. 5 runs required for the victory. Here is Sirajuddin from the far end. Right arm over the wicket. Short pitch, uppercut over the top. And he got the bounty for that. This is not a good start here from Sirajuddin. The first ball itself is just to release the pressure. And he's just standing tall, and uppercut comes into play. The width is offered too much. Short pitch outside the line of half stamp. He's just climbing on to that. Ashwath and slashed that one over the top of that cow point region, bounty for 4 runs. Just 1 run required for the victory. Again, they're going for the single, and I think it's a winning run. And Shetty Warriors won the match by 8 wickets and 4 deliveries to spare. SAC Waves tried their level best to win this match, but little bit short of runs they're feeling. Maybe the 5 to 10 runs maybe change they can win the match. Not that much of big effort from the batting department, but the bowlers, I think SAC Waves have done a great job. Unfortunately, they are lost the match. Now, out of 5 matches, they lost 3, 1, 2. Still, they remains in the points table. They got 4 points. And Shetty Warriors climb into the top position now. 5 matches, they won 4, lost 1, and they got 8 points. 2.428 runs. That was an run rate, and Air Titans now they're in second place, but they played only 4 matches, Air Titans. And Shetty Warriors, they played 5 matches, but they got a very good run rate, so that they're in the tops in the points table. Very interesting points table here. Now we are coming to the next match. The match will be played between NJ versus Air Titans. So we'll take a short break. After a short break, Gopi will going to take over the microphone in our national language, Hindi. Thank you very much. I request extra player from both the teams. Please report to the commentary box immediately. Extra player from team NJS as well as extra player from Air Titans. Please report to the commentary box immediately.
धन्यवाद सतीश। तो यहाँ पर मैच नंबर 3 इस श्रृंखला के दूसरे दिन का मैच नंबर 3 शुरू होने जा रहा है। केवीसी प्रीमियर लीग 2022 सीजन 3 के अंतर्गत और एआर टाइटंस और टीम एनजेएस के सामने। टीम एनजेएस ने टॉस जीतने के बाद पहले फील्डिंग करने का निर्णय जो कि उन्होंने लिया है और एआर टाइटंस के दोनों आरंभिक बल्लेबाज इस वक्त क्रीज पर मौजूद और ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार। ये गेंद को इस वक्त खेलना चाहा, गेंद पर टकराने के बाद बैक टू द बॉलर की दिशा में पहुंची और जहां पर गेंद को फील्ड कर लिया गया। रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिलेगा। 0 पर स्कोर इस वक्त रुक चुका है और कुल मिलाकर स्ट्राइक इस वक्त लेने वाले बल्लेबाज है फ्रेडी, जबकि नॉन स्ट्राइक रन पर प्रशांत और गेंदबाज इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए स्विंग कर दिया, इस बार सफल होते हुए डीप मिड विकेट सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। बेहतरीन स्ट्रोक इस वक्त फ्रेडी का, सफल होते हुए गेंद की उछाल को पहचानते हुए अपने घुटनों के बल कुछ हद तक बैठते हुए गेंद को इस वक्त पुल कर दिया था डीप मिड विकेट पर। हालांकि फीडर जरूर मौजूद थे डीप मिड विकेट पर, लेकिन काफी सीधे और गेंद उनकी दाईं ओर से होती हुई गेंद सीमा रेखा के सीढ़ियों पर टकरा चुकी है 4 रनों के लिए और इस चौके के साथ रनों का सिलसिला यहां पर शुरू हो चुका है एआर टाइटंस का। और अगली गेंद पटकी हुई गेंद को उछालना चाहा, लेकिन लेग स्टंप से बाहर उनके कंधों के ऊंचाई पर गेंद निकलते हुए वाइड का इशारा और वाइड के रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 5 रनों पर। वेदांत गेंदबाजी यहां पर शुरू कर चुके हैं और इस बीच पावर प्ले ओवर जारी, पहला पावर प्ले ओवर और दाहिने हाथ ओवर द विकेट। ये गेंद इस बार गेंद को ड्राइव कर दिया खूबसूरती के साथ, गॉट टू द राइट ऑफ द बिहाइंड द लाइन ऑफ द बॉल, जिस एंगल है और इस एंगल के साथ स्कोर अब बढ़कर पहुंच चुका है 6 रन बिना किसी नुकसान के, 6 विदाउट लॉस इन द ओवर नंबर फर्स्ट इन प्रोग्रेस। और इस बीच बाएं हाथ के बल्लेबाज प्रशांत सामना करने के लिए तैयार। वेदांत की गेंदों का फील्डिंग में कुछ हद तक जमावट यहां पर चलते हुए लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन इस वक्त क्रीज पर मौजूद है और इस वक्त बाएं हाथ के बल्लेबाज प्रशांत के लिए एक फील्डर डीप मिड विकेट पर इस वक्त जाते हुए ठीक सीमा रेखा के पास मौजूद है और कुल मिलाकर 7 खिलाड़ी 20 गज के दायरे के अंदर तैनात। और इस बीच गेंदबाज वेदांत गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए पटकी हुई गेंद, बेहतर गेंद थी इस वक्त, कुछ ज्यादा उछाल लेते हुए अपने गेंद की लाइन से बल्ले को हटाते हुए सीधे गेंद को जाने दिया विकेट कीपर के हाथों में। देखा कि कुछ गेंद ज्यादा उछाल नहीं रही है और इस बीच रन्स बल्लेबाज को नहीं मिला, तो बेहतर गेंद थी गेंदबाज की, मिडल ऑफ स्टंप से बाहर की ओर निकलते हुए और रन्स इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला। और एक बार फिर से वेदांत गेंदबाजी यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए प्रशांत के लिए दाहिने हाथ ऊपर द विकेट। ये गेंद विकेट से हटते हुए गेंद को इस वक्त खेलना चाहा, खुद का एक कदम आगे निकलते हुए, लेकिन आखिरकार गेंद स्ट्रोक्स को खेल नहीं पाए और गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में। रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिलेगा, तो 6 रन बिना किसी नुकसान के, जबकि पहला ओवर उनकी पारी का यहाँ पर प्रगति पर और वेदांत इस वक्त गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ऊपर द विकेट। ये गेंद इस बार बेहतर गेंद थी इस वक्त, स्क्वायर ऑफ द विकेट गेंद को ड्राइव करना चाहा था, चूंकि पूरी तरह गेंद सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथों में। बेहतर ओवर की समाप्ति वेदांत की, इसमें सिर्फ 6 रन उन्होंने प्रदान किए और यह टाइटंस टॉस हारने के बाद टीम एनजेएस के खिलाफ पहले बल्लेबाजी पर उतर आता हुआ एक सतर्क शुरुआत है जिसे कहते हैं स्टेडी स्टार्ट। इन फैक्ट दे मैनेज्ड टू स्कोर 6 रन्स ऑन द बोर्ड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ देयर फर्स्ट ओवर। और इस बीच गेंदबाजी यहां पर संभालते हुए कमेंटेटर बॉक्स एंड की ओर से गेंदबाज अनंत और फ्रेडी यानी फ्रेडविन इस वक्त स्ट्राइक लेने के लिए तैयार। और जहां तक फ्रेडविन का सवाल है, उन्होंने पहले ओवर में एक चौका झड़ा था वेदांत की गेंद पर और यहां पर स्ट्राइक लेने के लिए तैयार इस वक्त अनंत की गेंदों का। तो जहां तक एक बेहतर स्कोर खड़ा करने का सवाल है एआर टाइटंस का, तो इस वक्त उन्हें चाहिए एक बेहतर साझेदारी, एक बेहतर स्कोर की ओर बढ़ने के लिए। ये गेंद उछाला और फील्डर कवर पॉइंट पर पीछे तैनात और इस बीच रन्स बल्लेबाज को मिलेंगे। जीतो तो कोशिश जरूर की थी अपनी आगे की ओर ड्राइविंग लगाते हुए, लेकिन गेंद द बॉल फेल जस्ट शॉर्ट ऑफ हिम एट द लास्ट मोमेंट एट शॉर्ट कवर एंड बिकॉज ऑफ दैट द बैट्समैन गेट्स अ सिंगल फॉर दैट स्ट्रोक और इस रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 7 रनों पर बिना किसी नुकसान के, जबकि दूसरा ओवर उनकी पारी का यहाँ पर प्रगति पर अनंत इस वक्त गेंदबाजी करते हुए और सामना करने के लिए तैयार। प्रशांत
फील्डिंग में कुछ हद तक जमावट यहाँ पर चलती हुई, दिन धीरे धीरे दोपहर की ओर बढ़ता हुआ, दिन के 11:45 यहाँ पर बज चुके हैं। सूरज धीरे धीरे आसमान की बुलंदियों को छूता हुआ अपने प्रखर किरणों को मैदान पर फैला चुका है। और यहाँ पर ये गेंद ड्राइव किया, ओवर पिच गेंद थी और गेंद को इस वक्त जब तक लॉन्ग ऑन पर फील्ड किया जाता, बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 8 रनों पर बिना किसी नुकसान के। और एक बार फिर से गेंदबाज अनंत अपने गेंदबाजी के मार्ग पर जाते हुए और दूसरा पावर प्ले ओवर उनकी पारी का यहाँ पर जारी। फ्रेडविन इस वक्त सामना करते हुए अनंत की गेंदों का, दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए, ये गेंद पटकी हुई गेंद, उछाला लॉन्ग ऑन पर गेंद जाती हुई और गेंद इस वक्त लॉन्ग ऑन सीमा रेखा के अंदर लपक ली गई है। गेंद को फ्रेडविन ने उछाला था जरूर, लेकिन ऐसा कहना पड़ेगा नॉट सो पावर इन दैट स्ट्रोक, और गेंद में इतना पर्याप्त रफ्तार नहीं था कि गेंद सीमा रेखा को पार कर सके और लॉन्ग ऑन फील्डर ने इस कैच को लपका सीमा रेखा के अंदर और इसी के साथ ये पहला विकेट यहां पर गिर चुका है, जबकि स्कोर है उनका 8 रन। इट्स 8 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट इन द ओवर नंबर 2 इन प्रोग्रेस एंड फ्रेडी डिपार्ट्स नाउ आफ्टर स्कोरिंग 5 runs into his credit। और जहां तक सवाल है नए बल्लेबाज का, चेतन the number 3 batsman is now coming out to the middle for AR Titans और वो इस वक्त स्ट्राइकर एंड की ओर बढ़ते हुए अनंत की गेंदों का सामना करने के लिए तैयार रहा। दूसरा पावर प्ले ओवर रहा उनकी पारी का यहाँ पर प्रगति पर रहा और अनंत गेंदबाजी इस वक्त करते हुए चेतन के लिए, दाहिने हाथ ओवर द विकेट पटकी हुई गेंद, एक बार फिर से गेंद हवा में, कवर पॉइंट फील्डर और ये बेहतर, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक कैच नाउ। पीछे की ओर दौड़ते हुए गेंद पर अंतिम क्षण में उन्होंने अपने हाथ अड़ाए गेंद पर और गेंद उनके हाथों में बैठ गई और चेतन बल्लेबाज थे जिनकी पारी पहली गेंद पर यहां पर समाप्त हो चुकी है। बेहतर कैच, जब कभी भी आप पीछे की ओर दौड़ते हुए कैच लेते हैं तो कैच लपकना उतना आसान नहीं होता है, लेकिन यहां पर गेंद पर अपनी नजरें गड़ाए रखी और जैसे ही गेंद उनके हाथों से नीचे जाने वाली थी, अपने हाथों को गेंद के नीचे लाते हुए उन्होंने दोनों हाथों से गेंद को दबोच लिया और दूसरा विकेट यहां पर गिर चुका है 8 रनों के योग पर AR टाइटंस का। इट्स 8 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट इन द ओवर नंबर 2 इन प्रोग्रेस। नए बल्लेबाज Saurabh, the captain of their side, is now comes out to the middle as a number 4 batsman with lots of responsibility, जो कि वो इस वक्त नॉन स्ट्राइकर रन पर मौजूद, स्ट्राइक लेते हुए प्रशांत। ये गेंद इस बार ऑन साइड पर खेलना चाहा, गेंद गई ऑफ साइड पर, शॉर्ट मिड विकेट पर रन के लिए दौड़ पड़े, 1 रन इस बीच बल्लेबाज को मिलेगा, इससे पहले कि गेंद को वहां पर फील्ड किया जाता। It's got an inside edge on that at the last moment and before it was collected at short mid wicket, the batsmen have got plenty of time to cross over for this single और इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 9 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर। दूसरा ओवर यहां पर प्रगति पर और गेंदबाज अनंत इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए इस बार गेंद को पुल किया खूबसूरती के साथ और गेंद इस वक्त बैकवर्ड स्क्वायर लेग सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। बेहतर स्ट्रोक इस वक्त शफल होते हुए गेंद को ऑन साइड पर पुल कर दिया था डीप फाइन लेग पर 4 रनों के लिए। इट्स 13 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स। CA ವಿನೀತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ರವರು ಎಲ್ಲಿದ್ರು ವೇದಿಕೆ ಬಳಿ ಬರಬೇಕು। CA ವಿನೀತ್ ಶೆಟ್ಟಿ। So it's 13 for the loss of 2 विकेट और जहां तक सवाल है ओवर का, तो दूसरा ओवर यहां पर पूर्ण हो चुका। पिछले ओवर की अंतिम गेंद पर थोड़ी सी सफल होते हुए गेंद की इस वक्त पुल कर दिया था, ऐसा कहना पड़ेगा नॉट क्वाइट मिडिंग इट, लेकिन गेंद गैप पर गए थे और गेंद को इस वक्त सीमा रेखा के पार भेजने में सफल 4 रनों के लिए। 2 ओवर की समाप्ति के बाद एक मिक्स स्टार्ट इस वक्त कर चुका है कहना पड़ेगा AR टाइटंस, 13 रन जोड़ चुका 2 विकेट के नुकसान पर। 13 for the loss of 2 wickets scored by AR Titans after the completion of 2 overs with the run rate of exactly 6.5 runs per over. श्री कृष्णा इस वक्त गेंदबाजी यहां पर शुरू करते हुए और बाएं हाथ के बल्लेबाज
प्रशांत इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। 2 ओवर के खेल के पश्चात फील्डिंग के प्रतिबंध हट चुके हैं, पावर प्ले समाप्त हो चुका और फील्डर मैदान पर छा चुके हैं। ये गेंद पुल गया इस वक्त लॉन्ग ऑन की दिशा में एंड दिस इज अ क्लीन हिट। गेंद सीधे फ्लडलाइट्स के खंबे पर टकराती हुई डीप मिड विकेट सीमा रेखा से बाहर और छक्का इस वक्त जुड़ता हुआ एआर टाइटंस के खाते में। बेहतर स्ट्रोक इस वक्त प्रशांत के बल्ले से इस वक्त लगता हुआ। गेंद के उछाल को पहचानते हुए गेंद को इस वक्त पुल किया था डीप मिड विकेट सीमा रेखा के बाहर छक्के के लिए और स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 19 रनों पर। तीसरा ओवर यहां पर प्रारंभ हो चुका है। ये गेंद इस बार एक बार ओह दिस इज अ बैड मिस। विकेट कीपर चूके थर्ड मैन पर इस गेंद का पीछा करते हुए फील्डर और गेंद को इस वक्त वो रोकने में असफल। 4 रनों के लिए बाई का इशारा अंपायर का। स्वयं बल्लेबाज के साथ साथ विकेट कीपर भी समझ नहीं पाए, इस गेंद को गैदर नहीं कर पाए और गेंद इतनी फाइन निकली कि शॉर्ट फाइन लेग फील्डर दौड़ लगाने के बावजूद इस गेंद तक पहुंच नहीं पाए और गेंद सीमा रेखा को पार कर चुकी है। 4 रनों के लिए 23 रन 2 विकेट के नुकसान पर। इट्स 23 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट इन द ओवर नंबर 3 इन प्रोग्रेस। गेंदबाज एक बार फिर से तैयार, दाहिने हाथ ऊपर द विकेट गेंदबाजी करते हुए ये गेंद इस बार और ये विकेट यहां पर गिर चुका है। बेहतर विकेट कीपिंग, जैसे ही विकेट कीपर के हाथों में गेंद पहुंचे विकेट कीपर ने स्टंप्सों पर निशाना दागा और बल्लेबाज क्रीज से स्टेप आउट कर चुके थे और इससे पहले कि वह अपने स्वस्थान पर लौटे सीधा थ्रो स्टंप्सों को बिखेर कर ले जाता हुआ विकेट कीपर का और यहां पर यह विकेट नंबर 3 गिर चुका 23 रनों के ऊपर। तो छक्का झड़ने के बाद प्रशांत एक आक्रामक बल्लेबाजी की सूचना दे चुके थे। उनका विकेट अगली ही गेंद पर गिर चुका है और एक बार दबाव फिर से एआर टाइटंस के ऊपर। 23 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स। तो करुणा सागर इस वक्त नए बल्लेबाज के रूप में और गेंदबाज की गेंद अगली गेंद ये गेंद ओवर पिच गेंद थी। गेंद को इस वक्त खेलना चाहता, नॉट क्वाइट मिडलिंग इट एट द लास्ट मोमेंट। मिड विकेट फील्डर कलेक्टेड द बॉल और इस बीच बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का। 24 रन बन चुके हैं 3 विकेट के नुकसान पर, जबकि उनकी पारी का तीसरा ओवर यहाँ पर प्रगति पर और 3 विकेट जरूर इस वक्त हो चुका है एआर टाइटंस, लेकिन रन की गति उनकी काफी बेहतर 24 रन वो अब तक बना चुका है। कुल मिलाकर 24 रन 3 विकेट के नुकसान पर और इस बीच गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट ये गेंद इस बार रिवर्स शॉट, गेंद को खेला पॉइंट की दिशा में, रन के लिए दौड़ पड़े, निशाना चूका इस वक्त और इस बीच बल्लेबाज के पास समय था कि 1 रन के साथ वो अपना छोड़ यहां पर बदल सके और 1 रन के साथ स्कोर अब बढ़कर पहुंच चुका है 25 रनों पर। इट्स 25 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट इन द ओवर नंबर 3 इन प्रोग्रेस। निस्संदेह जहां तक एक बेहतर स्कोर खड़ा करने का सवाल है एआर टाइटंस का, तो इस वक्त उन्हें चाहिए एक लंबी सांसदारी एक बेहतर स्कोर की ओर बढ़ने के लिए। यह गेंद उछाला हवे में, एक्स्ट्रा कवर पर आसान सा कैच, नॉट क्वाइट मिड विकेट एंड बिकॉज ऑफ दैट ही पेड द पेनल्टी। 1 more wicket fallen, 4th wicket gone and now it's 25 for 4 for AR Titans. So 3 overs completed. It's 25 for the loss of 4 wicket for AR Titans. और जहां तक सवाल है चौथे ओवर का, तो गेंदबाज चौथा ओवर प्रारंभ करते हुए धनुष और स्ट्राइक इस वक्त लेने के लिए तैयार तनय, जो कि नए बल्लेबाज के रूप में इस वक्त मैदान पर उतर चुके हैं और धनुष अपनी पहली गेंद लेकर इस वक्त तैयार, दाहिने हाथ ऊपर द विकेट गेंदबाजी करते हुए ये गेंद इस बार बेहतर गेंद थी, एब्सोल्युटली गुड वन, परफेक्ट
लेग कटर डिलीवरी और गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथ में। काफी चतुर गेंदबाज के रूप में जाने जाते हैं धनुष। ना सिर्फ गेंदबाजी वो बेहतर करते हैं बल्कि अच्छे खासे बल्लेबाज के रूप में भी जाने जाते हैं। और यहाँ पर पहली गेंद उन्होंने मिडल ऑफ स्टंप पर फेंकी थी और गेंद टिप्पा खाने के बाद बाहर निकली और इस गेंद पर स्ट्रोक खेलने में असफल बल्लेबाज। और गेंदबाज एक बार फिर से तैयार। तनय गेंदबाजी यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट। धनुष गेंदबाज तनय के लिए अगली गेंद। ये गेंद पटकी हुई गेंद, उछाला है स्वयं धनुष के लिए मौका, फॉलो थ्रू में इस कैच को लपकने में सफल और एक और विकेट यहां पर गिर चुका है। तनय गेंद को उछालना चाहते थे लॉन्ग ऑफ के ऊपर से, लेकिन गेंद कुछ ज्यादा उछाल लेते हुए उनके बल्ले के टॉपेज पर टकराई और फॉलो थ्रू में पीछे की ओर जाकर धनुष ने इस कैच को बेहतर तरीके से लपका। ऐसा कहना पड़ेगा कि बल्लेबाज को स्टेप आउट करते पहले ही देख लिया था गेंदबाज ने। थोड़ी सी शॉर्ट गेंद उन्होंने फेंकी और इस उछाल को ठीक तरह से भांप नहीं पाए बल्लेबाज। स्टॉपेज पर टकराने के बाद गेंद जब हवा में उछली तो स्वयं गेंदबाज धनुष ने उस गेंद के नीचे आते हुए फॉलो थ्रू में इस कैच को लपका एक बेहतर जजमेंट के साथ। और 25 रनों पर 5वां विकेट गिर चुका। हालांकि रन से जरूर बन रहे हैं लेकिन विकेटें भी उसके साथ साथ यहाँ पर गिर रहे हैं। और धनुष इस वक्त गेंदबाजी यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट। ये गेंद इस बार स्टीयर किया बैकफुट पर जाने के बाद पॉइंट की दिशा में। एक रन का इजाफा यहाँ पर हो चुका और एक रन के इजाफे के साथ स्कोर अब बढ़कर पहुंच चुका है 26 रनों पर। इट्स 26 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट इन द ओवर नंबर 4 इन प्रोग्रेस। डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग, डीप मिड विकेट, लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ इस वक्त तैनात और डीप कवर पॉइंट इस वक्त मौजूद और गेंदबाज इस वक्त तैयार। दाहिने हाथ ऊपर द विकेट। ये गेंद रिवर्स शॉट खेलना चाहा, गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में। रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिलेगा। एक बेहतर लेंथ और लाइन के साथ इस वक्त गेंदबाजी करते हुए धनुष बल्लेबाज को खुलकर स्ट्रोक्स खेलने का कोई अवसर यहाँ पर वो प्रदान नहीं कर रहे हैं और एक सतर्क गेंदबाजी का प्रदर्शन यहाँ पर देते हुए अपनी अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार। दाहिने हाथ ऊपर द विकेट गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए अगली गेंद। ये गेंद कुछ ज्यादा उछाल लेती हुई गेंद थी इस वक्त और परिवर्तन के तौर पर कुछ ऑफ कटर गेंद थी, कुछ ज्यादा उछाल ली और गेंद को छोड़ दिया था अंतिम क्षण में। अंपायर से उन्होंने मांग जरूर की वाइड के, लेकिन अंपायर ने कहा कि जी नहीं, गेंद कुछ ज्यादा हद तक ऑफ स्टंप से बाहर की ओर नहीं निकल रही है। स्कोर रुक चुका है 26 रनों पर। धनुष एक बार फिर से गेंदबाजी यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट। ये गेंद इस बार बेहतर, एब्सोल्युटली गुड वन, पुल करना चाहा था चूंकि बेहतर ओवर की समाप्ति और इस ओवर में सिर्फ एक रन धनुष ने प्रदान किए और एक विकेट भी प्राप्त किया उन्होंने। निस्संदेह इस ओवर की बदौलत अब मैं समझता हूं टीम एनजेएस नाउ बैक इन द मैच, इस मैच में वापस आ चुका है। 4 ओवर की समाप्ति 26 रन बन चुके 5 विकेट के नुकसान पर एआर टाइटंस के लिए और 2 ओवर का खेल अब बाकी उनकी पारी में। वेदांत अपना दूसरा ओवर यहां पर प्रारंभ करते हुए पहले ओवर में सिर्फ 6 रन उन्होंने प्रदान किए थे और दूसरे ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार। पटकी हुई गेंद को इस वक्त खेल दिया अंतिम क्षण में लॉन्ग ऑन की दिशा में सौरभ ने और जब तक गेंद को वहां पर फील्ड किया जाता बल्लेबाज के पास मौका 1 रन प्राप्त करने का और 1 रन के साथ स्कोर अब बढ़कर पहुंच चुका है 27 रनों पर 5 विकेट के नुकसान। इट्स 27 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट इन द ओवर नंबर 5 इन प्रोग्रेस। और गेंदबाज ओवर की अगली गेंद पटकी हुई गेंद ऑफ स्टंप से काफी बाहर, दिशाहीन गेंद, वाइड का इशारा अंपायर का। ऐसा कहना पड़ेगा गेंद उनके हाथों से फिसल गई थी अंतिम क्षण में और ऑफ स्टंप से काफी बाहर की ओर निकली। इस बीच वाइड का इशारा अंपायर का हो चुका है 28 5 विकेट के नुकसान पर। और वेदांत एक बार फिर से अपने गेंदबाजी के मार्ग पर जाते हुए अतिशय बल्लेबाज जो कि सामना इस वक्त करते हुए वेदांत की गेंदों का। यह गेंद बेहतर, एब्सोल्युटली गुड वन, एक्स्ट्रा बाउंस एट द लास्ट मोमेंट एंड वेंट इनटू द हैंड्स ऑफ विकेट कीपर। और यहां पर
क्रीज से छोड़कर आगे आ चुके थे नॉन स्ट्राइक पर बल्लेबाज, और जैसे ही गेंद पहुंची गेंदबाज वेदांत के हाथों में, तेजी के साथ उन्होंने विकेट चटका दिए और यहां पर बल्लेबाज क्रीज से बाहर थे जब विकेट यहां पर चटकाए गए थे। तो गैर जिम्मेदाराना क्रिकेट, इररेस्पॉन्सिबल क्रिकेट यहां पर दिखाते हुए बल्लेबाज, और एक और विकेट यहां पर गिर चुका है रनआउट के रूप में। इट्स 28 फॉर द लॉस ऑफ 6 विकेट, और अब सिर्फ 4 विकेटें उनकी पारी में शेष। सौरभ आउट होकर पेविलियन वापस, और 6 विकेट गिर चुके हैं। नए बल्लेबाज क्रीज पर मौजूद प्रदीप, और इस बीच वेदांत अगली गेंद लेकर तैयार। टॉप एज इनटू द हैंड्स ऑफ विकेट कीपर, वन मोर विकेट फॉलन, इट्स गॉट अ टॉप एज ऑन दैट, एंड विकेट कीपर बिहाइंड द स्टंप्स मेड नो मिस्टेक, और विकेटों के ऊपर विकेट यहां पर गिरते हुए विकेट नंबर 7 गिर चुका है 28 रनों के ऊपर, और यहां पर एक अच्छी वापसी गेंदबाज टीम एनजेएस के करते हुए। एक वक्त ऐसा लग रहा था एआर टाइटंस का स्कोर 50 के पार चला जाएगा जब दूसरा या तीसरा ओवर प्रगति पर था, तो लेकिन उसके बाद एक बेहतर कमबैक करते हुए एनजेएस के गेंदबाजों ने चंद विकेटें उखाड़े, 1 या 2 विकेट रनआउट के रूप में गिरे, और उनकी बदौलत यहां पर अब एनजेएस के गेंदबाज बल्लेबाजों पर अंकुश काफी हद तक लगा चुके हैं, और कुल मिलाकर 5वां ओवर उनकी पारी का यहां पर प्रगति पर। गेंदबाज एक बार फिर से तैयार, ये गेंद इस बार गेंद के हाथों से चूक चुकी है, स्वयं खुद गेंदबाज नहीं इस वक्त जान सके कि गेंद कहां पर गई है। उनके हाथों से छूटने के बाद डेड बॉल घोषित, और एक बार फिर से गेंदबाज अपने गेंदबाजी के मार्ग पर जाते हुए। हरिकृष्णा इस वक्त सामना करते हुए वेदांत की गेंदों का। दाहिने हाथ उभरता विकेट, ये गेंद इस बार ऑन साइड पर गेंद को खेलना चाहता, स्टंप्स को कवर करते हुए कलाइयों के सहारे गेंद को मोड़ना चाहता, चूंकि गेंद उनके पैर पटक आई और सीधे पहुंची विकेट फॉरवर्ड शॉट लेग पर, जहां पर विकेट कीपर ने आगे की ओर आकर गेंद को फील्ड कर लिया, और इस बीच रन बल्लेबाज को नहीं मिला। 28 रनों पर स्कोर बोर्ड रुक चुका है 7 विकेट के नुकसान पर, और 5वां ओवर उनकी पारी का प्रगति पर। वेदांत एक बार फिर से तैयार, ये गेंद लेग स्टंप से बाहर की ओर निकलती हुई वाइड का इशारा, सफल होते हुए एक बार फिर से गेंद को कलाइयों के सहारे मोड़ना चाहता, लेकिन चूके और गेंद सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथों में। 1 रन एक्स्ट्रा अतिरिक्त के रूप में उनके खाते में जुड़ता हुआ 29, 7 विकेट के नुकसान पर। लंबा ओवर यहां पर प्रगति पर। वेदांत का 2 गेंदें अभी भी इस ओवर में बाकी हैं, और ये गेंद पटकी हुई गेंद, बेहतर गेंद, और गेंद द बॉल वेंट जस्ट ओवर द स्टंप्स एट द लास्ट मोमेंट, कहना पड़ेगा। स्टंप्सों के कुछ दूरी पर, ऊंचाई पर गेंद निकलते हुए, और इस गेंद पर बल्लेबाज बाल बाल बच चुके हैं। स्ट्रोक से खेलने में चूके थे, लेकिन भाग्यशाली रहे कि गेंद स्टंप्सों के ऊपर से होकर सीधे निकली विकेट कीपर के हाथों में, और स्कोर इस वक्त रुक चुका है 29 रनों पर। 29 फॉर द लॉस ऑफ 7 विकेट्स, 5th ओवर इन प्रोग्रेस। वेदांत लास्ट टाइम इन दिस ओवर गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए लेग स्टंप से बाहर, और इस बीच रन लेना चाहते हैं, लेकिन ऐन मौके पर अपने कदमों को क्रीज पर खींच चुके हैं। लेग स्टंप से काफी बाहर की ओर गेंद थी, वाइड का इशारा अंपायर का, और वाइड के इस रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 30 रनों पर। अभी भी कुल मिलाकर इस ओवर में 1 गेंद बाकी, और गेंदबाज वेदांत अपने कोटे की अंतिम गेंद लेकर तैयार। दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए, ये गेंद पटकी हुई गेंद, बेहतर गेंद थी इस वक्त, और इस बार स्ट्रोक्स खेलने में चूके, और इसी के साथ डॉट गेंद के साथ इस ओवर की समाप्ति वेदांत कर चुके हैं। 5 ओवर की समाप्ति 30 रन 7 विकेट के नुकसान पर। 30 फॉर द लॉस ऑफ 7 विकेट स्कोर्ड बाय टाइटंस, एंड नाउ स्टिल दे आर सर्चिंग फॉर द राइट ट्रैक। So the last over starts now in Titans innings. Vinith, the bowler, is now brought into the attack. पहली गेंद लेकर विनीत इस वक्त गेंदबाजी शुरू करते हुए, और
ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार, दाहिने हाथ ओवर द विकेट। ये गेंद इस बार उछालना चाहा, चूंकि गेंद लगभग उनके कंधों पर टकराई और छाती पर टकराई कहना पड़ेगा, और इस बीच रन बल्लेबाज को नहीं मिलेगा। 30 रन 7 विकेट के नुकसान पर स्कोर बोर्ड रुक चुका है। बेहतरीन लाइव टेलीकास्ट M9 स्पोर्ट्स इस वक्त कर रहे हैं यूट्यूब पर, और ये श्रृंखला यहाँ पर एक बेहतरीन प्रगति करते हुए, और विनीत यहाँ पर गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए, ये गेंद इस बार उछाला लॉन्ग ऑन पर, फील्डर काफी पीछे, सिर्फ एक रन इस बीच मिलेगा। दूसरे रन के लिए बल्लेबाज दौड़ पड़े और यहाँ पर दूसरा रन पूर्ण करने में सफल। थ्रो को रिसीव करने के बाद कुछ टटोलते हुए गेंद को जब तक स्टंप्सों पर लगाते, गिल्ली बेल्स उड़ाते बल्लेबाज दूसरा रन यहां पर पूर्ण कर चुके थे। बेहतरीन रनिंग बिटवीन द विकेट, डेंजर रन की ओर दौड़े थे बल्लेबाज, और अंतिम क्षण में दूसरा रन इस बीच पूर्ण करने में सफल। 32 नाउ फॉर द लॉस ऑफ 7 विकेट्स। और विनीत इस वक्त गेंदबाजी यहां पर आगे बढ़ाते हुए, ये गेंद इस बार बेहतर गेंद थी, एक्स्ट्रा बाउंस लेते हुए सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथों में। गेंद को पुल करना चाहते थे चूंकि, और विकेट कीपर के हाथों में गेंद पहुंची, रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिलेगा। तो 3 बेहतर गेंदें इस ओवर में विनीत फेंक चुके हैं, और इस बीच सामना करने के लिए तैयार सीए प्रदीप विनीत की गेंदों का। इस बार पुल किया है मिड विकेट पर, फील्डर काफी पीछे, और एक टिप्पे के बाद जब तक वो गेंद को फील्ड करे, बल्लेबाज के पास मौका था 2 रन प्राप्त करने का। ऐसा कहना पड़ेगा, नॉट क्वाइट मीटिंग इट एट द लास्ट मोमेंट, बट द बॉल फेल इन द विकेट एरिया, एंड बिकॉज ऑफ दैट ही गेट्स इन अ कपल रन फॉर दैट स्ट्रोक, और इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 34 रनों पर। कुल मिलाकर 2 गेंदें बाकी अब उनके पारी में। जस्ट 2 बॉल्स नाउ रिमाइनिंग इन देयर इनिंग्स। विनीत की गेंद, ये गेंद ऑन साइड पर उछाला, और गेंद पे फील्डर काफी पीछे, दूसरा रन लेना चाहते हैं, दौड़ पड़े, स्ट्राइकर रन पर थ्रो पहुंचा स्ट्रेट ओवर द स्टंप्स, और यहां पर ये रन आउट हो चुका है। इंटेलिजेंट थिंकिंग जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, चतुर सोच इस वक्त फील्डर ने की। गेंद को तुरंत गेंद पर लपकते उन्होंने गेंद को थ्रो किया स्ट्राइकर रन की ओर, ये देखते हुए कि नॉन स्ट्राइकर रन पर बल्लेबाज पहुंच रहे हैं। स्ट्राइकर रन के बल्लेबाज ने अभी अभी दौड़ना शुरू किया दूसरे रन के लिए, और उनका थ्रो बिल्कुल स्टंप्स के ऊपर आता हुआ, और विकेट कीपर को कुछ ज्यादा दिक्कत यहां पर नहीं हुई रन आउट करने में। 8वां विकेट गिर चुका है। 35 for the loss of 8 wickets, and the last ball of their innings is now coming up. और अंतिम गेंद लेकर इस वक्त तैयार, ये गेंद इस बार गेंद को पुश किया बैक टू द बॉलर की दिशा में, और दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े, लेकिन यहां पर रन आउट, एक रन जरूर उनके खाते में जुड़ेगा। So the innings is up, their stipulated overs are completed, and yeah, Titans finished with 36 for the loss of 9 wickets in the stipulated 6 overs, and they set a victory target of 36 now. $37 the target, in fact. 37 they have to score for victory in the stipulated 6 overs. And as far as the required run rate is concerned, just over 6 runs per over they have to score for victory. That means in exactly calculation, it's going to be 6.17 runs per over they have to score for victory with the help of 10 wickets. The present equation shows for them, and their inning starts now within just a short while. Till then, we are taking a short break, and we'll be back right after the short break with myself, with the innings of Team NGS will going to begin. And now it's time for break. Thank you. Dhanyavad.
Right, 37 the target for team NJS, and their innings now going to start now. Lokesh the striker, Vedant the non-striker, and Fredwin the bowler. And the first ball of their innings is now coming up. Right arm over the wicket from Fredwin. Here he bowls. First ball outside the off stump. Just wanted to cut that one at the last moment, missing the line completely. And the ball gets some extra bounce, and after beating his bat, the ball went into the hands of wicket keeper, and there is no possibility of any run. The scoreboard stays at none for none in the first over. And as far as the target is concerned, of 37 runs for the batsmen of team NJS, they desperately have to make a strong start if they have to read the target. And this time, just work it away off the toes down to short fine leg, not for a run. In fact, short fine leg fielder collected the ball. And finally, no possibility of any run. The scoreboard stays at none for none in the first over. So, 2 dot balls bowled by the bowler in this over, Fredwin. And once again, here he comes. Right arm over the wicket bowls. This time, played that one very strangely. This time, the ball gets a lot of extra bounce after pitching. The batsman just jumping towards to his top side to just wanted to collect the ball. Not quite middling it, but he played that one strangely down to a short to fine leg, and the batsman have got a single for that. And with that single run, the runs account begin now for team NJS. 1 without loss in the first over. So still some fielding adjustments is going on there. Vedanta is now going to face, and as far as the batting is concerned for Vedanta, he is a good batsman for team NJS. He played a couple of good innings in this tournament in the previous matches, and now once again here he facing right arm over the wicket. Oh, that isn't a good one this time. A much straighter line. Just wanted to heave that one on the over the long on fence. Not succeeded. The ball turned a little bit after being pitching. Just passed wider of his bat and into the hands of wicket keeper, and there is no possibility of any run. The scoreboard stays at 1 without loss in the first over. The first power play over is now progressing here in their innings. And now once again, here he comes, Fredwin, right arm over the wicket this time, lofted that one, and it's taken inside the fence. After using his feet, he just lofted that one, but not so power in the stroke. He lofted that one hard and high, in fact. And finally, with a perfect judgment, long on fielder took the catch just inside the fence. And that is the wicket number first. 1 for the loss of 1 wicket. So the fielder, Atishay, who stood at long on, just took the catch with a perfect judgment. And that is the wicket number first. Vedant departs. And now team NJS lose their first wicket. It's 1 for the loss of 1 wicket in the first over. Still 36 more runs. Now they have to score for victory. And still they got 9 wickets kept intact. The man Lokesh is now back on strike because the batsmen are tossed over when that catch was taken at long on. And Lokesh is now going to face Fredwin. Played that one down to extra cover. Gone to for a quick single. Oh, it might be a disaster there if the throw was directly to the stumps at the last moment. That could be the end of Srisha if the throw was directly to the stumps from the deep extra cover fielder, short extra cover fielder in fact. But the throw went just wide of the stumps, and because of that, the batsman Srisha survives in this delivery, and the single run added to the total. And with that single run, the scoreboard moving up to its 2 for the loss of 1 wicket, and a pretty good start for Fredwin in the bowling department. Just conceded 2 runs in the first over, and after completion of first over, chasing the victory target of 37 in 6 overs. Team NJS made a pretty slower start, in fact. Just 2 runs they managed to score after first over. And now, just coming back to the equation. Let's straight away coming back to the equation. 37 minus 2, that means 35 more runs now they have to score for victory in remaining 5 overs. And the asking run rate gone a little bit of a higher now for them. Exactly 7 runs per over, the required run rate for them. 35 they have to score for victory in remaining 30 deliveries. And still they got 9 wickets kept intact. The bowler taking some instructions from his teammate, starting a fresh over from the commentator box. And Nilu, the bowler, and he'll be going to bowl the second over in team NJS innings. Second power play over is now going to start. And still some fielding adjustments. First ball of his fresh over, Lokesh, the striker, leg stump, outside the leg stump, down the leg side now. Spectra wide, and
collected by wicketkeeper behind the stumps, and just a single run added in the face of extras, and with that single run the scoreboard moving up to 3 for the loss of 1 wicket. And once again Nilu is now bowling his next delivery, right arm over the wicket to Lokesh. This time just wanted to play the reverse shot, not succeeded. The ball, a fuller length delivery at the last moment, went just wide off his bat at the last moment, missing outside the off stump, and went into the hands of wicketkeeper after beating the batsman, and there is no possibility of any run in this delivery. Pretty good piece of bowling performance continuing here from Nilu. And once again here he comes, right arm over the wicket, balls outside. Oh, that one extra bounce. That one gets some extra bounce at the last moment, and he played that one not easily in the end, but he played that one very toughly, and collected by the wicketkeeper just coming towards his front side, and there is no possibility of any run. And now once again Nilu is now bowling his next delivery, right arm over the wicket, outside the off to cut that one, just no, in fact a gully fielder collected the ball after a couple of one bounce in fact, and before that the batsmen have got a plenty of time to cross over for the singles. So runs are still coming in singles now for team NJS, and the tidy bowling performance continuing here from the bowlers of AR Titans. And as far as the victory is concerned at this situation for team NJS, they desperately have to need a partnership at this stage to get back into this match. Still they have a long way to go, and once again here he bowled, played that one defensively by Srisha after being just goes on to the back foot, seeing the line of that ball at the last moment, and the ball collected at silly bit on, and there is no possibility of any run. And this is turning out to be a one more good over in AR Titans point of view. Just two runs scored in this over from Nilu, and now once again here he comes, right arm over the wicket. This time pull that one and into the gap as well. It might be gone, in fact it's gone over the fence for a boundary. Short ball, and the batsmen have got a plenty of time to loft that one between the deep mid wicket and the deep backward square leg, and he smashed that one, just pulled that one after being shuffling across the line, and he picked the gap firmly between deep backward square leg and the deep mid wicket, and because of that he's got a boundary for that. Scoreboard moving up to 8 now for the loss of 1 wicket. And now once again the bowler Nilu bowls. This time just played that one after being jumping towards into the air at the last moment by batsman, just working away off the toes down to a square leg, and not for just a single in fact. And the scoreboard with that single run moving up to 9 for the loss of 1 wicket in fact after completion of 2 overs. And let's straight away, once again coming back to the equation. 28 more runs now they have to score for victory in remaining 4 overs. And with the required run rate of exactly 7 runs per over, Team NJS have to score against AR Titans for victory. And as far as the victory of this match is concerned, still I must say the match is now evenly poised. 28 to get from 24 deliveries, and the bowler starts a fresh over from that side end. Saurabh is now going to bowl a fresh over from that side end, and Srisha is now going to face. After being a completion of 2 over, the fielding restrictions has been taken off, and the fielders are now spreaded out on the field. In fact. Long on deep mid wicket, backward square leg, standing on the onside area, just inside the fence for the right-handed batsman. And on the offside area, long off stands much straighter for the right-handed batsman, and also a deep cover point standing inside the fence. First ball, lofted that one by Srisha, not quite middling it. Ball running down to a deep mid wicket, collected by the fielder, but before that the batsmen have got a plenty of time to cross over for the single. So runs are coming still in singles now, and they badly required couple of big strokes at this stage, like boundary under 6s, to get back into this match for Team NJS if they have to reach the target of 37 runs in 6 overs. 27 to get now in remaining 23 deliveries. This time gone for a mighty heave. This time much slower one, just missing outside the off stump, and he just wanted to reach that one at the last moment. Lokesh the batsman, not succeeded. No contact between the bat and ball, and the ball collected by wicketkeeper behind the stumps. And now once again here the ball. This time gets some extra bounce for the bowler. Just wanted to hit the ball, not succeeded. And once again the ball, after beating the batsman, it went into the hands of wicketkeeper. So two good dot balls bowled by the bowler for the right-handed batsman Lokesh. And now once again here comes full toss, pull that one, and it's gone over the fence. It's a biggie.
A perfect struck came from the bat of Lokesh. Full toss delivery, and he accepted that one in a style and dispatched it over the long on fence for 6 runs. Absolutely perfect struck. Exactly the same number of couple of more strokes, same type of couple of more strokes needed now for Team NJS to get back into this match. Next one, and this one more bigger. It's good, and it's gone over the fence. It's a many miles once again. This time much squarer. Consecutive success for Lokesh, and now he is looking on fire. 22 for the loss of 1 wicket, and now with that couple of sixes, I must say Team NJS are now strongly back in the match. Just 15 to get for victory, and still in overall calculation 19 balls remaining in their innings, and the target seems to be much easier now for them. So what a fantastic batting performance continuing here from Lokesh, and now once again here he facing outside the leg stump. Pull that one, not quite middle give. That could be a chance, but the ball went just over the short square leg fielder's head. In fact, he gets in a single for that, and with that single run, the scoreboard moving up to 23 now for the loss of 1 wicket. So 3 overs had been bowled. Good over in Team NJ's point of view came to, and 14 runs came from this over, and because of this over, they are looking in a commanding situation. 23 for the loss of 1 wicket after completion of 3 overs. 14 to get now in remaining 3 overs, and at this situation, the target seems to be much easier now for them. And as far as the victory of AR Titans are concerned, they desperately have to bounce back with a perfect bowling in this remaining 3 overs. They desperately have to bowl tight overs, and have to pick some wickets to get back into this match. And let's see what will happening in the remaining 3 overs of this match. So at this situation, Team NJS looking right on top, but there will be an opportunity for the bowlers of AR Titans to get back into this match with some extraordinary bowling. So 3 overs completed, and now it's 23 for the loss of 1 wicket after completion of 3 overs. 4th over starts in their innings. चौथा ओवर यहाँ पर प्रारंभ होता हुआ, और हरी इस वक्त गेंदबाजी शुरू करते हुए ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार. उछाला, लॉन्ग ऑफ पर, just stand and delivered. Absolutely magnificent. 6 number 3 came from the bat of Lokesh, and now with this 6, Team NJS are now brought more nearer to the victory. 29 now. Once again just wanted to loft that one. गेंद को उछालना चाहा था इस वक्त, लेकिन not quite middling it. एक रन इस बीच मिलेगा. 30 for the loss of 1 wicket. Just 7 to get now, and just a 4th over in progress in their innings. This is an absolutely fantastic progressing year for them. और गेंदबाज हरी एक बार फिर से तैयार. फुल टॉस पुल किया इस वक्त शीशा ने. फील्डर गेंद के नीचे आते हुए और बेहतरीन तरीके से इस कैच को लपकने में सफल, लेकिन उन्होंने जश्न यहाँ पर नहीं मनाया कैच पकड़ने के बाद, क्योंकि वो जानते हैं इस वक्त मंजिल के अति निकट टीम एनजेएस हो चुका है, और यहाँ पर एक चमत्कारी गेंदबाजी ही अब एआर टाइटंस को इस मैच में वापस ला सकती है. और वो जो 3 छक्के लोकेश के बल्ले से लगे थे पिछले चंद गेंदों में, वो 3 छक्के पूरी तरह पासे को पलट कर इस वक्त टीम एनजेएस की ओर रख दिए हैं. और इस बीच ये गेंद इस बार उछाला मिड विकेट पर, लेकिन इस बार लपक लिया गया डीप मिड विकेट पर. तो एक क्विक फायरिंग नॉक जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, विस्फोटक पारी का अंत यहां पर हो चुका है लोकेश का. और कुल मिलाकर लोकेश ने बनाए 3 छक्कों की मदद से 23 रन उन्होंने बनाए. 23 runs he scored in just 15 deliveries, including 3 massive sixers. And after being playing a superb knock for their side, he is back into pavilion, and Team NJS are now losing their 3rd wicket. It's 30-3, 7 to get now in remaining 14 deliveries. और गेंदबाज की ये गेंद हल्के से गेंद को पुश किया, इस वक्त बैकफुट पर जाने के बाद शॉर्ट कवर पर रन के लिए दौड़ पड़े. 1 रन का इजाफा यहां पर हो चुका है, और 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर अब बढ़कर पहुंच चुका है
31 रनों पर 3 विकेट के नुकसान पर. It's 31 for the loss of 3 wicket. Just 6 runs to get from 13 deliveries. और इस वक्त कोई जल्दबाजी की जरूरत नहीं है टीम एनजेएस को. और इस बीच अगली गेंद फुल टॉस गेंद थी, उछालना चाहा चूके और ओवर की यहाँ पर समाप्ति हो चुकी है. 4 ओवर की समाप्ति के बाद एक मजबूत स्थिति में टीम एनजेएस नजर आता हुआ. 31 रन जोड़ चुका है 3 विकेट के नुकसान पर 4 ओवर की समाप्ति के बाद. 6 रन चाहिए 2 ओवर में. 6 to get now from remaining 2 overs, and the situation, the target seems to be much easier for them. So 6 to get now from remaining 12 balls. First ball of 5th over is now coming up. पहली गेंद, इस बार गेंद को कट करना चाहा, गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में. रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिलेगा. मैच नंबर 18th of KYC Premier League 2022 सीजन 3 इज नाउ प्रोग्रेसिंग हियर. और इस वक्त टीम एनजेएस का तख्ता भारी लगता हुआ, और ऐसा कहना पड़ेगा इस वक्त यार टाइटंस को एक चमत्कारी गेंदबाजी ही इस मैच में वापस ला सकती है. और इस बीच गेंदबाज दाहिने हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए ये गेंद इस बार हल्के से गेंद को पुश किया, रन के लिए दौड़ पड़े. 1 रन इस बीच मिलेगा बल्ले. और नाउ इट्स गोइंग टू बी अ थर्ड अंपायर. देखते हैं थर्ड अंपायर यहां पर क्या निर्धार लेते हैं. क्या बल्लेबाज बल्ला क्रीज पर रख चुके थे जब विकेट उखाड़े गए थे यहां पर फील्डर द्वारा, या फिर बल्ला क्रीज से बाहर था जब विकेट उखाड़े गए थे. और यहां पर देखते हैं तीसरे अंपायर क्या निर्धार लेते हैं. Not out. So no doubt the call came from the third umpire, and everything safe for the batsman. So 6 to get now from remaining 10 deliveries. 5 to get in fact in remaining 10 deliveries. और गेंदबाज इस वक्त प्रक्षित, माफ कीजिए, बल्लेबाज प्रक्षित सामना करने के लिए तैयार. फ्रेडविन गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए पटकी हुई गेंद ऑन साइड पर गेंद को मोड़ा, फाइन लेग की दिशा में गेंद जाते हुए, और गेंद इस वक्त फाइन लेग सीमा रेखा को पार कर चुकी है 4 रनों के लिए. और इस चौके के साथ द स्कोर्स आर नाउ लेवल्ड. जस्ट अ सिंगल रन दे हैव टू स्कोर फॉर विक्ट्री. सिर्फ 1 रन चाहिए विजय के लिए. और ऐसा कहना पड़ेगा टीम एनजेएस इस वक्त अपने विजय के द्वार पर खड़ा हो चुका है. तो 9 गेंदें बाकी है और एकमात्र रन यहां पर चाहिए. और देखते हैं इस गेंद पर बल्लेबाज विनिंग रन लेने में सफल हो पाते हैं या नहीं. फ्रेडविन फील्डिंग में एक बार फिर से जमावट करते हुए लगभग सारे खिलाड़ी को 20 गज के दायरे के अंदर बुला लिया गया है. और इस बीच गेंदबाजी करने के लिए तैयार प्रक्षित गेंदबाजी का सामना करते हुए. इस बार चूके बाउल्ड ऑफ हिज लेग्स, स्लो वन, एंड ही गॉट द rid of the batsman. One more wicket fallen. It's 36 for the loss of 4 wicket. Still 1 to get now in remaining 8 deliveries.
So just a single run they have to score for victory, and 8 balls remaining in their innings. Or again pass Fred Wink again. Putkiv again. That's it. He finished the match in a style with a boundary. So 6 runs, 6 wickets victory for Team NJS against AR Titans, and with that victory they back the complete points. And the next match starts with just short while. And until then we are taking a short break, और एक छोटे से break के बाद हम आपके सामने उपस्थित होंगे खुद with myself, मेरे साथ, जब मैं अगले मैच की शुरुआत यहाँ पर होगी एक छोटे से अंतराल यानी ब्रेक के बाद. And now it's time for break. Thank you. धन्यवाद. I request the 12th man of next match, both teams. The 12th man of both teams of the next match to please report to the stage immediately. ಅಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯದ ಎರಡು ತಂಡದ ಇತರ ಆಟಗಾರ 12ನೇ ಆಟಗಾರ ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಆಟಗಾರರ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಲು ದಯವಿಟ್ಟು. And now there's an announcement. The match, one more tournament is now coming up right on tomorrow, which will start Deadly Premier League 2022. 6 franchise teams are participating in that tournament, and that tournament will start on tomorrow. That means Monday morning at exactly 8 a.m. 2 days tournament, and 6 franchise teams are participating in this tournament. Every team has to play 5 matches, and after that 15 league matches. There'll be a playoff matches to be played on Tuesday. Qualifier 1, Eliminator, and Qualifier 2. After that, grand finale match of Deadly Premier League 2022 will be played on Tuesday evening. And that tournament starts, Deadly Premier League, in the name of Deadly Premier League, on tomorrow. That means on Monday morning, exactly 8 a.m. Thank you. So the next match starts, and before the next match, I would like to invite one more my close friend, Mr. Immo, in our state language, sweet language, Kannada. Please come, sir. Thank you. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಹಿಂದಿ ಭಾಷಾ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಮನೋರಂಜನೆಯನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಗೋಪಿ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ ಕಾಮತ್ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಎಎಸ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ತಂಡಗಳ ನಡುವಿನ ಹಣಾಹಣಿ. ಎಎಸ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಈ ಪಂದ್ಯಾವಳಿ ಮಾಡು ಇಲ್ಲವೇ ಮಡಿ ಗೆಲುವಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಮತ್ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್. ಕೀರ್ತನ್ ಜಿತೇಶ್ ರವರಿಗೆ
ಫುಲ್ಟಾಸ್ ಆಗಿ ಬಿದ್ದ ಚೆಂಡು, ಬಲವಾದ ಹೊಡೆತ, 4 ರನ್ನ ಸೀಮಾರಕ್ಕೆ ಚೆಂಡು ಅಂತ ಕಾಣ್ತದೆ. ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಕ ಬಂತಡಷ್ಟಲ್ಲಿ 1 ರನ್ ಮಿಂಚಿನ ಗತಿಯಲ್ಲಿ ಓಡಿ ಪೂರೈಸಿದ್ದಾರೆ. ಜಿತೇಶ್ ಖಾತೆ ಆರಂಭ, ತಂಡದ ಮತ್ತು 1 ಜಿತೇಶ್, 1 ಆಡದ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಜಿತೇಶ್, ಆಡುವ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಸುಕೇಶ್. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗಾಗಿ SAC ವೇವ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಉಡುಪಿ ಟೈಗರ್ಸ್ ತಂಡಗಳ ನಾಯಕರಿಗೆ ಕರೆಯನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕೀರ್ತನ್ ಟು ಸುಕೇಶ್. ಈ ಬಾರಿ ಕೊನೆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಹೊರತಿರುವನ್ನ ಕಂಡಂತ ಚೆಂಡು, ನೇರ ಗೂಟ ರಕ್ಷಕ ಗಣೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿರವರ ಸುರಕ್ಷಿತ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು. ಯಾವುದೇ ರನ್ ಇಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಆಘಾತವಿಲ್ಲ. ಮಂದಗತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಆಟ ಈ ದಿನದ ಚತುರ್ಥ ಆಟ ಹಾಗೂ ಲೀಗ್ ಮಾದರಿಯ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯ 20ನೇ ಆಟ. ಮತ್ತದೇ ರೀತಿಯ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಮುನ್ನುಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸುಕೇಶ್. ಬಾಲಿನ ಗತಿಯನ್ನು ಗಮನಿಸದೆ ಬ್ಯಾಟನ್ನು ಬೀಸಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಗೂಟ ರಕ್ಷಕ ಗಣೇಶ್ ರವರ ಸುರಕ್ಷಿತ ಕೈಗಳಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಕಲ ಸಿದ್ಧತೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಕೀರ್ತನ್ ಈ ಬಾರಿಯೂ ಕೂಡ ಉತ್ತಮವಾದ ಎಸೆತ, ಲಯಬದ್ಧ ದಾಳಿ, ಕರಾರುವಕ ದಾಳಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕೊನೆಯ ಎಸೆತ ಬಾಕಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ತೀರ್ಪುಗಾರರು. ಇವರಿಗೆ ಕೇವಲ 1 ರನ್ನನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹೊಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಕೀರ್ತನ್ ಬೌಲಿಂಗ್ ಇರಲಿ. ಸಕಲ ಸಿದ್ಧತೆಗಳೊಂದಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಶೈಲಿಯ ಬೌಲಿಂಗ್ ಕೀರ್ತನ್ ರವರಿಂದ. ಈ ಬಾರಿ ಬಲವಾದ ಮನಮೋಹಕ ಸುಂದರ ಶೈಲಿಯ ಹೊಡೆತ, 6 ರನ್ನಿನ ಸೀಮಾರೇಖೆಗೆ ಚೆಂಡು. ಕೊನೆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಹೊಡೆತವನ್ನು ಹೊಡೆದಿದ್ರು ಸುಕೇಶ್ ಖಾತೆ 6 ರನ್ ಮೂಲಕ ತೆರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಆ 6 ರನ್ ಮೂಲಕ ತೆರೆದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಇರಿಕೆ ತಂದ ಮೊತ್ತ 7. ಯಾವುದೇ ಹುದ್ದರ ನಷ್ಟವಿಲ್ಲದೆ ಪ್ರಥಮ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ. ಆಫ್ಟರ್ ದ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಆಫ್ ಫಸ್ಟ್ ಓವರ್ ದ ಸ್ಕೋರ್ ಮೂವ್ಸ್ ಆನ್ ಟು 7 for no loss. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಡಬೇಕು. ಈ ದಿನ ಈ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯ ನಂತರ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭ ನಡೆಯಲಿಕ್ಕಿದೆ. ವಿಶೇಷ ಅತಿಥಿಗಳು, ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳು ನಮ್ಮನ್ನು ಜೊತೆಗೂಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಕಲ ಸಿದ್ಧತೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಜಿತೇಶ್, ಆಡುವ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಸುಕೇಶ್. ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಡ್ರೋನ್ ಮೂಲಕ ಛಾಯಾಗ್ರಹಣವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮನೀಶ್ ಇವರಿಗೂ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅನೂಪ್ ಸಕಲ ಸಿದ್ಧತೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಓಡಿ ಬಂದ ಅಂಪೈರ್ ದಾಟಿ ಜಿತೇಶ್ ರವರಿಗೆ ಈ ಬಾರಿ ಬಾಲಿನ ಗತಿಯನ್ನು ಗಮನಿಸದೆ ಬ್ಯಾಟನ್ನು ಬೀಸಿದ್ರು. ನೇರ ಗೂಟ ರಕ್ಷಕನ ಸುರಕ್ಷಿತ ಕೈಗಳಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು. ಅನೂಪ್ ಸಕಲ ಸಿದ್ಧತೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಜಿತೇಶ್ ರವರಿಗೆ ಈ ಬಾರಿ ಬಲವಾದ ಮನಮೋಹಕ ಸುಂದರ ಶೈಲಿ ಹೊಡೆತ 6 ರನ್ನ ಸೀಮಾರೇಖೆ ಚೆಂಡು. ಹೌದು, ನೇರ ಬೌಲರ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಡ್ರೈವ್ ಮೂಲಕ 6 ರನ್ ಅನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 6 ರನ್ ಮೂಲಕ ತನ್ನದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆ. ಅನೂಪ್ ಸಕಲ ಸಿದ್ಧತೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಜಿತೇಶ್ ರವರಿಗೆ ಈ ಬಾರಿ ಉತ್ತಮವಾದ ಎಸ್ತಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಶೈಲಿ ಆಟಕ್ಕೆ ಮೊರೆ ಹೋಗಿದ್ರು. ನೇರ ದುರ್ಗಪ್ರಸಾದ್ ಅವರು ಬಂತಡಷ್ಟಲ್ಲಿ 1 ರನ್ ಮಿಂಚಿನ ಗತಿಯಲ್ಲಿ ಓಡಿ ಪೂರೈಸಿದ 1 ರನ್ ಮುಖೇನ ತನ್ನ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಇರಿಕೆ ತಂದ ಮೊತ್ತ 14. ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಂಚ ದುಬಾರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನೂಪ್. ಯುವ ವೇಗಿ, ಕಾದು ನೋಡುವ ಯಾವ ರೀತಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಸರಾಗ್ತಾರೆ ಅಂತೇಳಿ. ಸುಕೇಶ್ ಈ ಬಾರಿಯೂ ಕೂಡ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಎಸೆತ, ನೇರ ವಿಕೆಟ್ಗೆ ಬಡಿದಿತ್ತು. ಸುಕೇಶ್ ಬಾಲಿನ ಗತಿಯನ್ನ ಗಮನಿಸದೆ ಬ್ಯಾಟನ್ನು ಬೀಸಿದ್ರು. ನೇರವಾಗಿ ಬೈಲ್ಸ್ಗೆ ಬಡಿದ ಚೆಂಡು ಸುಕೇಶ್ ರವರನ್ನ ಪೆವಿಲಿಯನ್ನ ದಾರಿ ಕಾಣಿಸಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಅವರ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ತುಂಬಲು ಇನ್ನೋರ್ವ ಭರ್ಜರಿ ಹೊಡೆತಗಳ ಆಟಗಾರ ರಾಘವೇಂದ್ರ. ನೆನ್ನೆ ನಡೆದಂತಹ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ
ಭರ್ಜರಿ 44 ರನ್ನ ಸಿಡಿಸಿದ್ರು. ಒಂದೇ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ 3 ಸಿಕ್ಸರ್ ಕೂಡ ಸಿಡಿಸಿದ್ರು NJS ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ರಾಘವೇಂದ್ರ. ಕಾದು ನೋಡುವ ಈ ಪಂದ್ಯ ಮಾಡು ಇಲ್ಲವೇ ಮಡಿ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಸರ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ರಾಘವೇಂದ್ರ ವಿಶೇಷ ಶೈಲಿಯ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ನ ಮೂಲಕ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ನೀಡಬಲ್ಲಂತಹ ಓರ್ವ ಯುವ ಆಟಗಾರ. ಹಿಂದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ KBC ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ಹಲವು ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನ ಆಡಿ ಕುಂದಾಪುರ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಕುಂದಾಪುರ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಉಡುಪಿ ಸಿಕಾಸ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಆಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಆಡುವ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಅನೂಪ್ ಟು ರಾಘವೇಂದ್ರ. ಬಾರಿ ಉತ್ತಮವಾದ ಎಸ್ತಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಚಾಣಾಕ್ಷತನದ ಆಟ. 4 ರನ್ನ ಸೀಮಾರೇಖೆ ಚಲಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಚೆಂಡು ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಕ ಬಂತಡಿಸ್ಟಲ್ಲಿ 2. ಆ 2 ರನ್ನ ಮೂಲಕ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಖಾತೆ ಆರಂಭ. ರಾಘವೇಂದ್ರ 2 ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 16. 1 ಹುದ್ದರಿ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ. ಯಶಸ್ವಿ ಬೌಲರ್ ಅನೂಪ್ ಕೊಂಚ ದುಬಾರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ದಿಯಾ ಡೆಕೋರೇಷನ್ಸ್ ಇದರ ಮಾಲಕರಾದಂತಹ ಆಶೀಶ್ ನಮ್ಮನ್ನ ಜೊತೆಗೂಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈ ಪಂದ್ಯದ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ನಡೆಯಲು ಸಹಕಾರವನ್ನು ನೀಡಿದಂತಹ ಓರ್ವ ಆಯೋಜಕರು ಕೂಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ತಪ್ಪಾಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಕೊನೆ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಹೊರತಿರುವನ್ನು ಕೊಂಡಂತ ಚೆಂಡು ನೇರ ಗುಟ್ ರಕ್ಷಕ ಗಣೇಶ್ ರವರ ಸುರಕ್ಷಿತ ಕೈಗಳಲ್ಲಿ. ಯಾವುದೇ ರನ್ ಇಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಆಘಾತವಿಲ್ಲ. 2 ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯ ಮತ್ತು 16 ಸರಾಸರಿ 8.0 ಅಂತ ರನ್ಧಾರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ AS ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್. ಈ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯನ್ನು ಗೆಲ್ಲಲೇಬೇಕಾದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ AS ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ಗಿದೆ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಜಯವನ್ನು ಸಿಗದ ಜಯಕ್ಕೆ ಹಪ್ಪಿಸ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಕಾಮತ್ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಜಯದ ದವಡೆಯಲ್ಲಿದೆ. ನಿನ್ನೆ ನಡೆದಂತಹ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ರೋಚಕ ಸೋಲುಗಳನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಕೊನೆಯ ಕ್ಷಣದವರೆಗೂ ಕೂಡ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಾಡಿದಂತಹ ತಂಡವು ಕಾಮತ್ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್. ಜೇಸನ್ ರವರ ಒಂದು ಭರ್ಜರಿ ಸಿಕ್ಸರ್ ಹಾಗೂ 2 ಬೌಂಡರಿಯ ನಂತರವೂ ಕೂಡ ಚೇತರಿಕೆ ಕಾಣದ ಕಾಮತ್ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಶರಣಾಗತಿಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಪ್ಪಾಗಲಿಲ್ಲ. ತನ್ನ ಕೂಟದ ಪ್ರಥಮ ಹಾಗೂ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ತೃತೀಯ ಓವರ್ನ ಸೆಲ್ ರಿಸ್ಟನ್ ಪೆವಿಲಿಯನ್ ತುದಿಯಿಂದ ರಿಸ್ಟನ್ ಜಿತೇಶ್ವರಿಗೆ ಬಲವಾದ ಮನಮೋಹಕ ಸುಂದರ ಶೈಲಿ ಹೊಡೆದ ಕ್ಯಾಚ್ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ. 6 ರನ್ನಿನ ಸೀಮಾರೇಖೆಗೆ ಚೆಂಡು. ಜಿತೇಶ್ ತನ್ನ ಹಳೆಯ ತಂಡವಾದ ಕಾಮತ್ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಎನ್ನದರು ಮತ್ತೆ ಅಬ್ಬರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ತಪ್ಪಾಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಪ್ರಥಮ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಮತ್ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ಆಡಿದಂತಹ ಜಿತೇಶ್ ಇಮ್ಮೂರವರ ನಾಯಕತ್ವದ ನಂತರ ಈ ಬಾರಿ ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನರವರ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ AS ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ 2ನೇ ಋತುವನ್ನು ಕೂಡ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ತಪ್ಪಾಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ AS ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ಉಳಿಕೆ ಪಂಡಂತಹ ಓರ್ವ ಆಟಗಾರ ರಿಟೈನ್ಡ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಫ್ರಾಮ್ AS ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ತಾನು ಯಾಕೆ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಅನ್ನೋದಂತ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಸಾರಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ರಿಸ್ಟಾನ್ ಸಕಲ ಸಿದ್ಧತೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಓಡಿ ಬಂದ ಅಂಪೈರ್ ದಾಟಿ ಜಿತೇಶ್ ರವರಿಗೆ ಈ ಬಾರಿ ಚಾಣಾಕ್ಷತನದ ಆಟ 2 ರನ್ಗಾಗಿ ಕರೆಯನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ರಾಘವೇಂದ್ರ. ಉತ್ತಮವಾದ ಥ್ರೋ ಆದರೂ ಕೂಡ ಮಿಂಚಿನ ಗತಿಯಲ್ಲಿ 2 ರನ್ ನೋಡಿ ಪೂರೈಸಿದ್ದಾರೆ. ಆ 2 ರನ್ ಮುಖೇನ ತನ್ನ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 2 ರನ್ ಏರಿಕೆ. ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 24ಕ್ಕೆ 1. ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ AS ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ತಂಡದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಲ್ಲಿ ಅವರಾದಂಥ CF ಉಮರ್ ಫಾರೂಕ್ ರವರು ದೂರದ ಕತಾರ್ನ ಮೂಲಕ ವೀಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಾರಿಯೂ ಕೂಡ ಬಲವಾದ ಹೊಡೆತವನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟರೂ ಕೂಡ ಕೊನೆಯ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿನ ಹೊರಂಚನ್ನು ಸವರಿದ ಚೆಂಡು ನೆಲಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹೋದಂಥ ಕಾರಣ ಕೇವಲ 1 ರನ್ಗೆ ಸೀಮಿತಗೊಂಡಿದೆ. ಆ 1 ರನ್ನ ಮುಖೇನ ಜಿತೇಶ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆ, ತಂಡದಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆ. ತಂಡದ ಮತ್ತೆ 25. 1 ಹುದ್ದರಿ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ. ರಿಸ್ಟನ್ ಸಕಲ ಸಿದ್ಧತೆಗಳೊಂದಿಗೆ ರಿಸ್ಟನ್ ಟು ರಾಘವೇಂದ್ರ ಈ ಬಾರಿ ಸಮಯ ಪ್ರಜ್ಞೆಯ ಆಟವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತಾಳ್ಮೆಯ ಆಟಕ್ಕೆ ಮೊರೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹೊಡಬಡಿ ಆಟಗಾರ ರಾಘವೇಂದ್ರ. ತಂಡದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಅರಿತು ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ತಪ್ಪಾಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಆಡುವ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಸಿಕ್ಸರ್ನ ಮೂಲಕ ರಂಜಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಂತಹ ಜಿತೇಶ್. ರಿಸ್ಟನ್ ಟು ಜಿತೇಶ್. ಈ ಬಾರಿಯೂ ಮನಮೋಹಕ ಸುಂದರ ಶೈಲಿಯ ಹೊಡೆತ. 6 ರನ್ನಿನ ಸೀಮಾರೇಖೆಗೆ ಚೆಂಡು. ದ್ವಿತೀಯ ಸಿಕ್ಸರ್. ಮೂರನೇ ಸಿಕ್ಸರ್ ಈ ಓವರ್ನ 2ನೇ ಸಿಕ್ಸರ್ ಜಿತೇಶ್ನ ಬ್ಯಾಟ್ನ ಮೂಲಕ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ.
ಪಂದ್ಯದ ತೀರ್ಪುಗಾರರಾಗಿ ರಾಜರತ್ನ ಹಾಗೂ ರಾಜೇಶ್ವರ್ ಅವರು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ರಿಸ್ಟನ್ ಸಕಲ ಸಿದ್ಧತೆಗಳು ಇದೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಓಡಿ ಬಂದ ಅಂಪನ್ ದಾಟಿ ಜಿತೇಶ್ ಅವರಿಗೆ ಈ ಬಾರಿ ಪುಲ್ಟಾಸ್ ಆಗಿ ಬಿದ್ದ ಚೆಂಡು ಬ್ಯಾಟ್ ಒಂದರ ನಮ್ಮ ಕೇನ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆ ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 33. ಸರಾಸರಿ 16.50 ಅಂತ ರನ್ ಧಾರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಉತ್ತಮ ಮೊತ್ತ ಕಲೆ ಹಾಕುವ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಎ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲಲೇಬೇಕಾದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಎ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ತಂಡ ಮುಂದಿನ ಹಂತಕ್ಕೆ ತೇರ್ಗಡೆಗೊಳ್ಳಲು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತ ಕಲೆ ಹಾಕುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಸಫಲರು ಕೂಡ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಪ್ರಥಮ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಬೌಲಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಂತಹ ಕೀರ್ತನ್ ಕೇವಲ 7 ರನ್ನಿಗೆ ಒಂದು ಸರಾಸರಿ 11 ರಂತೆ ಧಾರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕ್ಷಮೆ ಇರಲಿ, 3ನೇ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. 3 ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ 33. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಆಶ್ಲಿನ್ ಈ ಬಾರಿ ಪುಲ್ಟಾಸ್ ಆಗಿ ಬಿದ್ದ ಚೆಂಡು ಬಲವಾಗಿ ಲೆಗ್ ಸೈಡ್ನ ತಬಾರಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಸಫಲರಾಗಲಿಲ್ಲ. ಮೈ ಮೇಲೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡ ಚೆಂಡು, ಯಾವುದೇ ರನ್ ಇಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಆಘಾತವಿಲ್ಲ. ವೀಕ್ಷಕ ವೀರಣೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಸತತ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮನ್ನು ಮನರಂಜಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 2 ದಕ್ಷಿಣ ಕಂಡಂತಹ 2 ದಿಗ್ಗಜ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಗಾರರಲ್ಲಿ ಇರುವರಾದಂತಹ ಸತೀಶ್ ಸಾಲಿಯಾನ ಹಾಗೂ ಗೋಪಿ, ಇವರು ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ತಮ್ಮಂತಹ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಗಾರರು ಇಂಥ ಒಂದು ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ನ ಮೆರುಗನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಆಶ್ಲಿನ್ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಈ ಬಾರಿ ಬಲವಾದ ಮನಮೋಹಕ ಸುಂದರ ಶೈಲಿಯ ಹೊಡೆತ, 6 ರನ್ನಿನ ಸೀಮಾರೇಖೆ ಅಂತ ಕಾಣ್ತದೆ. ಹೌದು, ಜಿತೇಶ್ ರವರ ಬ್ಯಾಟಿನಿಂದ ಚಿಮ್ಮಿದ 4ನೇ ಸಿಕ್ಸರ್. ಆಶ್ಲಿನ್ ರವರ ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತವನ್ನೇ ಬಲವಾಗಿ ಹೊಡೆಯುವ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಮುನ್ನುಗ್ಗಿದ್ರು, ಆದರೂ ಕೂಡ ಸಫಲರಾಗಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ದ್ವಿತೀಯ ಎಸೆತವನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಆರು ರನ್ಗೆ ಕಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಸಫಲರಾಗಿದ್ರು. ಮಂತ್ರಮುಗ್ಧತೆಯ ಮೂಲಕ ಅದನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಮಾತ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕರು ಸಫಲರಾಗಿದೆ. ಈ ಬಾರಿಯೂ ಕೂಡ ಪುಲ್ಟಾಸ್ ಆಗಿ ಬಿದ್ದ ಚೆಂಡು, ಕ್ರಮವಲ್ಲದ ಎಸೆತ, ಕ್ರಮವಲ್ಲದ ಎಸೆತ. 6+1. ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 46. ಈಗಾಗಲೇ ಈ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ 13 ರನ್ನನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಆಶ್ಲಿನ್. ತಾನೆಸೆದ 2 ಎಸೆತದಲ್ಲಿ 13 ರನ್ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ದುಬಾರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ 6 ರನ್ನಿನ ಸೀಮಾರೇಖೆಗೆ ಈ ಬಾರಿ ಜಿತೇಶ್ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಗುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. 4ನೇ ಸಿಕ್ಸರ್. ಮೂರನೇ ಸಿಕ್ಸರ್. ಈ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ 3 ಸಿಕ್ಸರ್ ಹಾಗೂ 5 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಬಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಜಿತೇಶ್. ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಸಿಕ್ಸರ್ನ ಕೂಡ ಬಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಜಿತೇಶ್. ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತವನ್ನು ಚುಕ್ಕಿಯಾಗಿ ಎಸೆದಂತ ಆಶ್ಲಿನ್ ನಂತರದ 3 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 3 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಆಶ್ಲಿನ್. ಜಿತೇಶ್ ಆಶ್ಲಿನ್ ಟು ಜಿತೇಶ್. ಈ ಬಾರಿಯೂ ಬಲವಾಗಿ ಹೊಡೆಯುವ ಪ್ರಯತ್ನ, ನೇರ ಗುಟ್ಟ ರಕ್ಷಕನ ಸುರಕ್ಷಿತ ಕೈಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಕಂಬ್ಯಾಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಆಶ್ಲಿನ್ ಅವರಿಂದ. ಈಗಾಗಲೇ 3 ಸಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಬಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಜಿತೇಶ್.
ಈ ಬಾರಿ ಉತ್ತಮವಾದ ಎಸ್ತಾನು ನೇರ ಗುಟ್ ರಕ್ಷಕನಿಗೆ ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಜಿತೇಶ್. ಬಲವಾದ ಹೊಡೆತ. ಈ ಬಾರಿ ರಿವರ್ಸ್ ಹಿಪ್ ಮುಖೇನ ಭರ್ಜರಿಯಾಗಿ ಹೊಡೆದಿದ್ದಾರೆ. 6 ರನ್ನಿನ ಸೀಮಾರೇಖೆ. ನಾಲ್ಕು ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 58. ಸರಾಸರಿ 14.50 ಅಂತ ರನ್ ಧಾರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬೌಲಿಂಗ್ ಇರಲಿ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಶೆಣೈ. ತನ್ನ ಕೂಟದ ಪ್ರಥಮ ಹಾಗೂ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ಪಂಚಮ ಓವರ್ ನೆಸಲು ಕಾರ್ತಿಕ್ ಶೆಣೈ ಆಡುವ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ರಾಘವೇಂದ್ರ. ಈಗಾಗಲೇ ಜಿತೇಶ್ ತಾನು ಎದುರಿಸಿದ 17 ಎಸೆತದಲ್ಲಿ 48 ರನ್ ಬಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಿನ್ನೆ 44 ರನ್ ಬಾರಿಸಿದಂತಹ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಆಡುವ ತುದಿಯಲ್ಲಿ. ಆದರೆ ಇಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ತನ್ನ ಬ್ಯಾಟಿನ ಮೂಲಕವೇ ಸದ್ದು ಮಾಡ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಜಿತೇಶ್ 17 ಎಸೆತದಲ್ಲಿ 48 ರನ್ ಮುಖೇನ ಆಡದ ತುದಿಯಲ್ಲಿ. ಸ್ಕೋರಿಂಗ್ 48 ಔಟ್ ಆಫ್ 17 ಬಾಲ್ಸ್ ಫೇಸ್ಡ್ ಬೈ ಜಿತೇಶ್. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಕಲ ಸಿದ್ಧತೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಟು ರಾಘವೇಂದ್ರ. ಈ ಬಾರಿ ಚಾಣಕ್ಷತನದ ಆಟ, ಒಂದು ಕ್ರೀಡಾ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ಮೆರಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ರಾಘವೇಂದ್ರ. ಈ ಬಾರಿ ಬಲವಾದ ಹೊಡೆತ, ಮನಮೋಹಕ ಸುಂದರ ಶೈಲಿಯ ಹೊಡೆತ. ಕ್ಯಾಚ್ಗೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ಅನೂಪ್. 6 ರನ್ನಿನ ಸೀಮಾರೇಖೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮಯೂರೇಶ್. ಇದರ ಮೂಲಕ 50 ರನ್ ಅನ್ನು ಕಳೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಜಿತೇಶ್. 54 ರನ್ ಅನ್ನು ಗಳಿಸಿ ಆಡುವ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಜಿತೇಶ್. ಬಾಲಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಹರೀಶ್ ರವರ ಗಮನಕ್ಕೆ. 7 ಸಿಕ್ಸರ್ನ ಮೂಲಕ 54 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಆಡುವ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಜಿತೇಶ್. 8 ಸಿಕ್ಸರ್ನ ಮೂಲಕ ಈ ಬಾರಿಯೂ ಬಲವಾದ ಹೊಡೆತ. ಮತ್ತದೇ ರೀತಿಯ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಮತ್ತದೇ ರೀತಿಯ ಉತ್ತರವನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 2 ಎಸೆತ ಸತತವಾಗಿ 2 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕಾರ್ತಿಕ್. 60 ರನ್ ಅನ್ನು ಗಳಿಸಿ ಆಡುವ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಜಿತೇಶ್. ಇದ್ಯಾವುದು ತಂಡದ ಮೊತ್ತವಲ್ಲ, ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. 60 ರನ್ ಅನ್ನು ಗಳಿಸಿ ಆಡುವ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಜಿತೇಶ್. ಈ ಬಾರಿಯೂ ಬಲವಾಗಿ ಹೊಡೆಯುವ ಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ಈ ಬಾರಿ ಫುಲ್ ಟಾಸ್ ಆಗಿ ಬಿದ್ದ ಚೆಂಡು ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕ ಬಂತಡಷ್ಟಲ್ಲಿ 61 ರನ್ ಅನ್ನು ಗಳಿಸಿ ಆಡದ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಜಿತೇಶ್. ರಾಘವೇಂದ್ರ ಈ ಬಾರಿ ಬಲವಾಗಿ ಹೊಡೆಯುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡಿದರು ರಾಘವೇಂದ್ರ. ಈ ಒಂದು ಊರಿನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ತಿಕ್ ರವರು 14 ರನ್ ಅನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಸ್ಟ್ಲಿನ್ ರವರು 25 ರನ್ ನೀಡಿದ್ರು. ರಿಸ್ಟನ್ 17, ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ ಮಾಡಿದಂತಹ ಅನೂಪ್ 9 ರನ್ ಅನ್ನು ನೀಡಿ ಒಂದು ಹುದ್ದರಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ರೆ, ಪ್ರಥಮ ಓವರ್ ಎಸೆದಿದಂತಹ ಕೀರ್ತನ್ ಕೀರ್ತನ್ 7 ರನ್ ಅನ್ನು ನೀಡಿ ಯಾವುದೇ ಹುದ್ದರಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ತನ್ನ ಕೂಟದ ದ್ವಿತೀಯ ಹಾಗೂ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ಕೊನೆಯ ಓವರ್ನ ಎಸೆಯಲು ಅನೂಪ್
ಸರಾಸರಿ 14.4 ರಂತೆ ರನ್ಧಾರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ AS ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ತಂಡ ಆಟಗಾರ. ತಂಡ ಮತ್ತೆ 72 ಅನೂಪ್ ಟು ಜಿತೇಶ್. ಈ ಬಾರಿ ಸ್ಲೋ ಡೆಲಿವರಿ ಆಡುವಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಫಲ. ನೇರ ಗೂಟ ರಕ್ಷಕನ ಸುರಕ್ಷಿತ ಕೈಗಳಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು. ಮಾಡು ಇಲ್ಲವೇ ಮಡಿ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಜಿತೇಶ್ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ತಪ್ಪಾಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಈವರೆಗೆ ಆಡಿದಂತಹ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ 22 ಎಸೆತಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿ 61 ರನ್ನ ಗಳಿಸಿದ ಆಟಗಾರ ಜಿತೇಶ್ ಆಡುವ ತುದಿಯಲ್ಲಿ. ಅನೂಪ್ ಟು ಜಿತೇಶ್. ಈ ಬಾರಿ ಉತ್ತಮವಾದ ಎಸೆತಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಚಾಣಾಕ್ಷ ತಂಡದ ಆಟವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತಾರೆ. ರಜೇತ್ ರವರು ಬಂತಡಷ್ಟಲ್ಲಿ 2 ರನ್ನ ಮಿಂಚಿನ ಗತಿಯಲ್ಲಿ ಓಡಿ ಪೂರೈಸಿದ್ದಾರೆ. 3ನೇ ರನ್ನಿಗಾಗಿ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಕರೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ರು. ಜಿತೇಶ್ ನಕಾರ. ಜಿತೇಶ್ 63 ಎಸೆತದಲ್ಲಿ 63 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತಂಡ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 2 ರನ್ ಏರಿಕೆ. ತಂಡ ಮತ್ತೆ 74 1 ಹುದ್ದರಿ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ. ಈ ಬಾರಿ ಬಲವಾಗಿ ಬಾರಿಸುವ ಯತ್ನ. ದುರ್ಗಪ್ರಸಾದ್ ರವರನ್ನ ವಂಚಿಸಿದ ಚೆಂಡು 4 ರನ್ನಿನ ಸೀಮಾ ರೇಖೆಗೆ. ಆ 4 ರನ್ನ ಮುಖೇನ ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 78, ಜಿತೇಶ್ 67. ಕೇವಲ 11 ರನ್ಗಳನ್ನ ಇತರೆ ಆಟಗಾರರು ಬಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಡಬೇಕು. 78 ರನ್ ತಂಡದ ಮೊತ್ತ. ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ 67 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಆಡುವ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಜಿತೇಶ್. ಆಡುವ ತುದಿಯಲ್ಲಿ 4 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ರಾಘವೇಂದ್ರ. ಈ ಬಾರಿ ಬಲವಾಗಿ ಬಾರಿಸುವ ಯತ್ನಕ್ಕೆ ನೇರ ಗೂಟ ರಕ್ಷಕನಿಗೆ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನಿತ್ತು. ಅವರಿಗೆ ಫೇಲಿನಿಗೆ ವಾಪಸ್. ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಆಟವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ್ರು ಜಿತೇಶ್. ಔಟ್ ಆಗುವ ಮುನ್ನ 67 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ನಿರ್ಗಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ತನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾಗುವಂತಹ ಅದ್ಭುತ ಸೇವೆಯನ್ನು ತಂಡಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ತಪ್ಪಾಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಅವರ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ತುಂಬಲು ಸಲೀಂ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಮೈದಾನವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಬೇಕು. ಸಲೀಂ ರವರ ಗಮನಕ್ಕೆ. ಆಡುವ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಸಲೀಂ ಕೊನೆಯ ಎಸೆತವನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಬೌಲಿಂಗರಲ್ಲಿ ಅನೂಪ್. ಈ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ 6 ರನ್ ನೀಡಿ 1 ಹುದ್ದರಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅನೂಪ್. ಸಲೀಂ ಟು ಅನೂಪ್. ಈ ಬಾರಿ ಬಲವಾದ ಹೊಡೆತ. ಕ್ರಮವಲ್ಲದ ಎಸೆತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. 1+1 ದ ಸ್ಕೋರ್ ಮೂವ್ಸ್ ಆನ್ ಟು 80 ಫಾರ್ ಲಾಸ್ ಆಫ್ 2 ವಿಕೆಟ್. ಈ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯ ಗರಿಷ್ಠ ಮೊತ್ತ ಕೂಡ. ಈವರೆಗೆ ನಡೆದಂತಹ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಮೊತ್ತವನ್ನು ಯಾವ ತಂಡಗಳು ಕಳೆ ಹಾಕಲಿಲ್ಲ. ವೈಯಕ್ತಿಕ ನೆಲೆಯಲ್ಲೂ ಫ್ರೀ ಹಿಟ್ಟಿನ ಕೊನೆ ಎಸೆದ ಫ್ರೀ ಹಿಟ್ನ ಮುಖೇನ ದೇಣಿಗೆಯಾಗಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಾದು ನೋಡುವ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಗಾರ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ರನ್ಔಟ್ಗೆ ಬಲಿಯಾಗಿ ಫೇಲಿನ್ಗೆ ವಾಪಸ್. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಗೆಲ್ಲಲು 81 ರನ್ನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ 36 ಎಸೆತದಲ್ಲಿ. ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ. ಹಿಂದಿ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಗಾರ, ಈ ಪರಿಸರದ ಅದ್ಭುತ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಗಾರರಲ್ಲಿರುವಂತಹ ತಮ್ಮ ಮಾತಿನ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮಲ್ಲೂ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಯ ಕಿಚ್ಚನ್ನ ಹೊಚ್ಚಿಸಿದಂತಹ ಗೋಪಿಜೀರವರನ್ನ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಗೆ ಕರಿತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಓವರ್ ಟು ಯು ಸರ್. धन्यवाद जनाब इमो। और जहाँ तक सवाल है, बेहतरीन आंखों देखा हाल राज्य भाषा कन्नड़ में आपने सुनाया और हम आपका हार्दिक अभिवादन करते हैं इसके लिए। और जहाँ तक सवाल है, स्टुपेंडस बैटिंग परफॉर्मेंस केम फ्रॉम द बैट्समैन ऑफ
Yeah, strikers, 80 runs, exactly 80 or 81 in fact. 80 runs they scored in the stipulated 6 overs, and they set a victory target of 81. And as far as the required run rate is concerned, exactly 13 and a half runs per over they have to score for victory. With the help of 10 wickets, they have to score for victory. And this is an absolutely stupendous task now in front of the batsmen of KSK, in fact, Kama Super Kings, and 81 they have to score in the stipulated 36 deliveries with the required run rate of exactly 13 and a half runs per over. And their innings now going to begin. And let's see, can they reach the target or not? I request the openers of KSK to please go for bat as soon as possible, please. Thanks to the wonderful knock came from the batsman. Wonderful knock off came from the bat of the batsman Jitesh, who blasted 67 runs, including 7 massive sixes and a couple of boundaries in just 25 deliveries. And with his explosive batting help, they made a huge total of 80 runs in the stipulated 6 overs, and they set a victory target of 81 for KSK. In fact, it's Kama Super Kings, and their innings now going to start. Their openers are the crease. Durga and Ganesh, the openers, and the bowler Pradyumna, the bowler, is now going to face 81 the target in 6 overs. $80 runs scored by AS Strikers, and they set a victory target of 81 now for KSK, and their innings now going to begin. First ball of their innings is now coming up. Pradyumna, the bowler, and the batsman is Durga Prasad. So everything set for the first ball of the match, and now the first ball of their innings is now coming up. Right arm, left arm round the wicket, and he's got him. First ball dismissal. Durga Prasad, the man, dismissed. A perfect yokel delivery. Just wanted to play that one on the offside area. But the ball passed between his bat and pad and stuck to his mid-line leg stump. And that is the wicket number 1. The first ball dismissal and a first ball breakthrough for the bowler. And KSK are now losing their first wicket. It's not for 1 in the first over. This is an absolutely disaster start for them. So he is now back to pavilion, and for Kama Super Kings, the number 3 batsman is now coming out to the middle. Karthik is now slowly walking towards to the crease with lots of responsibilities to facing the bowling of Pradyumna, who got the perfect delivery, and he get rid of the right-handed batsman Durga Prasad in his very first delivery of the innings. Still some fielding adjustments is going on there. And now here he comes. Left arm round the wicket. Yeah, driven that one in the air, but dropped. Dropped by the mid-off-fielder this time. Straightforward chance. Gone in a vein. Has got a hand on that at the last moment, but the ball was flicked out of his hands. And the batsman gets in a life and a single for that stroke. And with that single, the runs account begin now for KSK. 1 for the loss of 1 wicket. The batsman survived in this delivery. He is off the strike. And the batsman now, Karthik Ganesh, the man, is now going to strike. And Pradyumna, here he comes. Left arm round the wicket. Bowls this time. Beamer. That is an absolute beamer. Went over the shoulder height. And no ball called by umpire. Right it so. And single run added to the total, and with that single run, the scoreboard moving up to 3 for the loss of 1 wicket. Absolutely explosive batting required. In fact, it's a devastating batting required for the batsmen of KSK. If they have to reach the huge target of 81 in 6 overs. Free hit delivery for the left-handed batsman.
And Pradyumna ball this time gone for a mighty heave this time after charging down the wicket, missing the line completely. Wicketkeeper also misses before it was collected by wicketkeeper once again. Just going towards to his right side. The batsmen have got plenty of time to cross over for a single, and with that single run, the scoreboard moving up to it's 4 for the loss of 1 wicket in the over number first in progress. So good piece of bowling performance continuing here from Pradyumna, and once again. Here he comes, left arm round the wicket bowls. This time, short one, just want to heave the ball after being shuffling across the line, missing the line completely. Wide declared it by umpire. And collected by wicketkeeper behind the stumps, and there is no possibility of any run. And wide declared it by umpire, and 5 for the loss of 1 wicket. Work it away off the toes, turn to a backward square leg. Fielder standing so deep, but he gets in only a single for that. He collected the ball just coming towards his front side and deep backward square leg. But before that, the batsmen have got a plenty of time to cross over for this single. And with that single run, the scoreboard moving up to 6 without loss in the over number first in progress. Boundary and sixes badly required for KSK if they have to. If they have to move to their target at this situation. This time get some extra bounce and taken behind the stumps by wicketkeeper. He's got a big nick on that. Just wanted to hit the ball, and the ball got his nick, and it's straight into the hands of wicketkeeper. So second wicket gone, 6 for the loss of 2 wicket, and with this dismissal, KSK are now looking deep in trouble. So everything going in the favor of strikers now. They had batted first. They scored a monumental total of 80 runs. After that, their bowler, opening bowler Pradyumna, now bowling very brilliantly, captured 2 wickets in his very first over. Till now, conceded just 6 runs, and the number 4 batsman is now facing Pradyumna off the toes. Just flick that one down to a square leg. In fact, he gets in a single, and with that single, scoreboard moving up to 7 for the loss of 2 wicket after completion of first over. He's got a ban on that at the last moment, and first over completed. So after first over, Kamat Super Kings chasing the stupendous task of 81 runs set by strikers. They made a slower start. In fact, 7 runs they scored after their completion of first over. 74 more runs now they have to score for victory in remaining 5 overs, and their asking run rate is now gone up to exactly 14.80 runs per over. Absolutely difficult. And at this situation, only boundary and sixes can change the picture of the match for the sides of KSK now. They already lost 5 league matches. This is the last league match of league stage. They are playing 6th and the last match. Meantime, AS Strikers also played 5 matches. They are playing in their 6th match. They won 2, lost 3 in the first 5 matches. And they got a 4 points. And this is the most important match for them now. Full toss. This time, lofted that one. Not quite middling it. Just clearing the infield. He gets at least a couple for that. Long chase for the fielder. He collected the ball just inside the fence after being running back to his side, deep extra cover, and before that the batsmen have got a plenty of time to come back for this second run, and with a couple run the scoreboard moving up to 9 for the loss of 2 wicket. Nitin, who lost the ball in the previous delivery just over the cover point fielder's head, and he gets a couple run for that. Once again, right arm over the wicket bowls, full toss in the air. This could be a chance. Fielder getting underneath it, and he took the catch successfully just inside the 20-yard circle. One more wicket fallen, not quite middling it, and he paid the penalty for that. 9 for the loss of 3 wicket, and this is the second over in progress for KSK. So what a fantastic atmosphere at this ground. Drone camera is now flying just in front of you, just over the ground.
And this is an absolutely fantastic tournament is now progressing here in the name of KYC Premier League Season 3 2022. And the match number 18th of this tournament of the day second is now progressing here. Just stuck onto the pad. Just once again wants it to work in a way. And they also just wanted to scoop that one at the last moment. Not quite getting it. And wicketkeeper... in fact, the bowler himself collected the ball just coming towards his front side, and there is no possibility of any run. Second over started. Hitesh, the man, starting a second over. This time, good one. And the wicketkeeper collected the ball, appealing for cut behind, but I think it came after one bounce. It's got a band, or it's got a deflection on that at the last moment for batsman. But after being got his bat, after first bounce, it went into the hands of wicketkeeper, and because of that, the batsman survived in this delivery, and the scoreboard stays at 9 for the loss of 3 wickets. With every dot ball, the pressure is now building up on the batsmen of Kamat Super Kings. They desperately have need big strokes at this stage. Outside the off top, cut away, uppercut down to a deep backward third man, chase for the fielder. He gets in a couple for that, and finally they are satisfied with that couple of runs, and with that couple run, the scoreboard is now moving up to 11 for the loss of 3 wickets. Still the runs coming in singles and couples now for KSK, Kamat Super Kings. And last time in this over, Hitesh, here he comes. Right arm over the wicket bowls. Played that one straight into the hands of extra cover fielder. Gone through for a quick single. In fact, that could be a disaster there if the wicketkeeper cleanly collected the ball. But he misses. The ball was flicked out of his hands, and because of that, the batsman crossed over for this single. And with that single run, the scoreboard is now moving up to 12 for the loss of 3 wickets. So 2 overs completed. 2 tidy overs bowled by the bowlers of AS Strikers, and because of that, the batsmen of KSK, Kamat Super Kings, are now struggling. They are still searching for the right track. Only 12 runs they scored in their first 2 overs. And they are looking deep in trouble now. 69 more runs now they have to score for victory in remaining 4 overs. And the asking rate is now gone up to exactly 17.25 runs per over. Only boundary and sixes can change the picture of the match for KSK, what I told you before. Just short while ago. And they badly required more big strokes at this stage to get back into this match. Miracle batting they required at this stage to get back into this match. And the bowler starts a fresh over from that side, and KVCN Pradyumna, his second over off the toes, flicked that one down to deep in wicket, but not more than a single. Collected by the fielder at deep in wicket. In fact, before the batsmen have got a plenty of time to cross over for this single, and with that single run, the scoreboard moving up to 13 for the loss of 3 wickets. Still, they have a long way to go, and the batsmen of KSK are now struggling to getting runs. And Pradyumna bowled short ball, just steering it away, opening the pace of the blade at the last moment, down to a gully area for a single. And with that single run, the scoreboard is now moving up to 14 for the loss of 3 wicket. Long spreaded outfield, deep extra cover, and there is long off, long on, and a deep mid wicket standing inside the fence to protect the boundary for the right-handed batsman at this situation. And now once again Pradyumna, here he goes, left arm round the wicket, full toss, pull that one, not quite middling it. There is a chance for mid-on fielder, and he dropped that one. He dropped that one, and that was a simplest chance, and the effort is now gone in vain. So this time he just took eyes off that ball, slight bit of a misjudgment, and because of that the ball was flicked out of his hands, and the batsman gets in a life and a single for that stroke. And with a single run, the scoreboard moving up to 15 for the loss of 3 wicket. And once again the batsmen have crossed over, and now Pradyumna bowled to the another batsman. Just played that one, getting bat and bat close together, just watching the line of that ball at the last moment, and the ball has been collected by the bowler on his follow through and back into his bowling mark, and there is no possibility of any run. Tidy bowling performance continuing here from the bowlers of AS Strikers. This time just cut away down to a gully area, gone through for a quick single and get it comfortably at last before the ball has been collected by the gully fielder and back onto the stumps. Single run added to the total, 16 for the loss of 3 wickets. Still the runs coming in singles and couples now for
come at the Super Kings, KSK. And once again, Pradyumna, here he bowls. Love that. This is a clean hit. Absolutely, this isn't a clean hit. It's a massive one. 6 runs into the account of the batsman. And 6 runs into the account of KSK. Scoreboard is now moving up to 22 now with that 6. And the perfect struck came from the bat of Ganesh. He just watched the delivery and just shuffling across a little bit and got that one right from the middle of the bat and dispatched it in a style over deep in wicket fence for 6 runs. Perfect struck. 22 for 3. 3 overs completed, half the way back, still half to go, and still in remaining halfway they have to score 59 more runs for victory. The asking run rate is now gone up to just under 20 runs. That means in exactly calculation it's going to be 19.66 runs per over at this situation. And still they got 7 wickets in hand. And still the batsmen of KSK now searching for the right track. So 3 overs remaining in their innings. 3 ओवर का खेल बाकी और चौथा ओवर लेकर इस वक्त तैयार राघवेंद्र गेंदबाजी यहां पर शुरू करते हुए 59 रनों की दरकार इस वक्त बचे हुए 3 ओवर में और निस्संदेह यहां पर ऐसा कहना पड़ेगा केएसके को सिर्फ चौके छक्के ही इस मैच में अब बचा सकते हैं। राघवेंद्र ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार। दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए ये गेंद रिवर्स शॉट खेलना चाहा, टॉप एज शॉट थर्ड मैन फील्डर के हाथों में और यहां पर ये विकेट एक और गिर चुका है। गेंद उनके टॉप एज पर टकराई थी, आसान सा कैच शॉट थर्ड मैन पर विकेट कीपर ने लपका और चौथा विकेट यहां पर गिर चुका है 22 रनों पर। केएसके खमत सुपर किंग्स ऐसा कहना पड़ेगा अब उनकी नैया बीच मझधार में जूझती नजर आते हुए। तो राघवेंद्र इस वक्त गेंदबाजी यहां पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट ये गेंद इस बार ऑन साइड पर स्विंग किया मिड विकेट पर इनटू द गैप एज वेल और गेंद सीधे दाएं डीप मिड विकेट सीमा रेखा के पास जो स्टेज है वहां पर जा गिरी है 6 रनों के लिए। छक्का नंबर 2 गणेश के बल्ले से लगता हुआ गेंद की उछाल को पहचानते हुए मिडल ऑफ द बैट गेंद को कनेक्ट किया डीप मिड विकेट सीमा रेखा के ऊपर से गेंद को उछाल दिया 6 रनों के लिए और इस छक्के के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 28 रनों पर। और गेंदबाज राघवेंद्र एक बार फिर से यहां पर गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए ये गेंद को ड्राइव किया नॉट क्वाइट मिड विकेट वाइड मिड ऑफ फील्डर गेंद को फील्ड करते हुए और जब तक वो गेंद को फील्ड करके थ्रो करे गेंदबाज के हाथों में बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का। 29 रनों पर स्कोर बोर्ड पहुंच चुका है। 29 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट इन द ओवर नंबर 4 इन प्रोग्रेस। राघवेंद्र एक बार फिर से गेंदबाजी यहां पर आगे बढ़ाते हुए दाहिना हाथ ओवर द विकेट ये गेंद बेहतर एब्सोल्युटली गुड वन मच स्ट्रेट लाइन एंड वेंट इनटू द हैंड्स ऑफ विकेट कीपर आफ्टर बीटिंग द बैट्समैन एंड देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ एनी रन और स्कोर इस वक्त रुक चुका है 29 रनों पर 4 विकेट के नुकसान पर। बेहतरीन गेंदबाजी का सिलसिला यहां पर जारी रखते हुए गेंदबाज एएस स्ट्राइकर्स के और एक बार फिर से इस बार ऑन साइड पर ऑफ द टॉस गेंद को मोड़ दिया इस वक्त डीप मिड विकेट पर फुल लेंथ गेंद थी और अंतिम क्षण में गेंद को डीप मिड विकेट पर मोड़कर 1 रन बटोर चुके हैं बल्लेबाज और 1 रन के साथ स्कोर अब बढ़कर पहुंच चुका है 29 रनों पर। 29 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट इन द ओवर नंबर 30 इन फैक्ट फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट इन द ओवर नंबर 4 इन प्रोग्रेस। अंतिम गेंद इस ओवर में उछालना चाहा टिप्पा खाने के बाद नीचे रहती हुई विकेट कीपर के हाथों में डॉट गेंद के साथ ओवर की समाप्ति कर चुके राघवेंद्र। 4 ओवर की समाप्ति 30 रन 4 विकेट के नुकसान पर। 30 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 4 overs 51 टू गेट नाउ इन रिमेनिंग 2 overs एंड द आस्किंग रन रेट इज नाउ गॉन अप टू एग्जैक्टली 25.5 runs per over।
So 29 for the loss of 4 wicket, 51 to get now in remaining 2 overs, and the asking run rate is now gone up to exactly 25.5 runs per over for them. और ऐसा कहना पड़ेगा सिर्फ चौके या छक्के ही अब केएसके का भविष्य यहाँ पर बदल सकते हैं. तो इस वक्त फील्डिंग में जमावट चलती हुई और गेंदबाज इस वक्त गेंदबाज यहाँ पर शुरू करते हुए ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार. दाहिने हाथों पर द विकेट गेंदबाजी करते हुए ये गेंद पटकी हुई गेंद ऑन साइड पर गेंद को खेल दिया. डीप मिड विकेट पर गेंद जाते हुए 1 रन का इजाफा. थोड़ी सी मिस फील्ड और इस मिस फील्ड की बदौलत बल्लेबाज ने 1 रन यहाँ पर बटोरे और 1 रन के साथ स्कोर अब बढ़कर पहुंच चुका है 30 रनों पर. सिंगल से अब काम नहीं चलेगा. चौके छक्के ही अब उन्हें सही मंजिल तक पहुंचा सकते हैं. क्या बनना चाहिए 11 गेंदों पर. 51 टू गेट नाउ फ्रॉम रिमेनिंग 11 डिलीवरीज. और गेंदबाज इस वक्त ये गेंद पटके हुए गेंद ऑन साइड पर स्विंग किया, लेकिन प्लेसमेंट उतना कुछ खास सही नहीं और इस बीच 1 रन का इजाफा यहाँ पर हो चुका है. 31 now, exactly 50 runs more. Now they have to score for victory in remaining 10 balls. 10 गेंदे 50 रन चाहिए विजय के लिए. और दिनेश गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए ये गेंद ऑफ स्टंप से बाहर की ओर निकलती हुई वाइड का इशारा. 1 रन का इजाफा और 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 32 रनों पर. 32 now for the loss of 33 now in fact for the loss of 4 wickets. 48 to get from 10 deliveries. Better again, not so missing too far outside the off stump at the last moment and collected by wicketkeeper behind the stumps, and there is no possibility of any run. The scoreboard stays at 33 for the loss of 4 wicket. और गेंदबाज एक बार फिर से तैयार. ये गेंद पटकी हुई गेंद ऑन साइड पर उछालना चाहा, चूंकि गेंद सीधे पहुंची विकेटकीपर के हाथों में, रन्स नहीं मिलेंगे. और अब 48 रन चाहिए. गेंदे बाकी है 8. So the last chance in front of the batsmen of KSP. 8 sixes required in the last 8 deliveries. और इस बार गेंद को उछाला है और ये आउट. हालांकि दोनों खिलाड़ी इस वक्त टकरा जरूर चुके थे कुछ हद तक, लेकिन उनमें से एक वन ऑफ देम इस कैच को लपकने में सफल. और इसी के साथ 33 रनों पर 5वां विकेट गिर चुका. राघवेंद्र फील्डर थे जिन्होंने इस कैच को लपका डीप मिड विकेट और वाइड स्लॉग आउट के दरमियान. 48 to get. 7 balls remaining. So number 7 batsman is now comes out to the middle for Kamat Super Kings. और इस बीच अगली गेंद लेकर तैयार. दाहिने हाथों पर विकेट गेंदबाजी करते हुए फुल टॉस पुल किया. इस वक्त हवे में एक और विकेट हो सकता है. फील्डर गेंद तक नहीं पहुंच पाएंगे और यहां पर 2 रन बल्लेबाज को मिलेंगे. काफी देर तक हवे में ऊंची उछली थी गेंद और काफी देर तक हवे में रही थी, लेकिन लॉन के फील्डर आगे दौड़कर आने के बावजूद इस कैच को लपकने में असफल. 2 रनों का इजाफा यहां पर हो चुका. 35 रन 5 विकेट के नुकसान पर और 5 ओवर की समाप्ति हो चुकी है. So 46 required in the last over. Absolutely impossible task if the bowler cannot bowl no ball or wides in this over. And KSK Kama Super Kings, undoubtedly impossible task for them in the final over. 46 they have to score from last over. So the last over starts in Kawa Super Kings innings. Ashit the bowler. The first ball of fresh over is now coming up. Full toss, pull that one, and he got the distance.
6 runs. And now the scoreboard is moving up to 43 now. In fact, 41 now, in fact, for the loss of 5 wickets. 40 more runs required in remaining 5 deliveries. और आशित इस वक्त गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए full toss again, this time not quite middling it. He gets only a single for that stroke, collected by deep in wicket fielder after being some fumble, and with that single, scoreboard moving up to 42 for the loss of 5 wickets. 39 to get now in remaining 4 deliveries. Exactly 9.5 runs per ball, 9.75 runs per ball they have to score for victory at this situation, and this is an absolutely impossible task for them. Ashit. Lofted, and it's gone many a miles. 6 runs, but that strokes came too late. 48 now for the loss of 5 wickets. And 33 to get from 3 deliveries. So Ashit comes this time. 33 required in 3 deliveries. Lofted, this time firmly struck. 1 bounce collected by the fielder at deep mid wicket. And before that, the batsmen have got a plenty of time to cross over for the single. 49. And now just 2 balls remaining. 32 runs they have to score in remaining 2 deliveries. With a required run rate of 16 runs per ball. Ashit. Here he comes. Right arm around the wicket bowls. Just wanted to turn it away, not quite middling it, and the wicketkeeper collected the ball, and there is a dot ball bowled. So last ball of the match is now coming up from Ashit to the right-handed batsman. 32 runs to get from last ball. Here he bowls. Right arm round the wicket. Lofted in the air and comfortably taken. So a comprehensive victory by 31 runs for AS Strikers against Kamat Super Kings KSK, and with that victory AS Strikers kept the hopes alive to qualify for the playoff of this competition. They won 3 matches out of their 6 matches they played, lost 3, and they got 6 points, and they finished their league stage with 6 points. And as far as the league stage is concerned for KSK, they lost all the 6 matches that they played in a league stage, and they finished the league stage with no points. So match number 4 of the day is comes to an end, and the next match number 5 of the day 2 of KVC Premier League Season 3 2022 is now going to begin within just short while. I request the extra player, 12th player of the next match, both teams to please report to the stage immediately. ಅಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯದ ಎರಡೂ ತಂಡಗಳ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ 12ನೇ ಆಟಗಾರ ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ, ಆಟಗಾರರ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಲು. And now match number 19 of the tournament is now coming up. Till then we are taking a short break, and we'll be back right after the short break with myself, Gopi, when the next match will going to begin within just short while. Now it's time for break. Thank you. Dhanyavad.
So the match starts now. First ball comes. And the match starts between Udupi Tigers versus SSC Waves. And SSC Waves, after one toss, they elected to bat first. And because of that, their openers are the crease. And first ball 2 for outside the off stump. And the runs account begin for SSC Waves. 1 without loss in the first over. Next one, the same one now. 2 for outside the off stump and again a wide. So the openers for SSC Waves, Achyut and Akif. Striker is Achyut and non-striker is Akif. Meantime, the bowler Bharat Shetty is now starting the proceedings. Just looking for his right delivery after being bowled 2 consecutive wide delivery. This time, not quite get that one from the middle of the bat, and short point fielder collected the ball but won't prevent the single, and with that single run, the scoreboard moving up to 3 without loss in the first over. SSC Waves, after one the toss, they elected to bat first in this match against Udupi Tigers, and this is the most interesting match, most important match also for the both teams to qualify for the playoff of this competition. And now once again, here he bowls. Good one. Extra quicker. The ball passed below off his bat at the last moment. Just wanted to play that one square of the wicket, missing the line completely. And collected by wicketkeeper behind the stumps, and there is no possibility of any run. Scoreboard stays at 3 without loss in the first over. And on his long run up, the bowler, here he comes. Right arm over the wicket bowls. This time, not quite mid-wicket. Ball running down to mid-on area. The batsman gone through for a quick single and get it comfortably at last before the ball has been collected by the silly mid-on fielder and back onto the stumps. And with that single run, the scoreboard moving up to 4 now without loss in the over number first in progress. And again, Bharat bowls this time, not quite mid-wicket. The ball got his topper of the bat, wide off the bat. In fact, it's running down to a gully area. In fact, they come back for the second and completed it very safely in the end. And a couple of runs to their total. And with that couple run, the scoreboard moving up to 6 without loss in the first over. So Bharat once again comes, right arm over the wicket, bowls, lofted, clearing the infield, and this time he gets an boundary for that. Oh, that is an absolutely, this could be a disaster for the fielder, but at the last moment he just stopped himself to dashing the board on the shop, which is stood outside the fence, and boundary for the right-handed batsman, and with that boundary, the scoreboard moving up to 10 without loss now in the first over. Next one, not quite get that one from the bat, and over has been kept in. So after first over, SSC Waves made a good start after being won the toss and elected to bat, but they managed to score 10 runs on the board. First ball gets some extra bounce for the bowler, and the ball went into the hands of wicketkeeper after beating the batsman, and there is no possibility of any run. Shivraj, the bowler,
And now here he comes, right arm over the wicket bowls. This time just wanted to turn it away, missing the line. The wicket keeper also misses. And before it was collected by the short fine leg fielder, the batsman crossed over for this single. In fact, it's wide also called by umpire. And with that wide run, couple of runs now added to the total. And with that couple run, the scoreboard moving up to 12 without loss at the start of the second over. And Shivraj once again comes, right arm over the wicket bowls. This time, good one, absolutely good one. Gets some extra bounce, and the batsman completely beaten by that slowness of the delivery. And the ball went into the hands of wicketkeeper, and there is no possibility of any run. Scoreboard stays at 12 without loss, and again the bowler balls right up over the wicket. Full toss, loved that one this time. Down to long on, not more than a single. And with that single run, the scoreboard is now moving up to 13 without loss in the over number, second in progress. As far as the good score is concerned for SAC Waves, they desperately have to make a strong start if they have to if they have to post a huge target in front of Udupi Tigers outside the off stump this time. Just wanted to play the slashing square cut, missing the line completely, and collected by wicketkeeper behind the stumps, and there is no possibility of any run. Scoreboard stays at 13 without loss in the over number, second in progress in their innings. Shivraj once again, here he bowls right arm over the wicket. Full toss, pull that one down to long off, but there is a fielder, and the first wicket fallen for SSC Waves. The batsman just wanted to hit the ball, not succeeded, and collected by the long off fielder inside the fence, and that is the wicket number first for SSC Waves. It's 13 for the loss of one wicket. So they just lost their first wicket short while ago. And now they are 13 for the loss of one wicket now. Once again, Shivraj bowls right arm over the wicket. This time gone for a mighty heave, not succeeded. Much straighter line from the bowler. He bowled brilliantly in this over. Conceded just 3 runs and got the wicket of the right-handed batsman. And successful over in Udupi Tigers' point of view came to an end. Just 3 runs came from it. 2 overs completed, and after 2 overs, they are 13 for the loss of one wicket. This is the match number 5 of the day 2, and the second last match of a league stage is now progressing here. And between SAC Waves and Udupi Tigers, and in league comparison, SAC Waves played 5 matches. They won 2, lost 3. In fact, Udupi Tigers also played 5 matches, and then they also won 2 and lost 3. And this is the most important match for the both teams to qualify for the playoffs of this competition. As far as the victory is concerned, 13 the score, and 2 overs completed. Third over starts in their innings. Bharat in his second over, starting a fresh over. First ball, making some fielding adjustments. And here he comes. Square leg, mid-wicket, extra cover, and a point. 4 fielders standing inside the 20-yard circle after fielding restrictions has been taken off as far as the rules and regulations of this tournament is concerned. And now 5 fielders stood inside the fence to protect the boundary. Deep, wide is long off. Deep extra cover, in fact long on, and deep mid-wicket standing inside the fence to protect the boundary. And still some fielding adjustments is going on there. And the Bharat, the bowler, is now starting a fresh over. His second over, and the first ball of his second over comes. Ali pandyaವನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಸಮಯದ ಅಭಾವವಿರೋ ಕಾರಣ ದಯವಿಟ್ಟು ಎರಡು ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಸಹಕರಿಸಬೇಕು. Ashwath is now going to face the bowler. First ball, driven that one, not quite mid-wicket. Ball running down to a mid-on area. Fielder after it, he collected the ball, but before that, the batsman crossed over for the single, and with that single run, the scoreboard moving up to 14 for the loss of one wicket now in the over number
third in progress at the start of the third over, in fact. And Bharat once again comes right arm over the wicket ball. This time gone for a big one. This time not quite middling it. The ball got is outer of the bat. It's running down to short gully area, collected by the fielder. And once again the batsmen have got a plenty of time to cross over for the single before that. And with that single run, the scoreboard moving up to 15 for the loss of 1 wicket. So runs coming in, singles now in the last couple of deliveries. And a good piece of bowling performance continuing here from the bowler Bharat. And here he coming, third time in this over. This time short one outside the off stump, wicketkeeper misses, and the batsman crossed over for the single. Good one. The batsman wanted to play that one, slashing square cut at the last moment, but the ball went out of his reach. But wicketkeeper misses behind the stumps, and because of that, the batsman gets in a single for that stroke. In the face of bye, and declared it by umpire, and with that single run, the scoreboard moving up to 16 now. Third over in progress. Once again, here he bowls. That is an absolutely magnificent one. Much straighter line. Gone for a mighty heave. He just wanted to play that one with the wrong line. Beaten completely by that pace, and the ball went into the hands of wicketkeeper after beating the batsman, and there is no possibility of any run. So pretty decent over so far from Bharat. Conceded just 3 runs in this over in the first 4 deliveries. And once again here he comes, right arm over the wicket. This time driven that one down to long on along the ground. And before it was collected at long on area, the batsmen have crossed over for this single. 17 without loss in the over number third in progress. Last time in this over, Bharat comes bowling to Ashwath. Right arm over the wicket. This time bowled him. Gone for a big one. Missing the line completely. And the ball passed below his bat and stuck to his middle of stumps. Belts are disturbed. And that is the wicket number second for SAC Waves. Ashwath departs and a second wicket lost. 17 for the loss of 2 wicket. 3 overs completed. Half the way mark. Exactly 5.66 the present run rate is now going on here for them. And still in overall calculation, it's going to be 3 overs remaining in their innings. Okay. So Bhuvan, the bowler, is now brought into the attack, and the 4th over starts. And in SAC Waves innings, 17 for the loss of 2 wicket after completion of 3 overs. और चौथे ओवर की पहली गेंद लेग स्टंप से बाहर की ओर निकलते हुए और वाइड का इशारा अंपायर का, और वाइड के रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 18 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर। चौथा ओवर प्रारंभ हो चुका है। और जहां तक का सवाल है गेंदबाजी का, तो भुवन इस वक्त गेंदबाजी यहां पर आगे बढ़ाते हुए और दाहिने हाथ के बल्लेबाज सामना करने के लिए तैयार। ये गेंद फुल टॉस, लेकिन इस गेंद का फायदा उठाने में असफल। सफल होकर गेंद को ऑन साइड पर उछालना चाहा था, चूके पूरी तरह, और गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में। बल्लेबाज थे इस गेंद पर अच्युतेश्वर, जो इस गेंद पर स्ट्रोक सही तरीके से खेल नहीं पाए, और इस बीच गेंदबाज तैयार, दाहिने हाथ ओवर द विकेट। ये गेंद इस बार गेंद को खेलना चाहा, गेंद पैरों पर टकराई, शॉर्ट पिच विकेट की दिशा में पहुंचते हुए रन से नहीं मिलेगा, क्योंकि लेग बाय और लेग बिफोर विकेट इस श्रृंखला में नहीं है, तो इस वजह से कोई रन उनके खाते में जोड़े नहीं जाएंगे। स्कोर इस वक्त रुक चुका है 18 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर। 18 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट इन द ओवर नंबर 4 इन प्रोग्रेस। और गेंदबाज एक बार फिर से तैयार, दाहिने हाथ ओवर द विकेट। ये गेंद नो बॉल, और गेंद को इस वक्त स्कूप कर दिया है लॉन्ग ऑन के दिशा में। जब तक गेंद वहां पर फील्ड, बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का। नो बॉल का इशारा यहां पर हो चुका है, और मेरे ख्याल से साइड बॉक्स यहां पर
टच कर चुके थे और रिटर्न क्रीज कहना पड़ेगा और यहाँ पर स्कोर 2 रन उनके खाते में जुड़ेंगे। 20 now for the loss of 2 wicket और फ्री हिट गेंद इस वक्त बल्लेबाज के लिए। फ्री हिट डिलीवरी फॉर द राइट हैंडेड बैट्समैन और देखना यह है कि बल्लेबाज जो इस वक्त स्ट्राइक लेते हुए इस फ्री हिट गेंद का वो क्या करते हैं। शमशीर स्ट्राइकर इस बार ऑन साइड पर उछालना चाहा, मिड ऑफ द बैट कनेक्शन नहीं, 1 रन मिलेगा और 1 रन के साथ स्कोर अब बढ़कर पहुंच चुका है 21 रनों पर। 21 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट इन द ओवर नंबर 4 इन प्रोग्रेस। तो एसएससी वेव्स के बल्लेबाज रनों के लिए इस वक्त संघर्ष करते हुए और एक बेहतरीन गेंदबाजी का सिलसिला यहां पर जारी रखते हुए गेंदबाज उडुपी टाइगर्स के। और इस बीच भुवन की गेंद स्ट्रोक को रोक लिया विकेट कीपर गेंद के नीचे आते हुए और इसी के साथ यह विकेट यहां पर गिर चुका है। गेंद को उछालना चाहता लेकिन गेंद की बाउंस उछाल को पहचानते हुए अपने स्ट्रोक्स को उन्होंने रोक लिया और गेंद उनके बल्ले के टॉपेज पर टकराने के बाद हवा में उछली और विकेट कीपर ने अपनी दाईं ओर दौड़ते हुए इस कैच को लपका और इसी के साथ ये तीसरा विकेट गिर चुका है। अच्युतेश्वर की पारी समाप्त, तीसरा विकेट यहां पर गिर चुका है एसएसी वेव्स के लिए 21 रनों पर। इट्स 21 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट इन द ओवर नंबर 4 इन प्रोग्रेस। So after the departure of Achyuteshwar, the number 6 batsman comes out to the middle. Uday is now facing. इस बार गेंद को उछालना चाहा, not quite middling it, 1 रन मिलेगा लॉन्ग ऑन पर जब तक गेंद को फील्ड किया जाता और 1 रन के साथ स्कोर अब बढ़कर पहुंच चुका है 22 रनों पर। 22 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स नाउ इन द ओवर नंबर 4 इन प्रोग्रेस। निस्संदेह जहां तक चौके और छक्कों का सवाल है इस वक्त कुछ करारे स्ट्रोक्स की सख्त जरूरत है और गेंदबाज की गेंद पटकी हुई गेंद ऑन साइड पर उछाला, बैकवर्ड स्क्वायर लेग सीमा रेखा से बाहर 6 रनों के लिए। उदय गेंद की उछाल को पहचानते हुए थोड़े से शफल होते हुए स्टंप्स को कवर करते हुए गेंद को इस वक्त उछाला उन्होंने बैकवर्ड स्क्वायर लेग सीमा रेखा से बाहर। जिस बात की मैं जिक्र कर रहा था पिछले गेंद से पहले कि इस वक्त कुछ करारे स्ट्रोक्स की जरूरत है और यहां पर एक छक्का इस वक्त उदय ने लगाया जो उनके लिए बेहद जरूरी थी और इस छक्के के साथ स्कोर अब बढ़कर पहुंच चुका है 28 रनों पर। 4 ओवर की समाप्ति, 28 रन बन चुके हैं। आरंभिक धीमी शुरुआत के बाद अब ऐसा कहना पड़ेगा एसएसी वेव्स कुछ हद तक संभल चुका है, खासकर उस छक्के की बदौलत जो पिछले ओवर की अंतिम गेंद में उदय ने लगाया था। अब 2 ओवर का खेल उनकी पारी में बाकी और देखना यह है कि इन बचे हुए 2 ओवर में उनके बल्लेबाज और कितने रन यहां पर बटोर पाते हैं। दिनेश द बॉलर इज नाउ ब्रॉट इनटू द अटैक और दिनेश इस वक्त मोर्चे पर लगा दिए गए हैं। ओवर की पहली गेंद लेकर इस वक्त तैयार। शमशीर सामना करते हुए 5वां ओवर शुरू होता हुआ एसएसी वेव्स की पारी में ये गेंद इस बार फुल टॉस स्विंग किया मिड विकेट पर और कैच छूट चुका है। He's got a hand on that at the last moment, लेकिन गेंद उनके हाथों से छूटी हुई इस मिसजजमेंट की बदौलत सीमा रेखा को पार कर चुकी है। चौका इस वक्त घोषित, एक टिप्पे के बाद आफ्टर फर्स्ट पॉज गेंद सीमा रेखा को पार कर चुकी थी 4 रनों के लिए और इस चौके के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 32 रनों पर। 32 नाउ फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट इन द ओवर नंबर 5 इन प्रोग्रेस। और बेहतर स्ट्रोक इस वक्त लग चुका है शमशीर के बल्ले से और चौके और छक्कों की उन्हें सख्त दरकार इस वक्त अगर उनके रन की गति को इस वक्त एक्सेलरेट करना है तो। और इस बार गेंद को उछालना चाहा चूंकि अपील जारी कॉल बिहाइंड के लिए लेकिन अंपायर पर इसका कोई प्रभाव नहीं। लेग कटर गेंद थी, अपने दिशा को कुछ हद तक बदलती हुई अंतिम क्षण में घुमाव लेती हुई पहुंची सीधे विकेट कीपर के हाथों में और इस बीच
बल्लेबाज को यहाँ पर रन नहीं मिला और एक बार फिर से गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए ये गेंद उछाला लॉन्ग ऑन पर फील्डर और इस कैच को लपकने में सफल। स्ट्रोक में उतना दम नहीं था कि वो गेंद सीमा रेखा को पार कर सके और लॉन्ग ऑन के फील्डर ने आखिरकार कोई गलती नहीं की और इसी के साथ विकेट नंबर 4 यहाँ पर गिर चुका है। 32 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट इन द ओवर नंबर 5 इन प्रोग्रेस फॉर देम। So fifth over in progress. It's 32 for the loss of 4 wicket और गेंदबाज इस वक्त गेंदबाजी यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए दाहिना तो ऊपर द विकेट। ये गेंद इस बार गेंद को खेलना चाहा था लेकिन गेंद के पैरों पर टकराने के बाद पहुंची सी लिमिट ऑन पर रन्स इस बीच इस गेंद पर नहीं मिला और अपने विशिष्ट शैली के जरिए गेंदबाज दिनेश इस वक्त गेंदबाजी करते हुए अंतिम क्षण में अपने दोनों हाथों को तेजी के साथ घुमाकर वो गेंदबाजी करते हुए हवा में उछलते हुए और इस बार वो तैयार गेंदबाजी के लिए। देखिए किस तरीके से वो गेंदबाजी करते हैं और इस बार गेंद को पुल किया है बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर 6 रनों के लिए। फील्डर मौजूद थे डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर लेकिन गेंद उनके सिर के ऊपर से निकलते हुए सीमा रेखा के सीढ़ियों पर यहां पर टकरा चुकी है। 6 रनों के लिए बेहतर स्ट्रोक यहां पर लगता हुआ बल्लेबाज उदय किरण के बल्ले से और स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 38 रनों पर। 38 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट इन द ओवर नंबर 5 इन प्रोग्रेस। इस बार बेहतर शफल होते हुए ऑन साइड पर उछालना चाहा था चूंकि गेंद सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथों में। 5 ओवर की समाप्ति। 38 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट्स फॉर एसएसी वेव्स आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 5 ओवर्स एंड नाउ जस्ट अ लास्ट ओवर रिमेनिंग इन देयर इनिंग्स। सो लास्ट ओवर रिमाइनिंग। अंतिम ओवर का खेल बाकी और गेंदबाज इस वक्त गेंदबाजी यहां पर शुरू करते हुए नागराज और ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार जबकि स्ट्राइक इस वक्त लेते हुए सुनील फील्डिंग में जमावट यहां पर करते हुए। और जैसा कि मैं पहले भी फरमा चुका दोनों टीमों के लिए ये मैच बेहद जरूरी इस वक्त बन चुका है। दोनों टीमों ने 5 मैचेस खेले हैं 2 में उन्हें विजय मिला है जबकि 3 मैचेस में उन्हें हार का सामना करना पड़ा है और इस मैच में विजेता होने वाली टीम के लिए प्लेऑफ पर प्रवेश प्राप्त करने की संभावनाएं काफी उज्जवल हो जाएगी। तो यहां पर विजय के लिए कड़ा संघर्ष जारी है और इस श्रृंखला के प्लेऑफ में प्रवेश प्राप्त करने के लिए उडुपी टाइगर्स और एसएसी वेव्स के बीच में ओवर की पहली गेंद ऑन साइड पर पुल किया खूबसूरती के साथ बैकवर्ड स्क्वायर लेग और डीप मिड विकेट के दरमियान जब तक गेंद को फील्ड किया जाता बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का और इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 39 रनों पर। 39 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट इन द ओवर नंबर 6 एंड लास्ट स्टार्टेड जस्ट शॉर्ट व्हाइल अगो और 5 गेंदे अब उनकी पारी में बाकी। स्ट्राइक इस वक्त लेते हुए उदय और नागराज की गेंद इस बार टॉप एज फॉलो थ्रू में मौका और नागराज ने आखिरकार कोई गलती नहीं की। गॉड इज टॉप एज एंड कंफर्टेबली हेल्ड इन इज फॉलो थ्रू बाय द बॉलर नागराज। 1 more wicket fallen and wicket number 5 is fallen for SSC Waves and now they are 39 for 5 with just 4 balls now left in their innings. तो गेंदबाज अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार रहा। इस बार ड्राइव किया फुल लेंथ गेंद थी और जब तक गेंद को लॉन्ग ऑफ पर फील्ड किया जाता बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का। 40 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट
करारे स्ट्रोक्स लगाने की पूरी कोशिश यहां पर करते हुए बल्लेबाज एसएससी वेव्स के इस अंतिम ओवर में, लेकिन सफलता अब तक उनके हाथ में नहीं आई। कुल मिलाकर ऐसा कहना पड़ेगा इस अंतिम ओवर में नागराज एक बेहतर लेंथ और लाइन के साथ यहां पर गेंदबाजी करते हुए इस वक्त पेविलियन की ओर जाते हुए नागराज कुछ कहा उन्होंने अंपायर से और कुछ लेने के लिए वो पेविलियन की ओर इस वक्त बढ़ चुके हैं और खेल कुछ क्षणों के लिए यहां पर रुक चुका है। तो एक बार फिर से नागराज तैयार, दाहिना तो ओवर द विकेट, बेहतर गेंद थी, ओवर पिच गेंद उछाला, स्क्वायर ऑफ द विकेट, एक्स्ट्रा कवर पर स्वीपर मौजूद, एक रन मिलेगा, दूसरा रन लेना चाहते हैं, वाइड थ्रो, लेकिन पर वहां पर बैकअप होता हुआ, लेकिन अपने निर्धार को बदलते हुए क्रीज पर कदमों को खींचते हुए सुरक्षित दोनों बल्लेबाज एक रन के साथ संतुष्ट और एक रन के साथ स्कोर अब बढ़कर पहुंच चुका है 41 रनों पर 41 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट्स एंड दिस इज द सिक्स्थ एंड लास्ट ओवर इन प्रोग्रेस इन देयर इनिंग्स। गेंदें बाकी है सिर्फ 2 अब उनकी पारी में। नागराज गेंदबाजी यहां पर आगे बढ़ाते हुए लंबे रनअप के जरिए ये गेंद पटकी हुई गेंद को इस वक्त खेल दिया शॉर्ट पॉइंट पर, हालांकि कदमों का इस्तेमाल करते हुए आगे निकले थे जरूर, लेकिन गेंद के उछाल को पहचानते हुए गेंद को इस वक्त खेल दिया स्क्वायर ऑफ द विकेट पॉइंट पर और एक रन के साथ दोनों बल्लेबाज अपना छोड़ यहां पर बदल चुके हैं। 42 नाउ एंड द लास्ट बॉल ऑफ देयर इनिंग्स इज नाउ कमिंग अप। अंतिम गेंद लेकर तैयार नागराज, दाहिने हाथ ओवर द विकेट, दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए बेहतर स्क्वायर ऑफ द विकेट उछाला है, फील्डर पहुंच पाएंगे गेंद पर और इसी के साथ ये विकेट उनके पारी के अंतिम गेंद पर गिर चुका है और इसी के साथ उनके निर्धारित ओवर्स भी समाप्त हो चुके हैं। So the innings is up for SSC Waves. They finished with 42 for the loss of 6 wickets in the stipulated 6 overs. And now they set a victory target of 43 now for Udupi Tigers. And as far as the required run rate is concerned, exactly 7.17 runs per over they have to score for victory in the stipulated 6 overs with the help of 10 wickets. The present equation shows for them. And let's see can they reach the target or not. 43 they have to score in the stipulated 6 overs. 43 runs बनाने हैं इस वक्त उडुपी टाइगर्स को, देखते हैं वो इस लक्ष्य तक पहुंच पाते हैं या नहीं। फिलहाल उनकी पारी चंद लम्हों बाद यहां पर शुरू होगी और एक छोटे से ब्रेक के बाद खुद मेरे साथ आपके सामने उपस्थित होऊंगा मैं जब उडुपी टाइगर्स की पारी की शुरुआत यहां पर होगी। धन्यवाद, थैंक यू।
So 43 the target for Udupi Tigers set by SAC Waves, and their innings now going to start. Dinesh and Shivraj the openers. Dinesh at the striker end, in fact Shivraj the non-striker end, and the bowler is Akif, and the first ball of their innings is now coming up. पहली गेंद लेकर तैयार, ये गेंद इस बार उछाला है लंगोन पर, मिड विकेट पर कहना पड़ेगा, फील्डर गेंद के नीचे आते हुए, लेकिन यहाँ पर गेंद को वो लपकने में असफल। मिस जजमेंट यहाँ पर, आखिरकार गेंद उनके पीछे यहाँ पर टिप्पा खाते हुए, और इस बीच बल्लेबाज पहली गेंद पर दिनेश जीवदान प्राप्त कर चुके हैं। ऐसा कहना पड़ेगा मिडल ऑफ द बैट कनेक्शन नहीं था, लेकिन भाग्यशाली रहे कि गेंद को फील्डर मिड विकेट पर लपक नहीं पाए, और इन 2 रनों के साथ रनों का सिलसिला यहां पर शुरू हो चुका है। 2 विदाउट लॉस इन द फर्स्ट ओवर। गेंदबाज एक बार फिर से इस बार गेंद को ड्राइव किया, नॉट क्वाइट मिड विकेट, सीलिंग मैदान पर रन के लिए दौड़ पड़े, नजदीकी मामला, लेकिन इससे पहले बल्लेबाज मैं समझता हूं अपना बल्ला क्रीज पर रख चुके थे। मिड ऑन के फील्डर भी दौड़ कर आए, बल्लेबाज भी दौड़ कर आए, लेकिन इससे पहले की गेंद को जब तक गेंदबाज फील्डर विकेटों पर चटकाते, बल्लेबाज यहाँ पर रन पूरा कर चुके थे, और 1 रन के साथ स्कोर अब बढ़कर पहुंच चुका है 3 रनों पर। 3 विदाउट लॉस in the over number first in progress for उडुपी टाइगर्स। तो मैच नंबर 5 यहाँ का द्वितीयार्ध यहाँ पर शुरू हो चुका है, और गेंदबाज इस वक्त गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए, ये गेंद इस बार ऑन साइड पर गेंद को उछालना चाहा, चूंकि गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में, रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिलेगा। 3 गेंदें बेहतर इस ओवर में आकिफ फेंक चुके हैं, और स्कोर इस वक्त रुक चुका है 3 रनों पर बिना किसी नुकसान के। निस्संदेह एक बेहतरीन शुरुआत की जरूरत है, और जैसा कि मैं पहले भी फरमा चुका, ये मैच दोनों टीमों के लिए बेहद जरूरी बन चुका है। दोनों टीमों ने 5 मैचेस खेले हैं, 2 मैचेस में उन्होंने विजय दर्ज किया, 3 मैचेस में दोनों टीमों को विजय का हार का सामना करना पड़ा है। तो इस मैच में जो भी टीम विजय प्राप्त करेगी, प्ले ऑफ पहुंचने की साध्यताएं, संभावनीयताएं उनके लिए उज्जवल हो जाएंगी। तो यहां पर विजय के लिए कड़ा संघर्ष जारी है। दाहिने हाथों बढ़ता विकेट, ये गेंद उछाला है काफी ऊंचा, फील्डर गेंद के नीचे आते हुए लंगोन पर, और आखिरकार इस कैच को लपकने में सफल, और इसी के साथ पहला विकेट यहां पर गिर चुका है। 3 रन पर पहला विकेट गिर चुका है, और शिवराज की पारी समाप्त। छक्का लगाने का प्रयास किया, लेकिन आखिरकार गेंद को वो खेल नहीं पाए, उछाल नहीं पाए लंगोन सीमा रेखा के ऊपर से, और आखिरकार गेंद को लपक लिया गया यहाँ पर लंगोन फील्डर द्वारा एक बेहतर जजमेंट के साथ। 3 रनों पर पहला विकेट गिर चुका है। शिवराज की पारी समाप्त, और एक बेहतर ओवर आकिफ का यहाँ पर प्रगति पर। तो कुल मिलाकर 2 गेंदें इस ओवर में बाकी। 43 द टारगेट इन 6 ओवर्स set by SAC Waves for उडुपी टाइगर्स, और 3 रन बच चुके हैं पहले ओवर में। गेंदबाज एक बार फिर से तैयार, आकिफ गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए, ये गेंद पटकी हुई गेंद, इस बार स्क्वायर ऑफ द विकेट, इस बार स्कूप किया है वाइड इस लॉन्ग ऑफ पर, और गेंद इस वक्त सीमा रेखा के अंदर टिप्पा खाने के बाद बाहर हो चुकी है 4 रनों के लिए। बेहतरीन स्ट्रोक इस वक्त दिनेश द्वारा, ऐसा कहना पड़ेगा, गेंद की उछाल को पहचानते हुए यहां पर गेंद को स्कूप किया था, पावर प्ले का फायदा उठाते हुए, इनफील्ड क्लियर करते हुए चौका इस वक्त प्राप्त करते हुए दिनेश, और इस चौके के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 7 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर, जबकि पहला ओवर उनकी पारी का यहां पर प्रगति पर। अंतिम गेंद इस ओवर में बाकी, और अंपायर जो कि दूसरे गेंद की इस वक्त मांग करते हुए, क्योंकि गेंद इस वक्त खो गई है सीमा रेखा को पार करने के बाद, गेंद के लिए तलाश जारी है, और इस ओवर में अगली गेंद लेकर इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए। अंतिम गेंद इस ओवर का दिनेश के लिए, आकिफ लंबे रनअप के जरिए दाहिने हाथों बढ़ता विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए, ये गेंद ऑन साइड पर, this is a good one, absolutely good one, but straight to fielder. Placement was too wrong and he paid the penalty for that. शफल होते हुए गेंद को उछाला था, लेकिन प्लेसमेंट गलत। अगर थोड़ा सा वाइडर गेंद को खेलते तो शायद चौका उनके पक्ष में आ सकता था, लेकिन गेंद को सीधे खेला डीप मिड विकेट फील्डर के हाथों में, और यहाँ पर यह विकेट गिर चुका है। और यहाँ पर एक चतुर क्रिकेट गेंदबाज आकिफ ने दिखाई, फील्डर को वहां पर तैनात किया था और बल्लेबाज को ललचाया था कि वो शफलों का स्ट्रोक्स खेल सके डीप मिड विकेट में, और इस लालच में बल्लेबाज आ गए और आखिरकार अपना विकेट गंवाने के बाद
कैच आउट के जरिए विकेट पेविलियन वापस लौट चुके हैं। पहले ओवर की समाप्ति 7 रन बन चुके 2 विकेट के नुकसान पर। 7 for the loss of 2 wicket after completion of first over for Udupi Tigers. 36 to get in remaining 5 overs. The required run rate for them is exactly 7.20 runs per over, and still they got 8 wickets kept intact. 2 wickets lost for them, 7 runs on the board after first over. और देखते हैं इन बचे हुए 5 ओवर में उनके पारी में क्या क्या होता है। और इससे पहले कि दूसरा ओवर प्रारंभ हो, माइक्रोफोन पर अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगा मेरे काबिल दोस्त अंग्रेजी में सतीश को आगे का आंखों देखा सुनाने के लिए। माइक्रोफोन पर आइए सतीश, धन्यवाद, थैंक यू। Thank you very much, Gopi. So, start of the over number second, and the batter circled across the line of the delivery, tried to play some improvising cricketing stroke, missed it completely, then wicketkeeper behind the stump did the rest, and there is no possibility of any run. 7 for the loss of 2 wicket. .43 is the target for Udupi Tigers from the far end. Right arm over the wicket. This is a full toss delivery, and he just hammering it down to deep mid wicket boundary for a huge 6. This is a huge mistake from the bowler to bowling that juicy full toss, and for that juicy full toss, huge 6 which came from the bat of the batter Nagraj. He's a very good striker of the ball, and you cannot bowl that kind of line for this man. And what a fantastic hit there from Nagraj, and because of that 6 score jumped into 13 for the loss of 2 wicket. From the far end, Ashwata, right arm over the wicket, again one more full toss delivery this time. Lucky escape here for the bowler. They're going for the extra run as well, chance of run out. This is, oh my goodness, he's gone. It's a direct hit. Lucky breakthrough here for SAC Waves. Can you believe this? Wicketkeeper missed the throw completely from his hand, but fortunately that ball hits a stump and suddenly it's a really, the luck is favoring here, as scoreboard now exactly .14 on the board for the loss of 3 wicket. And one more wicket is back into pavilion. That's a big wicket actually. The wicket of Nagraj. Quite unfortunately, they wanted to steal that second run. Not needed actually, that kind of urgency, because he's looking pretty good actually. Once he survived from the run out and second time he's going for the extra run, he pays the penalty for that. Ashwat bowls. Again the one more full toss delivery. Ashwat not really getting that line and length proper. He already got one punishment for the full toss delivery, but still he's not really learning from his mistake. Again that full toss ball, being the fact that the new batsman came into middle, he couldn't manage to take the advantage of that full toss. He picked up a single down to short mid off. 15 for the loss of 3 wicket. Ashwat. Bowling from the far end. Right arm over the wicket, ball to again. Little bit miss timing by the batter in the negation. Picked up a single. Adarsh picked up a singles. So with that single, scoreboard was on to 15 for the loss of 3 wicket. Over number 2 in progress. .27 more runs required for the victory. From the far end, Ashwat. Right arm over the wicket bounce. This time wide off that mid-on fielder. Of course, that ball is in the air for a while, but safely played down to deep long on region by the batter Bhuvan, and with that single scoreboard moves on to 15 for the loss of a 3 wicket. Of 3 overs, 2 overs completed, 7.5 runs per over. Just coming back to the equation, 43 is the target. That means 24 deliveries remaining. Out of 24 deliveries, they have to get another 26 runs to win this match. .17 on the board, exactly. The 43 required for the 17 for the loss of 3 wicket. 26 required for 24 deliveries. Still is the equation favoring to the chasing team Udupi Tigers.
unless SAC Waves have to pick some wickets as well as some economical over. That's why they wanted to this man Akif to come and bowl. Can produce one good over for SAC Waves from the commentary box, and right arm over the wicket, bowls beautifully bowled, equally well played by the batter in the delegation. And Bhuvan just right behind the line of the delivery. No, exactly, no need to panic at all. The run rate is not that much of big here. Just over 6 runs per over is the required run rate. So he's just focusing towards the singles. Rightly so. You need to play as per the condition required. And the scoreboard moves on to 18 on the board for the loss of 3 wicket in the over number 3 in progress. Akif once again back to his bowling mark. Bowling away from us, right arm over the wicket. Again, Adarsh picked up a single. Both the bats are doing a good job dealing with the singles, and they know exactly the required run rate. They can manage if they rotate the strike each and every ball. At the same time, I think excluding wides and no balls, and that means they are in upper hand. Akif. Right, over the lovely shot, crashing that one down to deep cover boundary. There is a fieldsman on the deep. He stopped that one, but you cannot stop. Couple of runs here from Bhuvan, and going for the third as well. And they made it quite easily. Absolutely fantastic stroke. Little bit short pitch outside and off stump, and off the back foot, he crashes that one down to deep extra cover boundary. And the fieldsman stopped the ball, but could not stop 3 valuable runs here from Bhuvan. So with that, the 3 runs scoreboard jumped into 22 now for the loss of 3 wickets. That means another 21 more runs required for the victory. Akif, right arm over the wicket. Again, the short pitch delivery. Adarsh again quite watchful in the negation. Just going behind the line of the delivery. Off the back foot, pushes that one down to short. Silly mid-off region to pick the single. With that single, scoreboard moves on to 23 for the loss of 3 wicket. 20 runs required for the victory. Last 2 deliveries left in this over. Right arm over the wicket. Akif delivers a full toss, off stop by the fielder. And again, if it is neat collection, I think certainly is a chance of run out. But because of that pumble from that fielder at short extra cover region, the batter completed a single. With that single, scoreboard moves on to 24 for the loss of 3 wicket. 19 more runs required for the victory. And deliveries remain the same. 19 balls, the 19 runs required for the victory. Each and every ball is required run here for Udupi. Akif balls again. Adarsh pushes that one. Sensible batting, absolutely sensible batting, pushing the ball right in front of that point fielder and picked up a single then. So now last 3 overs remaining in the innings of Udupi Tigers, and in that 3 overs they have to get another 18 runs. 18 balls and 18 runs required for the victory. Asking run rate exactly 6 runs per over. So very important match for both the teams, as both the teams out of 5 matches they lost 3 and won 2. So that if they wanted to cement their place in for the next round, playoff round, there's a must-win match for both the teams. The very hot afternoon out here. Absolutely, it was a very hot indeed. Not an easy condition, especially in the month of March and April. Horrible the condition, especially for players and for the umpires as well. The deal with the hot condition, temperatures more than 21 degrees Celsius here in Manglore, and especially in the afternoon from 12 to 3 o'clock, it's definitely going to be very hot. A lot of noises and support here coming here for both the teams. The wait and see which team will going to qualify. 25 for the loss of 3 wicket. This is very important over for SAC Waves. If they wanted to back into this game, they need to have one good over. Good over in the sense of economical, as well as the wicket taking over is much required. And from the far end, it's going to be a change in bowling. Sudesh Prabhu Malya. Sudesh Malya from the far end. Right arm round the wicket. Balls cuts at one. Straight to the hands of fielder. Chance of run out there. Excellent piece of fielding and return.
That's what SAC Waves wants in this situation. Just like I mentioned, one good over required. Not only the good over in the sense, it's a wicket taking over is required, but the wicket is fell in the form of run out. Excellent piece of fielding there by the fielder. Shamshed down at cow point region fields the ball because that ball went very quickly to that fielder and reacted very quickly and then returns the ball into the hands of wicketkeeper, and Akif completes his job. Third wicket is back into pavilion. 18 balls, 17 required. New batter. Vasant is a new batter. Facing this time, that was a full toss delivery, but Vasant is a new batsman, came into middle. So that is in a little bit different defensive frame of mind. He wanted to pick the single then, but not really taking advantage of that delivery. Two very good deliveries by Sudesh Malia. He is trying his level best in this particular over. Right arm over the wicket, seaming in from the far end. Next time, full toss again. Nicely drives that one down to deep long on region for a single by Vasant. With that single scoreboard moves on to 26 for the loss of 4 wicket. So far, it's a very good over. Just a single run in the 3 deliveries. Now 3 deliveries remaining. That means 15 ball remaining. They have to get another 16 runs to win this match. Sudesh from the far end. Right arm over the wicket. Oh, lovely delivery. Beautifully bowled. Bhuvan did this time. Just looks like he's lost his patience. Looking for the big stroke, expansive drive on the offside region. Almost is exposing his off stump, all the stumps. Just moving towards his leg seam, maybe looking for some inside out cricketing stroke. Luckily that ball just going over the top of the stumps. So fantastic bowling display of Sudesh Malia from the far end. Right, a lovely shot, lofted, and fielder then the deep long on takes the catch down at straight long off region. The one more wicket is back into pavilion. Now SAC Waves are back into this game. This is the beauty of cricket. The one stage, Udupi Tigers are roaring in the middle. They are cruising towards the victory. But 1 hour for SAC Waves, which is in form of Sudesh Malia, is producing so far a fantastic over. 2 wickets in that over, and so new batter came into middle in the non-strikers end, and Sudesh Malia from the far end. Right arm over the wicket. Vasant again the lovely delivery, appeal for caught behind. Just an excitement rather than the confidence, but it's a very good over indeed. Just a single run he conceded. 26 for the loss of 5 wicket. Now 17 required from 12 balls. What outstanding over there from Sudesh Malia. 26 for the loss of 3 wicket. That means 17 more runs required for the victory in 2 overs. So 12 balls, 17 runs required for the victory, and the match is evenly poised. 8.5 runs per over is the required run rate here for Udupi Tigers to win this match. But SAC Waves are strongly back into this game through Sudesh Malia. That fantastic over, the over number 4, where he conceded only a single run and he picked up a wicket as well. And now all off to this man who just came into ball from the commentary box end. Shamshed. He is the one is responsible for the run out in the previous over. Now he has to contribute from his bowling. 17 required from 12 balls. Shamshed bowls. I went for the reverse sweep, missed it completely. One more dotted delivery. Each and every dot ball
As the pressure is creeping up and asking run rate also creeping up. 26 for the loss of 5 wickets. 11 balls remaining. 17 runs required for the victory. Vinith is on strike. Just examining the field set. Backward point, deep extra covered, long off, long on, deep mid wickets. Square leg, shuffled across the line of the delivery, looking for the big swing of the bat. And Shamsher did a very good job just following the batsman, not really let the batsman going for the big shot to settle for the big shot. Extra bounce as well here for Shamsher, and Vinith completely missed out that delivery. One more dotted delivery. Now 10 balls remaining and 17 runs required for the victory. This time he pulls that one, and ball is in there. Deep square leg fielder takes a catch. Vinith back into pavilion. SAC Waves are strongly back into this game now. They really tighten up the screws out here. The first 3 overs which belongs to Udupi Tigers, and after that SAC Waves strongly back into this game with some excellent bowling performance. Just there came from nowhere. The one stage Udupi are looking in a commanding position. They're in a driver's seat of winning this match. But 1 over which has changed the complexion of this match. That's the over of Sudesh Malia. Here Shamsher also just getting some inspiration from his partner. He's bowling very well so far. Right arm over the wicket. Cuts that one. Straight to the hands of fielder. Chance of run out. One more wicket is going here. Absolutely in the form of run out. The wickets are tumbling here like a house of cards here for Udupi Lions. Udupi Tigers, in fact. 26 for the loss of 5 wicket. 6 wicket, in fact. Seven wickets back into pavilion. Now all up to this man, Vasant. So how well he managed to get the remaining runs here. So far it's a very quiet over. 17 still required for the victory. Shamsher, right arm over the wicket to Vasant, going for the cut shot away from his body. Missed it completely. So all we can see that the last 2 overs which has been outstanding for SAC Waves. Shamsher this time looks like he will go into ball the maiden over. Right arm over the wicket, Vasant using his feet. This time he got a single down to cover point region, not more than a single. And over number 5 completed, chasing 43 to win this match. Struggling in the middle. Udupi Tigers are 27 for the loss of 7 wickets. In the sense, last over they required 16 runs to win this match. At one stage, 18 balls and 18 runs required. 18 balls and 18 runs required at one stage. When they got all 7 wickets safe in hand, then Sudesh Malia came in, bowled a magnificent over. The over of a wicket and then just a single run. Then Shamsher came in. He also bowled one fantastic over, that over of just a single run. And because of that 2 very good overs, looks like now target seems to be a little bit difficult one, but not impossible. 16 required in last over. From the far end, the bowler, Prajwal. From the far end, right arm over the wicket, delivers wide outside the line of off stump, wide call by umpire. One more addition to total. And with the addition of that single, scoreboard moves on to 28. That means 15 required. One big shot can change the complexion of the match. And from the far end, Prajwal. Right, I'm over the wicket. Ball, the short pitch delivery, cuts at one. Ball is in the air. Protection has been given in the deep cover point region, so that wasn't how to settle for the single. And short pitch delivery, but probably that was outside the line of off stump. That's why not that much of danger here for the bowler. That wasn't just reaching for the delivery, trying for the cut shot, not really getting enough bat onto that. Just a single. With that single, scoreboard was on to 29. Again the short pitch delivery, and he got a thick outside edge of the bat. And the ball is just have a fingertips of wicketkeeper behind the stump. And a cross off for a single.
With that single scoreboard moves on to 29 for the loss of 7 wicket. That means 4 balls remaining. They have to get another 13 runs to win this match. This is definitely going to be a decider delivery. One big hit is badly required for Udupi. At the same time, 2 very good deliveries required for SAC Waves to win this match. Prajwal, they went for the reverse sweep, missed it completely. Excellent bowling performance. Getting some extra bounce by hitting that areas very hard. And Sivan Vasant is a very tall player, but still he couldn't manage to reach that bounce of the delivery. Looking for the switch, it missed it completely. Now 3 balls, 13 runs required for the victory. Three balls, 17 required. Right, I'm over again. The short pitch delivery, the slow short pitch delivery outside the line of off stamp. Vasant is asking umpire to give the wide, but umpire just observing the squawk umpire. Will it going to be a bouncer over the head or not? But umpire unmoved. 2 balls. Required run is 13. 2 sixes will go into tie the match for Udupi Tigers. This time he full that one down to deep mid wicket region for a easy single. Now last ball remaining. 31 is the total score. 12 required from the last ball. That means just a formalities left in this game. Unless bowler making any mistake here, bowling no ball or white balls. It has SAC Waves looks like 99.9% they are in the game. This time again, that's it. The very good victory here for SAC Waves. Excellent performance from the bowling. Really, they defended fantastically. That 42 runs, they defended very well, defeating Udupi Tigers by the margin of 10 runs. Really, it's a great performance from SAC Waves, especially that 2 bowlers really changing the complexion of the match. Sudesh Malya as well as Shamshir did a great job in that 4th and 5th over, and takes the match away from Udupi. Congratulations, SAC Waves. So now out of 6 matches, they won 3. The point tables looks to be very interesting now onwards. We will take a short break here. After a short break, we'll back for the next match.
I request extra player from both the teams. Please report extra player from Air Titans as well as extra players of Shetty Warriors. Please report to the commentary box immediately. ದಯಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ತಂಡದ ಇತರ ಆಟಗಾರರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ನಮ್ಮ ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಕಡೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಎರಡು ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಇತರ ಆಟಗಾರರು ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಯ ಕೊಠಡಿಗೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. City Warriors captain, please send your extra players towards the commentary box. Shetty Warriors. The first ball from the far end, right arm over the wicket, delivers wide outside the line of off stamp and wide signal umpire. It's a free hit delivery. It's a no ball. It's a no ball. So no ball and it's a free hit delivery because that ball pitched off outside the line of the pitch. So that umpire rightly so Rajaratna sir signals a no ball. So that free hit delivery for the batter from the far end, right arm. Over the wicket, lovely delivery, well pitched up delivery and extra bounce as well, beaten by the bounce, wicket keeper behind the stump, did the rest and there is no chance of any run. This time top edge, ball high up in there, fielder going back, my goodness, collision. No need for that short mid wicket fielder to go back. Because deep mid wicket fielder is in such a good position, but why no? I don't know why he's blaming that fielder. That's a mistake of jersey number 55. Because running back, taking catch is always difficult. But for jersey number 7, it's a straightforward catch. And because of collision, misjudgment, the batter got a life. This time he lofted, not enough power. Half-hearted stroke, pays the penalty for that. First wicket back into pavilion of Shetty Warriors. So last match of the league match. And here is the next ball. Right arm over the wicket. Again the opportunity of catch, but just ball falling short of that short mid off fielder.
Good start given by the bowler. Bowler Fredwin is a very good bowler so far. He's done a great job for Air Titans. Out of 5 matches, they won 4 matches. Again, lovely delivery. That was a consistency in his line and length. So good in it. Every time on he was getting some extra bounce, and sometime actually he's pitching the ball in the right line and length, hitting a good length spot, getting some extra bounce and turn as well. Predwick again back to his bowling mark. He's using his height. Right arm over the wicket. This time slower attempted delivery, but this time full toss delivery, but a slow full toss, so that the batter just missed timing that one. So good over there from Predwick after completion of first over. Winning the toss, captain of Shetty Warriors selected to bat first, and they able to get only 4 runs by losing 1 wicket. Maybe that the competition for the top 2 places between Shetty Warriors as well as Air Titans. Just seeing the points table. Both the teams have won 4 matches out of 5. They lost 1. But Shetty Warriors has got a very good run rate, net run rate, compared to Air Titans. This time again, that ball driven down to deep mid-wicket region for a single. So with that single, scoreboard moves on to 5 on the board for the loss of 1 wicket. Went for the reverse stroke, missed it completely. Good start by the bowler. Saurabh, the bowler from the commentary box end. Right arm round the wicket, delivers. Again, cuts that one over the top of that backward point fielder, and cow point for running down to deep Batman boundary for 4 runs. The quick outfield with the direction of the wind. That ball is getting extra phase as well, defeating 2 fielders. They run well to stop that boundary, but still ball winning the race against that 2 fieldsman. Score jumped into 9 on the board for the loss of 1 wicket in the over number 2nd in progress. Pradeep is on strike. Saurabh. Again the full toss, looking for the switch hit, but not really getting enough bat onto that. And fielder from Gully region quickly moving towards his left in fact. And fields the ball with the addition of that single. Scoreboard moves on to 10 for the loss of 1 wicket in the over number 2nd in progress. Saurav again away from us. Right arm over the wicket, bowler's back drive, and Rajeshwar have to get away from the line of that stroke. The straight drive from the batter, 1 more addition to total with the addition of that single. Scoreboard moves on to 11 for the loss of 1 wicket in the over number 2 in progress. Saurav bowling with a short run up, round the wicket, delivers. This time Joseph full toss, and switch it comes into play, just like a left-hander hitting that stroke. And a similar kind, Pradeep just has got exquisite footwork and timing behind the stroke. And the score jumps into 17 on the board for the loss of 1 wicket. Over completed. 2 overs completed after completion of over number 2. Shetty Warriors are really playing here just like a Warriors, and scored 17. That means 8.5 runs per over the run rate. Progressing. ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ಹಾಗೂ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಒಂದು 500 ರೂಪಾಯಿಯ ಒಂದು ಬಂಡಲ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಕಳೆದು ಹೋದವರು CA ವಿನಿತ್ ಇವರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕು. ಅದರ ಸರಿಯಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಿ ಆ ಹಣವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. CA ವಿನಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ
captain of Udupi Tigers. ಅವರಲ್ಲಿ ಆಹ್ವಾನ ಉಂಟು, ದಯವಿಟ್ಟು ಅದರ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ನೀಡಿ ಆಹ್ವಾನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದೆ. ಮೀನ್ ವೈಲ್ ನೋ ಬಾಲ್ ಕಾಲ್ ಬೈ ಅಂಪೈರ್ because of that height of the delivery. That was a beamer, so that rightly so umpire Rajaratna sir to call that no ball, so that free hit delivery for the batter Pradeep. So 19 for the loss of 1 wicket. Karunasagar from the far end, bowling a third over of the innings. Again, that ball outside the line of off stamp. Just get away from that free hit delivery. Pradeep tried to cut that one. Excellent line here from Karunasagar. And you know exactly this is a free hit delivery. You need to beat the bat of Pradeep. And he succeeded in this previous delivery. 19 for the loss of 1 wicket. Karunasagar seaming in from the far end. Right arm over the wicket delivers, went for the reverse stroke, and this time well pitched up delivery. A little bit of folly, but the batter already made his mind that he will go in to play the switch it, premeditated attempt, and that's why the bowler Karunasagar, so intelligent in the occasion, just following the batter, bowled a little bit outside the line of off stump, and defeats the bat of Pradeep. Karunasagar. Right on the wicket again. That ball is outside the line of off stamp. Again, he's looking for the big shot on the offside region. Missed it completely. Back to back two dotted deliveries. On all in sudden, his partners coming down the track to Prajwal Kotian to say something for Pradeep Nayak, because they got a very good score on the board in 2 overs. Now Karunasagar delivers. This time absolutely right decision from umpire. Wide outside the line of off stump. Wide call by umpire. One more addition to total. Addition of that single scoreboard moves on to 20 on the board. 20 for the loss of 1 wicket. This is definitely going to be very interesting competition between these two teams. Both the teams has got number 1 and number 2nd place in the points table respectively. Air Titans as well as Shitty Warriors, but both the teams wanted to be in the topper in the points table. This time he reverse swept that one, and he finds the fielder. This time he drops the catch. He's taken a little bit lightly. That was a really straightforward catch for the deep cow point fielder. So he's taken a little bit lightly, and he holds the catch, but again that ball just slipping out of his hand. And the Pradeep Kotian, correction, yes, Pradeep has got life here. Now Prajwal Kotian, Pradeep Nayak got a life, and Prajwal Kotian is on strike. Karunasagar from the far end. Right, oh, what a shot! Just the moment ball is left the bat of Prajwal, everybody knows that this is a clean hit. The instrumental sound which is coming from the bat indicates that Prajwal, he got that one very sweet part of the bat, and he dispatches that one down to deep widish long on boundary for a 6. It's a much required punishment in this over. Didn't got enough runs so far, so that 6 really once again, and Shetty Warriors are strongly back in this game. 27 for the loss of 1 wicket. Again he tried to repeat that one. This time Karunasagar too clever, pitching that ball very short, quite deliberately, not to allow the batter to go for the one more big shot. Now look at the Prajwal Karunasagar knows that one delivery, which is all the efforts which is gone in vain because of that 1-6. That was definitely, that ball is in the slot, and that's why Prajwal got in quite easily. So 27 for the loss of 1 wicket. Very good going here. The run rate is exactly 9 runs per over for Shetty Warriors, and wait and see how many runs they will go into score. The projected score showing 54 runs in the similar run rate if they are able to get, and 54 is definitely going to be a very good score to depend. Wait and see the kind of game plan here from Titans to stop the flow of the runs of Shetty Warriors. Meanwhile, changing the commentary box as well, I would like to invite Gopi to take over the microphone in our national language, Hindi. Thank you.
धन्यवाद सतीश। तो यहाँ पर गेंद को इस वक्त खेल दिया खूबसूरती के साथ बैकवर्ड थर्ड मैन सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए, और इस चौके के साथ स्कोर अब बढ़कर पहुंच चुका है 31 रनों पर। सिटी वॉरियर्स एक बेहतरीन प्रगति यहाँ पर करता हुआ, और लीग स्टेज का राउंड रॉबिन लीग स्टेज का अंतिम मैच यहाँ पर खेला जाता हुआ एआर टाइटंस और सिटी वॉरियर्स के बीच। और गेंदबाज इस वक्त तैयार हरिकृष्णन गेंदबाजी कर फुल टॉस, एक बार फिर से गेंद को निकाला खूबसूरती के साथ बैकवर्ड थर्ड मैन पर, फील्डर वहां पर मौजूद, और इस बीच 2 रनों का इजाफा यहां पर हो चुका है। तो ग्रुप के टॉपर होने के लिए इस वक्त संघर्ष जारी है एआर टाइटंस और सिटी वॉरियर्स के बीच। और जहां तक सवाल है ओवर्स का, तो चौथा ओवर उनकी पारी का यहां पर प्रगति पर। हरिकृष्णन ने गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए गेंद एब्सोल्युटली गुड वन दिस टाइम, गेट सम एक्स्ट्रा बाउंस। मैं समझता हूं गेंद बल्लेबाज के माथे पर टकराने के बाद, सिर पर टकराने के बाद सीधे निकली थी इस वक्त शॉर्ट थर्ड मैन पर, और रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला। तो 3 गेंदे इस ओवर में फेंक चुके हैं हरिकृष्णन एम, और 6 रन अब तक वो प्रदान कर चुके हैं। चौथा ओवर यहाँ पर प्रगति पर, और प्रदीप इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए, गेंदबाज इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। दाहिने हाथ ओवर द विकेट, फुल टॉस, इस बार रिवर्स शॉट खूबसूरती के साथ निकाला कवर पॉइंट क्षेत्र पर, और गेंद इस वक्त डीप कवर पॉइंट सीमा रेखा के अंदर जब तक फील्ड की जाए। बल्लेबाज के पास मौका था 2 रन प्राप्त करने का, और इन 2 रनों के साथ स्कोर अब बढ़कर पहुंच चुका है 35 रनों पर, 35 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। निस्संदेह यहाँ पर एक बेहतरीन प्रगति करता हुआ सिटी वॉरियर्स, और ये दोनों बल्लेबाज क्रीज पर जो मौजूद हैं एक बेहतर तकनीक के साथ यहाँ पर बल्लेबाजी करते हुए, और हरी गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ऊपर द विकेट गेंदबाजी करते हुए, फील्डिंग में जमावट यहाँ पर चलती हुई गली एक्स्ट्रा कवर, और मिड विकेट और शॉर्ट फाइन लेग इस वक्त तैनात। ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार, फ्लाइटेड गेंद को हल्के से इस वक्त मोड़ दिया, गेंद पहुंची शॉर्ट स्क्वायर लेग पर, 1 रन का इजाफा यहां पर हो चुका है। और थोड़ी सी मिसफील्ड वहां पर, कोल्यूशन मेरे ख्याल से, और खिलाड़ियों को चोट आई है लगता है, लेकिन खुद वो संभल चुके हैं इस वक्त। गेंद को फील्ड करते समय दोनों खिलाड़ी टकरा गए थे आपस में, और आखिरकार सौभाग्यवशात कोई ज्यादा चोट उन्हें नहीं आई है, और 1 रन का इजाफा, स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 36 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर। एक गेंद अभी भी इस ओवर में बाकी। राउंड रॉबिन लीग दौर का अंतिम मैच यहां पर खेला जाता है सिटी वॉरियर्स और एआर टाइटंस के बीच में। ग्रुप के टॉपर टीम होने के लिए इस वक्त संघर्ष जारी है। ये गेंद उछालना चाहा, चूंकि विकेट कीपर ने गेंद को फील्ड कर लिया, और ओवर की समाप्ति 4 ओवर की समाप्ति के बाद 36 रन बन चुके 1 विकेट के नुकसान पर। 36 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 4 overs फॉर City Warriors. Now in overall calculation, it's going to be 2 overs remaining in their innings. तो 5वां ओवर यहाँ पर शुरू होता हुआ हमसे दूर वाले छोर से, और गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए नीलेश, और यहाँ पर सामना करने के लिए तैयार प्रदीप। तो फील्डिंग में जमावट यहाँ पर चलते हुए, और नीलेश गेंदबाजी यहाँ पर शुरू करते हुए, दोपहर का वक्त लगभग 2:55 यहाँ पर बच चुके हैं, और इस श्रृंखला का इक्कीसवां मैच, 21st मैच ऑफ दिस टूर्नामेंट, एंड लास्ट राउंड रॉबिन लीग मैच इज नाउ प्रोग्रेसिंग है। गेंद निकल चुकी है फाइन इस वक्त थर्ड मैन की दिशा में, लंबा दौड़ लगाते हुए इस वक्त फील्डर, लेकिन यहाँ पर गेंद को रोकने में वो सफल हुए हैं जरूर, और 2 रन का इजाफा यहाँ पर हो चुका है, और इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 38 रनों पर, और 5वां ओवर उनकी पारी में यहाँ पर प्रारंभ हो चुका है। गेंदबाज इस वक्त तैयार नीलेश प्रदीप के लिए,
दाहिने हाथों पर द विकेट गेंदबाजी करते हुए अगली गेंद, ये गेंद अच्छी गेंद थी, ऑन साइड पर गेंद को मुड़ना चाहा, फॉरवर्ड शॉट लेग पर गेंद पहुंची जहां पर गेंद को फील्ड कर लिया गया और इस बीच रन बल्लेबाज को नहीं मिलेगा। स्कोर रुक चुका है 38 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर। 38 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट इन द ओवर नंबर 5 इन प्रोग्रेस। और जहां तक का गेंदबाजी का सवाल है, गेंदबाज अपनी अगली गेंद लेकर तैयार, बोल्ड आउट और इस बार सफल होते हुए गेंद को ऑन साइड पर उछालना चाहा, बिल्कुल सीधी रफ्तार के साथ गेंद स्टंप्सों पर आ टकराई, गिल्लियां बिल्स उड़ते हुए और विकेट नंबर 2 यहां पर गिर चुका है। प्रदीप की पारी यहां पर समाप्त हो चुकी है। इट्स 38 फॉर 2 इन द ओवर नंबर 5। Subhash Chandra, the number 4 batsman, is now comes out to the middle for Shetty Warriors. और गेंदबाज इस वक्त तैयार, पटकी हुई गेंद ऑन साइड पर गेंद को उछालना चाहा, वाइड का इशारा अंपायर का, 1 रन का इजाफा यहाँ पर हो चुका है और 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 39 रनों पर। अंतिम लीग स्टेज का मैच केवीसी प्रीमियर लीग सीजन 3 2022 के अंतर्गत यहाँ पर खेला जाता हुआ। इस मैच के बाद प्ले ऑफ मैचेस खेले जाएंगे और यहाँ पर बेहतर गेंद थी, उछालना चाहा था चूंकि गेंद के लाइन पर नहीं आ पाए और गेंद सीधे इस वक्त फील्ड कर ली गई है। फॉलो थ्रू में गेंदबाज द्वारा रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिलेगा और कुल मिलाकर 2 गेंदें इस ओवर में अभी भी बाकी और गेंदबाज फुल टॉस ऑन साइड पर पुल किया, मिड विकेट पर फील्डर के हाथों में और इसी के साथ एक और विकेट गिर चुका है। प्लेसमेंट बिल्कुल गलत और आखिरकार उन्हें भुगतान न करना पड़ा। डीप मिड विकेट के फील्डर ने आखिरकार कोई गलती नहीं की और एक और विकेट यहां पर गिर चुका है 39 रनों पर। इट्स 39 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट विद जस्ट 7 balls now left in their innings. तो गेंदबाज इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए इस ओवर में अंतिम बार यह गेंद ऑन साइड पर गेंद को खेलना चाहता, चूंकि ओवर की समाप्ति 5 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है इस वक्त 39 रन 3 विकेट के नुकसान पर शेट्टी वॉरियर्स का। अब अंतिम ओवर उनकी पारी में बाकी। तो अंतिम ओवर लेकर गेंदबाज इस वक्त तैयार, फ्रेडविन गेंदबाजी यहां पर शुरू करते हुए और अश्वत इस वक्त सामना करने के लिए तैयार और फील्डिंग में जमावट इस वक्त करते हुए गेंदबाज फ्रेडविन। अश्वत के लिए क्लोज फील्डिंग इस वक्त लगाई गई है, शॉट एक्स्ट्रा कवर पर एक फील्डर तैनात, गली पर एक फील्डर 20 के दायरे के अंदर, जबकि शॉट्स को लेकर और शॉट मिड विकेट इस वक्त मौजूद और ओवर की पहली गेंद लेकर इस वक्त फ्रेडविन तैयार अश्वत के लिए। दाहिने हाथ राउंड द विकेट, पहली गेंद पटकी हुई गेंद खूबसूरती के साथ अपर कट खेला जरूर लेकिन गेंद सीधे पहुंचे कवर पॉइंट फील्डर के हाथों में। ऑफ द बैक फुट गेंद को इस वक्त खेला था लेकिन स्क्वायर ऑफ द विकेट, लेकिन अंतिम क्षण में गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में डीप कवर पॉइंट पर और इसी के साथ एक और विकेट यहां पर गिर चुका है 29 रन 4 विकेट के नुकसान पर। इट्स 39 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट एंड नाउ जस्ट 5 balls remaining in their innings.
तो गेंदबाज इस वक्त तैयार, दाहिने हाथों पर था विकेट। इस बार बेहतर गेंद थी, एब्सोल्युटली स्लो वन, और लगभग गेंद के बल्ले के अति निकट टिप्पा खाते हुए गेंद की लाइन पर नहीं आ पाया और गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में। रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला। 39 रनों पर स्कोर बोर्ड रुक चुका है 4 विकेट के नुकसान पर। 4 गेंदें सिर्फ अब बाकी उनकी पारी में। फ्रेडविन क्रॉस था इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए, दाहिना तो उभरता विकेट। ये गेंद इस बार बेहतर गेंद, एक बार फिर से फ्लाइटेड गेंद, स्ट्रोक खेले में चूके और लगभग बल्ले का अंदरूनी किनारा इस वक्त टकराया था। तो 1 रन के साथ दोनों बल्लेबाज अपना छोड़ यहाँ पर बदल चुके हैं। 40 रनों पर स्कोर बोर्ड पहुंच चुका है। 3 गेंदें अब बाकी और स्ट्राइक पर इस वक्त शशांक आ चुके हैं और वो इस वक्त सामना करने के लिए तैयार फ्रेडविन की गेंदों का। फ्रेडविन गेंदबाजी यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए, पटकी हुई गेंद, नो बॉल का इशारा और 1 रन अतिरिक्त एक्स्ट्रास के रूप में उनके खाते में जोड़े जाएंगे। और फ्री हिट गेंद इस वक्त बल्लेबाज के लिए। ओवरस्टेप यहां पर किया था मेरे ख्याल से, ओवरस्टेप, और इस बीच नो बॉल घोषित करते हुए अंपायर 41 4 विकेट के नुकसान पर। इट्स 41 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट। और गेंदबाज फ्रेडविन अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार। कुल मिलाकर 3 गेंदें अब उनकी पारी में बाकी। फ्लाइटेड उछाला लॉन्ग ऑन पर, लेकिन वहां पर फील्डर मेरे ख्याल से मौजूद थे, लेकिन थोड़ा सा स्क्वायरर, जब तक गेंद को एक टिप्पे के बाद वो फील्ड करके थ्रो करे। बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का। स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है इस 1 रन के साथ 42 रनों पर 4 विकेट के नुकसान पर, जबकि 2 गेंदें अब उनके पारी में बाकी। और फ्रेडविन गेंदबाजी यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए, दाहिना तो बढ़ता विकेट। ये गेंद फ्लाइटेड गेंद, बेहतर गेंद थी। इस बार गेंद को रिवर्स शॉट खेलना चाहा, चूंकि गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में। रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिलेगा। अंतिम गेंद बाकी। द लास्ट बॉल ऑफ शेट्टी वॉरियर्स इनिंग्स इज नाउ कमिंग अप। अंतिम गेंद लेकर फ्रेडविन यहाँ पर तैयार। गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए, दाहिने हाथ के बल्लेबाज इस वक्त सामना करते हुए। फुल टॉस ऑन साइड पर गेंद को मोड़ा, गेंद जाती हुई मिड विकेट पर और सीमा रेखा के अंदर। जब तक गेंद को रोका जाता, बल्लेबाज के पास मौका 2 रन प्राप्त करने का। वाइड थ्रो, लेकिन वहां पर गेंद को फील्ड करते हुए और तीसरे रन के लिए जाते समय यहां पर रन आउट हो चुका है। तो इसी के साथ द इनिंग्स इज अप, द स्टिपुलेटेड ओवर्स आर कंप्लीटेड एंड दे फिनिश्ड विद 44 for the loss of 5 wickets in the stipulated 6 overs for City Warriors. And now 45 the target for AR Titans to they have to score for victory 45 runs to become the topper of the group in this round robin league stage. And let's see, can they reach the target or not. 45 the target for them in 6 overs. Their innings now going to begin with the shot pile. उनकी पारी की शुरुआत एक छोटे से अंतराल ब्रेक के बाद यहाँ पर होगी, और एक छोटे से ब्रेक के बाद हम आपके सामने उपस्थित होंगे अंग्रेजी में सतीश के साथ, जब यहाँ पर AR टाइटंस की पारी की शुरुआत होगी। धन्यवाद, थैंक यू।
Yes, now ready for the chasing. Here, Air Titans opening batters came into middle. Tanai and Predwin. So Ram Ganesh starts the first over. Off the back foot, Tanai crashed that one down to cow point region, but not more than a single. Predwick picked up a single, so with that single, they started their journey. 45 is the target. Ram Ganesh, right arm over the wicket, short pitch delivery, but not that much of shot enough to go for the big shot. Wall mark out to Mr. Ravi Urwa, one of the very best Kabaddi player of the all time in South Kent district on behalf of organizer and cricket lovers. Warm welcome for Ravi Urwa. So score is 1 without loss of any wicket. Ram Ganesh from the far end, right arm over the wicket to Tanai. Again, lovely delivery. Look at that one. He's been outstanding, going up for the caught behind. But more than anything else, I think just an excitement rather than the confidence. Because Ram Ganesh is not really appealing now. Umpire not satisfied. And both the umpires are unmoved, saying that it's not out. And even Tanai also is very confident. He's just standing there, just seeing his body language. Looks like that ball is just missed the bat, outside edge of the bat. And nothing has happened. But Ram Ganesh has been outstanding so far in his bowling. Who bowled the many number of maiden overs, and he was the one of the best contender as well, the best bowler as well as the man of the series. Again, one more good delivery, just moving from the good length spot, getting his extra bounce as well. Even the batter is very tall, but still he couldn't manage to tackle with that bounce. Again, look at the deviation, absolutely perfect, jagging back into the batter from outside the line of off time. That was a fantastic delivery. He's bowling some in-swing deliveries, some the straighter one. Sometimes he's just hitting the deck hard to get some extra bounce as well. Mixing up the delivery very well. That's why it's a feature of his success so far. This time short pitch delivery and batsman off the back foot and drives that one just like the forearm tennis stroke from the batter Tanai. The first, it was quite interesting to see that, Gopi, it's the first boundary which is considered in this tournament. And that was shows the Ram Ganesh how accurate he's been. The last delivery, and Tanai just looks like you know exactly there is no long off at all, and played it down to deep long off boundary for 4 runs. 5 without loss of any wicket. Malesh brought into attack. C. Malesh from the commentary box end. Target is 45. That means 40 required from 30 balls. Predwick going to face the second over of the power play. Malaysia from the commentary box and away from us, right arm over the wicket. Nicely get the placement, just closing the face of a bat. Predwick just gets a single down to short square leg region. With a single scoreboard moves on to 6 on the board without loss of any wicket. Shetty Warriors topper in the points table. This time he lofted, and he lofted quite handsomely, got the distance as well. Lovely shot there from Tanai, using his height very well, and just a stand and delivered, effortlessly played. Just hit that one to the merit of the delivery, and he got the distance right. 11 for the loss of 1 wicket. This time one more. This time I think is a chance here for the fielder to take the catch. And mid-off fielder takes a very good catch. Good judgment.
the Samarth, maybe it's an easy catch, but sometime when the ball is very high up in the air, not that much of easy to judge the catch. And he's judged that one very well. So Tana is back into pavilion after played a small cameo for his team. It's one boundary and a 6. And he got all the runs from the bat. It's 11, 12 for the loss of 1 wicket. The new batter came into middle. Saurav, the wicketkeeper missed it. Good piece of fielding there by the back fielder. Chance of run out, and he drags his bat in the last moment. And he saves his wicket, and not only saves the wicket, but he got a single for his team. The 13 on the board for the loss of 1 wicket. Samarth back on strike. (13) for the loss of 1 wicket. The over number 2 in progress. 45 is the target. 32 more runs required for the victory. Malesh bows. This time across the line of the dead, swinging that one down to mid-wicket region. Protection there, the deep mid-wicket. Not more than a single for Samarth, and with that single scoreboard moves on to 14 for the loss of 1 wicket. Malesh, the first time we are seeing that the opening bowler getting some punishment. The Air Titans, one more team which is played very well in their league matches. This time almost a low full toss around the legs, and that was a misjudgment by the fielder. Ball running down to deep mid-wicket boundary for 4 runs. I don't think that kind of the fielding is required. Not really required in that occasion. He's just charging into the ball to try to take the ball in a single hand, and he's just faced the penalty for that. Lucky boundary. And lucky boundary, with that lucky boundary, score jumped into 18 now after completion of 2 overs, and now at the same time City Warriors, after completion of 2 overs, the comparison look similar. The City Warriors are 17 for the loss of 1 wicket, and now AR Titans are 18 for the loss of 1 wicket. That shows the level of competition between these two. This match is evenly poised. So both the teams really played a very good game of cricket in this particular tournament. That's why they're sharing the first and second place respectively in this points table. Now coming back to the equation, 18 deducted from 45. That means 27 more runs required for the victory in remaining 24 deliveries. Air Titans, they are looking in a commanding position here. They lost only 1 wicket. But City Warriors, they got some very good bowling department. And from the far end, looks like Pradeep brought into attack. Right over the wicket, lovely delivery. Just like I'm mentioning about City Warriors, they got some excellent bowling department. All we can see that they're professionals as far as the bowling is concerned. There are really no exactly situation that what kind of bowling is required. There's a much required daughter delivery there from Pradeep. Right over the wicket again. That time I think the direction of the line is not good. Pissed it on the middle stump, but off cutter in swing delivery. And that ball going further away outside the line of leg stump, wide called by umpire. 1 more addition to total. 19 for the loss of 1 wicket. Pradeep. Right over the wicket. Full set one. Ball is in there. Wicket keeper Malesh going to that catch. But ball is just going away from him. And couple of runs. Lucky escape here for Saurav. Tried to pull that one. Not quite getting hold of that one properly. Not really using the depthness of the crease when he wanted to play that full shot. Where he was standing, tried to pull that one. And he got a top edge and got a couple of runs. With that couple of runs, scoreboard was under 21 for the loss of 1 wicket. That means that 24 more runs required for the victory. Pradeep from the far end. Right arm over the wicket, looking for improvisation, but no contact with the bat. But ball is deflected from the leg. And there is no addition for the run. 21 for the loss of 1 wicket. Pradeep again from the far end. Right arm over the wicket delivers.
Sensible batting there from Saurav, seeing that that was a little bit a Yorker line delivery, taking that one in the pull and just dabbing that one down to short cover point region for an easy single. With that single, scoreboard moves on to 22 for the loss of 1 wicket. 23 more runs required for the victory. Over number 3 in progress. 20 balls, 23 runs required. Pradeep right over the wicket, almost up. Predwin is sitting in the pitch, try to look for some scoop shot, just like a Dilshan Scoop, the specialist of scoop shot, the former Sri Lankan cricketer. And this time the ball is just going over the top of his bat. Wicketkeeper behind the stump did the rest, and there is no chance of any run. This time squared that one beautifully, and square cut comes into play down to deep backward point region. Before the fielder from a short backward point region to field the ball down at deep point. Ample time for Predwin to get a couple of runs. With that couple of runs scored, jumped into 24 now. 21 required from 18 balls. They have 7 runs per over the required mandate for Air Titans. And they got all 8 wickets in hand. Just comparison after completion of 3 overs. The Shetty Warriors are 27 for the loss of 1 wicket. That's a little bit upper hand comparison is concerned. But 21 required from 18 balls. So looks like this match is inching towards a nail-biting finish. And before the next over will going to start, I would like to invite Gopi to take over the microphone in our national language, Hindi. Thank you. धन्यवाद सतीश. So the equal battle is now continuing here. 21 required for AR Titans for victory against City Warriors, and still they got 9 wickets kept intact. और चौथा ओवर लेकर इस वक्त गेंदबाज तैयार. रवि इस वक्त गेंदबाजी शुरू करते हुए पहली गेंद बैकफुट पर गए, खूबसूरती के साथ गेंद को निकाला, लेकिन बेहतरीन फील्डिंग उस वक्त पॉइंट फील्डर द्वारा डाइविंग लगाते हुए गेंद को उन्होंने रोका. और कम से कम 2 रन बल्लेबाज को स्ट्रोक पर मिल सकता था, लेकिन डाइविंग स्टॉप की वजह से सिर्फ 1 रन बल्लेबाज इस गेंद पर प्राप्त करते हुए, और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 25 रनों पर. और इस बीच अगली गेंद लेकर तैयार, ऑन साइड पर गेंद को मोड़ना चाहा था, कुछ हद तक ज़्यादा ऑप्शन से बाहर की ओर नहीं निकल रही थी, और गेंद सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथों में. फ्रेडविन क्रॉस था इस वक्त सामना करते हुए रविंद्र की गेंदों का. दाहिने हाथों पर विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए ये गेंद फ्लाइटेड इन द एयर, लेकिन गेंद पॉइंट फील्डर के दाईं ओर इस वक्त टिप्पा खा चुकी है. ऐसा कहना पड़ेगा, दोनों फील्डरों के बीच गेंद टिप्पा खाई थी इस वक्त, और इस बीच 1 रन का इजाफा यहाँ पर हो चुका है. स्कोर 1 रन के साथ बढ़कर पहुंच चुका है अब 26 रनों पर. 26 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट इन द ओवर नंबर 4 इन प्रोग्रेस. और रविंद्र एक बार फिर से गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए दाहिना तो बढ़ता विकेट, ये गेंद ऑन साइड पर उछालना चाहा, गेंद पहुंची इस वक्त शॉर्ट फाइल की दिशा में. 1 रन फिर से मिलेगा, 22 का इशारा. 27 रन सिर्फ सिंगल्स के रूप में इस वक्त बनते हुए AR टाइटंस के लिए, और एक बेहतर लेंथ और लाइन के साथ इस वक्त गेंदबाजी करते हुए गेंदबाज सिटी वॉरियर्स के, और अपनी अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार. दाहिने हाथ ऊपर तक विकेट गेंदबाजी करते हुए ये गेंद फुल टॉस पुल किया लॉन्ग ऑफ पर, लेकिन मैं समझता नहीं, गेंद इस वक्त सीमा रेखा को पार कर चुकी है 4 रनों के लिए. लॉन्ग ऑफ पर फील्डर मौजूद थे, लेकिन गेंद तक वो पहुंच नहीं पाए, और यहाँ पर 4 रन प्राप्त करते हुए बल्लेबाज. और फ्रेडविन क्रॉस्टा जो कि जिन्होंने चौका इस गेंद पर लगाया था, स्कोर इस चौके के साथ बढ़कर पहुंच चुका है 31 रनों पर. 31. एंड नाउ
14 to get now in remaining 13 balls. इस बार कट किया बैकफुट पर जाने के बाद बेहतर स्टॉप पॉइंट पर नॉट मोर देन अ सिंगल और स्कोर 1 रन के साथ बढ़कर पहुंच चुका है 32 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर और 4 ओवर की समाप्ति यहाँ पर हो चुकी है। 12 गेंदें बाकी हैं, 13 रन और बनाने हैं इस वक्त एआर टाइटंस को इस ग्रुप स्टेज में टॉपर टीम बनने के लिए। तो राउंड रॉबिन लीग दौर का अंतिम मैच यहां पर खेला जाता हुआ केवीसी प्रीमियर लीग सीजन 3 2022 के अंतर्गत और गेंदबाजी इस वक्त संभालते हुए प्रदीप इस वक्त गेंदबाजी शुरू करते हुए और नया ओवर यहां पर शुरू होता हुआ उनकी पारी में फ्रेडविन इस वक्त सामना करने के लिए तैयार और ओवर की पहली गेंद 13 to get now from 12 balls दाहिने हाथ ओवर द विकेट। ये गेंद ऑन साइड पर गेंद को बोलना चाहा, स्टंप्स को कवर करने के बाद गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में। रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिलेगा। डॉट गेंदों की सख्त जरूरत इस वक्त सिटी वॉरियर्स के गेंदबाजों को कमबैक करने के लिए और गेंदबाज अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार। ये गेंद चिप किया मिड ऑफ पर, फील्डर थोड़ी सी स्क्वायर तैनात, एक्स्ट्रा कवर पर थोड़ी सी मिस फील्ड और इस बीच बल्लेबाज के पास समय था कि वो दूसरा रन यहां पर पूर्ण कर सके और इन 2 रनों के साथ स्कोर अब बढ़कर पहुंच चुका है 33 रनों पर। इट्स 33 नाउ फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। 34 now for the loss of 1 wicket. 10 balls now remaining. इस बार बॉल्ड आउट। शफल होते हुए गेंद को ऑन साइड पर उछालना चाहा, गेंद स्टंप्सों पर टकराई और एक और विकेट यहां पर गिर चुका है। अब इक्वेशन है 9 गेंद बाकी और रन्स चाहिए इस वक्त 11। तो गेंदबाज प्रदीप नायक का इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए नए बल्लेबाज करुणा सागर इस वक्त क्रीज पर मौजूद। 11 रन चाहिए 9 गेंदों पर विजय के लिए और प्रदीप गेंदबाजी यहां पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए ये गेंद इस बार गेंद को ड्राइव कर दिया जगह बनाते हुए वाइड लॉन्ग ऑफ पर। जब तक गेंद को वहां पर फील्ड किया जाता बल्लेबाज के पास मौका 1 रन प्राप्त करने का। 35 for the loss of 2 wicket. 10 runs to get now from 8 deliveries. So the equal battle is now going on here to getting the topper team of the stage of the league group between these two teams. और गेंदबाज एक बार फिर से तैयार, फुल टॉस पुल किया इस वक्त मिड विकेट पर और इस कैच को वहां पर लपक लिया गया। बेहतर जजमेंट के साथ इस कैच को लपका। अगर ये स्ट्रोक चौके और छक्के के रूप में परिवर्तित होता तो निस्संदेह यहां पर एआर टाइटंस इस मैच में पूरी तरह वापस आ सकता था, लेकिन यहां पर विकेट गिर चुका है और विकेट के पतन के साथ लक्ष्य इस वक्त कुछ हद तक और कठिन होता हुआ एआर टाइटंस के लिए। 10 रन और चाहिए, गेंदें बाकी है 7। तो इस बार बेहतर गेंद थी, बेहतरीन ओवर की समाप्ति और अंतिम ओवर में अब चाहिए एआर टाइटंस को विजय के लिए
10 रन और 7 विकेट सुरक्षित और 6 गेंदें बाकी. 10 runs to score from last over for AR Titans for victory. They got 7 wickets in hand. So 10 to get from last over and the final over of their innings is now going to begin. पहली गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त तैयार. शशांक ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार. फुल टॉस इस बार पुल किया है. वाइड इज लॉन्ग ऑफ पर गेंद जाते हुए और वहां पर मैं समझता गेंद वेंट इनटू द गैप और 2 रन बल्लेबाज इस बीच पूर्ण कर चुके हैं. स्क्वायर ऑफ द विकेट गेंद को पंच किया था. अब गेंदें बाकी हैं 5. रन्स बनाने हैं 8. 8 to get from 5 deliveries और गेंदबाज इस वक्त तैयार. शशांक इस वक्त गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए 10 रन बनाने थे, अब 8 रन बनाने हैं. गेंदें बाकी है 5 और ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार. पटकी हुई गेंद, बेहतरीन गेंदबाजी, बेहतरीन विकेट कीपिंग, लेकिन बल्लेबाज का पिछला पैर क्रीज पर सुरक्षित और इस वजह से सब कुछ सुरक्षित बल्लेबाज के लिए. रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला. 4 गेंदें बाकी हैं. 8 रन अब चाहिए विजय के लिए. कम से कम एक करारा स्ट्रोक इस वक्त या टाइटंस को इस मैच में पूरी तरह वापस ला सकता है. 8 to get from 4 balls. शशांक गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए फ्लाइटेड जमीन के सहारे गेंद को घेरा खूबसूरती के साथ. गेंद इस वक्त सीमा रेखा को पार कर चुकी है 4 रनों के लिए. गोली की रफ्तार में गेंद को इस वक्त निकाला था इस धीमे गति के ओवर पिच गेंद पर. स्क्वायर ऑफ द विकेट 4 रन प्राप्त करते हुए और इस चौके के साथ अब 4 रन चाहिए विजय के लिए, जबकि गेंदें बाकी हैं 3. 41 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट. Just 4 runs they have to score for victory in remaining 3 balls. और दोनों बल्लेबाज इस वक्त कुछ बातचीत करते हुए और शशांक इस वक्त गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए और जो बल्लेबाज थे चेतन कुमार जिन्होंने पिछले गेंद पर बेहतर तरीके से इस चौके को झड़ा था. तो इस वक्त अपने पैरों में कुछ हद तक बाधा दर्द महसूस करते हुए करुणा सागर इस वक्त बल्लेबाजी से वापस आते हुए अपने प्लेयर्स डकआउट की ओर और उनका स्थान ग्रहण करते हुए दूसरे बल्लेबाज हरी जो कि इस वक्त क्रीज पर मौजूद. 3 गेंदें बाकी हैं और रन से चाहिए इस वक्त 4. और शशांक इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए चितन के लिए दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए ये गेंद उछाला. गेंद को लॉन्ग ऑफ पर और गेंद इस वक्त लॉन्ग ऑफ सीमा रेखा को पार कर चुकी है 6 रनों के लिए. और इस छक्के के साथ AR Titans finished on the top on the group stage. They finished with top on the group stage and they are the first team to qualify for the playoff round of this tournament as with the topper of the group. So all league stage matches are completed and the qualifier round match, playoff round match will going to begin within just a short while. The first match, the qualifier match number 1 will play right after the short break and
that match is now coming up within just a short while. Till then, we are taking a short break and we'll be back in the match number 1 of playoff qualifier number 1. That match starts within just a short while with my friend Satish in English when the next match will be starts right after the short break. Thank you. Dhanyavad.
Welcome back for the most important stage of this most prestigious PVA, little correction, KVC Premier League 2022 Season 3. Qualifier number 1, two top performer of this round robin league matches. They are clashing for the place for the finals of this prestigious cricket tournament. The winning team of this qualifier number 1 will going to get a place directly into the finals of KVC Premier League, so that level of competition just certainly is going to be very high, because two topper, number 1 and number 2, two top teams are clashing for the place in the finals. News here is that after winning the toss, captain of Shetty Warriors are elected to field first, so that opening batters for AR Titans are came into middle. Little bit correction, AR Titans captain won the toss and elected to the bat first, quite surprisingly. And maybe the reason that they wanted to get some good score, and so that they can put some pressure onto the batting department of Shetty Warriors. Whatever be the strategy, whatever be the game plan, but I think in this qualifier round, we are expecting some great battle between bat and ball between these two top performer of this cricket tournament. Meanwhile, two opening batters came into middle. I requested 12th man, extra player of Shetty Warriors, please report here. Extra player of Shetty Warriors, please report to the commentary box immediately. And Gopi, coming back to this two teams, AR Titans, suddenly they are the number 1 place in the points table. After they won their 5 matches out of 6, they got 10 valuable points. Suddenly they are the favorite of winning this match, but you cannot underestimate Shetty Warriors. They won 4 matches out of 6. And they got 8 points, and wait and see how well they managed to give competition here. Misfield there by Subhash Salian, the captain at back of cow point region. And before the fielder from short cow point to field that one, ample time for the batter to complete that couple of runs. Positive start here from Predwick. And he's a very good all-rounder for the side. The Predwin straight away is off the mark. Subhash Salian, CA. Might be a little bit of injuries for his knees, but still, I think he's putting his 100% in this game. This time he left to the reverse sweep and pays the penalty for that. Is that necessary? In the first ball itself, he playing for the unorthodox cricketing stroke. Pays the penalty for that. And the big wicket, the wicket of Predwick is back into pavilion. This is absolutely a mighty blow. And Gopi, quite surprisingly, because Predwick is a kind of batter who took his own time to settle down. But in this big game, that kind of mistake, I think it's no excuse at all. He's going for the unorthodox cricketing stroke. And try to hit that one over the top of that deep extra cover region, but I think it's a wrong shot selection and he pays the penalty for that. बिल्कुल सतीश, इस तरीके का स्ट्रोक पहले ओवर में खेलना काफी जोखिम भरा साबित होता है, और यहाँ पर फ्रेडरिक ने उस जोखिम को उठाना चाहा था और रिवर्स शॉट उन्होंने खेला जरूर है, लेकिन गेंद सीधे पहुंची मिड ऑफ फील्डर के हाथ में। फ्रेडरिक को कुछ गेंद देखकर परख कर खेलनी चाहिए थी, और यहाँ पर उन्होंने जल्दबाजी की, फलस्वरूप उनका विकेट गिर चुका है, और इस विकेट के पतन के साथ परेशानियां और उनके लिए बढ़ चुकी है। ये गेंद ऑफ स्टंप से बाहर की ओर निकलती हुई कट करना चाहा चुके विकेट कीपर के हाथ में। तो जहां तक एक बेहतर स्कोर का सवाल है सतीश, एआर टाइटंस को यहां पर एक बेहतर स्कोर अगर खड़ा करना है तो एक साझेदारी पार्टनरशिप यहां पर निभानी होगी। Exactly, Gopi, the partnership is so important, and Saurav is a new batter, just came into middle, and Ram Ganesh from the far end. Right arm over the wicket, he was cuts that one, not quite able to get that placement right, and a chance of run, no cycles, and oh my goodness, the bowler Ram Ganesh is tried to collect the ball just in front of the stump. That's why he missed it completely from his hand. Opportunity of run out is created, but the golden opportunity is missed out by the bowler Ram Ganesh in the dedication. Ram Ganesh so far is extra players of Shetty Warriors. Please report here in commentary box immediately. Ram Ganesh.
Oh, that was a beautiful delivery. Kept low indeed. That much of low delivery, and batsman couldn't do anything about that. There's no clue at all. Absolutely, absolutely, it's a bad luck. That ball is skidding and kept very low indeed. And Tanai surprised with that, seeing that delivery after ball pissed and kept very low indeed. And wicketkeeper behind the stump missed the ball, and they got opportunity to cross off for a single. With that single, scoreboard moves on to 4 on the board for the loss of 1 wicket. Ganesh balls. This time he lofted. He lofted high, and it's handsome. Ball is just touches the branches of the tree and landed inside the boundary line. But as per the rules and regulation of this particular cricket ground is concerned, even the ball is will going to land inside the boundary line. But if the ball hits the branches of the tree, that might be a 6. And first time looks like Ram Ganesh is been punished. And 10 runs Gopi coming from the first over. That means the Air Titans are the intention is very clear and just sending the message that why they are in the top in the points table. एग्जैक्टली सतीश, और पिछले ओवर की अंतिम गेंद पर गेंद की लाइन में कुछ गलत नहीं था, लेकिन जिस तरीके से गेंद तक पहुंचे थे बल्लेबाज काबिले तारीफ है। और अंतिम एक्शन में हालांकि उनके एक हाथ से उनका बल्ला बैट फिसल गया जरूर, लेकिन गेंद को मिडल ऑफ द बैट को कनेक्ट करने में सफल। और निस्संदेह इस पहले ओवर में 10 रन जोड़कर बेहतर शुरुआत कर चुका, और इसके जरिए एआर टाइटंस के बल्लेबाज दिखा चुके हैं कि वो टॉपर इस ग्रुप में क्यों रहे। Absolutely, and from the commentary box, and Malesh balls at one extra bounce. Absolutely. Again, that was a difficult pitch. Something in this pitch, the batsman started to see the something devils in the pitch, because the previous over we can see that ball is kept very low, and in this particular over, the first delivery, they got an extra bounce. It's a very difficult one for the batter to judge. Again, Bryce Baron like a place him straight to the hands of short mid off fielder, but misfielded by the fielder, so that Tanai managed to get the single for that. Tanai, coming back to Tanai, he's definitely going to be one of the surprise package in the batting department. So far, he's didn't got that much of runs from his bat, but the previous match, he got some runs, and he's just continuing his form in this match as well. That was a delivery, which is the batsman played that defensively. Tanai in the negation, he's in a hurry of getting the runs, and fortunately, the no-dam has done in the negation. So very good delivery in the negation there from Malesh. Balled a slower one to Prashant. This time again, lovely delivery indeed. Outside the line of off and going for the slash. Missed it completely. Then wicketkeeper behind the stump did the rest. Saurav is a striker. So far, it's a very good over there from Malesh. Needed some restriction, and so far he's did a very good job to restrict some runs. Again, that tried to pull that one. Not that much of shot enough to go for the pull shot. So far, it's a very good going here for Malesh. The kind of restriction which is badly required, and they done a great job here. Of course, the left of our commentary box, there's something, the WWF is going on. Two spectators out in the left of our commentary box. This time again, ball is in the air for the while, but is safely landed. If a M9 Sports cameraman will going to have a camera into left of our spectators gallery. There will be a fight is going on, but over number 2 completed, Gopi. It's a fantastic over. Just a single run is conceded and 1 wicket for that. बिल्कुल सतीश, सिर्फ 2 रन इस ओवर में गेंदबाज ने प्रदान किए, और यहाँ पर एक विकेट भी उन्होंने इस ओवर में प्राप्त किया। तो इस ओवर की बदौलत जहाँ तक 2 रन ना इस ओवर में प्रदान किए, सिर्फ 1 रन इस ओवर में प्रदान किए गेंदबाज ने, और एक बेहतरीन गेंदबाज यहाँ पर करने में सफल, बल्लेबाज पर अंकुश लगाने में सफल। लेकिन 4 ओवर का खेल अभी भी बाकी, और देखना यह है कि एआर टाइटंस इन बचे हुए 4 ओवर में और कितने रन यहाँ पर बटोर पाते हैं। लेकिन यहाँ पर टॉपर ग्रुप के टॉपर 2 टीमों के बीच यहाँ पर मुकाबला जो की जा रही है इस श्रृंखला के मेगा फाइनल में प्रवेश प्राप्त करने के लिए, और देखते हैं कौन सी टीम इस मैच में विजय दर्ज करती है और इस श्रृंखला के ग्रैंड फिनाले मेगा फाइनल में प्रवेश प्राप्त करती है। Exactly, Gopi. And from the far end, it's going to be a start of the over number 2. And from the far end, Ram Ganesh balls and dives that one down to deep extra coverage, and for an easy single. Now he's growing his confidence, looking very confident, Tanai. And with that single, scoreboard was on to 12 for the loss of 1 wicket. I request City Warriors, please don't bring the water without the permission of the field umpires.
from the far end, right arm over the wicket. Oh my goodness, that was a fantastic delivery indeed. Right on the block hold, and then again overthrow comes up so that they've got opportunity to come back for the second as well, and they made it quite easily. Not really required in the relegation because already I think Saurav is made his ground in that first run. So the fielder at backward point trying for the shy at the stump, missed it completely. They got opportunity to come back for the second as well. With that couple of runs, scoreboard moves on to 14 for the loss of 1 wicket. The competition is on between these two top teams to get the place in the final of this prestigious cricket tournament. Right above the improvisation, the ball is in the air for a while, but safely landed down to deep fine leg region. Fielder chasing the ball, and ball just winning the race against the fielders. Deep fine leg boundary for 4 runs. such a unorthodox kind of cricketing stroke here from Saurav. Just taking that one the full, and just a scoop is comes into play just over the top of that fine leg fielder, and he got boundary for that. So clever cricket, intelligent cricket there from Saurav. We know exactly the fine leg is inside the ring. Once he able to get that one over the top of that fine leg field and quick outfield here in UCG cricket ground. So that ball went very quickly down to the fine leg boundary for 4 runs. So first time Ram Ganesh looking a little bit expensive here. And scoreboard is 18 on the board for the loss of 1 wicket. Ram Ganesh from the far end, seaming in. Right arm over the wicket, he delivers. Again, a lovely technique here again from the batsman. Shaftan comes into play, going looking for the second. In comes a throw. Chance of run out. Wicket keeper Mallesh missed that throw completely from his hands. The opportunity is missed out. Excellent cricket there from Saurav, because once he quickly realized that there is a soft end comes into play, he just standing tall and negotiated very well with that bouncer, the bouncer delivery there from the bowler Ram Ganesh. But there is no fielder in the inside the ring, so he quickly realizing there is the opportunity of a couple of runs. They're running hard and putting some pressure onto the outfielder, and they got a very valuable couple of runs for that. 20 for the loss of 1 wicket. Intelligent cricket there from Saurav. Ram Ganesh, right arm over the wicket. This time, too clever, and the chance of run out. And oh my goodness, Mallesh is not interested for the run out. Seeing that there's no one there to cover the backup, the throw. That's why he's not interested. Allow the batters to complete the single. This time again, one more interesting kind of cricketing stroke attempted there by Saurav. This time he wanted to play that one scoop shot over the top of that third man region. But luckily that ball didn't carry to the field. Of course, that ball is carried a little bit to that short third man fielder. Maybe that ball just slipping out of the hands, the trying hands of that short third man fielder. He got a life for that. 21 again. Beautifully bowled there by Ram Ganesh. Just to try to york the batter, but batter Tanai taking that one in the full towards the deep mid wicket region with that single scoreboard moves on to 22 on the board for the loss of 1 wicket. Outstanding over here for Air Titans, and after a completion of 3 overs, they managed to get 22 runs and run rate exactly. They got 7.33 runs per over. And I think it's a very good start. And now got 9 wickets in hand. They got 3 overs to go. And in the similar run rate, if they're able to get that runs, they may get almost 47 or 48 runs. And I think that might be the very good score to defend against very mighty Air Titans. And Gopi, the 3 overs remaining, I think it's a very good start here for Air Titans. Need to be, because the captain won the toss, elected to bat first, so know exactly what could be the game plan, what could be a target they will go into set. And in this particular situation, looks like Air Titans are really managed very well to get that 22 runs in 3 overs against a strong bowling department. बिल्कुल सतीश, जैसा कि आपने फरमाया, अगेंस्ट द स्ट्रांग बॉलिंग डिपार्टमेंट इस वक्त एयर टाइटंस के बल्लेबाजों ने 22 रन बटोरे और एक बेहतर शुरुआत कही जाएगी। सिर्फ दूसरे ओवर को अगर एक्सक्लूड करके देखा जाए, जिसमें गेंदबाज ने सिर्फ 1 रन प्रदान किया। ये गेंद पुल किया इस वक्त डीप मिड विकेट पर गेंद जाते हुए, और जब तक गेंद को वहां पर फील्ड किया जाता, बल्लेबाज के पास मौका 1 रन प्राप्त करने का। और निस्संदेह कम से कम 45 से 50 के आंकड़े तक इस वक्त पहुंचना होगा उनके बल्लेबाजों को, अगर उन्हें एक चुनौती भरा स्कोर यहां पर खड़ा करना है तो सिटी वॉरियर्स के खिलाफ। और क्रीज पर मौजूद ये दोनों बल्लेबाज
तनय और सौरभ जानते हैं कि उन्हें इस वक्त क्रीज पर टिकनी है। ये गेंद इस बार बैकफुट पर गई, गेंद को कट किया, इस वक्त पॉइंट की दिशा में गेंद पहुंचे और इससे पहले की गेंद को वहां पर फील्ड किया जाता बल्लेबाज के पास मौका 1 रन प्राप्त करने का। 24 रन बन चुके हैं 1 विकेट के नुकसान पर। कुल मिलाकर पहले ओवर में 10 रन बने थे, दूसरे ओवर में सिर्फ 1 रन बना, तीसरा ओवर में 11 रन बने और ये चौथा ओवर जारी है जिसमें अब तक सिर्फ 2 रन यहाँ पर बन चुके हैं। और रविंद्र इस वक्त गेंदबाजी यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए अंपायर से कुछ बातचीत करते हुए, इस वक्त धूप बिल्कुल मैदान से गायब यहाँ पर हो चुकी है और बदली भरा वातावरण यहाँ पर छा चुका है। सूरज बादलों की आड़ में इस वक्त छिप चुका है, लेकिन क्रिकेट के लिए पर्याप्त वातावरण इस मैदान पर अभी भी मौजूद। इस बार बैकफुट पर गए, पंच किया, इस वक्त गेंद जाते हुए कवर पॉइंट पर और जब तक गेंद को वहां पर फील्ड किया जाता बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का। ऑफ द बैकफुट गेंद को इस वक्त खेला था, पंच किया था इस वक्त डीप कवर पॉइंट पर और इससे पहले की गेंद को वहां पर फीड किया जाता बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का। 25 रन बच चुके 1 विकेट के नुकसान पर। गेंदबाज की ओर की अगली गेंद, ये गेंद ऑन साइड पर उछालना चाहा, गेंद गई ऑफ साइड पर, गली की दिशा में 1 रन मिलेगा और 1 रन के साथ स्कोर अब बढ़कर पहुंच चुका है 26 रनों पर। इट्स 26 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट इन द ओवर नंबर 4 इन प्रोग्रेस। बराबर का संघर्ष यहां पर जारी क्वालिफायर मैच नंबर 1 में इस श्रृंखला के अंतर्गत। और रवि की ओर की अगली गेंद, ओह बॉल डाउन, एब्सोल्युटली परफेक्ट इन स्विंगिंग यॉर्कर और गेंद ब्लॉक होल पर टिप्पा गई, सीधे पिंडर ऑफ स्टंप पर जा टकराई, गिल्लियां बेल्स ऑफ होते हुए और इस इन स्विंगिंग यॉर्कर की बदौलत यहां पर ये विकेट वो प्राप्त कर चुके हैं और यहां पर विकेट नंबर 2 गिर चुका है। बल्लेबाज तनय आउट होकर पेविलियन वापस लौटते हुए एक बेहतर पारी खेलने के बाद और दूसरा विकेट यहां पर गिर चुका है, जबकि ओवर नंबर 4 उनका प्रगति पर। क्वालिफायर मैच नंबर 1 इस श्रृंखला का यहां पर प्रगति पर प्लेऑफ दौर के अंतर्गत और एक बेहतरीन क्रिकेट श्रृंखला जहां तक सवाल है केवीसी प्रीमियर लीग सीजन 3 2022 के अंतर्गत यहां पर खेला जाता हुआ 21 लीग मैचेस, 21 राउंड रॉबिन लीग मैचेस समाप्त होने के बाद 4 प्रतिष्ठित टीमें, 7 टीमों में से 4 प्रतिष्ठित टीमें इस प्ले ऑफ दौर में प्रवेश प्राप्त कर चुकी है। और इस बीच यह गेंद इस बार बल्ले का बाहरी किनारा, शॉट थर्ड मान के फील्डर के हाथों में गेंद, 1 रन इस बीच मिलेगा। विकेट कीपर स्वयं गेंद तक पहुंचे और इस बीच बल्लेबाज को रन 1 लेने से नहीं रोक पाए। तो 4 ओवर की समाप्ति यहाँ पर हो चुकी है और 4 ओवर की समाप्ति के बाद 27 रन बच चुके हैं। बेहतर ओवर यहाँ पर समाप्त हो चुका रविंद्र का, जिसमें सिर्फ 5 रन उन्होंने प्रदान किए और 4 ओवर की समाप्ति के बाद इस वक्त स्कोर है 6.75 रन प्रति ओवर। तो जहां तक का सवाल है बचे हुए 2 ओवर का, तो देखते हैं इन बचे हुए 2 ओवर में उनकी पारी में क्या क्या होता है। तो इस वक्त पानी का ग्रहण करने के बाद दोनों बल्लेबाज जो क्रीज पर मौजूद हैं, क्रीज पर इस वक्त मौजूद बल्लेबाज सौरभ और चेतन कुमार इस वक्त क्रीज पर मौजूद, स्ट्राइक लेने के लिए तैयार चेतन, जबकि गेंदबाजी इस वक्त सौंपी गई है गेंदबाज प्रदीप नायक के गेंदबाजी इस वक्त सौंपी गई है और चेतन इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। 5वां ओवर इस वक्त शुरू होता हुआ एआर टाइटंस की पारी में। तो निस्संदेह एआर टाइटंस लीग स्टेज के अंतिम मैच में उन्होंने सिटी वॉरियर्स को पराभव किया था एक रोमांचक मुकाबले में और ग्रुप के टॉपर होकर वो इस प्ले ऑफ दौर पर प्रवेश प्राप्त कर चुका है और ग्रुप के द्वितीय स्थानी उस हार के साथ हो चुकी है सिटी वॉरियर्स। और उनका सामना एक बार फिर से इस प्ले ऑफ दौर के पहले मैच में क्वालिफायर नंबर 1 में हो रहा है। दाहिने हाथ ऊपर विकेट, ये गेंद फुल टॉस पुल किया, इस वक्त गेंद हवा में, फील्डर गेंद के नीचे आते हुए अंतिम क्षण में इस कैच को लपकने में सफल और इसी के साथ यहां पर चेतन का विकेट गिर चुका है। ऐसा कहना पड़ेगा, नॉट क्वाइट गेट दैट वन राइट फ्रॉम द मिडल ऑफ द बैट। गेंद को उछाला था जरूर लेकिन काफी उम्दा, काफी ऊंचा और डीप मिड विकेट पर जो फील्डर खड़े हुए थे उन्होंने आखिरकार कोई गलती नहीं की। तो 27 रनों पर तीसरा विकेट यहां पर गिर चुका है, जबकि ओवर नंबर 5वां यहां पर शुरू हो चुका है और 2 विकेटें पिछले चंद गेंदों पर इस वक्त गिर चुके हैं। और जहां तक सवाल है नए बल्लेबाज का, तो इस वक्त करुणा सागर का आगमन यहां पर होता हुआ और वो इस वक्त ऑफ द स्ट्राइक हो चुके हैं। सौरभ बेहतर बल्लेबाजी का प्रदर्शन देते हुए 18 रनों के व्यक्तिगत स्कोर पर इस वक्त बल्लेबाजी करते हुए 13 गेंदों का
वो सामना अब तक कर चुके हैं। प्रदीप नायक की गेंदों का सामना करने के लिए तैयार, और प्रदीप इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए इस बार गेंद एक को ड्राइव कर दिया खूबसूरती के साथ एक्स्ट्रा कवर पर, लेकिन एक्स्ट्रा कवर फील्डर को बीट नहीं कर पाए और गेंद जब तक एक्स्ट्रा कवर पर फील्ड हो बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का। 28 रनों पर स्कोर बोर्ड पहुंच चुका है 3 विकेट के नुकसान पर। 5वां ओवर इस वक्त प्रगति पर, और एक बार फिर से गेंदबाज प्रदीप इस वक्त तैयार। दाहिने हाथ बाएं हाथ के बल्लेबाज करुणा सागर इस वक्त सामना करते हुए कुछ हद तक तब्दीली यहां पर चलते हुए मिड विकेट फील्डर को इस वक्त पीछे भेज दिया गया है। लॉन्ग ऑन इस वक्त मौजूद, लॉन्ग ऑफ एक्स्ट्रा कवर इस वक्त तैनात बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए, और ओवर की अगली गेंद लेकर इस वक्त गेंदबाज प्रदीप नायक तैयार। करुणा सागर इस वक्त सामना करते हुए डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर एक फील्डर को स्क्वायर तैनात किया गया है दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए, बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए, और प्रदीप इस वक्त गेंदबाजी यहां पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट, राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए बाएं हाथ के बल्लेबाज करुणा सागर के लिए। यह गेंद बेहतर, एब्सोल्युटली गुड वन, और गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में। आक्रामक स्ट्रोक खेलना चाहा था लेकिन इस गेंद के धीमेपन को वो समझ नहीं पाए और गेंद पर स्ट्रोक खेलने में चूके और गेंद सीधे विकेट कीपर के हाथों में पहुंची। बल्लेबाज को वंचित करने के बाद इस बीच रन से बल्लेबाज को नहीं मिला। 28 रन बन चुके हैं 3 विकेट के नुकसान पर। एक बार फिर से गेंदबाज प्रदीप इस वक्त गेंदबाजी करते हुए गेंद चिप किया करुणा सागर ने, लेकिन फील्डर वहां पर पीछे मौजूद। जी तोड़ कोशिश उन्होंने जरूर की गेंद तक पहुंचने के, लेकिन आखिरी मौके पर गेंद तक पहुंच नहीं पाए और इस बीच 1 रन का इजाफा यहां पर हो चुका है और 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 29 रन 3 विकेट के नुकसान पर। 5वां ओवर यहां पर प्रगति पर, और इस बार सौरभ स्ट्राइक लेने के लिए तैयार है। और जहां तक सौरभ का सवाल है, सौरभ की उपस्थिति इस वक्त एआर टाइटन के लिए बेहद जरूरी है। बेहतरीन बल्लेबाजी का प्रदर्शन वो यहां पर देते हुए 19 रनों के व्यक्तिगत स्कोर पर बल्लेबाजी करते हुए गेंद सफल होते हुए गेंद उछालना चाहा, क्योंकि पूरी तरह गेंद कुछ हद तक ऑप्शन से ज्यादा बाहर की ओर नहीं निकल रही थी। टिप्पा खाने के बाद नीचे रहती हुई एक्स्ट्रा क्विकर गेंद इस वक्त गेंदबाज ने फेंके थे और आखिरकार इस गेंद पर रन बल्लेबाज को नहीं मिला। स्कोर रुक चुका है 29 रनों पर 3 विकेट के नुकसान पर। 5वां ओवर यहां पर प्रगति पर और अंतिम गेंद इस ओवर की लेकर तैयार गेंदबाज प्रदीप नायक। उनके पैरों में कुछ हद तक इस वक्त चोट आई है, मैदान पर वो बैठ गए हैं, शायद पैर उनका वहां पर पैरों में मोच आ गई है शायद, तो काफ़ी बाधा वो महसूस करते हुए और टीम के अन्य खिलाड़ी उनका उपचार यहां पर करते हुए। एक गेंद अभी भी इस ओवर में बाकी है। कुल मिलाकर जहां तक सवाल है इस ओवर का, तो इस ओवर में एक किफ़ायती गेंदबाजी वो अब तक कर चुके हैं। सिर्फ 2 रन वो प्रदान कर चुके हैं और एक विकेट भी गिर चुका है इस ओवर में। और जहां तक सवाल है इस ओवर की अंतिम गेंद का, तो देखना यह है कि क्या गेंदबाज प्रदीप इस ओवर की अंतिम गेंद को फेंकते हैं या फिर उनके जगह कोई अन्य गेंदबाज उस ओवर को पूर्ण करता है। तो जैसा कि मैं फरमा रहा था, शाम का वक्त, हवा का रुख अभी भी काफ़ी तेज़ है। जिस तरह से घने वृक्षों के डाल के पत्ते इस वक्त लहरा रहे हैं, उससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इस वक्त हवा का रुख काफ़ी तेज़ और काफ़ी नहीं कुछ हद तक तेज़, और कुल मिलाकर कहना पड़ेगा बदली भरा वातावरण जो मैदान पर छा चुका है, क्लाउडी एटमॉस्फियर जिसे मैं कहते हैं। यहाँ पर घने बादल जो कि नीला आकाश को इस वक्त ढक चुके हैं, लेकिन वर्षा के बादल नहीं है और हम उम्मीद अपेक्षा करते हैं जब तक श्रृंखला ना समाप्त हो यहाँ पर वर्षा ना आए। तो सब कुछ सही सलामत इस वक्त प्रदीप के लिए। अंतिम गेंद अपनी ओवर के फेंकने के लिए तैयार। दाहिने हाथ ऊपर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए ये गेंद पटके हुए गेंद उछालना चाहा, चूंकि पूरी तरह गेंद की लाइन पर नहीं आ पाए, ऑफ कटर गेंद थी और गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में। रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिलेगा। तो 5 ओवर की समाप्ति 29 रन 3 विकेट के नुकसान पर यहाँ पर बन चुके हैं। 29 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट। और सतीश, जिस तरह से हमने पूर्वानुमान लगाया था 45 रनों का, 45 they should have to score if they have to post a competitive total in front of सिटी वॉरियर्स। और यहाँ पर 29 रन बन चुके हैं और एक बेहतरीन कमबैक। पहले ओवर में 10 रन बने थे, तब ऐसा पूर्वानुमान लगाया गया था एआर टाइटंस के बल्लेबाज छा जाएंगे, लेकिन उसके बाद बेहतर वापसी करते हुए बाद के 4 ओवर में सिर्फ 19 रन सिटी वॉरियर्स के गेंदबाज प्रदान कर चुके हैं और निस्संदेह ये एक बेहतरीन वापसी यहाँ पर कहलाएगी। Exactly, Gopi, because they need to be, because and in the last league matches, the same teams
They face each other, and in that match, Air Titans defeated City Warriors. Now, City Warriors knows that now what is the strong point, what is the weakness of the opposition, and they just made a just game plan. Of course, Gopinda, first when I hand over the microphone to you, that time I think it's a 22 in 3 overs. Now it's a 29. That means 7 runs which is came from that last 2 overs at a rate of exactly 3.5 runs per hour. That means that 2 overs is outstanding. And one is which is bowled by Pradeep from the far end, and one from this end. The 2 bowlers have done a great job here. And now this is a last opportunity for the batters of Air Titan to get some runs. Competitive total, at least 40 plus they wanted to get. And for that, I think one of these 2 batsmen have to look for some acceleration of run rate. बिल्कुल सतीश, अगर 40 का आंकड़ा अंतिम ओवर में पार करना है तो निस्संदेह यहाँ पर रन रेट के एक्सेलरेशन पर ध्यान देना होगा और करार स्ट्रोक्स इस अंतिम ओवर में लगाने होंगे बल्लेबाज को। देखते हैं अंतिम ओवर में उनके बल्लेबाज किस तरीके की बल्लेबाजी की रणनीति यहां पर अपनाते हैं। ग्रंथ गेंदबाजी इस वक्त आरंभ करते हैं। पहली गेंद इस बार ऑन साइड पर स्विंग किया है और गेंद इस वक्त डीप मिड विकेट पर लपक ली गई है। ऐसा कहना पड़ेगा, गेंद टिप्पा खाने के बाद कुछ ज्यादा उछाल लेते हुए और इस उछाल को पहचानते हुए गेंद को इस वक्त उछाला जरूर डीप मिड विकेट पर, लेकिन प्लेसमेंट कुछ खास सही नहीं और डीप मिड विकेट पर जो फील्डर खड़े हुए थे गेंद उनके हाथों में पहुंची और इसी के साथ करुणा सागर का विकेट यहां पर गिर चुका है और विकेट नंबर 4 यहां पर गिर चुका है, जबकि छठा ओवर उनकी पारी का यहां पर शुरू हो चुका है। और निस्संदेह जैसा कि आपने फरमाया सतीश, पिछले मैच में खेलने के बाद यहां पर सिटी वॉरियर्स के गेंदबाज एआर टाइटंस के बल्लेबाजों के बल्लेबाजी के प्रमुख अंशों को वो जान चुके हैं कि किस तरीके की, और उस प्रमुख अंशों को जानने के बाद वो इस वक्त किस तरीके की गेंदबाजी उन्हें करनी चाहिए ये भी वो जान चुके हैं और उसका असर इस मैच में इस वक्त नजर आता हुआ और सिर्फ 29 रन अब तक वो प्रदान कर चुके हैं। और जहां तक सवाल है बचे हुए 5 गेंदों का, तो इस वक्त बचे हुए 5 गेंदों में कम से कम अपनी टीम के आंकड़े को 40 के पार पहुंचाना जरूरी बन चुका है टाइटंस के बल्लेबाजों को। यह गेंद इस बार स्ट्राइट डाउन द ग्राउंड, गेंद को उछाला, गेंद पहुंचती हुई स्ट्रेट हिट एरिया पर, एकमात्र रन वहां पर मिलेगा, रक्षण प्रोटेक्शन मौजूद और 1 रन के साथ स्कोर अब बढ़कर पहुंच चुका है 30 रनों पर 4 विकेट के नुकसान पर। 30 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट इन द ओवर नंबर 6 एंड लास्ट इन प्रोग्रेस। ग्रंथ यहां पर 2 बेहतर गेंदें इस ओवर में फेंक चुके। अब नए बल्लेबाज का आगमन यहां पर हो चुका है, प्रशांत पई, जो कि इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। फील्डिंग में जमावट यहां पर चलती हुई, डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग और डीप मिड विकेट के दरमियान एक फील्डर इस वक्त जाते हुए और कुल मिलाकर लॉन्ग ऑफ थोड़ा सा वाइडर मौजूद बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए और प्रशांत इस वक्त सामना करने के लिए तैयार ग्रंथ की गेंदों का। ग्रंथ फील्डिंग का मुआयना एक बार फिर से करने के बाद तैयार, बाएं हाथ राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए। विकेट कीपर अभी भी फील्डिंग में जमावट यहां पर करते हुए मल्लेश जो विकेट कीपर है। और जहां तक सवाल है गेंदबाजी का, तो ग्रंथ इस वक्त गेंदबाजी यहां पर आगे बढ़ाते हुए बाएं हाथ राउंड द विकेट, पटकी हुई गेंद को उछाला इस वक्त लॉन्ग ऑफ की दिशा में, फील्डर काफी पीछे, 1 रन बल्लेबाज को मिलेगा। इस बीच बेहतर रिटर्न और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 31 रनों पर 4 विकेट के नुकसान पर। 3 बेहतर गेंदें इस ओवर में अब तक ग्रंथ फेंक चुके हैं और ग्रंथ एक बेहतर गेंदबाज के रूप में जाने जाते हैं और खासकर डेथ ओवर में बेहतर गेंदबाजी का प्रदर्शन वो आमतौर पर देते हैं और यहाँ पर उसी तरह का प्रदर्शन वो बरकरार रखते हुए इस अंतिम ओवर में। और इस बीच तैयार बाएं हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए, इस बीच पूरी तरह शफल होते हुए गेंद को इस वक्त बल्लेबाज ने खेला शॉर्ट स्क्वायर लेग की दिशा में और 1 रन मिलेगा। दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े लेकिन इस बार बच नहीं पाएंगे और इसी के साथ ये विकेट यहां पर गिर चुका है। पूरी तरह 3 स्टंप्सों को एक्सपोज करते हुए गेंद को ठहरे थे इस वक्त और गेंद को खेला था इस वक्त शॉर्ट स्क्वायर लेग पर। मिडल ऑफ द बैट गेंद को कनेक्ट नहीं कर पाए लेकिन 1 रन उन्हें मिला। अगर दूसरा रन पूर्ण करते समय वो अपना विकेट खोकर पेविलियन वापस लौटते हुए और स्कोर इस वक्त रुक चुका है बढ़कर रुक चुका है 32 रनों पर 4 विकेट के नुकसान पर। 32 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट। 2 गेंदें अब बाकी उनकी पारी में और यहाँ पर नए बल्लेबाज का आगमन होता हुआ 0-3 नंबर की जर्सी पहने हुए नए बल्लेबाज इस वक्त क्रीज पर मौजूद और ग्रंथ इस वक्त गेंदबाजी यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए बाएं हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए। दाहिने हाथ के नए बल्लेबाज के लिए ये गेंद पटकी हुई गेंद, बेहतर गेंद थी, चाहे तो इस गेंद का फायदा उठा सकते थे। ऑन साइड पर गेंद को उछालना चाहा लेकिन ऐसा कहना पड़ेगा जस्ट वांटेड टू प्ले दैट वन टू अर्ली एंड द बॉल केम क्वाइट लेटली और इस गेंद के धीमेपन को वो समझ नहीं पाए और गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में। इस बीच बल्लेबाज को रन नहीं मिलेगा। 32 रनों पर 4 विकेट यहाँ पर गिर चुके हैं और अंतिम गेंद
उनकी पारी का लेकर इस वक्त तैयार। 32 रन 5 विकेट के नुकसान पर। यह गेंद इस बार बेहतरीन गेंदबाजी और विकेट कीपर ने विकेटों के पीछे विकेट जरूर उखाड़े और इसी के साथ यह विकेट यहां पर गिर चुका है। विकेट नंबर 6 32 रनों पर और एक बेहतरीन गेंदबाजी इस वक्त कर चुके हैं शेट्टी वॉरियर्स के गेंदबाज। फलस्वरूप एआर टाइटंस के बल्लेबाजों को वो 32 रनों पर रोक कर रखने में सफल और अब 33 रनों का लक्ष्य उनके सामने है। शेट्टी वॉरियर्स के बल्लेबाज के सामने इस श्रृंखला के मेगा फाइनल ग्रैंड फिनाले में प्रवेश प्राप्त करने के लिए। तो 33 रन बनाने हैं सतीश और एआर टाइटंस जिन्होंने पिछले मैच में राउंड रॉबिन लीग के अंतिम मैच में पराभव किया था शेट्टी वॉरियर्स को और उस हार के बाद वो जैसा कि आपने फरमाया काफ़ी हद तक सबक इस मैच में सीखते हुए उनके गेंदबाज ने बेहतरीन गेंदबाजी यहां पर की और सिर्फ 32 रनों पर इस वक्त रोक कर रखा एआर टाइटंस के बल्लेबाजों को। अब पारी है उनके बल्लेबाजों की। शेट्टी वॉरियर्स के बल्लेबाजों को 33 रन बनाने एंड एज फार एज द रिक्वायर्ड रन रेट इज कंसर्न एक्जैक्टली 5.5 runs per over they have to score for victory with the help of 10 wickets the present equation shows for them और लक्ष्य तक पहुंचने का सवाल है। मैं कहूंगा एक बेहतर शुरुआत इस वक्त शेट्टी वॉरियर्स को करनी होगी और खासकर 2 पावर प्ले ओवर में कुछ हद तक आक्रामक बल्लेबाजी उन्हें करनी होगी और सोच समझकर बल्लेबाजी करनी होगी अगर उन्हें 33 रनों के लक्ष्य तक पहुंचा है क्योंकि आस्किंग रन रेट 6 से नीचे है और सूझबूझ भरी बल्लेबाजी निस्संदेह शेट्टी वॉरियर्स के बल्लेबाजों को अपने मंजिल तक पहुंचा सकती है। जहां तक एआर टाइटंस का सवाल है 32 रनों के अंदर उनके गेंदबाजों को रोक कर इस वक्त रखना है शेट्टी वॉरियर्स के बल्लेबाजों को और शेट्टी वॉरियर्स के बल्लेबाजों को 32 रनों के अंदर रोक कर रखना है। तो एआर टाइटंस के गेंदबाजों को राइट फ्रॉम द फर्स्ट ओवर एक घातक गेंदबाजी यहां पर करने के, लेकिन एआर टाइटंस के पास कुछ ऐसे गेंदबाज हैं जो अपने लय को प्राप्त कर ले, रिदम को प्राप्त कर ले तो निस्संदेह बल्लेबाजों पर भारी पड़ने की क्षमता रखते हैं। तो देखते हैं यहाँ पर क्या होता है और जहाँ तक मैच का सवाल है मैं कहूँगा सतीश अभी भी मैच बराबरी पर रुक चुका है और इस द्वितीय सत्र में यहाँ पर हमें एक रोचक क्रिकेट देखने को यहाँ पर मिलेगा। इस उम्मीद अपेक्षा के साथ माइक्रोफोन पर अब मैं आपको आमंत्रित करना चाहता हूँ। आइए सतीश, धन्यवाद, थैंक यू। So thank you very much, Gopi. Exactly, you're mentioning about, and I just mentioned it earlier, Gopi, because both the teams they played the last match of the league matches, and they'd learned something from that failure. Of course, the failure is a part of the game. If you don't fail, you don't learn. If you don't learn, you will never change. They just learned from the mistake, Air Titans, what the mistake they did in the previous match against the same team, and they became in a lot of a positive frame of mind in this particular match, and they bowled very well. And I think the bowlers did the job here of I think bowlers of Shetty Warriors did a great job here, and now all left to the batters of Shetty Warriors how well they managed to get that 33 runs to qualify for the final. First delivery right outside the line of leg stump. Air Titans started with a wide, and first run coming off here for Shetty Warriors. They started their journey, and wait and see how difficult this journey is going to be. Not a very good start from the bowling. If Air Titans wanted to win the match, they need to bowl as like what Air Titans did in the bowling department. And from the far end, Predwick bowls. This time again, a nicely driven, and ball is in there for a while, but quite deliberately chipped that one. Krishna, after seeing that there's no fielder in the mid-on in the edge of the circle. There is a very close in there. We can see that silly mid-on is there, and almost in the short mid-wicket, unorthodox short mid-wicket. The two fielders very close to that, the batters, so they wanted to save the single and scoreboard 3 on the board. Predwin delivers. This time again, taking that one, the pull. Malish not really allow the bowler to settle for the Yorker lane delivery, just stretching his front foot, reaching for that delivery, drives that one down to deep long on region with that single. Scoreboard moves on to 4 on the board without loss of any wicket. Predwin Costa, so far he's got a very good tournament from the bowling, but one more testing time for him to produce one good over and for his team. Again, nicely bowled and nicely turns that one on sky leg, and they look looking for the second, and they made it quite easily. They got a very good understanding between the wicket. Both Krishna and of course Malaysia so far, so the very good opening pass we got, and because of they got a very good understanding between the wicket, no hesitation even they're going for the risky single, they made it quite easily. 5 without loss of any wicket. Predwin delivers. This ball is in there, and again that ball is landed safely at cow point region.
and managed to get a single for that. Of course, the width is offered there by the bowler, but a slower one, change of pace, and again Malaysia is looking for the big expansive drive towards the offside region. There is no protection in the deep in the extra cover and the cover point region. That's why he wanted to get that one over the top of the infield, but he missed time. That one lovely delivery. Look at the swing, absolutely terrific, isn't it? Extra bounce, extra turn as well, and over number first is completed. Shetty Warriors and chasing 33 to win this match. I think it's going to be a decent start, isn't it? 6 runs without losing any wicket. The 6 runs, I think they're just playing as per the condition required. बिल्कुल परिस्थिति के अनुगुण इस वक्त बल्लेबाजी करते हुए बल्लेबाज सिटी वॉरियर्स के वो जानते हैं रिक्वायर्ड रन रेट 5.50 का है सतीश, और यहाँ पर पहले ओवर में 6 रन बटोर चुके हैं। अब स्ट्रेट अवे कंपैरिजन की ओर अगर आया जाए 33 से 6 घटा दिया जाए तो 27 रन बनाने हैं, और बचे हुए ओवर से 5, और आस्किंग रन रेट अब उतर कर आ चुका है 5.40 रन प्रति ओवर। 27 more now they have to score for victory in remaining 4 overs, and the asking run rate is now coming down a little bit at 5.40 runs per over। और मैं समझता हूँ इस तरीके की सूझबूझ वाली बल्लेबाजी, सेंसिबल बैटिंग जो है, अगर अगले चंद ओवर में शेट्टी वॉरियर्स के बल्लेबाज यहाँ पर करते हैं तो निस्संदेह अपने मंजिल की ओर आसानी से वो अग्रसर हो सकते हैं। Exactly, Gopi. At the same time, Gopi, you can see that the condition in the evening, exactly time is 5 o'clock, overcast condition. There is no bright sun, brightness here in this cricket ground, but and that means the bowler can take the advantage of that condition. This time, quite interesting to see that, and what Malaysia is doing here. Maybe it's surprising seeing that ball is nipped back into him with the extra bounce, and he just got a body onto it. Into the line of the delivery. Not interested for any kind of cricketing stroke. He can pull the shot, but I think it's a little bit surprised with that delivery, which is bowled by Nilu. Right arm over the wicket delivers. Again shuffled across the line of the delivery, and he picked up a single down to square leg region with their single score, but moves on to 7 on the board without loss of any wicket in the over number 2 in progress. The overcast condition, the cloudy weather condition, certainly it's a little bit encouragement for the bowlers. And the Air Titans need to exploit this condition if they wanted to win this match. Nilu trying his level best from the far commentary box end. Second and last out of the power play. Right arm over the wicket delivers to Krishna. Oh my goodness, lovely delivery. Look at the deviation. Absolutely, just like I'm mentioning about Gopi, it's a little bit encouragement, and you can see that clearly. If you see it in the replay, that delivery, that ball is swinging in swinging delivery and swinging a lot, and ball is just coming up from the outside the line of off stamp and straight to the hands of wicketkeeper, and there is no possibility of any run at all. Nilu moving away from us, right arm over the wicket, lovely delivery. That's what we're talking about. That was a kind of the line and length is required. Again, Krishna is in a two-mind whether go for the back foot or front foot. By doing that, I think he's completely missed out delivery from his bat, and a good start here from Nilu. 7 without loss of any wicket. 33 is the target. And another 26 runs required for the victory. This time appeal for caught behind. Everyone is up, and look at the sportsman spirit of the batter. Absolutely, you should appreciate Gopi. See that the umpires are unmoored. Umpires are unmoored because umpires know that the batsmen are walking, and without waiting for the umpire decision, I think Krishna is walking towards the panel. This is a really lifts the spirit of cricket, isn't it? This is absolutely a true spirit of cricket. बिल्कुल सतीश, ये निस्संदेह एक बेहतरीन क्रीड़ा स्फूर्ति है, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट जैसे कहते हैं। और जहाँ तक सवाल है, जैसे ही उन्होंने भापा के विकेट कीपर के हाथों में गेंद पहुंच चुकी है, बल्लेबाज ने पेविलियन की ओर चलना शुरू कर दिया। हालांकि अंपायर के दिमाग में कुछ हद तक दुविधा ज़रूर थी, लेकिन आखिरकार बल्लेबाज ने उस दुविधा को क्लियर करते हुए पेविलियन की ओर वो कदम बढ़ाने लगे थे। और निस्संदेह ऐसी क्रीड़ा स्फूर्ति हर क्रिकेटर को अंडरआर्म क्रिकेट में या ओवरआर्म क्रिकेट में होनी ज़रूरी यहाँ पर होती है। और जहाँ तक का सवाल है, इस वक्त दूसरा विकेट मेरे ख्याल से पहला विकेट गिर चुका है, और ये विकेट गिर जाने के बाद ये ओवर में जो दबाव गेंदबाज इस वक्त ला चुके हैं नीलू, निस्संदेह काबिल तारीफ है। और मैं समझता हूँ ऐसी गेंदबाजी निस्संदेह और सिटी वॉरियर्स के बल्लेबाजों के ऊपर परेशानियों को और बढ़ा सकती है। Absolutely, Gopi, and so far it's Nilu has done a great job here for Air Titans, bowling away from us. Right arm round the wicket to the left-hand batter. This time, that was a really dangerously played by the new batsman. You attempted for the blind hit. It's like they're dealing with the last delivery of the
power play overs, so that he wanted to break the shackle. So by doing that, I think just he got inside edge of the bat, saving him from that wicket. The fantastic over is comes in, and just 2 runs came from that over of Nilu, then chasing 33 to win this match. Shetty Warriors not really out of the worries because they lost 1 wicket in 8 runs. Just coming back to the equation. 8 deducted from 33, that means another 25 more runs required for the victory in remaining 24 deliveries. And I think the first time Gopit's asking run rate is going over 6 runs per over. That's what the Air Titans wanted to do, isn't it? They wanted to bring that gap actually. Once it was looks like it's a very easy target to chase down, and because of that the good over there from Niru, now match is really inching towards a nail batting finish. From the far end, and introduction of the spin bowling from the far end. Hari Krishna brought into attack, and wait and see how Hari Krishna will go into produce. This time ball is in there, straight to the hands of the fielder, and look at the celebration here from Saurav. And he is just throwing the ball into the sky, just celebrating. That wicket is on style, you know exactly. The batter is just came into middle, is a very dangerous one. He can hit some big shot, but his wicket suddenly, here Titans are strongly back into this game. Ashwath Shetty departs without disturbing the scoreboard. He's back into pavilion. 8 for the loss of 2 wickets. Now the match is evenly poised. It's going to be anybody's game. Will it going to be our Titans? Will it going to be a Shetty Warriors? Wait and see. And the competition is on between these 2 teams to get the place in the finals of this prestigious KVC Premier League 2022. Wonderful cricket tournament is organized in this most beautiful historical UCG cricket ground. And first time they were organizing this cricket tournament in UCG and even in the under floodlight. Yesterday we have under floodlight 4 to 5 matches. And from the far end, Hari Krishna, right arm over the wicket, delivers, cuts it one quite nicely, but there is a protection in the deep cover point region, so that not more than a single for the new batter is off the mark with a single. With that single, scoreboard moves on to 9 after a long time. Scoreboard is moving to 9 for the loss of 2 wickets. Hari Krishna to Malaysia, full toss delivery, and he just missed time that one, not really getting that one from middle of the bat. The slow full toss in that occasion, so Malaysia couldn't manage to take the advantage of that delivery, and scoreboard moves on to 9 for the loss of 2 wickets. That brings new batter into strike now. Ram Ganesh, this time high up in there, the 2 fielder going for the catch, and again the catch is dropped by the deeper long off fielder. That was a full toss delivery, which is again the 2 full toss missed out by the 2 batters. This time I think Hari Krishna little bit unlucky. The Ram Krishna is lucky. Ram Ganesh is lucky in that occasion. 2 Krishnas out here, but I think Ram Krishna is doing a very lucky. The catch is dropped by the dog of fielder. This time lovely drive, lovely placement as well. Down to deep extra, boundary for 4 runs. Effortlessly played there by Malesh. Look at the placement. Absolutely, placement is exquisite. By trying to stop that boundary, the spectator down at extra coverage and feeling a little bit hot here. The fielder then the deep extra cover is a try to stop that boundary, but ball winning the race against that fielder. A welcome boundary coming here for Shetty Warriors, and with that boundary score jumped into 15 for the loss of 2 wickets. Again the full toss delivery, this time again across the line of the delivery. Malesh wanted to swing that one on the onside region, missed it completely, and 3 overs completed. After completion of 3 overs, it's 15 for the loss of 2 wickets, and equal battle is on, Gopi. Just coming back to the equation now, 18 balls remaining, and out of that 18 delivers, they have to get another 18 runs to win this match. Asking run rate remains the same, that is exactly 6 runs per over. And what do you think in this condition? Will it go into possibility for Air Titans to restrict that 18 runs in remaining 18 balls? जैसा कि आपने कहा सतीश, यहाँ पर 18 गेंदों पर 18 रन बनाना है, और इन कंडीशन अंडर क्लाउडी कंडीशन में ये इस वक्त मुमकिन है कि 18 रन बनाने से एआर टाइटंस के गेंदबाज रोक सकते हैं इस वक्त
शेट्टी वॉरियर्स के बल्लेबाजों को अगर वो बेहतर लेंथ और लाइन के साथ गेंदबाजी करते हैं। तो जहां तक शेट्टी वॉरियर्स का सवाल है, इस वक्त चाहिए उन्हें सेंसिबल बल्लेबाजी। और जहां तक सवाल है, यहाँ पर स्ट्राइक हर गेंद पर रोटेट करते हैं, सिंगल्स या कपल से बटोरते हैं, तो निस्संदेह वो अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। और खासकर बीच में अगर कोई ढीली गेंद मिलती है तो उसे सीमा रेखा की ओर के बाहर वो डिस्पैच करते हैं, जिस तरह मल्लेश ने पिछले ओवर में किया था। तो यहाँ पर शेट्टी वॉरियर्स अपने लक्ष्य तक पहुंच सकता है। फिलहाल 18 गेंदों पर 18 रन यहाँ पर बनाने हैं और मैं समझता हूँ समान अवकाश, द इक्वल चांस नाउ फॉर द बैट्समैन ऑफ फॉर द बोथ टीम्स प्लेयर्स इन फैक्ट। और ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार, फुल टॉस, गेंद को उछालना चाहा इस वक्त, गेंद पहुंची शॉर्ट फाइनल की दिशा में, रन्स इस बीच नहीं मिलेगा और स्कोर इस वक्त रुक चुका है 15 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर। 15 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स, 18 टू गेट नाउ फ्रॉम रिमेनिंग 17 बॉल्स। और गेंदबाज एक बार फिर से गेंदबाजी यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए, सौरभ दाहिने हाथों पर द विकेट गेंदबाजी करते हुए, ये गेंद पटकी हुई गेंद को उछाला खूबसूरती के साथ 6 रनों के लिए। काफी धीमी गति की गेंद थी और बल्लेबाज के पास काफी समय था विद अ ट्विस्टेड बैट इस स्ट्रोक को खेले। और जैसे ही गेंद टिप्पा खाने के बाद उनकी ओर आए, उस उछाल को पहचानते हुए इस बार गेंद को तिरछे बल्ले के सहारे कनेक्ट कर दिया डीप थर्ड मैन सीमा रेखा से बाहर 6 रनों के लिए। और इस छक्के के साथ अब समीकरण काफी हद तक आसान होता हुआ और स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 21 रनों पर, 21 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट। और सिर्फ 12 रन चाहिए अब विजय के लिए। गेंदबाज एक बार फिर से तैयार, ये गेंद इस बार पॉइंट फील्डर के सिर के ऊपर से गेंद को निकाला है बैकवर्ड थर्ड मैन की दिशा में और गेंद सीमा रेखा को पार कर चुकी है 4 रनों के लिए। 6 and a boundary and Shetty Warriors with this 6 and a boundary they are strongly back in the match। वहां पर कुछ हद तक चोट जरूर आई है, कोई स्पेक्टेटर शायद, तो खिलाड़ी शायद वहां पर उस तरफ जा गिरा है गेंद को रोकते समय। तो यहाँ पर कुछ ज्यादा हद तक उन्हें चोट नहीं आया, सब कुछ सुरक्षित उनके लिए। और स्कोर बढ़कर यहाँ पर पहुंच चुका है 25 रनों पर। तो 2 बेहतर स्ट्रोक यहाँ पर लगा चुके हैं बल्लेबाज राम गणेश और इन 2 बेहतर स्ट्रोक्स की बदौलत स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 25 रनों पर। अब इक्वेशन बिल्कुल साफ, 15 गेंदें बाकी हैं और रन से चाहिए सिर्फ 8। और पहली बार ऐसा कहना पड़ेगा शेट्टी वॉरियर्स आर नाउ लुकिंग राइट ऑन टॉप। और जहां तक सवाल है गेंदबाजी का, तो सौरभ पिछले 2 गेंदों में छक्का और चौका प्रदान करने के बाद सर्टेनली निस्संदेह दबाव इस वक्त उनके ऊपर दिखाई देता हुआ। और देखना यह कि अगली गेंदों में वो किस तरीके की गेंदबाजी यहां पर करते हैं। दाहिने हाथों पर द विकेट, ये गेंद पटकी हुई गेंद टॉप पे और विकेट कीपर के लिए मौका और इसी के साथ यह विकेट गिर चुका है। हालांकि बड़ी मुश्किल के साथ इस कैच को लपका था विकेट कीपर ने, हल्के से गेंद को ऑन साइड पर स्वीप करना चाहते थे, कुछ ज्यादा उछाल लेते हुए टॉप एज पर टकराई और विकेट कीपर ने बड़ी मुश्किल के साथ विकेटों के पीछे इस कैच को लपका और इसी के साथ ये विकेट गिर चुका है 25 रन 3 विकेट के नुकसान पर, 25 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट। और कुल मिलाकर तालियों के साथ इस वक्त उनका स्वागत करते हुए शेट्टी वॉरियर्स के खिलाड़ी राम गणेश, जो छक्का और चौका लगाने के बाद समीकरण को बिल्कुल आसान कर चुके हैं, उन्हें तालियों की गड़गड़ाहट के साथ स्वागत इस वक्त मिल रहा है। और इस वक्त तख्ता भारी लगता हुआ शेट्टी वॉरियर्स का, सिर्फ और सिर्फ 8 रन चाहिए विजय के लिए। और कुल मिलाकर उनकी पारी का चौथा ओवर यहाँ पर प्रगति पर। नए बल्लेबाज का आगमन यहाँ पर हो चुका है और गेंदबाज सौरभ गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हैं, फुल टॉस पुल किया इनटू द गैप, लेकिन फील्डर वहां पर मौजूद, एकमात्र रन इस बीच बल्लेबाज को मिलेगा। दूसरे रन के लिए बल्लेबाज दौड़ पड़े और यशस्वीतम दूसरा रन यहाँ पर पूर्ण करते हुए, थ्रो काफी धीमा और इस भी 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 27 रनों पर 3 विकेट के नुकसान पर, 27 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट, 6 रन टू गेट एंड द बॉल इज नाउ रिमेनिंग 13। और अगली गेंद के लिए गेंदबाज इस वक्त तैयार, ये गेंद इस बार हल्के से गेंद को पुश किया, सेंसिबल क्रिकेट यहां पर अपनाते हुए और 1 रन के साथ अपना छोड़ बदल चुके हैं मल्लेश और इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 18 रन। तो एक बेहतर ओवर अगर शेट्टी वॉरियर्स के पॉइंट ऑफ व्यू यानी दृष्टिकोण से देखा जाए, जो कि समाप्त हो चुका है और 4 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर इस वक्त रुक चुका है 28 रनों पर 3 विकेट के नुकसान पर। 4 overs completed. It's 28 for the loss of 3 wicket after completion of 4 overs. And now just 5 runs to score from remaining 2 overs. And at this situation, Shetty Warriors are now looking right on top.
और जहां तक AR टाइटंस का सवाल है, इस वक्त उन्हें चाहिए एक चमत्कारी गेंदबाजी इस मैच में वापसी करने के लिए। तो क्वालिफायर मैच नंबर 1 यहां पर खेला जाता हुआ और इस श्रृंखला के मेगा फाइनल में प्रवेश प्राप्त करने के लिए कड़ा संघर्ष यहां पर जारी है सिटी वॉरियर्स और AR टाइटंस के बीच। तो गेंदबाजी हमसे दूर वाले छोर से इस वक्त शुरू करते हुए फ्रेडविन, और फील्डिंग में जमावट यहां पर चलती हुई देख, जैसा कि मेरे काबिल दोस्त सतीश ने फरमाया, यहां पर रोशनी काफी हद तक कम हो चुकी है। नीलाकाश को घने बादल इस वक्त ढक चुके हैं, सूरज बादलों की आड़ में इस वक्त छिप चुका है। हालांकि शाम के 5:10 बज चुके हैं, लेकिन मानो ऐसा लग रहा है कि शाम के 6:30 यहां पर बजे हो। तो शायद वर्षा की भी संभावनीयता हो सकती है। तो इसलिए मैं दरख्वास्त करता हूं कि दोनों टीमों के सदस्यों से कि कृपया मैच को जल्द से जल्द आगे बढ़ाएं। और इस बीच फ्रेडरिक गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए दाहिने हाथ तो ओवर द विकेट, ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार। ये गेंद इस बार पटकी हुई गेंद ऑन साइड पर, डिस्पैच्ड इन स्टाइल एंड ही फिनिश्ड द मैच इन स्टाइल विद अ 6. So comprehensive victory for Shetty Warriors by 7 wickets with 11 balls to spare in their innings, and with that comprehensive victory they are through to the mega final of this competition. So comprehensive victory for Shetty Warriors, and they are through to the mega final of this competition, defeating AR Titans by 7 wickets with 11 balls to spare in their innings. And now the next match, the Eliminator match, is now coming up with just short while. और जहां तक सवाल है अगले मैच का, तो एक छोटे से ब्रेक के बाद हम आपके सामने उपस्थित होंगे सतीश के साथ अगले मैच की शुरुआत में, जब अगले मैच की शुरुआत यहां पर होगी एक छोटे से अंतराल के बाद। धन्यवाद, थैंक यू।
I request an extra player from both the teams, please report to the commentary box immediately. The So thank you very much. We're back to this eliminator, and captain of AR Strikers winning the toss, elected to. Thank you very much, Imu. So far did a great job in the presentation ceremony as well. So back to match is from the far end, right arm over the wicket, seaming in, right arm over, and pulls that one quite nicely down to deep mid wicket region. Not more than a single, not really getting that much of timing behind that pull shot from the bat of Sukesh Mendon. The scoreboard moves on to 3 on the board without loss of any wicket. Team NJS takes on AS Strikers from the far end. Right above the. Oh, that was a fantastic. Look at the perfect delivery. The perfect shaping away from the right-hander batsman. And just like we are in the international cricket, Gopi, the similar kind of dismissal. We can see that the outswing delivery, just catching the batsman onto the back foot, and batsman tried to push that one towards the offside region. He got outside edge of the bat. That was a fantastic outswing delivery, and because of that, I think the batsman is back into pavilion, and I think it's a great delivery, Gopi. Absolutely unplayable delivery. Playable delivery, in fact. He wanted to play that one because the line and length is so good, and he got outside edge of the bat. बिल्कुल सतीश, एब्सोल्युटली परफेक्ट लेग कटर गेंद थी और इस गेंद को रक्षात्मक तरीके से पुश करना चाहते थे. गेंद बल्ले का बाहरी सिरा, किनारा नहीं, सिरा कहा जा सकता है. टकराने के बाद गेंद सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथों में. जिस तरह 1983 वर्ल्ड कप फाइनल में एंडी रॉबर्ट्स की गेंद पर गवास्कर आउट हुए थे पहले. जस्ट गेंद किसिंग द आउटसाइड एज ऑफ द बैट और सीधे विकेट कीपर जेफरी ड्यूजॉन के हाथों में पहुंची थी. और यहाँ पर उसी तरह का निदर्शन देखने को मिला. लेग कटर गेंद पर बल्लेबाज का बाहरी सिरा टकराने के बाद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में. तो निस्संदेह अंतरराष्ट्रीय स्तर की गेंदबाजी इस गेंद पर गेंदबाज ने की है. Exactly, Gopi, just like McGrath, and is a master of doing that one. Every time he's hitting that good land spot and moving the ball a little bit away from the right-hander batsman. He got a lot of wickets in that delivery. There's some lovely shot up and over towards the deep extra cover boundary for 4 runs. He's the danger batter. Raghavendra. The Raghavendra, so far it's a danger batsman, and even the so far is one of the highest run getter, individual run getter. That is a 44, which is scored by second highest individual score. 67 is a highest, which is scored by Gitesh, and of AS same team, AS Strikers, and he is the second highest run getter, individual run getter, especially the one match, the single match they got that runs. So Raghavendra, his intention is very clear that he wanted to
they continue that kind of stroke making in this power play was needed to be. The 7 runs which came from the first over and from the commentary box, and Ananta balls hold him, clean him up. That was a really a japper, and it's a really a beauty of the delivery from Ananta. First ball itself is right on the money, and just as I think the batsman without moving his feet, he wanted to play away from his body, and he left the gap between bat and bat. And in this big gap, Anant bowled that in the slot, and he's got the wicket of the very senior player. Sukesh is back into pavilion. 7 for the loss of 2 wicket. Team NGS are looking in fantastic in this first 2 overs. Now umpire Rajaratna sir as well as umpire Rajeshwar is having conversation with the players of the batsmen, in fact, having a conversation. Rajaratna sir, everybody knows his potential. He's a very experienced umpire. More than that, he's a former cricketer. He's an opener batsman of MCC. He's played for the first division since 1972 to 83. It's a very good opening batter. Then he went to Abu Dhabi, UAE, and he represented NMC, New Medical Center, in that Abu Dhabi. And he was represented even Indian Sports Club as well. Indian Sports Club Talcheri, one more very popular club at Abu Dhabi. And then he represented South Indian, many South Indian teams for 3 years. And in 1994, he selected for the UAE national team, and ICC first time introduced that mini World Cup, in that he represented for UAE, that tournament which is played at Kenya. So outstanding record what Rajaratna sir has got. Even Rajeshwar is also really one of the most stylish, promising right-handed batsman, the opening batter. Even he is also represented MCC as well. In his young age, younger age, he's done a great job. He's contributed for the cricket. Now, both umpires are doing a fantastic job in the field of course, in the official field, they did a great job so far. And in this tournament, they are the one responsible for the success of this cricket tournament, KVC Premier League, along with Atmaram, along with 2 umpires, Viraj as well as Vivek. One more single is added to total. With the addition of that single, scoreboard now moves on to 9 on the board for the loss of 2 wicket. This is the over number 2nd in progress. So quite cricket is going on here, and quite understandable as Anant so far is looking pretty good. Now Raghavendra is back on strike. Whenever the Raghavendra is back on strike, little bit of excitement in spectators. That is the kind of the techniques is implementing. Oh, that was definitely going to be very difficult. You just coming out of the pitch. Strong breeze is passing out here in the middle of the pitch, so that it will definitely going to disturb the batters. So just Raghavendra get away from the line, and Anant once again back to his bowling mark. So far he's looking pretty good in this over. Ananta bowling away from us. Right arm over the wicket. Delivers a full toss outside the half stamp. Intelligent cricket. Just he got a bat onto that ball. Running down to deep third man boundary for 4 runs. Not only the boundary, but at the same time, no ball called by umpire. This is a beamer, but this is a clever cricket, isn't it, Gopi? Not really looking for any big stroke. Not really looking for any power behind the stroke. He just has got a feather touch onto that. Delicately giving a shape towards a short third man region boundary for 4 runs. Intelligent cricket there from Raghavendra. He got boundary for that, and more than anything else, he will definitely going to get the chance here to play a free hit delivery. 14 for the loss of 2 wicket. Much required boundary which is came from this over. Free hit delivery, absolutely. For every no ball, there will be a free hit delivery. So Raghavendra will go into face Ananta. Right arm over the wicket to Raghavendra. Full set one, high up in there. The fielder there in the deep mid wicket, but he's not trying for the catch. He's not trying for the catch because he knows that if he is able to take the catch, but no question of getting out. But I think he can save the runs, Gopi. Even if you're not able to get the wicket, you need to save the runs. This is not really a good presence of mind there from the fielder. 16 for the loss of 2 wicket. That's why other players are shouting at him.
Right arm over the wicket, delivers, full toss and a nice placement there by Raghavendra again. Look at the placement, gentle push down deep cover point region, ball winning the race against the fieldsman. Absolutely intelligent cricket. This is a really intelligent cricket there from Raghavendra, effortlessly played. Just a gentle push, isn't it, Gopi? And you know exactly, he sent that one between cover point and extra cover point, and ball just winning the race against the fieldsman. Runs are really flowing in this second over. After Anant bowled 3 very good deliveries, then followed by the 2 expensive deliveries. 24 the loss of 2 wicket. Anant bowling away from us. Right arm over the wicket pass umpire. Down the little bit short pitch outside the line of off stump. Batsman Raghavendra off the back foot. Just pushes that one down to backbone point region. You know exactly got runs what he wanted in this over. No need to panic at all. After getting that much of runs, I think he doesn't want to throw his wicket. This is the second over of the innings is progressing. Anant bowling final time. Right arm over the wicket. Try to pull that one. Not quite getting hold of that one properly. Picked up a single. Pradyumna with that single scoreboard was entered. 22 for the loss of 2 wicket. And it's a very expensive and productive over. And quite surprisingly, because Anant first he started very well, bowled 3 very good deliveries. After that, I think Raghavendra is the one is definitely going to be a nightmare for the team NJS, the man who got already some runs in this particular cricket tournament. But all we can see that intelligent cricket from him, the 2 boundaries which is played, absolutely it was a very intelligent and mind game. बिल्कुल जो नो बॉल पर जो उन्होंने बल्लेबाजी की थी, स्टीयर किया था गेंद को अंतिम अक्षर में, निस्संदेह काबिल तारीफ है. दूसरा कोई बल्लेबाज होता तो शायद इस वक्त आक्रामक स्ट्रोक के लिए प्रयत्न करता था कवर पॉइंट के ऊपर से, लेकिन इस बार अंतिम अक्षर में गेंद की पेस को पहचानते हुए उन्होंने बल्ला उड़ाया था, गेंद को स्टीयर किया था फाइन, और उसके बाद जो स्ट्रोक उन्होंने खेला था कवर और कवर पॉइंट के बीच में से चौके के लिए, वो स्ट्रोक निस्संदेह काबिल तारीफ है. तो इस ओवर में काफी रन बने और इस ओवर की बदौलत अब ऐसा कहना पड़ेगा ए स्ट्राइकर्स इस मैच में वापस आ चुका है और एक बेहतरीन प्रगति कर चुका है. Exactly, Gopi, and starts with the delivery, which is a wide call by umpire, and one from the over as well from a squad umpire, so that scoreboard was under 23 for the loss of 2 wickets. Something going wrong here for team NJS after they're getting a very good start in the first over. Then everything is going wrong, but they need to bounce back. They need to bounce back with some very good overs if they wanted to restrict the flow of the runs of their opposition. Yes, strikers from the far end. Right above the wicket, full toss. This time Pradyumna drives that one, not more than a single, and long on fielder fields the ball, and ample time for Pradyumna to cross off for a single. 24 for the loss of 2 wicket. A very good score on the board. And from the far end, the bowler Vedant Bharadwaj from the far end. Right arm over the wicket balls. A slower one, slowest short pitch delivery. Almost Raghavendra drags that one from outside the line of off stump. He is a very good striker of the ball, especially in the onside region. Even the ball is outside the line of off stump, but he loves to play the strokes in the onside region, just like former Indian captain Mohammad Azharuddin, the very risky player. He's a kind of batter. He always loves to play on the onside even the ball is outside the line of offside. Lovely shot there from Pradyumna. Plays it down to deep wideish long on region for an easy single. With their single scoreboard moves on to 26 for the loss of 2 wicket in the over number 3 in progress. Inching towards a very big score here. AS Strikers and AS Strikers team NGS have to do something special. Something special in the sense they need to break this partnership. Right arm over the wicket, full toss, and clever, absolutely clever. Not an easy full toss in that occasion. Not just the full toss where you can hit the ball over the deep end wicket or deep long on. This is a kind of full toss. You need to get, you need to give some kind of respect for the delivery. And of course, Raghavendra just getting the single down to deep long on region for a deep long on region. And scoreboard was on 27. Lovely delivery. This time up, I think, is a little bit extra bounce. Extra bounce here for the bowler, and that's why Pradyumna almost catched within the crease, not really able to read the bounce of the delivery and missed it completely. Then wicketkeeper behind the stump did the rest, and there is no chance of any run. Vedant seaming in from the far end, right arm over the wicket. Again, almost climbing on his toes and square driving that one down to deep backward point region, and no ball call by umpire. Rightly so. That was a bouncer, the second from the over, Gopi. And we already bowled one bouncer, and umpire, umpire
Rajeshwar already given one warning for the bowler, so this is the second bowler. But very interesting to see that the Pradyumna, how well he managed to cut that one. It's a very difficult stroke to play. He was almost climbing on that onto that bouncing delivery, and he got that couple of runs down to deep back point region for a couple of runs. The scoreboard now moves on to 30 for the loss of 2 wickets from the far end. This time Mankading out done by the bowler. Umpire now just looking at the main umpire, and is given him. That is a given him, exactly. Because as per the rules and regulation, maybe it was a left to that the bowlers, maybe they're looking of the sportsman spirit. But I think, Gopi, the most of the times in international cricket, that run out is been awarded, especially when in the IPL, when I think Ashwin did that Mankading out against, I think, Jose Butler. And that time, that was really lot of conversation went for that dismissal. But in this particular dismissal, Gopi, already one rule is passed in the last 3 years back, 3 weeks back. MCC has passed one rules, that is the Mankading out is the one kind of run out. You cannot neglect it. It is definitely out of that sportsman spirit, but it's a one kind of run out. But actually that rules will be implemented within 1 or 2 months. But I think it's a one type of run out. बिल्कुल सतीश, अब रूल्स का परिष्करण यहाँ पर किया गया है। 2-3 हफ्ते पहले आईसीसी ने कि मंकड आउट को जायज यहाँ पर दाखिल किया गया है क्रिकेट के नियमानुसार। तो जहाँ तक सवाल है क्रिकेट के इतिहास के पन्ने को अगर कुरिद कर देखा जाए तो सबसे पहले विनु मंकड ने इंग्लैंड के खिलाफ 50वें दशक में इस मंकड आउट के रूप में पहला विकेट उन्होंने मंकड आउट के रूप में आउट किया था बल्लेबाज को। तो उसके बाद उनका नाम इस आउट के साथ जुड़ गया, मंकड आउट के रूप में विनु मंकड ने जो पहले किया था। तो उसके बाद कई ऐसे उदाहरण मिले अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में जहां पर मंकड आउट किए गए हो, खासकर मैं समझता हूँ कपिल देव जिन्होंने 1991-92 के दक्षिण अफ्रीका के दौरे पर उन्होंने गैरी कर्स्टन को रन आउट किया था, लेकिन पहली वार्निंग उन्होंने दी थी उससे पहले गैरी कर्स्टन को, और उसके बावजूद दोबारा वो क्रीज छोड़कर आगे निकले तो उन्होंने नॉन स्ट्राइकर के बेल से यहाँ पर उड़ा दिया था। और उसके बाद एक या दो ऐसे निदर्शन मिले जहाँ पर मंकड आउट होने हुआ। और सबसे बड़ा उदाहरण मैं कहूँगा दैट इज एन एब्सोल्युटली स्पोर्ट्समैन स्पिरिट। 1987 के रिलायंस कप में पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के बीच जो मैच खेला गया था उसमें अंतिम गेंद पर 2 रन चाहिए था, अंतिम विकेट मैदान पर था। अब्दुल कादिर जो बल्लेबाजी कर रहे थे और कोटनी वॉल्स जैसे उन्होंने गेंदबाजी करने के लिए रन अप शुरू करते हुए गेंदबाजी करने ही वाले थे, नॉन स्ट्राइकर के बल्लेबाज सलीम जाफर काफी आगे निकल गए और वहां पर उन्होंने चाहे तो मंकड एक्ट वो कर सकते थे, पाकिस्तान ऑल आउट हो सकता था, लेकिन वहां पर उन्होंने मंकड एक्ट नहीं किया, सलीम जाफर को वापस क्रीज पर आने दिया और निस्संदेह वो मैच में अंतिम गेंद पर कादिर ने 2 रन जड़े और पाकिस्तान को विजय दिलाया। लेकिन स्पोर्ट्समैन स्पिरिट कोटनी वॉल्स ने दिखलाया और उस स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के लिए वो तब के उनके अध्यक्ष पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जियाउल हक द्वारा उन्हें गोल्ड का मेडल का अवार्ड दिया गया था। तो कई ऐसे उदाहरण हम देखे हैं, लेकिन अब आईसीसी इस रूल्स को मान्यता दे चुका है और मंकड आउट यहाँ पर गेंदबाज कर सकते हैं। तो मैं समझता हूँ मंकड आउट करने से पहले बल्लेबाज को एक बार चेतावनी देना जरूरी होता है, क्योंकि अचानक बल्लेबाज भी नहीं जानता है कि यहाँ पर मंकड आउट हो सकता है। तो यहाँ पर मैं समझता हूँ पहली चेतावनी देने के बाद अगर कोई भी गेंदबाज मंकड आउट दूसरे प्रयत्न में करते हैं तो बेहतर रहेगा। Exactly, Gopi. Coming back to another fact in this Mankading out, Gopi, that leaving the crease before before delivering the ball, I think is against the spirit of the game as well. The batsman need not to do that, isn't it? Because they can run quite easily before the bowler getting the stride, and these just leaving the crease means I think it's against the spirit as well. That's why the Mankading out is came into act, and that's why the MCC is making that was one kind of run out now onwards, Gopi. There is not that kind of run out which will not called as a Mankading out. This is a run out. That name is removed actually. You are just talking about definitely it's a very good information you given. The Vinu Mankad first time he did that kind of run out, and that afterwards that Mankading out is came into act. And right, Gopi,
the sportsman spirit is another phase, and in other phase, the true spirit of the cricket is very important as well. बिल्कुल सतीश, और जहां तक सवाल है स्लॉग ओवर्स में, अगर टाइट ओवर्स अंतिम मैच के अंतिम क्षणों में बल्लेबाज उद्वेग में आकर शायद विकेट छोड़ सकता है, तो वहां पर शायद बल्लेबाज को एक वार्निंग देना जरूरी हो सकता है। लेकिन आज रनआउट की मंकड़ आउट को रनआउट की मान्यता मिल चुकी है, तो यहां पर नॉन स्ट्राइक रन के बल्लेबाज रन क्रीज छोड़ने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है जब तक गेंदबाज गेंद डिलीवर ना करें। तो यहां पर रनआउट का मान्यता इस वक्त मिल चुकी है मंकड़ एक्ट को, और यहां पर सही तरीके से मंकड़ एक्ट किया और अंपायर ने सही तरीके से यहाँ पर आउट दिया है। और रीसेंट रूल्स एमसीसी आईसीसी का रीसेंट रूल्स के अनुसार ये रनआउट यहाँ पर कहलाता है, और यहाँ पर जो भी हुआ अच्छे के लिए हुआ, भले के लिए हुआ। और मैं समझता हूँ टीम के खिलाड़ी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के जरिए इस निर्धार को पुरस्कार, इस निर्धार को कबूल करते हुए यहाँ पर एक सही क्रिकेट खेले। Exactly, Gopi, and that's why that Raghavendra maybe is not really happy with that, but I think that is the one kind of run out. You need to expect that need not to leave. That might be the strong message for the players as far as the running between is concerned. No need not to leave the crease before the bowlers coming into the bowling stride, and that's what umpire rightly so. Umpire, I think umpire takes his own time. If you see that umpire Rajaratna sir just suddenly is not raised his finger. You know exactly it was a kind of run out. Maybe a little bit of complication there. The players doesn't know the rules and regulation. That's very difficult for sometime for the field umpires to explain of the rules and regulation. That's very important, Gopi. Not only the umpires need to know the rules and regulation, but it's very much important that even the players need to know what is the rules and regulation says. बिल्कुल, हर किसी खिलाड़ी को क्रिकेट के नियम पता रहना चाहिए सतीश, निस्संदेह। और आजकल के दिनों में क्रिकेट इतना तेज हो चुका है कि नियम को जानना बिल्कुल ज़रूरी बन चुका है, क्योंकि क्रिकेट में जितने भी आउट डिसीजन हैं उन्हें हर बल्लेबाज को जानना ज़रूरी होता है। और यहाँ पर मंकड़ एक्ट को मान्यता दे चुके हैं, तो यहाँ पर वो आउट ही कहलाएगा आईसीसी के रूल्स के अनुसार। तो मैं समझता हूँ न सिर्फ बेहतर खिलाड़ी होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन उसके साथ स्पोर्ट्समैन स्पिरिट भी आपको रखना ज़रूरी है, तभी जाकर आप एक परिपक्व खिलाड़ी, एक बेहतर खिलाड़ी बन सकते हैं, अंडरआर्म क्रिकेट में हो चाहे ओवरआर्म में। Absolutely, Gopi. So any kind of cricket, the sportsman is definitely going to be key, and being the very good batsman, being the very good the bowler, being the very good fielder is not enough. But I think you are right, Gopi. The sportsman spirit is something which is really required for each and every players. 30 for the loss of 3 wickets. Now I think the bowler will going to continue from the far end. The new batter just came into middle. Yes, it is a free hit continues. Again, lovely delivery indeed. That's a fantastic delivery indeed. The batter looking for the full shot, missed it completely. 3 outs completed after completion of over number 3. It's 30 for the loss of 3 wicket. They're going exactly. Yes, strikers, they're going exactly 10 runs per over. Nothing much worried about the run rate. They got a very good run rate in this condition, and wait and see how many runs they will going to score in remaining 3 overs. Projected scores showing exactly 60 runs if in the similar run rate they able to get the runs in the remaining 3 overs. And I'd go if you're able to get that run rate in the remaining 3 overs, it's going to be a 60. And in this condition, the lights are on, Gopi, and might be a little bit little bit danger for NJS if they are not able to contain the runs in the remaining 3 overs. बिल्कुल, इन 3 ओवर में रनों के बहाव पर अंकुश लगाना जरूरी बन चुका है सतीश। यहाँ पर एनजेएस के गेंदबाजों को अगर पहले 3 ओवर में जिस तरह से 30 रन बने, अगले 3 ओवर में भी 30 रन बनते हैं, तो निस्संदेह जैसा कि आपने फरमाया इन हालातों में अंडर दिस कंडीशन 60 रन के लक्ष्य का पीछा करना यहाँ पर मुश्किल साबित हो सकता है। तो यहाँ पर इस वक्त देखना है कि इन बचे हुए 3 ओवर में किस तरह की गेंदबाजी यहाँ पर करते हैं एनजेएस के गेंदबाज बल्लेबाजों पर अंकुश लगाने के लिए। और ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार, ये गेंद ऑन साइड पर गेंद को मोड़ दिया, सफल होते हुए गेंद पहुंची इस वक्त शॉट फाइन लेग की दिशा में, और 1 रन बल्लेबाज को यहाँ पर मिल चुका है, और 1 रन के साथ स्कोर अब बढ़कर पहुंच चुका है 31 रनों पर। ये स्ट्राइकर्स जो कि पहले बल्लेबाजी यहाँ पर करता हुआ, और गेंदबाज धनुष इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए प्रद्युम्न सामना करने के लिए तैयार। 6 रन वो बना चुके हैं, अब तक 7 गेंदों का सामना कर चुके हैं, और अगली गेंद लेकर धनुष तैयार। दाहिना तो ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए ये गेंद उछाला प्रद्युम्न ने गेंद को लॉन्ग ऑन की दिशा में, लेकिन वहां पर फील्डर मौजूद और इसी के साथ यहाँ पर यह विकेट गिर चुका है।
गेंद को इस वक्त उछाला था जरूर, लेकिन प्लेसमेंट बिल्कुल गलत और आखिरकार लॉन्ग ऑन पर जो फील्डर थे उन्होंने आगे क्यों आते हुए इस कैच को एक बेहतर जजमेंट के साथ लपका और इसी के साथ ये विकेट नंबर 4 यहां पर गिर चुका है। तो मैंने और सतीश ने जिक्र किया था यहां पर रनों के बहाव पर अंकुश लगाना जरूरी है। अगर आपको रनों के बहाव पर अंकुश लगाना जरूरी है तो आपको डॉट गेंदे फेंकने होंगे या फिर विकेट उखाड़ने होंगे। ये दोनों अस्त्र का आपको प्रयोग करना होगा। यहाँ पर विकेट उखाड़ने के जरिए इस वक्त कुछ हद तक दबाव बढ़ा चुके हैं गेंदबाज धनुष और यहाँ पर प्रद्युम्न का विकेट गिर चुका है और अब नए बल्लेबाज का आगमन यहाँ पर होता हुआ और नए बल्लेबाज इस वक्त क्रीज पर मौजूद। तो यहां पर वाइड गेंद थी, ऑफ स्टंप से काफी बाहर की ओर निकलते हुए और वाइड का इशारा अंपायर द्वारा 32 रनों पर स्कोर बोर्ड पहुंच चुका है। पूरी तरह इस वक्त जो कि नए बल्लेबाज क्रीज पर आ चुके हैं दिनेश जो कि इस वक्त बल्लेबाजी करते हुए और धनुष बोलार इस वक्त गेंदबाजी यहां पर आगे बढ़ाते हुए। धूप बिल्कुल गायब हो चुकी है मैदान पर और फ्लडलाइट्स की खंबे की बत्तियां इस वक्त जल चुके हैं। शाम के 6:45 बज चुके हैं। इट्स ऑलरेडी 5 इन द इवनिंग। ये गेंद टिप्पा खाने के बाद नीचे रहते हुए ऑन साइड पर सफल होते हुए गेंद को उछालना चाहा था, लेकिन गेंद उनके बैक लेग पर टकराई और पहुंची सीधे पॉइंट की दिशा में। रन से इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिलेगा। धनुष एक बार फिर से तैयार, एक बेहतर लेंथ और लाइन के साथ यहाँ पर गेंदबाजी करते हुए अंपायर से कुछ बातचीत वो करते हुए और वापस अपने गेंदबाजी के मार्ग पर आते हुए तैयार अपनी अगली गेंद लेकर दाहिने हाथ ऊपर द विकेट गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज दिनेश इस वक्त सामना करने के लिए तैयार धनुष की गेंदों का। ये गेंद इस बार दिनेश के लिए ऑन साइड पर गेंद को मोड़ दिया, सफल होते हुए गेंद जाती हुई डीप इन विकेट की दिशा में। 1 रन बल्लेबाज को मिलेगा और इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 33 रनों पर। 33 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट इन द ओवर नंबर 4 इन प्रोग्रेस। और अब कुल मिलाकर पहला बेहतर ओवर कहना पड़ेगा जो इस वक्त प्रगति पर है टीम एनजेएस की ओर से, जो धनुष इस वक्त गेंदबाजी कर रहे हैं और स्ट्राइक इस वक्त अब्दुल सलीम के पास और वो इस वक्त अपनी अगली गेंद का सामना करने के लिए तैयार। धनुष की गेंदों का सामना करने के लिए तैयार। धनुष दाहिने हाथों पर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए गेंद अच्छी गेंद स्टीयर किया, गेंद की गति को पहचानते हुए अंतिम क्षण में गेंद पहुंची थर्ड मैन की दिशा में और इससे पहले कि गेंद को वहां पर फील्ड किया जाता बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का। 34 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट। अब रनों के बहाव पर कुछ हद तक इस ओवर में अंकुश लगाने में सफल हो चुके हैं गेंदबाज धनुष अब तक और कुल मिलाकर इस ओवर में अभी भी एक गेंद और बाकी और देखते हैं इस एक गेंद में वो किस तरीके की गेंदबाजी यहाँ पर करते हैं और अपनी अंतिम गेंद लेकर इस वक्त तैयार। दाहिने हाथों पर द विकेट। ये गेंद ऑन साइड पर उछालना चाहा, बेहतरीन गेंदबाजी, बेहतरीन ओवर। सिर्फ 4 रन इस ओवर में धनुष ने प्रदान किए। अब 4 ओवर की समाप्ति के बाद 34 रन बन चुके हैं और इस ओवर के प्रारंभ से पहले रन रेट, प्रेजेंट रन रेट जो था ठीक 10 रन प्रति ओवर था, अब वो रन रेट उतर कर आ चुका है ठीक 8.5 रन प्रति ओवर। द प्रेजेंट रन रेट इज नाउ कमिंग डाउन टू एग्जैक्टली 8.5 रन पर ओवर, राइट फ्रॉम 10 रन पर ओवर बिफोर द स्टार्ट ऑफ दिस ओवर। और यहाँ पर सवाल है बचे हुए 2 ओवर का, तो देखते हैं इन बचे हुए 2 ओवर में और कितना नियंत्रण प्राप्त करते हैं बल्लेबाजों के ऊपर गेंदबाज। हमसे दूर वाली छोर से केवीसी एंड की ओर से गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए गेंदबाज श्रीशा इस वक्त गेंदबाजी शुरू करते हुए और सामना इस वक्त करने के लिए तैयार अब्दुल सलीम। तो फील्डिंग में जमावट यहां पर चलती हुई और शीशा एक बार फिर से तैयार। ये गेंद इस बार ऑफ स्टंप से बाहर की ओर निकलती हुई कट करने का प्रयास किया, अंतिम क्षण में बैकफुट पर जाने के बाद चूंकि गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में, रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिलेगा। स्कोर रुक चुका है इस वक्त 34 रनों पर 4 विकेट के नुकसान पर। 5वां ओवर यहां पर प्रारंभ हो चुका है। शीशा एक बार फिर से गेंदबाजी यहां पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथों पर द विकेट। ये गेंद इस बार गेंद को हल्के से स्टीयर कर दिया, बैकफुट पर जाने के बाद गेंद पहुंची गली क्षेत्र पर, जब तक गेंद को वहां पर फील्ड किया जाता 1 रन का इजाफा यहां पर हो चुका है। 35 ना और इस बीच नो बॉल का इशारा स्क्वायर लेग अंपायर का। तो जहां तक सवाल है विकेट कीपर मेरे ख्याल से नो बॉल घोषित करते हुए और 1 रन का इजाफा, फ्री हिट गेंद इस वक्त और कुल मिलाकर स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है इस नो बॉल के रन के साथ
36 रनों पर और फिर से एक बार गेंदबाज इस बार गेंद को उछाला, गेंद हवा में और इसी के साथ यह विकेट गिर चुका है, लेकिन ये गेंद नो बॉल है तो विकेट यहां पर बच चुका है। तो स्कोर यहां पर इस एक रन के साथ बढ़ चुका है 37 रनों पर, 37 ना फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट। और जहां तक सवाल है गेंदबाजी का, तो गेंदबाज इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हैं, ऑफ स्टंप से बाहर, वाइड का इशारा, ऑफ स्टंप से काफी बाहर की ओर निकलते हुए और वाइड घोषित अंपायर द्वारा 38 रनों पर स्कोर बोर्ड यहां पर पहुंच चुका है। कुल मिलाकर 5वां ओवर उनकी पारी का यहां पर प्रगति पर। तो गेंदबाज श्री शाह इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए दाहिना तोपर द विकेट। ये गेंद इस बार गेंद को ऑफ स्टंप से बाहर की ओर गेंद को निकालने का प्रयास किया था अंतिम क्षण में, लेकिन गेंद की लाइन पर बल्ले को लाने में असफल और गेंद सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथों में। रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला। अब्दुल सलीम 2 रनों के व्यक्तिगत स्कोर पर इस वक्त बल्लेबाजी करते हुए एक बार फिर से शीशा की गेंदों का सामना करने के लिए तैयार। यह गेंद उछालना चाहा, बेहतरीन तरीके की स्टंपिंग एंड नाउ इट्स गोइंग टू बी अ थर्ड अंपायर। तो देखने वाली बात यह है, जब विकेट कीपर ने विकेट बेल्स चटकाए थे तब बल्लेबाज अपना बल्ला बैट क्रीज पर लैंड कर चुके थे या नहीं। तो देखते हैं यहां पर तृतीय अंपायर क्या निर्धार देते हैं। आउट, द डिसीजन केम फ्रॉम अंपायर। जब विकेट उखाड़े गए थे तब बल्लेबाज का बैट बल्ला हवे में था, द बैट वाज इन द एयर, दैट्स व्हाई थर्ड अंपायर गिवन हिम आउट। और इसी के साथ विकेट नंबर 5 यहां पर गिर चुका है। 38 रनों पर 5वां विकेट गिर चुका है। आउट होने वाले बल्लेबाज अब्दुल सलीम आउट होकर पेविलियन वापस लौटते हुए। अब नंबर 7 बल्लेबाज का यहां पर आगमन होता हुआ और धीरे धीरे वो बल्लेबाज इस वक्त क्रीज पर पहुंचते हुए। शबाब, तो शबाब इस वक्त स्ट्राइक पर तैयार और शीशा इस वक्त गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए। एक धीमा क्रिकेट इस ओवर में और पिछले ओवर में हमें देखने को मिला, खासकर गेंदबाज एक बेहतर गेंदबाज लेंथ और लाइन के साथ गेंदबाजी करते हैं। इस बार ऑफ स्टंप से काफी बाहर, वाइड का इशारा। अगर विकेट गिरे हो और अब अगर आप अगली गेंद पर वाइड फेंकते हैं तो निस्संदेह यहाँ पर बल्लेबाज का मनोबल बढ़ता है। और यहाँ पर ऑफ स्टंप से काफी बाहर की ओर गेंद फेंकी थी अगली गेंद पर विकेट प्राप्त करने के बाद गेंदबाज ने। और एक बार फिर से तैयार, दाहिने हाथों पर विकेट गेंदबाजी करते हुए। बेहतर गेंद थी, बेहतर, एब्सोल्युटली परफेक्ट वन, दैट्स द लाइन ही हैज टू बॉल इन दिस सिचुएशन। 5 overs completed and after in fact 1 ball to go, 1 ball left in this over, एक नो बॉल है इस ओवर में, तो इस वजह से एक गेंद अभी भी बाकी। और जहां तक सवाल है गेंदबाजी का, तो शीशा इस वक्त गेंदबाजी के मार्ग पर जाते हुए। मोहम्मद शबाब इस वक्त सामना करने के लिए तैयार रहा। तो एलिमिनेटर तौर का मैच यहां पर खेला जाता हुआ और 5वें ओवर की अंतिम गेंद लेकर इस वक्त शीशा तैयार, दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए शबाब के लिए। ये गेंद इस बार गेंद को खेलना चाहा, विकेट कीपर चूके रन के लिए दौड़ पड़े, शॉर्ट फाइन लेग पर गेंद पहुंची, निशाना दागा लेकिन निशाना काफी वाइड है। और इस बीच 1 रन का इजाफा और 22 का इशारा और 22 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है अब 40 रनों पर 5 विकेट के नुकसान पर, 40 for the loss of 5 wicket and 5 overs had been bowled. तो सतीश, निस्संदेह a fantastic comeback made by the bowlers of team NJS after being conceding 13 for 3 overs. They come back very well, conceded 10 in the next 2, and this is an absolutely fantastic comeback made by the bowlers of team NJS in the last 2 overs. Exactly, Gopi. The 2 bowlers, Dhanush and then now Shisha, the 2 bowlers done a great job to restrict the flow of the runs. And because of that, now they can dream that they can win the match if they able to bowl another good over. And the over of at least 40 to 45. But Gopi, is very, very important to restrict the runs because under the floodlight, chasing 45 plus runs is definitely going to be a difficult task for any team. And that's why it's so important here for NJS to restrict the runs in the final over as well. And any score 45 to around 45 to 50 is a very good score to depend. And that's why very important for NJS. They need to bowl another 1 good over. बिल्कुल, अंतिम ओवर में एक और बेहतर गेंदबाजी की जरूरत है यहाँ पर। पहली गेंद, इस बार गेंद को खेलना चाहा, गेंद पहुंची शॉर्ट कवर पर, उछले
लेकिन गेंद इस वक्त निकल गई उनकी दाईं ओर से और इस बीच 1 रन का इजाफा यहाँ पर हो चुका है और 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 41, 5 विकेट के नुकसान पर। तो बिल्कुल सही बात आपने फरमाया सतीश, इन हालातों में अंडर दिस कंडीशन 45 का आंकड़ा भी बेहतर स्कोर साबित होता है क्योंकि हवा का रुख काफी धीमा है इस वक्त। बल्लेबाज के बल्ले पर गेंद आमतौर पर रुक कर आती है, ठीक तरह से नहीं आती है। यहाँ पर गेंद को इस वक्त खेल दिया लॉन्ग ऑफ की दिशा में, गेंद पहुंची इस वक्त, दूसरा रन लेना चाहते हैं नहीं मिलेगा और 1 रन के साथ स्कोर अब बढ़कर पहुंच चुका है 42 रनों पर 5 विकेट के नुकसान पर। 42 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट इन द ओवर नंबर 6 एंड लास्ट इन प्रोग्रेस इन देयर इनिंग्स। और विनीत 2 बेहतर गेंदें इस ओवर में फेंक चुके हैं, अपनी ओर के अगली गेंद लेकर तैयार। शबाब इस वक्त सामना करते हुए स्टीयर करना चाहा, बैकफुट पर जाने के बाद अंतिम क्षण में परिवर्तन के तौर पर कुछ हद तक धीमी गेंद थी और गेंद सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथों में, रन बल्लेबाज को नहीं मिला। एलिमिनेटर तौर का मैच यहाँ पर खेला जाता हुआ केवीसी प्रीमियर लीग सीजन 3 2022 के अंतर्गत और विनीत एक बार फिर से गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए पटकी हुई गेंद लेग स्टंप पर आती हुई और वाइड का इशारा अंपायर का और वाइड के इस रन के साथ स्कोर अब बढ़कर पहुंच चुका है 43 रनों पर 5 विकेट के नुकसान पर। 3 गेंदें अभी भी बाकी है और लगभग मैदान पर अंधेरा सा छाता हुआ शाम के 6 बजते हुए 5:05 यहाँ पर बच चुके हैं और इसे ढलते हुए वक्त के साथ साथ रोशनी भी यहाँ पर कम होती नजर आती है। दाहिने हाथों पर द विकेट विनीत की गेंद तक पहुंचे, गेंद को इस वक्त स्कूप किया लेकिन कोई फील्डर वहां पर नहीं, डीप कवर पॉइंट पर फील्डर मौजूद, दूसरा रन लेना चाहते हैं लेकिन नहीं मिलेगा। थ्रो पहुंच चुका है इस वक्त स्ट्राइकर एंड पर और 1 रन के साथ दोनों बल्लेबाज यहाँ पर संतुष्ट और 1 रन के साथ कुल रन संख्या अब बढ़कर पहुंच चुकी है 44 रनों पर 5 विकेट के नुकसान पर। इट्स 44 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट। और जहां तक सवाल है बचे हुए गेंद का तो 2 गेंदें अब उनकी पारी में बाकी। विनीत इस वक्त तैयार, स्टंप्स एक्सपोज करके इस वक्त ठहरते हुए ये गेंद ऑन साइड पर उछालना चाहा, मैं समझता हूं बल्ले का अंदरूनी किनारा टकराया होगा। इट्स गॉट अ इनसाइड एज ऑन दैट, यस इट डज और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 45 5 विकेट के नुकसान पर। अंतिम गेंद अब उनकी पारी का यहां पर बाकी, द लास्ट बॉल नाउ रिमाइनिंग इन देयर इनिंग्स। और इस बीच विनीत गेंदबाजी के मार्ग पर आते हुए शबाब इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। द लास्ट बॉल ऑफ देयर इनिंग्स इज नाउ कमिंग अप और गेंदबाज की गेंद फुल टॉस, फुल किया है लॉन्ग ऑफ पर, फील्डर गेंद के नीचे आते हुए और विकेट नंबर 6 यहां पर गिर चुका है उनके पारी के अंतिम गेंद पर और इसी के साथ उनके निर्धारित ओवर समाप्त हो चुके हैं। और जहां तक सवाल है, AS Strikers finished with 45 for the loss of 6 wickets in the stipulated 6 overs and now the target for team NJS is 46 they have to score with the required run rate of exactly 7.66 runs per over to qualify for the qualifier number 2 of this competition. जहां तक सवाल है 46 रनों के लक्ष्य तक पहुंचेगा तो देखते हैं उनके बल्लेबाज यहां पर करते हैं। तो निस्संदेह अंतिम 3 ओवर belongs to the bowlers of team NJS. They conceded just 16 runs in the last 3 overs and because of that they restricted the batsmen of AS Strikers. So everything set for the second session of the Eliminator match. 46th target for AS Strikers and let's see what will happen in their innings. और उनकी पारी की शुरुआत यहाँ पर होगी चंद लम्हों बाद और तब तक एक छोटा सा ब्रेक हम लेते हैं और छोटे से ब्रेक के बाद हम आपके सामने उपस्थित होंगे मेरे काबिल दोस्त सतीश के साथ एक बार फिर से अंग्रेजी में जब यहाँ पर टीम NJS की पारी की शुरुआत होगी। धन्यवाद, थैंक यू। Exactly, Gopi, and
ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಗೋಪಿ ಸರ್. ಈ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ದೂರದ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿಂದ ಕೂಡ ನಮ್ಮನ್ನ ಅತಿಥಿಗಳು ಜೊತೆಗೂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮನ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಲ್ಚರಲ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಬಾಳೆಹೊನ್ನೂರು ಇದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತಹ ಮನುಕುಮಾರ್, ಅದೇ ರೀತಿ ಕ್ರೀಡಾ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕರು, ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರು ಹಾಗೂ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಯುವ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಬೆಳೆಸುವಲ್ಲಿ ತನ್ನದೇ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸಿದಂತಹ ಹಿರಿಯ ಆಟಗಾರರು ಕೂಡ ಅಂತ ಸ್ಟೀಫನ್ ಓಡಿ ಈಗಾಗಲೇ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆಸೀನರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರ ಪರವಾಗಿ, ಮಾಲಕರ ಪರವಾಗಿ, ಕ್ರೀಡಾ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನ ಮುಂಚೆ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಯಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಗಾರರಾದಂತಹ ಸತೀಶ್ ಸಾಲೇನ್ರವರನ್ನ ಕರೀತಾ ಓವರ್ ಟು ಯು ಸರ್. Thank you very much, Imo, and lot of dignitaries out here for the prestigious KVC Premier League. Of course, one of the best, one of the prestigious cricket tournaments so far. It's a wonderful day for cricket. Yesterday we had a fantastic game of cricket. Today also we are witness some the very close finish matches. As well as some nail batting finish as well. From the far end right arm over the wicket, the first ball 46 is the target, and first ball itself Lokesh is off the mark, and they started their journey. 46 to win this match, and 7.33 runs per over is the required run rate. And wait to see how well the batters of NJS will going to get this big total. Of course, it's the total which is can depend in this condition is strikers if they bowl well, but at the same time, and even if the batters bat well in this condition, they can win the match as well. So wait and see how well these two opening batters will going to lay the foundation. From the far end, Pradyumna delivers, and Vedant, the copybook style of defensive stroke played down to short extra cover region, and there is no possibility of any run. Most of the batsmen, Gopi, we can see that even NJS has got some good players in the side, especially these two opening batters, left and right combination, Lokesh and Vedant. They got a potential of playing a big innings. They got a potential of hitting some big stroke as well. And that's so important from these two batters, how to play. One of these batsmen, how to play some shit ankle roll if they wanted to win this match. Pradyumna delivers, beautifully bowled. Again, copy of style of defensive stroke. Vedant looks like a little bit a defensive frame of mind. Maybe that was a game plan, Gopi, because he knows that Pradyumna is a kind of bowler who can be very effective in the first power play over, because against his line and length, going for the big shot, it just looks like it's asking for trouble. That's why Vedanta is in a defensive frame of mind. This time using his feet, and wicketkeeper behind the stump just goes, lost that golden opportunity. The missed that golden opportunity. Sukesh in dedication might be a little bit shown the urgency. I don't know why that Vedant lost his patience. He's very patient in the first two deliveries, but and all in sudden he just tried to use his feet coming down the track without seeing the line of the delivery, and he's just lucky there. Still there he is in the middle. Just improvisation he's looking for, but he missed it completely. So far, this outstanding bowling performance here from Vedant, from Pradyumna. Vedant struggle time continues in this particular over. Everybody's going up here, and Squalak umpire Rajeshwar maybe had a little bit word with that closing fielders. Why you are shouting for everything? Because ball has got a lot of gap between bat and pad. Ball is just deflected from the pad of Pradyumna. Again, that was one more very good delivery there, Pradyumna. Absolutely fantastic. It's just a single run in this over. And outstanding start here, Gopi. But Pradyumna, Gopi, it's too much. Do you think it's too much from Vedant? Because the first three deliveries we can see that he's in a defensive frame of mind. Maybe after playing the defense, we can look for some rotation of strike, isn't it? The cricket is not all about hitting the boundaries and sixes, but sometimes you cannot underestimate that singles as well. Singles are always just like a raindrops. Maybe that was a small size in shape and size, but continued falls of rain makes the rivers overflow. बिल्कुल सतीश, पहले गेंद पर अगर आप रन नहीं बना पाते तो दूसरे गेंद पर आपको गेंद अगर बेहतर लाइन की रहती है तो आपको सेंसिबल क्रिकेट अपनाना जरूरी होता है. और यहाँ पर बल्लेबाज जो थे
वेदांत जिन्होंने 3 गेंद पर उन्होंने कोई रन नहीं बना पाया, तीनों गेंदों को रक्षात्मक तरीके से उन्होंने खेला था और उसके बाद सहज रूप से आक्रामक बल्लेबाजी उन्होंने अपनाना चाहा और बाकी के 3 गेंदों में भी सफलता उनके पक्ष में नहीं आई। और एक सही बल्लेबाज की निशानी जैसा कि आपने फरमाया यही होती है कि वो सेंसिबल क्रिकेट अपनाए जब आक्रामक बल्लेबाजी वो नहीं कर सके। Absolutely, Gopi. And this time, Lokesh going over the top towards the deep extra cover boundary. One bounce looks like, wait for the umpire signal, whether it's 6 or not. Yes, it is a 6. What an outstanding blow there coming from the weight of Lokesh. Just like I mentioned, Gopi, it's one of these two batsmen have to play a big role, need to play the shade angle role, and he is the kind of batsman, Lokesh. He got all kind of the varieties of strokes. He can play defensively, he can play some aggressive strokes as well. This is the kind of treatment which is required in the power play overs. When you are chasing the total score like 44-46 to win this match, you need to exploit the condition of the fielding restriction in the power play overs. And this is the right kind of treatment when there is no field in the deep extra cover. This is absolutely excellent extra cover drive, just making a little bit room to play the shot, and he got a little bit, and he just grabbing the opportunity to dispatch that one over the deep extra cover for a 6. Much required 6 which came from the Lokesh, the bat of Lokesh. 7 without loss of any wicket. Jitesh little bit now under pressure. Why not? Whenever the batter is going for the big shot, the bowler started to feel the pressure. Lovely delivery followed by after that 6. And again, that's what I'm talking about, Gopi. This is a Lokesh, what kind of technique is implemented. He not only played defensively, but soft hand comes into play. When you played it in a soft hand, there is opportunities created for the run. And even that was a defensive stroke. I think Lokesh managed to get the single for that. 8 for the loss of, without loss of any wicket. That is what I'm talking about, how Vedant need to see that. Not only, of course, you need to give the respect for some good deliveries, but at the same time, you need to look for some rotation of strike. 8 without loss of any wicket. Jitesh again just lost his rhythm. Looks like Jitesh is again bowling from the far end. Right arm around the wicket. Pass umpire Rajeshwar delivers. This time Vedant again looking for the big shot. He looks not really looking that much of comfortable. Again he's shuffled across the line of the delivery and without seeing the line of the delivery, looking for the blind stroke, and he faced the penalty for that. Not really able to meet the ball from his bat, missed it completely. And now Lokesh just having a word with his partner. That is very important, Gopi. You need to talk with your partner when everything is going, something going in the mind of the Vedant. Maybe that suggestion which is coming from Lokesh, it is little bit influence the technique of this man. This time full toss delivery. He lofted it, but I don't think he will going to get the distance. But he will going to get the fielder in the deep long on region. The struggled innings comes to an end of Vedant. Look at the air strikers. They know exactly. They got a big fish in the net. This is a kind of pressure is they're able to put. And I think Jitesh done a great job here. Jitesh juicy full toss, Gopi. But everything is when his time is not belongs to you. Even the full toss converted into the wicket taking delivery. बिल्कुल जब वक्त आपके खिलाफ चलता है तो आप किसी भी तरीके के स्ट्रोक खेलें, किस्मत आपका साथ नहीं देता है। और यहाँ पर वेदांत के ऊपर दबाव था चंद डॉट गेंदे खेलने के बाद, और वो दबाव को उन्होंने स्ट्रेट अवे सीधा हटाना चाहा एक करारा स्ट्रोक लगाने के बाद चौके या छक्के के रूप में। हालांकि फुल टॉस गेंद थी, लेकिन फुल टॉस गेंद पर स्ट्रोक खेला, लेकिन स्ट्रोक में इतना पर्याप्त दम नहीं था कि वो सीमा रेखा को पार कर सके। और वेदांत के ऊपर के दबाव को वो खुद हटाना चाहते थे और उनका विकेट वो खुद खोने के बाद पेविलियन वहां पर वापस लौट चुका। और वेदांत का विकेट बेशकीमती विकेट सतीश, और निस्संदेह उनका विकेट प्राप्त करना एएस स्ट्राइकर्स के गेंदबाजों के लिए एक बिग बूस्ट यहां पर साबित होगा। Exactly, Gopit. Why not? It's definitely going to be a big boost, and Jitesh will going to continue from the commentary box, and right up over the wicket he delivers outside line of some slashed that one, very hard down to deep backward boundaries, and fielder chasing the ball, but ball winning the race against the fieldsman. Welcome boundary again from the bat of Lokesh. This has been outstanding batting display here from Lokesh. Of course, that was a juicy putter, but he need to deliver that one, isn't it, Gopi? He need to deliver that one. He just slashes that one. When he slashed that one, he slashes that one very hard, and that's why he got that one right from the middle of the bat, and he got a boundary for that. And with that boundary, score jumped into 12 for the loss of 1 wicket. Again, Jitesh bowling away from Aza. Right arm over the wicket.
the different technique is implemented. Switch it is comes into play, but there is a protection in the deep extra cover region. Of course, the good change of line there by Jeta, seeing that Lokesh is attempting for the free hit delivery. Then he ball outside the line of flexion, but still Lokesh managed to hit that one just like a left-hand batter hitting that stroke, and he managed to get a single. 13 for the loss of 1 wicket. This is a productive over. After seeing that the first over is very quiet. The quiet first over, I think Gopi, it's a productive over. In this particular over, they got 10 runs. I think it's 1 run in the first over. And now it's 12 runs in second over. I think it's a much better over here for NJS. बिल्कुल सतीश, हालांकि वेदांत का विकेट इस ओवर में जरूर गिरा है, लेकिन 12 रन बटोरने में सफल, और खासकर लोकेश जो इस ओवर में एक छक्का और एक चौका यहाँ पर वो जड़ चुके हैं। और जहाँ तक लक्ष्य तक पहुँचने का सवाल है टीम एनजेएस का, तो मैं समझता हूँ लोकेश की उपस्थिति यहाँ पर बेहद जरूरी है, क्योंकि वेदांत का विकेट गिर जाने के बाद जो दबाव यहाँ पर क्रिएट हो चुका है, उस दबाव को यहाँ पर क्रीज पर मौजूद लोकेश हटा सकते हैं। और पिछले ओवर के एक गेंद में उन्होंने साबित किया, वेदांत का विकेट गिर जाने के बाद अगली गेंद को उन्होंने डिस्पैच किया था कवर पॉइंट सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। और यहाँ पर देखते हैं बचे हुए 4 ओवर में क्या होता है। Exactly, Gopi. Everything is going up. I think umpires are on mode. Nothing is happened. Just an excitement. We can see that now umpire having a little bit conversation with the squad umpire Rajeshwar. Excitement, Gopi, because both the teams, they wanted to win this match. They wanted to win this match. That's why that kind of the body languages we can see that from both the teams. And wait and see what could be the decision from umpire Rajeshwar. Is walking and I think catch has been taken. He's nicked it. Sometimes it's very difficult, Gopi, when it's a little feather touch. Even for the umpires, it's very difficult to hard that sound, because a little bit, if it is a noisy ground, it's very difficult, isn't it, to hard the sound. But squall umpire, I think sometimes he can hard that sound. That's why umpire, I think, is a good thing. That shows the experience and seeing the body languages of all the players. They're going up. And immediately then Rajaratna sir asking Rajeshwar to whether you heard that sound or not, and Rajeshwar told that yes, I heard that sound, and is given. बिल्कुल काफी बारीक आवाज इस वक्त आई थी गेंद बल्ले पर टकराने के बाद, और स्क्वायर लेग अंपायर राजेश्वर ने उस आवाज को सुन लिया था। हालांकि स्ट्राइकर एंड पर जो अंपायर थे राजरत्ना, जिनको ये आवाज सुनाई नहीं दी, तो बेहतर इस वक्त निर्धार उन्होंने लिया कि क्यों ना स्क्वायर लेग अंपायर से इस वक्त पूछा जाए, और उन्होंने पूछकर ये सही निर्धार यहाँ पर किया। तो लोकेश का भी विकेट गिर चुका है सतीश। अब मैं समझता हूँ दबाव कुछ हद तक बढ़ चुका टीम एनजेएस के बल्लेबाजों के ऊपर। Exactly, Gopi. It is definitely going to be a big blow, and again the ball is in there for a while, but I don't think there's any contact with the bat, and that's why they're not interested for any run at all. And Pradyumna, what a wicket it is! Absolutely, this is a one wicket I think will going to change the complexion of this match. And when the batsman Lokesh is looking pretty good in the middle, in the previous over he's looking very in a aggressive frame of mind, and all in sudden Pradyumna picking up his wicket, and I think now is a gate which is opened here for air strikers to win this match. Pradyumna delivers down the leg stump, kept a little bit low, but wide signal umpire rightly so, going down the leg stump but too far, with the addition of that single scoreboard numbers on to 14 for the loss of 2 wickets. So still they have to get another 32 runs to win this match. Long way to go. NGS, they need to bat really very well. They need to fight for the victory if they wanted to win the match. Pradyumna from the far end, left arm round the wicket. Wow, again that was a short pitch delivery. That was a short pitch delivery. The batsman need to capitalize that kind of deliveries, and this time the batter fails to take the advantage of that delivery. Vinit Acharya is on strike with the jersey number 12, and Shisha is a very young, talented the batter, just 19 years old. Shisha is on non-strikers end, and Pradyum bowls. This time a bowler's back drive, lovely stroke down to deep long off region, not more than a single, and with that single scope moves on to 15 on the board. Pradyum not really bothered about that single. You know exactly in this situation if these singles will not going to help NJS to win this match, because the run rate, asking run rate is really creeping up, and he got a very big wicket, the wicket of Lokesh in this particular over. Pradyum delivers. Oh, that was a absolutely fantastic one. And if it is a leg before wicket, I think it's going to be a flum. And that's why it has got a smile in the face of Pradyumna as well as the umpire.
So that now damage done, score remains on 15 for the loss of 2 wicket. Another 31 more runs required for the victory. Long way to go here for NJS, and needed some firework from the bat if they wanted to win the match. From the far end, Pradyumna delivers again, lovely delivery, fuller length outside the run of half time, but still he managed to beat the bat of Shisha. The very good over there from Pradyumna. What an outstanding over here from Pradyumna. After that, very expensive over which is bowled by Geetesh in this end, that the kind of restriction which is required from that end, that kind of bowling is which is bowled there by Pradyumna. Just look at his bowling figure, outstanding bowling figure. 2 overs, no maiden, conceded 3 runs, and he picked up a 1 wicket. The economy 1.5 runs per hour, and when you are depending a total like 46 to win the match, opposition Gopis, 2 overs 3 runs, and definitely it was a match-winning bowling performance, isn't it? बिल्कुल 46 रन 6 ओवर के फॉर्मेट में जब आप पीछा कर रहे हो तो अब आपके टीम के गेंदबाज अगर सिर्फ 2 ओवर में 3 रन देते हैं तो निस्संदेह यहाँ पर बेहतरीन गेंदबाजी, आउटस्टैंडिंग बॉलिंग परफॉर्मेंस कहलाती है, बेहतरीन गेंदबाजी यहाँ पर कहलाती है। और यहाँ पर प्रद्युम्न ने अपने 2 ओवर के कोटे में सिर्फ 3 रन उन्होंने प्रदान किए। बाएं हाथ के सीमर काफी प्रतिभाशाली, और उनके इस प्रयत्न की बदौलत अब टीम एनजेएस के लिए रन बनाना इस वक्त कुछ हद तक मुश्किल हो चुका है, और 31 रन चाहिए, 3 ओवर का खेल बाकी। 31 टू गेट नाउ इन रिमेनिंग 18 डिलीवरीज, द आस्किंग रन रेट इज नाउ गॉन अप एग्जैक्टली 10.33 रन पर ओवर। और यहाँ पर गेंदबाजी शुरू करते हुए गेंदबाज राघवेंद्र, और सामना इस वक्त करने के लिए तैयार श्रीशा। ओवर की पहली गेंद लेकर राघवेंद्र की, गेंद बैकफुट पर गई, गेंद को कट करना चाहा लेकिन मिडल ऑफ द बैट कनेक्शन नहीं, गेंद पहुंची इस वक्त शॉर्ट कवर पर जहां पर गेंद को फील्ड कर लिया गया, और 1 रन के साथ दोनों बल्लेबाज अपना छोड़ यहां पर बदल चुके हैं। स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 16 रनों पर। इस 1 रन के साथ 2 विकेट के नुकसान पर कम से कम 1 चौके, 1 या 2 चौके या छक्कों की इस वक्त सख्त जरूरत इस मैच में अपनी वापसी करने के लिए टीम एनजेएस के बल्लेबाजों को। और क्रीज पर मौजूद श्रीशा और विनीत आचार्य ये बात यहाँ पर जानते हैं, और इस बीच लेग स्टंप से बाहर की ओर निकलती हुई और गेंद को इस वक्त छोड़ दिया था लेग स्टंप से बाहर की ओर, और जब तक गेंद को फील्ड वहां पर विकेट कीपर फील्ड करते हुए, और इस बीच 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 17 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर। गेंदबाज एक बार फिर से तैयार, ये गेंद अच्छी गेंद थी, बल्ले का बाहरी किनारा शॉर्ट थर्ड मैन की दिशा में, और इस बीच निशाना दागा लेकिन निशाना इस वक्त चूकता हुआ, और 1 रन के साथ दोनों बल्लेबाज अपना छोड़ यहाँ पर बदल चुके। 18 रनों पर स्कोर बोर्ड पहुंच चुका। रन्स अभी भी सिंगल्स के रूप में बनते हुए, और एक कसी हुई गेंदबाजी का प्रदर्शन यहाँ पर जारी रखते हुए गेंदबाज एएस स्ट्राइकर्स के। तो इस वक्त राघवेंद्र गेंदबाजी यहां पर आगे बढ़ाते हुए दाहिना तो पर द विकेट गेंदबाजी करते हुए, ये गेंद इस बार बेहतरीन गेंदबाजी और कट बिहाइंड द विकेट, एक और विकेट यहां पर गिर चुका है। ऐसा कहना पड़ेगा, जस्ट गॉन फॉर अ माइटी, इज गॉट आउटसाइड निक ऑन दैट, एंड विकेट कीपर बिहाइंड द स्टंप्स मेड नो मिस्टेक। थर्ड विकेट गॉन, 18 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट, एंड नाउ टीम एनजेएस आर नाउ लुकिंग डीप इन ट्रबल। तो यहां पर बेहतरीन गेंदबाजी का सिलसिला जारी रखते हुए कुल मिलाकर उनकी पारी में अब तक 3.3 ओवर फेंके गए हैं, 18 रन जोड़ चुका है। 15 गेंदों में चाहिए 28 रन, और निस्संदेह यहां पर आस्किंग रन रेट इस वक्त काफी बढ़ चुका है। हर गेंद पर लगभग 2 रन बनाना जरूरी यहां पर बन चुका है, और जहां तक चौके और छक्कों का सवाल है, इस वक्त उन्हें चंद चौके और छक्कों की सख्त दरकार इस मैच में अपनी वापसी करने के लिए। और इस बीच राघु एक बेहतर लेंथ और लाइन के साथ गेंदबाजी करते हुए, बाएं हाथ के बल्लेबाज का आगमन यहां पर हो चुका है धनुष बोलार, जो कि इस वक्त सामना करने के लिए तैयार, और राघु अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार, दाहिने हाथ राउंड द विकेट, ये गेंद ऑन साइड पर गेंद को पुल किया इस वक्त खूबसूरती के साथ, लेकिन रक्षण प्रोटेक्शन मौजूद इस वक्त डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग और डीप मिड विकेट के दरमियान, और इस बीच 1 रन का इजाफा यहां पर हो चुका है। 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर अब बढ़कर पहुंच चुका है 19 रनों पर 3 विकेट के नुकसान पर। रन्स अभी भी सिंगल्स के रूप में यहां पर बनते हुए, और निस्संदेह करारे स्ट्रोक्स लगाने की कोशिश यहां पर जरूर कर रहे टीम एनजेएस के बल्लेबाज, लेकिन सफलता अब तक उनके पक्ष में नहीं आई है, और स्कोर 19 रनों पर बढ़कर यहां पर पहुंच चुका है। और राघवेंद्र इस वक्त तैयार, शीशा
जैसा कि मेरे काबिल दोस्त सतीश ने फरमाया, 19 साल के काफी प्रतिभाशाली खिलाड़ी शीशा इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। ये गेंद इस बार बैकफुट पर गए, कट करना चाहा, चूंकि भाग्यशाली रहे, बल्ले और गेंद का कोई संपर्क नहीं, गेंद कुछ ज्यादा उछाल लेती हुई ऑफ स्टंप पर टिप्पा खाने के बाद और गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में। रन्स इस बीच नहीं मिला, स्कोर बोर्ड रुक चुका है 19 रन 3 विकेट के नुकसान पर। दर्शक काफी खामोशी के साथ मैच का आनंद यहाँ पर लेते हुए इस ढलते हुए शाम में, पूरी तरह अंधेरा इस वक्त नहीं हुआ है, उजाला अभी भी है, लेकिन यहाँ पर धीरे धीरे अंधेरा यहाँ पर छाता हुआ। ये गेंद इस बार लेग स्टंप से बाहर और इस बीच गेंद कौन साइड पर खेलना चाहता, चूंकि गेंद सीधे विकेट कीपर के हाथों में और इस बीच रन बल्लेबाज को नहीं मिलेगा। और इसी के साथ 4 ओवर की समाप्ति, 4 ओवर की समाप्ति के बाद 19 रन बन चुके हैं। सिर्फ 4 रन इस ओवर में राघवेंद्र ने प्रदान किए। एक और बेहतर ओवर अगर एएस स्ट्राइकर्स के पॉइंट ऑफ व्यू यानी दृष्टिकोण से देखा जाए, जो कि समाप्त हो चुका है राघवेंद्र का, जिसमें 4 रन उन्होंने प्रदान किया। अब once again straight away coming back to the equation, 46 minus 19, 27 in 2 overs, exactly 13.5 runs per over, the required 100 for them। और सतीश निस्संदेह अब ऐसा कहना पड़ेगा, चौके छक्के यहाँ पर टीम एनजेएस का भविष्य बदल सकते हैं। Absolutely, Gopi. That's why I mentioned about the when innings is progressing of AS strikers in the 45 is definitely going to be a big score. This is the 45 you are chasing in the late in the evening, not in the daylight. Of course, chasing 45 means you are just like you're chasing 60 plus runs in the daylight. And there is no wind at all. There is not that much of help for the batsman rather than the bowlers are dominating. And that's why they're a little bit struggling here, the batters of Team NGS. And I think all marks to the AS strikers batsmen. They got 45 runs valuable. At the same time, the AS strikers bowlers just justifying that runs by bowling some excellent overs. एब्सोल्युटली सतीश, बिल्कुल सही बात आपने फरमाई। इन हालातों में, शाम के इन हालातों में रन्स बनाना मुश्किल होता है, आमतौर पर इस मैदान का स्वभाव है। इस वक्त गेंद को खेल दिया खूबसूरती के साथ, गेंद फाइन लेग सीमा रेखा की ओर बढ़ती हुई और गेंद सीमा रेखा को पार कर चुकी है 4 रनों के लिए। सफल होते हुए गेंद को ऑन साइड पर मोड़ा था धनुष ने खूबसूरती के साथ। डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर फील्डर मौजूद थे, लेकिन काफी स्क्वायर और स्क्वायर लेग से फील्डर दौड़े, लेकिन गेंद तक पहुंच नहीं पाया और चौका इस वक्त प्राप्त करते हुए धनुष। और इस चौके के साथ वो टीम एनजेएस अपनी टीम की उम्मीदों को इस वक्त बरकरार रख चुके हैं। और अब रन्स चाहिए 23, गेंदे बाकी हैं 11। तो इस वक्त एक चौका या छक्का अगर और लगता है अगली गेंद पर, तो निस्संदेह यहाँ पर कुछ हद तक इस मैच में वापस आ सकता है टीम एनजेएस। और धनुष इस वक्त सामना करने के लिए तैयार और गेंदबाज इस वक्त गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए, ये गेंद इस बार धनुष के लिए सफल होकर गेंद कौन साइड पर उछालना चाहा, लेकिन गेंद कुछ ज्यादा हद तक नीची रेती टिप्पा खाने के बाद ओवर पिच गेंद थी और आखिरकार गेंद पर स्ट्रोक्स नहीं खेल पाए। अगर शॉर्ट गेंद होती तो शायद गेंद को पिक कर सकते थे वो सफल होने के बाद। तो स्कोर इस वक्त रुक चुका है 23 रनों पर, 23 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट, 10 बॉल्स नाउ रिमेनिंग, 23 रन्स मोर नाउ दे हैव टू स्कोर फॉर विक्ट्री। गेंदबाज की ओर किया गेंद इस बार धनुष के लिए, गेंद को ड्राइव कर दिया लंगोन की दिशा में, नॉट मोर देन अ सिंगल। और इस 1 रन के साथ स्कोर अब बढ़कर पहुंच चुका है 24 रन बिना किसी नुकसान के। M9 स्पोर्ट्स द्वारा एक बेहतरीन लाइव टेलीकास्ट यूट्यूब पर इस वक्त किया जा रहा है। और जहाँ तक इस श्रृंखला का सवाल है, केवीसी प्रीमियर लीग सीजन 3 2022-2022 एक बेहतरीन प्रगति इस ढलते हुए शाम में यहाँ पर बढ़ता हुआ, बेहतरीन प्रगति करता हुआ कहना पड़ेगा। इस श्रृंखला का दूसरे दिन का एलिमिनेटर मैच यहाँ पर खेला जाता हुआ। और इस बीच गेंदबाज दाईं हाथ ओवर द विकेट, पटके हुई गेंद इस बार स्क्वायर ऑफ द विकेट, गेंद को पंच किया। आखिरी मौके पर कम से कम 2 रन बल्लेबाज को मिलेंगे, कवर पॉइंट फील्डर के सिर के ऊपर से गेंद निकली और शीर्षक के खाते में 2 रन यहाँ पर वो बटोर चुके हैं। और इन 2 रनों के साथ स्कोर अब बढ़कर पहुंच चुका है 26 रनों पर, 26 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट। उम्मीदें अभी भी बरकरार टीम एनजेएस के लिए और ये दोनों बल्लेबाज जीतोड़ कोशिश यहां पर करते हुए करारे स्ट्रोक्स लगाने की, ज्यादा से ज्यादा रन हर गेंद पर बटोरने की। दाईं हाथ ओवर द विकेट, ये गेंद एब्सोल्युटली परफेक्ट वन, मच स्ट्रेट लाइन दिनेश की गेंद थी और इस वक्त गेंद को स्क्वायर ऑफ द विकेट पंच करना चाहते थे पंजों पर उछलते हुए, लेकिन आखिरकार गेंद को वो खेल नहीं पाया और गेंद सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथों में। रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला। अंतिम गेंद लेकर इस वक्त दिनेश तैयार शीशा के लिए, दाईं हाथ ओवर द विकेट, ये गेंद इस बार स्ट्राइक डाउन द ग्राउंड, गेंद को उछाला लॉन्ग ऑफ के पर और इस बीच धनुष रन नहीं लेना चाहते, वहां पर सिंगल हो सकता था, लेकिन धनुष इस अंतिम ओवर में स्ट्राइक को अपने पास रखना चाहते हैं। अब अंतिम ओवर में चाहिए 20 रन, 20 रिक्वायर्ड
इन लास्ट ओवर। और सतीश, धनुष ने अंतिम गेंद पर शीशा को रन लेने से मना किया। स्ट्राइक वो खुद रखना चाहते हैं, शायद उनको अपने आप पर विश्वास है। और मैं समझता हूँ धनुष की अगर बल्लेबाजी की काबिलियत के बारे में देखा जाए तो बेहतर बल्लेबाज के रूप में जाने जाते हैं और अंतिम ओवर में 20 रन बनाने की क्षमता वो रखते हैं। और यहाँ पर उन्हें एक ऐसी बल्लेबाजी करनी है जो उनके टीम के लिए एक यादगार पारी यहाँ पर साबित हो। Exactly, it's a very good thinking there by Dhanush. Just he was just not really interested for that single in the last delivery, because he knows that the Dhanush is not. That was a really need to see that knows that I got a potential of hitting of 20 runs in the last over. That's very important. The body language, the self-confidence is very important, and I think Dhanush has got a potential. Just like you were mentioning about, he knows that Shisha cannot hit the big strokes. Seeing that it's not having that much of muscle power. He's a very young, 19 years age, but I've got a muscle power. Dhanush is just knows that I got a muscle power. I can hit 2-3 sixes here, but and exactly, Gopi, the difficult one, but not impossible. Getting 20 maybe the difficult, but not impossible. And Dhanush has got a potential of getting that 20 runs. बिल्कुल सतीश, देखते हैं अंतिम ओवर में क्या होता है। पहली गेंद, and he's got that one. He's got that one. 6 runs. और धनुष ने पिछले ओवर के अंतिम गेंद पर शीशा को सिंगल लेने से इनकार किया था। वो स्ट्राइक अपने पास रखना चाहते थे और उसका नतीजा यहाँ पर हम देखे इस वक्त पहली गेंद पर जो धनुष ने उछाला। अब 14 रन चाहिए 5 गेंदों पर, और मैं समझता हूं सतीश एक और छक्का निस्संदेह यहां पर एनजेएस को इस मैच में वापस ला सकता है। Absolutely, Gopit. That was a really game plan, isn't it? You know exactly, Dhanush, the what kind of bowling department their opposition has got. He knows that one loose bowler will going to come in the last over. By seeing that, observing that the league matches, Ashish is always bowling the last over. He's not that much of effective enough, and that's what Dhanush is just planning. That I want to take the strike as much as possible in the last over, and he got 1-6 in the first delivery, and straight away the pressure now for Ashit how to stop another 14 runs in remaining 5 deliveries. बिल्कुल सतीश, और धनुष का छक्का इस वक्त उम्मीदों को बरकरार रख चुका है टीम एनजेएस के। और निस्संदेह आशित के गेंदबाजी के बारे में अगर कहा जाए तो काफ़ी धीमे गति की गेंदबाजों करते हैं, और शॉर्ट गेंद जब वो फेंकते हैं तो बल्लेबाज के पास काफ़ी समय रहता है कि इस गेंद पर वो सफल होकर पुल शॉट खेल सके। और देखना यह है कि छक्का प्रदान करने के बाद अगली गेंद पर यहाँ पर आशित भंडारी कौन सी रणनीति अपनाते हैं। तो आशित के हाथों में गेंद, धनुष के हाथों में बल्ला, और 14 रन इस वक्त चाहिए 5 गेंदों पर। और आशित एक बार फिर से तैयार, दाहिने हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए, फ्लाइटेड फुल टॉस उछाला है मिड विकेट पर, और गेंद इस वक्त सीमा रेखा के अंदर लपक ली गई है, और इसी के साथ ये विकेट गिर चुका है धनुष का। और इस विकेट के पतन के साथ मैं समझता हूं टीम एनजेएस की उम्मीदें काफी हद तक कम हो चुकी है। लेकिन मैं समझता हूं हमें यहां से ठीक से दिखाई नहीं दे सतीश, लेकिन बेहतरीन तरीके से इस कैच को वहां पर लिया गया था सीमा रेखा के अंदर। Exactly, Gopi. It's a wonderful running catch taken by the fielder in the deep extra cover region. The runs towards his left hand, kept the eye on the ball. That's very important. And just look at the pressure, Gopi. This is a catch of Dhanush. If he drops the catch, definitely it's going to be need to drop the match as well. And that was a fantastic catch. This is not an easy catch to take on. Whenever when he was running towards he was wrong in the sense I think is running towards his left hand, and he taken a wonderful running catch in that occasion. And the wicket number 3 is back in the pavilion, and more than anything else, Gopi, the wicket of Dhanush certainly might be. It looks like the door is not fully closed, but maybe I think a door which is opened for air strikers because of that wicket. बिल्कुल बिल्कुल सतीश, यहाँ पर ये विकेट धनुष का जो पतन हो चुका है और काफी हद तक उम्मीदों को कम कर चुका है, लेकिन मैच अभी भी समाप्त नहीं हुआ। एक चमत्कारी बल्लेबाजी, 4 गेंदों पर 14 रन जो चाहिए, यहाँ पर एक चमत्कारी बल्लेबाजी अभी भी टीम एनजेएस को इस मैच में वापस ला सकते हैं। फिलहाल तख्ता इस वक्त एएस स्ट्राइकर्स का भारी लगता हुआ। आशित गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए, श्रीशा इस वक्त स्ट्राइक पर आ चुके हैं। दबाव दोनों टीमों के ऊपर साफ बढ़ता हुआ। द प्रेशर इज नाउ बिल्डिंग अप ऑन बोथ साइड्स। दोनों टीमों के समर्थक सपोर्टर्स अपने टीम का मनोबल यहां पर बढ़ाते हुए तालियों के साथ, सीटियों के साथ। और
आशित गेंदबाजी यहां पर आगे बढ़ाते हुए शीशा के लिए दाहिने हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए ये गेंद इस बार गेंद को उछालना चाहा, मिडल ऑफ द बैट कनेक्शन नहीं, स्क्वायर लेग पर गेंद पहुंची, एक रन मिलेगा इस वक्त और एक रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 33 रनों पर। 33 नाउ, 13 टू गेट इन रिमेनिंग 3 डिलीवरीज और द टॉल मैन इज नाउ बैक ऑन स्ट्राइक। प्रक्षित नए बल्लेबाज इस वक्त स्ट्राइक पर आ चुके हैं और प्रक्षित भी ऐसे बल्लेबाज हैं, एक ऐसे बल्लेबाज है जो करारे स्ट्रोक्स कभी कभी लगा लेते हैं और यहाँ पर वो क्षमता रखते हैं करारे स्ट्रोक्स लगाने की और देखना है कि वहाँ यहाँ पर जो उन्हें इस वक्त उनके टीम को ज़रूरत है लंबे स्ट्रोक्स की, क्या वो स्ट्रोक्स वो यहाँ पर लगा पाते हैं या नहीं। आशित गेंदबाजी यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए 13 रन चाहिए 3 गेंदों पर, दाहिने हाथ राउंड द विकेट, ये गेंद प्रक्षित के लिए, गेंद को उछाला इस वक्त लॉन्ग की दिशा में और गेंद इस वक्त लॉन्ग पर फील्ड हो चुकी है। प्रक्षित कुछ स्ट्राइक को अपने पास रखना चाहते हैं और इस बार ये विकेट यहाँ पर गिर चुका है, शीशा का विकेट गिर चुका है। प्रक्षित स्ट्राइक को अपने पास रखना चाहते थे और वो स्ट्राइक को अपने पास रखने में सफल तो जरूर है, लेकिन यहाँ पर शीशा रन आउट होकर पेविलियन वापस लौटते हुए। अब द लास्ट चांस, अंतिम अवकाश, 2 सिक्सेस रिक्वायर्ड इन द लास्ट 2 डिलीवरीज और 12 रन 2 गेंदों में इस वक्त बनाने हैं और प्रक्षित इस वक्त सामना करने के लिए तैयार और अनंत नए बल्लेबाज के रूप में इस वक्त क्रीज पर कदम बढ़ाते हुए। तो आशित गेंदबाजी यहां पर आगे बढ़ाते हुए प्रक्षित सामना करने के लिए तैयार और कुल मिलाकर दूर दूर तक फैला हुआ क्षेत्र रक्षण हमें यहाँ पर दिखाई देता हुआ। डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग, डीप मिड विकेट, लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ और डीप कवर पॉइंट इस वक्त तैनात और आशित दाहिने हाथ राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए और इस बार प्रक्षित के लिए एक बार फिर से मंकड एक्ट दोहराने का प्रयास इस बार आशित द्वारा, लेकिन यहाँ पर बल्लेबाज काफी चौकन्ने नॉन स्ट्राइकर एंड पर और फिर से एक बार गेंदबाज आशित गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए लगभग 1 घंटे से भी ऊपर इस मैच में बीत चुका है और 2 गेंदें अभी भी बाकी। आशित की गेंद फुल टॉस, पुल किया है लेकिन नॉट क्वाइट मिड विकेट, सिर्फ एकमात्र रन मिलेगा और यहां पर रन आउट हो चुका है स्ट्राइकर एंड पर। 35 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट, 11 रिक्वायर्ड ऑफ लास्ट बॉल। तो अब सतीश सिर्फ औपचारिकताएं ही इस मैच में बाकी रह गई है अगर गेंदबाज कोई नो बॉल या वाइड ना फेंके तो। Exactly, Gopi, and you should appreciate the effort of Ashit, Gopi. It's because he handled the pressure, isn't it? Because after hitting a 1-6, it's not so easy for the bowlers to handle the pressure because Dhanush already hit one the magnificent huge 6 down to deep backward square leg, and everyone thought that it might be the match is definitely going towards NJS strikers. But full toss delivery which is bowled, he got a wicket of Dhanush, and then onwards I think is just gaining his confidence. And look at that, after that he bowled 3 very good deliveries and now I think just the formalities left in this game. And 11 to get from 1 delivery, unless the bowler making no mistake in this last and final over. I think it's definitely yes strikers into the qualifier number 2. Eliminated, of course, they are into the qualifier number 2. Again, the last delivery and celebration begins here for AS strikers entering into the qualifier. Look at that Saurav Ganguly here. The AS strikers, one supporters is very excited. Is removing his t-shirt and enjoying his the victory in his own style, just like what Saurav Ganguly did at NatWest Trophy against England in final. And now here is a celebration from the supporter of AS strikers. And absolutely, they are deserve this victory. The way they batted, way they bowled, and the way they fielded, and they are entering into the qualifier number 2 of this prestigious cricket tournament. Hard luck in yes, because I think the winning and losing is a part of cricket. But you did a great job to coming towards Eliminator. I think it's a great job, and congratulations for you as well.
Thank you very much, Imi, and of course our chief guest for a wonderful word for this cricket tournament and KBC Premier League season 3 and qualify number 2. Now just started the first delivery, which is a dotted delivery. AS Strikers takes on AR Titans of Pradyumna from the far end. Right left arm round the wicket, looking for the improvisation. Too much in the negation, but Pradyumna is a very clever bowler, is a very intelligent bowler, seeing that the batters little bit shuffled across the line of the delivery to get some improvising cricketing stroke towards fine leg region. It just followed the batter and bowled an excellent line and land and defeats his bat. Wicketkeeper behind the stump did the rest, and there's no possibility of any run at all. Again, Pradyumna from the far end. Right left arm. Beautifully ball, perfect one. This is a good line in the negation. That's what I'm talking about. Pradyumna, he's the one. So far he's got a very good tournament from his bowling, and is always getting some good start here for AS Strikers. That's why their team is in the qualifier number 2. AS Strikers, after they're losing their the match against Shetty Warriors in the qualifier number 1, they got one more chances to qualify for the finals. They're playing against AS Strikers, and ball is, of course, I want to say whether the ball is got the bat or not. Ball is in the air for a while, but ball landed between short-term man and wicketkeeper behind the stump. Might be the Pradyumna has got a little bit extra bounce, and because of that, he couldn't manage to play that ball very well. So far, it's a very good start from Pradyumna. Even AS Strikers are lost the toss, but asked by the opposition to ball pass, they're bowling very well. Pradyumna from the far end. Right above the wicket again, going for the big shot. Appeal is going on. Celebration begins. Caught behind the wicket. Raghavendra takes the catch behind the stumps, and Pradyumna strikes. Just like I'm mentioning about, he is the one. He always gives a very good start from the bowling. That was the kind of start which is required for the Strikers. They strikes in the first over itself. Pradyumna picked up a wicket. Fredwin Kasa, and without disturbing any score, AR is back into pavilion, is out for duck, and they yet to open the account. Saurav is a new batter. Again, this time a little bit excitement, more than the confident appeal. I think is just an excitement coming from the wicketkeeper behind the stumps. The maiden over there from Pradyumna. Outstanding, Gopi. The maiden, the starts with the maiden. And I think even they lost the task and they got opportunity to ball first. And Pradyumna has got a very good start. बिल्कुल सतीश, प्रद्युम्न ने जो शुरुआत की है काबिल तारीफ है, और 6 ओवर के फॉर्मेट में अगर आप मेडन ओवर के साथ शुरुआत करते हैं तो निस्संदेह एक बेहतरीन शुरुआत कहलाती है। और यहाँ पर प्रद्युम्न वो शुरुआत यहाँ पर दे चुके हैं। न सिर्फ उन्होंने कोई रन इस ओवर में प्रदान नहीं किया, बल्कि एक विकेट भी वो प्राप्त करने में सफल रहा। और यहाँ पर पहले ओवर के बाद AR टाइटन्स जो कि एक धीमा शुरुआत यहाँ पर कर चुका है। धीमा शुरुआत भी नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि स्कोर कुछ भी नहीं है, स्कोर बोर्ड पर 0 पर है। एक विकेट वो खो चुका है, और मैं कहूँगा बचे हुए 5 ओवर में अब उन्हें कमबैक करना एक बेहतर साझेदारी के जरिए। Exactly, Gopi. And the second over started from the commentary box, and full toss delivery, and batter had taken that one, the full Tanai down to the Plongon region for easy single. First run coming here for AR Titans. AR Titans won the toss, selected to bat first, and so important here for AR Titans. As for their game plan, as for the strategy, they need to get some very good target in front of AR Strikers if they wanted to win this match. Right arm, Jitesh over the wicket, delivers beautifully ball, absolutely fantastic one, and equally well played by the batter Saurav, just off the back foot, pushing that one down to backward point region for an easy single, and with the single scoreboard now moves on to 2 on the board for the loss of 1 wicket. Very good crowd out here in this cricket ground, enjoying the game of cricket, and quite understandable. Today is a Sunday, and the spectators really enjoying the game of cricket under floodlight. This time he lofted ball high up in the air, fielder at the mid-wicket region, and he drops the catch. And they got opportunity to come back for the second. In comes the throw, and Tanai in delegation completed a couple of runs. Ball is in there for a while. The mid-wicket fielder is run across to his right to take the catch, but not quite able to reach there.
and the ball just falling short of him, and at the same time Tanai has got opportunity to come back for the second. With that couple of runs scoreboard now moves on to 4 on the board for the loss of 1 wicket. Here is Jitesh, right arm bowls again, improvisation nicely down to deep backward score like region, long chase here for the fielder, and before the fielder run across to his right to field the ball, ample time for Tanai to complete that couple of runs. Little bit improvising cricketing stroke there from Tanai. This just shuffled across the line of the day. No, exactly, there is no square leg, but he didn't got that much of enough bat onto that. That's why that ball is not travelled very quickly down to square leg. And again, the couple of valuable couple of runs here for Tanai. 6 for the loss of 1 wicket. Again, right arm over the wicket. Again, that full toss to outside the line of off time. Look at that disappointment here from Tanai. You know exactly that was a full toss delivery. He can dispatch that one down to deep extra cover because there is no fielder in the deep in the extra cover. And that's why he's not really happy with himself that he missed that very, very easy delivery outside the line of off time. 6 for the loss of 1 wicket. Jitesh ball, that's a better line. Drives that on right in the gap down the deep long of region. Protection there in the deep long. I don't think no protection out in the deep long of lovely placement there from Tanai. He got the boundary for that. And completion of over number 2. I think EAS Strikers, it will be correction. It's EAS Titans. Titans are really back into this game with some runs. 10 for the loss of 1 wicket. And Gopi, the first over is the maiden, the wicket. Second over, 10 runs. And that means it's a much required second over, because in the power play they need to get some runs because they're the one that won the toss. They elected to bat first, and that's very important here for the Titans to get some very good score. And this is a better over. बिल्कुल सतीश, इस ओवर जो पहले ओवर की समाप्ति के बाद मैंने फरमाया था बचे हुए 5 ओवर में उन्हें कम बैक करना है रनों के जरिए, और यहाँ पर 10 रन इस ओवर में बटोर चुके हैं। और पिछले ओवर की जो अंतिम गेंद पर तन्मय ने जो स्ट्रोक लगाया था, काबिल तारीफ, गैप को चुनते हुए वो जानते थे मिड ऑफ लॉन्ग ऑफ पर कोई फील्डर तैनात नहीं है, और मिड ऑफ फील्डर की दाईं ओर से गेंद को निकाला खूबसूरती के साथ प्लेसमेंट चुनते हुए, और उस चौके के साथ 10 रन पिछले ओवर में जोड़ चुका है। तो ऐसे ही बल्लेबाजी इस वक्त अपनानी है बचे हुए 4 ओवर में, अगर उन्हें यहाँ पर एक चुनौती भरा स्कोर खड़ा करना है तो। Exactly, Gopi. So no change bowling from the far end. Pradyumna brought into attack left arm around the wicket. He balls beautifully balled as always. Again, misfield there by the fielder. They're grabbing the opportunity to take the single in the form of bye. So with that bye, scoreboard now moves on to 12 for the loss of 1 wicket. Viraj as well as Atmaram are the 2 umpires in this particular qualifier number 2 as a field umpire. And in our commentary box we have Rajeshwar as well as Rajaratna sir, the 3rd umpires. And from the far end, Pradyumna, right arm, left arm, there he was, beautifully ball, absolutely perfect one. This time I think the batters is looking for the blind stroke without moving his feet, without coming into the line of the delivery, without seeing that the line of the delivery, looking for the expansive drive on the offside region. Misses the line completely, then wicketkeeper behind the stump, Raghavendra did the rest, the back to bowler. So 11 for the loss of 1 wicket. Pradyumna once again from the far end, seaming in. Left arm round the wicket. It was a identical mirror display of previous delivery. Absolutely, it was a Xerox copy. The same line and the same length. That's what I'm mentioning about. The consistency in the line and length is so impressive so far from the bowling of Pradyumna. He's hitting the ball in a right spot and moving, getting some movement as well. A little bit incoming delivery in the negation defeats the bat of the batter, and there's no possibility of any run again. This time I think too much. And I think it's a very good strategy there from Tanai. They wanted to disturb the concentration of the bowler. That's why he's just moving a little bit towards his leg stump. Maybe he's looking for some inside-out cricketing stroke. And that's why Pradyumna wanted to bowl that one far outside the line of off-stump. But it's too much, and white call by umpire. 12 for the loss of 1 wicket. Again, nicely driven square of the wicket down to deep cow point region. This time he's coming into the pitch of the net. This time misunderstanding between the wicket, costing a big wicket. There is no chance at all for the second run. Of course, maybe the chance of second run, but his partner Tanai is already settled for the single. That's why he's not responding for that second run. And that's why Gopi is very important in cricket as far as the running between the wicket is concerned. That communication, that loud calling is so important. Maybe, I think without calling his partner Saurav is wanted that run. That was the result is that run out taken place.
बिल्कुल सतीश, और जहाँ तक का सवाल है, क्रिकेट में रनिंग बिटवीन द विकेट के साथ साथ अंडरस्टैंडिंग भी होना ज़रूरी होता है, कम्युनिकेशन। तो यहाँ पर तन्मय 1 रन पूर्ण करने के बाद उन्होंने मुड़कर देखा भी नहीं, 1 रन के साथ वो संतुष्ट हो चुके थे और सौरभ रन पूरा करने के बाद दौड़ पड़ा। जब तक मैंने देखा घूमकर तो सौरभ लगभग उनके काफी करीब आ चुके थे और आसान सा रन आउट इस वक्त स्ट्राइक रेट पर होता हुआ, और यहाँ पर विकेट नंबर 2 गिर चुका। तो ये शानदारी यहाँ पर जमी रही थी, तो यहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग की बदौलत ये विकेट सौरभ का गिर चुका है और एक बार फिर से दबाव इस वक्त AR टाइटंस के ऊपर आ चुका है। Exactly, Gopi. Once it looks like the partnership is slowly building up, and because of some misunderstanding and a miscommunication between these two batters, the one more wicket is back into pavilion. 13 for the loss of 2 wicket. Every kind of competition we're expecting from these two teams to get a place in the big final of this prestigious KVC Premier League Season 3, wonderfully organized by the KVC Academy in this most beautiful UCG cricket ground from the far end. Pradyumna delivers outside the off sunset, cuts that one down to backward point region for an easy single. With that single, scoreboard now moves on to 14 on the board for the loss of 2 wicket. Absolutely, it is a beautiful scenario of this cricket ground when you're watching this cricket match under floodlight. It's different feelings, and once again, thanks to those who are responsible for the floodlight for this UCG cricket ground. Our respected MLA Vedivas Kamath, I think, is the one behind this floodlight for this most beautiful UCG cricket ground. That's why we are got able to watch this cricket tournament even after the evening under floodlight, and of course the opportunity for the players, the cricket players as well, to perform under floodlight, and even for the spectator to watch the cricket match. From the far end, left arm, there he was. This time chip that one over the top, over the cow point region, but there is a protection in the deep cow point region, so that the batter managed to complete the single. With that single, scoreboard now moves on to 15 on the board for the loss of 2 wicket. So 15 for the loss of 2 wicket, and over number 3 completed. Searching for the right track, and I think umpire is not happy with that. The extra pair, 12th man, and because only 3 overs bowled, I don't think it's that kind of the water refreshment is required, because not playing under the sunlight, they're playing under the floodlight, not that much of tiredness. So the time sense is so important, because as per the rules and regulation of this cricket is concerned, and bowler, I think the fielding team have to complete their 6 overs within the 25 minutes stipulated times. Meanwhile, the 4th over is going to start from the commentary box, and it looks like Raghavendra will going to start from the commentary box, and the over number 4 will going to start. Again, Raghavendra starts his over, so that with the first ball, right arm over the wicket. This time, oh, lovely shot, slashed that one hard and directly into the wall. That was a flatter 6. The magnificent strike there from tall Tanai. You can't bowl that much of short pitch delivery for the tall players like Tanai. He's just climbing onto that and slashes that one, but there is a fielder in the back deep cover point, but he's just a spectator. What a great stroke coming from the blade of Tanai. That kind of treatment is required in this particular stage if they wanted to get some good score. Again, off the backward, cuts that one. This time he's not that much of room enough to play the cut shot, but he managed to get a couple of runs towards the deep cover point region. Excellent running between the wicket from these two batters. The supporters are really enjoying, the supporters of AR Titans enjoying each and every runs here in this big qualifier number 2, 23 for the loss of 2 wickets, over number 4 in progress. Both the teams desperately wanted to win this match. They wanted to be in the final. Again, Raghavendra delivers, beautifully bowled, but equally well played by Tanai. Just played it over the head of bowlers. Bowlers back drive, picked up a single, rotated the strike, and scoreboard moves on to 24 for the loss of 2 wicket. Tanai quickly realizing that he's the one is settled down in the middle. Why not now I get some freeze? Why not? I want to play some big strokes to get some acceleration in the run rate, and he succeeded in this particular over. Got a 6, got a couple of runs, and then altogether 9 runs he scored in the 3 deliveries. I think because of that 9 runs, looks like now again AR Titans are looking some very good score here. Again, Raghavendra
Round the wicket he delivers. Absolutely sensible batting. Sensible batting here from the new batters. No, it's that I think Karuna Sagar he's picked up a single. You know exactly the what kind of the batting is required in this middle. You know, the Tanai is the one who settled down in the middle. His job is to pick the single and try to give the strike as much as possible to his partner. And he's doing the same thing here. And that was a really good thinking there by Karuna Sagar. 25 comes up. Quarter century for Air Titans. Here is Raghavendra delivers beautifully balled. Wicketkeeper missed it. They wanted to run going against. That was a really right call from Karuna Sagar. No, exactly. The fielder in the short term and very quickly moving towards the direction of the ball. Not to take any risk in this situation because Tana is a settled batsman in the middle. So far, he's playing a very good innings for his team. 25 for the loss of 2 wicket. Raghavendra once again back to his bowling mark. Beautifully bowled, equally well played. Look at the cut shot. He's very strong off the back foot. Played beautifully down to deep extra region. And before the fielder from the deep long off region to run across to field the ball. Ample time here for batters to complete that couple of runs. With that couple of runs, scoreboard moves on to 27 for the loss of 2 wicket. Outstanding batting performance here from Tanai. And after that slow start, and he started to open up a little bit in this. And needed to be, because now they are dealing with the slog overs. They need to get some good score. And after completion of over number 4, it's a 25 for the loss of 2 wicket. And Gopi, it's a very good score, isn't it? 27, let me correction. 27 for the loss of 2 wicket. Now 2 overs remaining. I think in another 2 overs, if they're able to get another 15 runs at least, it's going to be a very good score in this condition. Under 45, it's definitely going to be a very good score to depend, isn't it? धन्यवाद सतीश। तो बिल्कुल सही बात आपने फरमाया, कम से कम 15 से 17 भी रन बटोरते हैं अंतिम 2 ओवर में, तो चुनौती भरा स्कोर यहां पर कहलाएगा अंडर फ्लड लाइट्स। और यहां पर गेंद को मोड़ दिया था पहली गेंद पर डीप स्क्वायर लेग की दिशा में 1 रन के लिए बल्लेबाज ने, और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 28 रनों पर। क्रीज पर मौजूद तनय और करुणा सागर इस वक्त बल्लेबाजी करते हुए। और जहां तक सवाल है इस वक्त फील्डिंग के व्यू का, तो लॉन्ग ऑन डीप मिड विकेट बैकवर्ड स्क्वायर लेग इस वक्त जाती हुई, और लॉन्ग ऑफ डीप एक्स्ट्रा कवर इस वक्त तैनात, और गेंदबाज एक बार फिर से तैयार। गेंदबाज इस वक्त आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट पटके हुए गेंद ऑफ द टोज, गेंद को स्क्वायर ऑफ द विकेट उछाला, एब्सोल्युटली एफर्टलेस। दिस इज गॉन over the fence, square of the wicket at extra cover for 6 runs, and that is an absolutely fantastic struck. Came from the bat of Tanay, और वो इस वक्त एक बेहतरीन बल्लेबाजी का सिलसिला कायम रखते हुए 28 रन्स नाउ ही स्कोर्ड इन जस्ट 15 डिलीवरीज। और यहाँ पर स्कोर बोर्ड अब पहुंच चुका है 34 रनों पर। इट्स 34 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट। और जहां तक सवाल है बचे हुए ओवर्स का, तो इस वक्त 10 गेंदें बाकी उनकी पारी में, और यहां पर देखना यह है कि इन बचे हुए 10 गेंदों में उनके बल्लेबाज और कितने रन यहां पर बटोर पाते हैं। पहला ओवर जब मेडन हुआ था तब ऐसा अंदाजा लगाया गया था कि एएस स्ट्राइकर्स के गेंदबाज यहां पर छा जाएंगे, लेकिन उसके बाद बेहतरीन रिकवरी करते हुए यहां पर एआर टाइटंस के बल्लेबाज ने एक बेहतरीन वापसी की, और रन इस वक्त रनों की बौछार यहां पर लगाते हुए दाहिना तो ओवर द विकेट। ये गेंद इस बार ऑफ साइड पर बाउल आउट इनसाइड एज ऑन टू द स्टंप्स, just dragged onto the stumps, and a fantastic innings came to an end from Tanay. 28 in just 16 deliveries. After completing his job, he is backing to pavilion now, and with his help, now AR Titans looking in a good situation. 4.3 overs gone in their innings। 4.3 ओवर का खेल पूर्ण हो चुका है। 34 रन बन चुके हैं, और नए बल्लेबाज के रूप में चेतन कुमार इस वक्त क्रीज पर कदम बढ़ाते हुए, और यहां पर
तो इस तरह से यहाँ पर अगली गेंद, ओ बेहतर गेंद थी इस वक्त, विकेट कीपर चूके और थर्ड मैन पर इस वक्त गेंद को बैकअप होता हुआ 1 रन का इजाफा यहाँ पर हो चुका है और स्कोर 1 रन के साथ अब बढ़कर पहुंच चुका है 35 now for the loss of 3 wicket. तो यहां पर 5वां ओवर उनकी पारी का प्रगति पर और गेंदबाज इस वक्त तैयार, दाहिने हाथों पर द विकेट गेंदबाजी करते हुए बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए अगली गेंद लेकर तैयार। ये गेंद चिप किया इस वक्त स्ट्राइट डाउन द ग्राउंड, गेंद जाती हुई लॉन्ग ऑन की दिशा में 1 रन बल्लेबाज को मिलेगा। इस बीच इससे पहले की गेंद को वहां पर फील्ड किया जाता और स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 36 रनों पर। 36 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट। और जहां तक सवाल है ओवर का, तो ओवर नंबर 5 यहां पर प्रगति पर और 1 गेंद अभी भी इस ओवर में बाकी। 5th ओवर इन प्रोग्रेस, 1 बॉल टू गो और गेंदबाज इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए दिनेश पीजे दाहिने हाथों पर द विकेट गेंदबाजी करते हुए ये गेंद पटकी हुई गेंद ऑन साइड पर गेंद को उछालना चाहा और गेंद सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथों में और इसी के साथ 5वें ओवर की समाप्ति यहां पर हो चुकी है। और 5वें ओवर की समाप्ति के बाद एक टाइटंस 36 रन जोड़ चुका है 3 विकेट के नुकसान पर। और निस्संदेह हमारे साथ जो कि उर्वा क्रिकेट मैदान के मुख्य सूत्रधार और 37 सालों के तजुर्बा रहने वाले हमारे सीनियर श्रीमान रोलैंड पिंटो, जो कि मशहूर मंगलोर के नामचीन अंपायर के रूप में जाने जाते हैं, हमारे साथ यहाँ पर उपस्थित है। हम संगठक और सर्व क्रीड़ा प्रेमियों की ओर से उनका हृदयपूर्वक यहाँ पर स्वागत करते हैं। सर, आपका हृदयपूर्वक यहाँ पर स्वागत है। और जहाँ तक सवाल है, बारिश की कुछ बूंदे इस वक्त यहाँ पर गिरती हुई और यहाँ पर माहौल बदलता हुआ, तो यहाँ पर अंतिम ओवर का खेल बाकी और इसलिए मैं दरख्वास्त करता हूं कि दोनों टीमों के सदस्यों से कि कृपया मैच को जल्द से जल्द आगे बढ़ाएं। प्लीज कंटिन्यू द मैच एज सुन एज पॉसिबल। तो गेंदबाज आशित इस वक्त गेंदबाजी शुरू करते हुए दाहिने हाथ राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए पहली गेंद लेकर तैयार। ये गेंद लेग स्टंप से बाहर की ओर निकलती हुई और वाइड का इशारा इस बीच अंपायर का और वाइड के इस रन के साथ स्कोर अब बढ़कर पहुंच चुका है 37 रनों पर 3 विकेट के नुकसान पर। इट्स 37 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट एट द स्टार्ट ऑफ द 6th ओवर इन फैक्ट। और अगली गेंद लेकर इस वक्त आशित गेंदबाजी यहां पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ राउंड द विकेट। ये गेंद इस बार ऑन साइड पर स्विंग किया इस वक्त स्क्वायर लेग फील्डर के सिर के ऊपर से, गेंद सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। और बल्लेबाज के पास काफी समय था कि इस गेंद को देखकर परख कर स्कूप कर सके स्क्वायर लेग के सीमा रेखा से बाहर चौके के लिए और इस चौके के साथ स्कोर अब बढ़कर पहुंच चुका है 41 रनों पर 3 विकेट के नुकसान पर। 41 for the loss of 3 wicket in the over number 6 in progress. Absolutely fantastic progressing here now for AK Titans after being won the toss and elected to bat first against AS Strikers in the qualifier match number 2. और इस बीच आशित गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए, आशित ने पिछले मैच में बेहतरीन गेंदबाजी की थी जब उनके सामने वाली टीम एनजेएस के सामने पिछले मैच में दबाव को झेलते हुए अंतिम ओवर में जब 20 रन चाहिए था, पहले गेंद पर छक्का प्रदान करने के बावजूद बाकी के 5 गेंद उन्होंने बेहतर फेंकी थी और टीम को विजय दिलाया थी। इस बार इस मैच में अंतिम ओवर फेंकते हुए गेंद हवा में, गेंद लेकिन फील्डर वहां पर पॉइंट पर मौजूद 1 रन बल्लेबाज को मिलेगा। इस बीच 1 रन के साथ स्कोर अब बढ़कर पहुंच चुका है 42 रनों पर। 42 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट इन द ओवर नंबर 6 इन प्रोग्रेस। और कुल मिलाकर गेंदे अब बाकी हैं 4। तो यहां पर बारिश कुछ हद तक गहरा होता हुआ और एक बार फिर से इसलिए मैं दरख्वास्त करता हूं दोनों खिलाड़ियों से कि कृपया मैच को जल्द से जल्द आगे बढ़ाएं। प्लीज कंटिन्यू द मैच एज सुन एज पॉसिबल because it's raining on the ground and because of that I request all the players to please continue the match immediately। गेंदबाज इस वक्त तैयार, दाहिने हाथ राउंड द विकेट
गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए इस बार गेंद को ड्राइव कर दिया विकेट से हटते हुए वाइडिश लॉन्ग ऑन की दिशा में 1 रन का इजाफा और 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर इस वक्त बढ़कर पहुंच चुका है 2 रन इस बीच पूर्ण कर चुके हैं बेहतरीन रनिंग बिटवीन द विकेट और स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 44 ओवर 44 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट और आशित इस वक्त गेंदबाजी यहां पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ राउंड द विकेट छोटा सा रन अप उनका 7 से 8 कदम धीमी गति की गेंदबाजी करते हैं ये गेंद अच्छी गेंद थी ऑफ स्टंप से बाहर और काफी बाहर वाइड एक और रन स्ट्रेट अवे द प्रेशर ऑन द बॉलर 45 नाउ फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट $45 for the loss of 3 wicket and this is the over number 6th and the last in progress ये गेंद इस बार चिप किया लॉन्ग ऑफ पर फील्डर गेंद के नीचे आते हुए और इस कैच को लपकने में सफल not quite to get that one right from the middle of the bat and he scooped at that one but it didn't got the placement right and because of that he paid the penalty 45 in fact 45 for the loss of 4 wicket and 6th and last over in progress in their innings और 2 गेंदे अब उनकी पारी में यहां पर बाकी है और देखना यह है कि इन बचे हुए 2 ओवर में 2 गेंदों में उनके बल्लेबाज और कितने रन यहां पर बटोर पाते हैं फिलहाल आशित तो 2 गेंदे इस वक्त बाकी हैं आशित इस वक्त गेंदबाजी यहां पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए फुल टॉस गेंद को पुल किया इस वक्त गेंद जाती हुई मिड विकेट पर अच्छी मारे कैसे बाहर 6 रनों के लिए फुल टॉस गेंद का भरपूर फायदा उठाते हुए गेंद को इस वक्त उछाला डीप मिड विकेट के ऊपर से छक्के के लिए और इस छक्के के साथ द 50 कम्स अप फॉर AR Titans 51 for the loss of 4 wicket and now the last ball remaining in their innings और अंतिम गेंद लेकर इस वक्त आशित तैयार दाहिने हाथ राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए ये गेंद इस बीच ये गेंद को उछालना चाहा गेंद पहुंची फॉरवर्ड शॉट लेग पर 1 रन का इजाफा 52 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट द इनिंग्स इज अप द स्टिपुलेटेड ओवर्स आर कंप्लीटेड और सतीश पहला ओवर मेडन और उसके बाद फैंटास्टिक कमबैक मेड बाय द बैट्समैन ऑफ AR Titans and then they finished well with 52 for the loss of 4 wicket in their stipulated 6 overs and now they set a victory target of 53 for AS strikers to qualify for the mega final of the competition 52 the target in fact and in 6 overs exactly 8.66 run per over they had to score for victory और सतीश पहले ओवर मेडन होने के बाद एक बेहतर कमबैक यहाँ पर कर चुके हैं पहला ओवर जब मेडन हुआ था तब अंदाजा लगाया जा रहा था कि गेंदबाज यहाँ पर छा जाएंगे एयर स्ट्राइकर्स के लेकिन उसके बाद बेहतरीन बल्लेबाजी का प्रदर्शन AR टाइटंस के बल्लेबाजों ने दिया खासकर तनय जिन्होंने 28 रन बनाए 16 गेंदों पर और यहाँ पर एक चुनौती भरा रन स्कोर वो खड़ा कर चुका है और अंडर दिस कंडीशन क्योंकि बारिश भी इस वक्त कुछ हद तक शुरू हो चुकी है हालांकि बारिश की तीव्रता इस वक्त कम हो चुकी है लेकिन जो नमी इस वक्त मैदान पिच पर छा चुकी है उस नमी का फायदा शायद गेंदबाज को मिल सकता है और मैं समझता हूँ 52 रनों का लक्ष्य अंडर दिस कंडीशन अंडर फ्लड लाइट्स इट्स गोइंग टू बी कॉम्पिटिटिव तो 8.66 रन पर ओवर और मैं समझता हूँ 52 रनों तक पहुंचने के लिए एक बेहतर शुरुआत निस्संदेह यहाँ पर करनी होगी AS स्ट्राइकर्स के बल्लेबाजों को खासकर 2 पावर प्ले ओवर का फायदा उन्हें उठाना होगा और एक आरंभिक साझेदारी बेहतर तरीके से उन्हें निभानी होगी Exactly, Gopi, and 52 is definitely going to be one of the best total to depend, and the wait and see how well the batters of strikers will going to get this. Strikers will going to get this total, and right, Gopi, after getting the first over as a maiden, then in the remaining 5 overs, more than 10 runs per over, they got the run rate, and that's only because of Tanai's very good audacious innings. He played a very gutsy and brave innings. Even they lost his partner early, but he's just taking the responsibility of getting some acceleration of the run rate, and because of that contribution in the end as well, some 2-3 players contributed from the bat in the slog overs, and because of that they got the winning total. One must say it is a winning total, just considering the condition and a little bit showering out here in this cricket ground as well.
And I request opening batters of AS strikers, please go for bat immediately. Please don't waste the time. There is a possibility of rain, so we request your cooperation is much required to finish another match to be played. There's a big final, the mega final. Please cooperate with the organizers. So, coming back to the opportunity of winning this match for the team, both the teams, I think Gopi is a 60-40. 60 definitely is going in favor of AS strikers, and that was very important, Gopi. The winning the toss is not important, but after winning the toss, the implementing the strategy is very important. They won the toss, elected to bat first, even though they lost their first over. They didn't got any run, but they know exactly the game plan. They know exactly what kind of target they need to set. And as for the game plan, they batted well, and they got a very good total as well. And now they set a very good target in front of AS strikers. And when you see the kind of start the two opening batters will going to give here for AS strikers. Of course, a difficult one, but I think difficult roads always leads to beautiful destination. And if they want to get that destination, I think these two batters has to get some good start from the bat. From the far end, it's a start of the first over. Predwin bowls right arm over the wicket. Beautifully bowled. Copybook style of defensive stroke there from the opening batter. Jitesh is got a copybook style of defensive stroke. And I think he's not really bothered about that it's a single delivery, because they got almost 35 deliveries to spare. And they have to get another 53 runs, 52 runs in fact. Lovely delivery there from Predwin. Just like AS strikers has got Pradyum here for the AS strikers. They got Titans. They got this bowler Predwin. Absolutely, so far he's got a fantastic start from the bowling. Every time when his team is required some good start, he is leading from the front. This time he lofted down to the mid wicket. Is fielder there in the mid wicket, and second attempt he completes the catch. Second attempt is completes the catch, and Air Titans are in their feet, the supporters. The mid-wicket fielder, maybe the first attempt, the ball just slipping out of his hand, but a very good thing to see that he's just kept the eye on the ball. He's just kept the eye on the ball so that he's complete the catches in the second attempt, and they lost the first wicket, 0 for 1, and Gitesh is back into pavilion without scoring any run. Just like the start what Air Titans has got, the similar start here for Air Strikers as well. They lost the first wicket without scoring any run. 0 for 1. So new batters, none other than the danger batter, Raghavendra, is came into middle. The wait and see how Raghavendra will going to contribute from his bat. But here is the bowler, Predwin bows a lovely slower one, and even is getting extra swing as well from his bowling. Absolutely perfect slower one here from Predwin. He's master of that. Whenever the bowler is bowling a slower one, they get extra turn as well, and extra swing from the bowling of Predwin. Misses the bat off the batter. Sukesh is an experienced campaigner for the side. Will going to face the next delivery from Predwin now. Again, now lovely pissed up delivery, extra bounce as well. Is hitting hard in this occasion, just using his height and getting some extra bounce as well, and creating some problem for the batters. Going for the cut shot, but not that much of enough for him to cut that one. Just ball is going over the top of his bat, trying bats, and wicketkeeper behind the stump. Collects the ball back to bowler. Again, the lovely delivery, just like the same start, Gopi. Just comparison is the same. It's a very interesting statistics, Gopi. The same stage after completion of 1 hour, even Air Titans as without disturbing the scoreboard, they lost 1 wicket. The Air also made an over there from Predwin as 0 for 1. And that means both the teams has got the same start in the first over. बिल्कुल सतीश, पहले ओवर में एआर टाइटंस भी खाता नहीं खोल पाया था और एएस स्ट्राइकर्स भी यहाँ पर खाता नहीं खोल पाया है, और निस्संदेह लेकिन बाद के 5 ओवर में उन्होंने बेहतर कमबैक किया था, और यहाँ पर कमबैक करना जरूरी है एएस स्ट्राइकर्स के बल्लेबाजों को। और 5 ओवर में अब बनाने 52 रन, रिक्वायर्ड रन रेट जा पहुंचा 10.40 रन प्रति ओवर। द रिक्वायर्ड रन रेट इज नाउ गॉन अप एग्जैक्टली 10.40 रन पर ओवर। और मैं समझता हूँ इस वक्त
वक्त कुछ हद तक आक्रामक बल्लेबाजी इन बचे हुए 5 ओवर में उन्हें यहाँ पर अपनानी होगी इस मैच में वापसी करने के लिए. Exactly, Gopal. It's a very good point because notice is mentioned about that after that first maiden over, then AR Titans are back very strongly with some very good cricketing stroke. Of course, so the batters sometimes takes a little bit time to settle down. The patience is key to everything, and wait and see how well Raghavendra will go into face the second over of the power play. Right arm over the wicket, drives that one, not quite getting hold of that one properly. It's not quite intended cricketing stroke. Raghavendra wanted to play that one on the extra cover region, but ball went towards a short mid-wicket division because that ball is not really coming to the bat. Slower and from Nilu is actually one more very good bowler for the side of AR Titans. The opening bowler so far did a great job for the success of AR Titans. Right arm. The full toss delivery lofted that one over the top of the mid fielder ball, running down to deep long of boundary, and that is a welcome boundary coming up here for AS strikers. Sukesh this time he's got a juicy full toss outside the line of off stump, not really having ample pace in the bowling, and he didn't got adequate field for that. There is no fielder in the deep long off, so just once he got. This time again, thank you very much. Absolutely perfect delivery again from the bowler. And Nilu looks like after they conceded that boundary in this over, he wanted to restrict the runs in this particular over. 6 for the loss of 1 wicket. Raghavendra back on strike now. Nilu bowling away from us, moving away from us. Right arm over the wicket, he delivers. Again, off the back foot, cuts that one, not quite able to beat the infield. Chance of run out, that a wide throw coming from the fielder, overthrow. Good backup by the fielder at square leg so that the batters have to settle for the single. So with that single, scoreboard now moves on to 7 on the board for the loss of 1 wicket. So far it's a very quiet cricket is going, and one big shot which came in this particular over, and asking run rates now looks like it's creeping up now. 52 more runs, 52 is the target for AS strikers to win this match. Now got 7 runs already. That means they have to get another 45 runs to win this match. This is the over number 2 in progress. Again, Nilu back to his bowling mark. Ritesh is the batter, is back on strike. Sukesh is the batsman. This time he lofted high up in the air. The fielder, 2 fielder underneath it, and the 1 fielder dropped the catch. I think no one disturbed him. No one disturbed him actually. The jersey number 55, he just left that one, saying that the jersey number 50 is coming to take the catch, and he's just misjudged that one, and ball just leaving out of his hand. At the same time, Sukesh has got a life here. So completion of over number 2 then. It's 8 for the loss of 1 wicket. Just coming back to the equation. 8 means another 44 runs required for the victory in remaining 4 overs. That means 24 deliveries remaining. They have to get another 44 runs to win this match. The asking run rates is really look to be a little bit headache here for AS strikers to win this match. Now is I think run rate required is exactly 11 runs per over. 11 runs per over required run rate. Under this condition, I think it's difficult but not impossible. What a fantastic cricket tournament is going on. Almost we are inching towards the final stage of this cricket tournament, KVC Premier League Season 3 2022, which is organized for the chartered accountants as well as the students. Of course, the chartered accountants, they contributes in the fields of tax planning, capital budgeting, the budget forecasting and financing, or any other activities, preparation of books or accounts, and in every field as well. And of course, in the current scenario, after the GST, the implementation, the role of chartered accountants has become very important. Meanwhile, the first delivery
of the over number 3. It's a very good one indeed. And each and every dot ball, we can see that a cheer from the supporters of Air Titans, because knows that each and every dotted delivery takes their team very near to the final. From the far end, round the wicket delivers. Again, he got a thick outside the jab and he back into pavilion. This time Sukesh tried to cut that one away from his body and he got outside edge of the bat. Wicketkeeper behind the stump making no mistake at all. Struggle time continues here for Air Strikers. Thank you very much, Emo. So 8 for the loss of 2 wicket now. Struggle time continues here for Air Strikers. Needed some audacious batting, needed some memorable batting performance if they wanted to win the match, because condition looks to be a little bit difficult one here for Air Strikers, but not impossible in cricket. Anything is possible. Everybody knows that cricket is an unpredictable game. It was a game of glorious uncertainty. One big over can change the complexion of this match. Again, beautifully bowled. Look at the delivery there from Saurav. He's just exploiting the condition of the wetness. It's not that much of easy condition for the batters. It's not like it's a batting paradise. It's definitely now the bowlers have started to dominate in this condition. 8 for the loss of 2 wicket. Again from the far end, right arm round the wicket, pulls that one nicely down to mid-wicket region. Protection there in the deep mid-wicket, so that the batter have to settle for the single. And with the single, scoreboard moves on to 9 on the board for the loss of 2 wickets. These two batters are in the middle, two very young and talented, energetic player in the middle. They can get some big shot. They can change the complexion of that. This man, Raghavendra, already got 43 runs in 1 innings. That was the second highest individual score in this particular cricket tournament. And he has to play one more big innings if they wanted to win the match. Again, just a gentle push down to backward point region, just opening the face of the bat. Picked up a single then. Maybe Raghavendra thinking about that he may need to play carefully. He's just waiting for the loose delivery to get some acceleration. He wanted to rotate the strike. Scoreboard now moves on to 10 now for the loss of 2 wicket. 42 more runs required for the victory. From the far end, right arm of the wicket, he delivers again, nicely turns that one to mid-wicket region, but not more than a single here. These singles will not going to help Air Strikers. In the middle of that singles, they have to get some big shot. One more over completed, so completion of over number 3 and chasing 52 to win this match. And still struggle time continues here. Struggling time is continues here for Air Strikers. 11 for the loss of 2 wicket. Now 3 overs remaining, Gopi, and 11 which is directed from 52. That means another 41 more runs required for the victory in 3 overs. What do you think? Will it going to be possible? Of course, you cannot underestimate the potential of the batters are in the middle, Raghavendra as well as Pradyumna. But the question raising here is that in this condition, will it going to be possible or not? जैसा कि आपने फरमाया सतीश, यहाँ पर बारिश जो कि हल्की इस वक्त हो रही है और मैदान हालांकि कुछ हद तक गीला हो चुका है, गेंद भी कुछ हद तक गीली हो चुकी है, तो इन हालातों में जैसा कि आपने फरमाया 41 रन बनाना कठिन जरूर है लेकिन नामुमकिन नहीं है। और एक गट्सी बैटिंग जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, दिलेर भरी बल्लेबाजी इस वक्त निस्संदेह एएस स्ट्राइकर्स को अपनी मंजिल की ओर अग्रसर कर सकते हैं। और दिलेर भरी बल्लेबाजी दिखाने के लिए उन्हें चौके और छक्के ही यहाँ पर लगाने होंगे। ये गेंद अच्छी गेंद थी, एक्स्ट्रा उछाल लेती हुई गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों, माफ कीजिए, गेंद को ढकेल दिया था। इस वक्त गेंद पिच के बीच पहुंची और यहाँ पर गेंद को फील्ड कर लिया गया। तो स्कोर यहाँ पर रुक चुका है 11 रन 2 विकेट के नुकसान पर। चौथा ओवर प्रारंभ हो चुका है और गेंदबाज इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए हरि कृष्णा, जबकि सामना करने के लिए इस वक्त तैयार प्रद्युम्न। तो हरि कृष्णा दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए प्रद्युम्न के लिए अगली गेंद लेकर तैयार। दाहिने हाथ ओवर द विकेट, ये गेंद बैकफुट पर गई, गेंद को कट किया इस वक्त पॉइंट की दिशा में, कवर की दिशा में। 1 रन का इजाफा यहाँ पर हो चुका है। 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर अब बढ़कर पहुंच चुका है 12 रन 2 विकेट के नुकसान पर। 12 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट इन द ओवर नंबर 4 in progress in fact, and this is going to be testing time for the batsmen of
एएस स्ट्राइकर्स। और गेंदबाज ये गेंद ऑन साइड पर गेंद को स्विंग करना चाहा, चूंकि गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में और इस बीच रन्स बल्लेबाज को नहीं मिलेगा। गेंद टिप्पा खाने के बाद नीचे रहते हुए और स्कोर इस वक्त रुक चुका है 12 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर। चौथा ओवर प्रगति पर राघवेंद्र, जो कि आक्रामक बल्लेबाज के रूप में जाने जाते हैं। इस श्रृंखला के एक मैच में उन्होंने 44 रन जड़े थे सिर्फ 18 गेंदों पर। यहां पर उसका अनावरण वो करते हुए, सफल होते हुए गेंद को ऑन साइड पर उछाला इस वक्त खूबसूरती के साथ 6 रनों के लिए। और इस छक्के के साथ वो इस वक्त एएस स्ट्राइकर्स की उम्मीदों को बरकरार रख चुके हैं। 18 रन 2 विकेट के नुकसान पर बन चुके हैं। और यहां पर जहां तक एएस स्ट्राइकर्स के विजय तक पहुंचने का सवाल है, राघवेंद्र की उपस्थिति उनके लिए बेहद जरूरी। और देखना यह है कि वो इस श्रृंखला के एक मैच में उन्होंने बेहतरीन बल्लेबाजी की थी। 44 रन उन्होंने झड़े थे सिर्फ 18 गेंदों पर। उस सफलता के सिलसिले को यहां पर वो दोहरा पाते हैं या नहीं। ये गेंद बैकफुट पर गए, स्टीयर किया, 1 रन मिलेगा इस बीच। और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 19 रनों पर। 19 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट इन द ओवर नंबर 4 इन प्रोग्रेस। एक बेहतर लेंथ और लाइन के साथ गेंदबाजी करते हुए गेंदबाज यार टाइटंस के, और अपनी अगली गेंद लेकर तैयार। रताइना तो ओवर द विकेट, लेग स्पिन गेंद ड्राइव किया ऑफ द टोस, ओवर पिच गेंद थी लॉकआउट की दिशा में, नॉट मोर देन अ सिंगल। और 1 रन के साथ इस वक्त स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 20 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर। 4 ओवर की समाप्ति यहां पर हो चुकी है। 4 ओवर्स कंप्लीटेड, 20 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट फॉर एयर स्ट्राइकर्स। स्टिल द बैट्समैन ऑफ एयर स्ट्राइकर्स आर नाउ सर्चिंग फॉर द राइट ट्रैक। 32 more runs now they have to score for victory in remaining 2 overs. That means in 12 deliveries, and the asking run rate is now gone up to exactly 16 runs per over. और अब ऐसा कहना पड़ेगा सिर्फ चौके या छक्के ही इस मैच का नक्शा इस वक्त बदल सकते हैं ये स्ट्राइकर्स के पक्ष में। और सामना इस वक्त करने के लिए तैयार बल्लेबाज प्रद्युम्न, और गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए फ्रेडविन, और ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार। 32 टू गेट फ्रॉम 12 डिलीवरीज। पहली गेंद लेकर इस वक्त तैयार गेंदबाज दाहिने हाथ ओवर द विकेट। ये गेंद इस बार ऑन साइड पर गेंद को मोड़ दिया, गेंद पहुंची मिड विकेट पर, लेकिन पैरों से गेंद लगकर आई थी और इस वजह से बल्लेबाज को इस गेंद पर रन यहां पर नहीं मिला। तो स्कोर इस वक्त रुक चुका है 20 रनों पर। और अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार गेंदबाज दाहिने हाथ ओवर द विकेट। फुल टॉस ऑन साइड पर गेंद को मोड़ा खूबसूरती के साथ डीप मिड विकेट और डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग के दरमियान। 1 रन का इजाफा यहां पर हो चुका है और 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 21 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट। और राघवेंद्र उम्मीद की आखिरी किरण इस वक्त दिखाई देते हुए गेंदबाज को विचलित करने का प्रयास वो करते हुए इस वक्त एएस स्ट्राइकर्स के लिए मंजिल इस वक्त काफी दूर। 31 रन और बनाने हैं विजय के लिए और कुल मिलाकर गेंदे बाकी है 11। 31 टू गेट फ्रॉम 11 बॉल्स नाउ। गेंदबाज की है गेंद, पटकी हुई गेंद ऑफ स्टंप से बाहर और ऑफ स्टंप से काफी बाहर, लेकिन राघवेंद्र काफी सफल हो चुके थे तो इस वजह से इसे वाइड नहीं घोषित किया गया अंपायर द्वारा। तो एक गेंद व्यर्थ, 10 गेंदें बाकी, 31 रन और चाहिए विजय के लिए। और एक बार फिर से राघवेंद्र स्ट्राइक लेते हुए, स्टंप्स एक्सपोज करते हुए इस वक्त गेंदबाज के लिए ये गेंद ऑन साइड पर मोड़ना चाहा, गेंद फॉरवर्ड शॉट लेग पर, 1 रन मिलेगा, निशाना चूका और इस बीच बल्लेबाज 1 रन के साथ अपना छोड़ बदल चुके हैं। 22 now for the loss of 2 wickets and this is the over number 5 in progress in the innings। तो गेंदबाज एक बार फिर से तैयार, फ्रेडविन इस बार रिवर्स शॉट खूबसूरती के साथ प्रद्युम्न द्वारा सीमा रेखा से बाहर गेंद, 4 या 6 देखना पड़ेगा, अंपायर के इशारे का इंतजार है और गेंद सीमा रेखा को पार कर चुकी है 4 रनों के लिए। तो बेहतरीन स्ट्रोक इस वक्त प्रद्युम्न द्वारा। He just played that one with a twisted bat and I got that one right from the mid of the bat and because of that he gets in a boundary for that। और स्कोर इस चौके के साथ बढ़कर पहुंच चुका है 26 रन और संघर्ष अभी भी बरकरार रखते हुए बल्लेबाज एएस स्ट्राइकर्स के।
26 रन बन चुके हैं, 26 रन और बनाने हैं, बचे हुए 8 गेंदों पर। और इस बार गेंद रन अप में कुछ हद तक बाधा, रन्स एक बार फिर से बल्लेबाज अपने गेंदबाजी के मार्क पर जाते हुए 26 रन और चाहिए, बचे हुए 8 गेंदों पर। और 7 गेंदों में इस बार ऑन साइड पर गेंद को मोड़ना चाहा, गेंद पहुंची इस वक्त फाइनल की दिशा में, कोई फील्डर वहां पर नहीं, गेंद का पीछा करते हुए इस वक्त 1 रन मिलेगा, दूसरे रन के लिए बल्लेबाज दौड़ पड़े और 2 रन यहां पर पूर्ण करते, वाइड का इशारा, यानी 3 रन मिलेंगे। 29 नाउ फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट, 23 टू गेट नाउ। और जहां तक सवाल है, 1 या 2 छक्के या चौके निस्संदेह एएस स्ट्राइकर को इस मैच में वापस ला सकते हैं। और उन चौके और छक्कों की तलाश में इस वक्त बल्लेबाज एएस स्ट्राइकर्स के प्रद्युम्न स्ट्राइक लेते हुए, ये गेंद इस बार फुल टॉस पुल किया है मिड विकेट पर 4 रनों के लिए। 33 नाउ, 33 नाउ फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट। और जहां तक सवाल है बचे हुए गेंदों का, तो अंतिम ओवर का खेल बाकी और रन चाहिए इस बचे हुए अंतिम ओवर में 19 रन। तो अंतिम ओवर 19 रन, और सतीश पिछले चंद गेंदों में बेहतर बल्लेबाजी का प्रदर्शन ए स्ट्राइकर्स ने दिया, अब 19 रन अंतिम ओवर में बनाने हैं। और मैं समझता हूँ राघवेंद्र और प्रद्युम्न इस वक्त क्रीज पर है और उनकी उपस्थिति पे बनाने की संभावनीयता यहाँ पर जरूर है एएस स्ट्राइकर्स को। Exactly, Gopi. In the previous match as well, the 20 required from last over, NJS versus the same air strikers, and I think it's a similar situation here, but condition is the total different here. And of course, you are talking about the ball is not really coming to the bat, but Raghavendra and Pradyumna, two very good batters are in the middle, and possibility is still there. And I want to say that you need to try for that, isn't it? You need to try for that, then only they can reach the target. 17 to get, 19 to get from last over, anything can be possible. बिल्कुल सतीश, पहली गेंद देखते हैं राघवेंद्र के लिए। इस बार रन वो लेना नहीं चाहते हैं, खुद स्ट्राइक अपने पास रखना चाहते हैं। 5 गेंदें बाकी, 19 रन चाहिए और गेंदबाज इस वक्त गेंदबाजी शुरू कर चुके हैं। करुणा सागर गेंदबाजी यहां पर शुरू कर चुके हैं। 5 गेंदें बाकी, 19 रन चाहिए विजय के लिए। और ओवर की अगली गेंद लेकर करुणा सागर इस वक्त तैयार था, ना तो ओवर द विकेट। ये गेंद इस बार उछाला, दैट इज एन क्लीन हिट, आई थिंक सो, इट कुड बी क्लियर, नो इन फैक्ट इट टेकन जस्ट इनसाइड द फेंस। गेंद को लपक लिया गया लॉन्ग ऑफ पर और राघवेंद्र स्वयं आश्चर्यचकित रह गए कि गेंद क्यों सीमा रेखा को पार नहीं किया है और उनका विकेट गिर चुका है। और ऐसा कहना पड़ेगा, इस विकेट के पतन के साथ एएस स्ट्राइकर्स के उम्मीदें, आशाएं काफी हद तक कम हो चुकी हैं। अब रन से चाहिए 19, गेंदें बाकी हैं 4। इस बार उछाला है लॉन्ग ऑफ पर, एक्स्ट्रा कवर पर और एक और विकेट यहां पर गिर चुका है। And now the last chance in front of AS striker, 3 sixes required in the last the last chance in front of AS strikers, 18 to get, in fact 3 sixes required in the last 3 deliveries, not for victory but for tie. 19 to get for victory, 18 to for tie और 3 गेंदे यहां पर बाकी, 3 balls left और करुणा सागर इस वक्त तैयार। I request the players to please continue the match. तो करुणा सागर इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए, ये गेंद उछाला, गेंद हवा में और एक और विकेट गिर चुका है। Now 2 balls and 19 runs they have to score for victory.
So 2 balls remaining, 19 runs to get. Karunasagar bowls to a new man. Beaten and collected by wicketkeeper behind the stumps. अंतिम गेंद इस वक्त तैयार बाकी और करुणासागर मैच की अंतिम गेंद लेकर तैयार. The last ball of the match is now coming up. और गेंदबाज करुणासागर. वर्षा इस वक्त काफी हद तक जोर हो चुकी है. फुल टॉस. इस बार गेंद को पुल किया लेकिन फील्डर काफी पीछे और 2 रन बल्लेबाज को मिलेगा या नहीं देखना पड़ेगा. 2 रन मिल चुका है. नो बॉल का इशारा और बीमर इस वक्त फेंकी थी. 2 रनों के इजाफे के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 35 रनों पर. 35, still the last ball remaining, 17 to get. That's it. 16 runs victory for AK Titans, and with that victory they are through to the mega final of this competition to face Shetty Warriors. And now grand finale, mega final of KBC Premier League Season 3 2022 is now going to begin within just a short while after right after the short break. And now it's raining on the ground heavily, and we'll be back right after the short break in the grand finale. Thank you. Dhanyavad. Gopi.
ಸಿ ರಾಮ್ ಗಣೇಶ್ ಹಾಗೂ ಸೌರವ್ ನಾಣಚಿಟಿಕೆಯನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. And it is H. ನಾಣಚಿಟಿಕೆಯನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಂತಹ ಶಕ್ತಿ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಆಯ್ದುಕೊಂಡಿದೆ. ಈಗ ತಂಡದ ಪರಿಚಯವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಸಿ ರಾಮ್ ಗಣೇಶ್ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲರೂ ಹೋಗಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳು ಹೋಗಬೇಕು. ದುರ್ಗಪ್ರಸಾದ್ ಅವರು, ಶ್ರೀನಿಧಿ ಅವರು ಕೂಡ. ಅವಿನಾಶ್ ನಮ್ಮ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಬೆಂಬಲವಾಗಿ ನಿಂತಹ ಅವಿನಾಶ್ ನಾಯರ್. ನಾಣಚಿಟಿಕೆಯನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಂತಹ ರಾಮ್ ಗಣೇಶ್ ಮನೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಈ ಒಂದು ಪಯಣ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ಬಿಡಿ. ಸೊ ಎಂಟೈರ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಸೊ ಒಂದು ದೇಶಕ್ಕೆ ಆಡೋದು ಹೇಗಿದ್ರೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಇತ್ತು. ಎಲ್ಲ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಖುಷಿಯಿಂದ ಈ ಮ್ಯಾಚ್ ಎಲ್ಲರನ್ನ ಆಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ತಂಡ ಎ ಟೈಟಲ್ಸ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ತಂಡವನ್ನ ಉಯರ್ತಕ್ಕೆ ಗಡಿವಾಣ ಹಾಕಿ ಒಂದು ಫೈನಲ್ಗೆ ಬಂದಂತಹ ಸೌರಭ್ ಅವರು ತಂಡದ ನಾಯಕ. ಸೌರಭ್ ತನ್ನ ಪಯಣದ ಕುರಿತು ಎರಡು ಮಾತು ಆದರ್ಶಗಳು. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿಗೆ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ 15 ಹೀಗೆ ನೀಡಿ ಒಂದು ಟ್ರೋಫಿಯೊಂದಿಗೆ ಒಂದು ಫೋಟೋನ ತೆಗಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ 15 ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ.
ಸಿಎ ಭರತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರಿಗೆ ಬೇಸರ ಇದಕ್ಕೆ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ, ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ರು, ಬೇಸರ ಮಾಡಬೇಡಿ.
So thank you very much. Welcome for the mega final of this prestigious KBC Premier League Season 3. Hello. So all set now for the mega final, and the two teams deserve their praise in this big final. The way they played excellent game of cricket in the league matches, and then even the qualifier as well. And at last, two teams qualified for the final. Shetty Warriors takes on Air Titans. The captain of Air Titans, after winning the toss, no hesitation to bat first. And here you go, the first delivery of the mega final of KVC Premier League 2022. From the far end, the bowler, one who really got a fantastic tournament from his bowling, Ram Ganesh, will go into start the proceedings. Right over the wicket. Oh, lovely delivery straight away. A little bit help here for the bowler after seeing that little bit showering here because of the rain. Little bit we can see that wetness in the pitch, and straight away Ram Ganesh just exploiting the condition, and straight away that was the ball came into the body line of the right-hander batter, and he defended very well. Ram Ganesh from the far end, right over the wicket. Look at the delivery. This time suddenly it's going to be wide. Yes, it is. As for the rules and regulation of the cricket is concerned, if it's the ball is going very high over the head of the bowler, head of the field batter, then it's going to be a wide ball. And at the same time, it's one from the over, one bouncer from the over, so that Ram Ganesh need to be very careful, because another bouncer, it will going to be no ball. Again from the far end, Ram Ganesh. Right arm over the wicket, balls, lovely delivery again, little bit shaping away from a right-hander batsman outside the line of off stump, going for the cut shot, missed it completely, wicket keeper behind the stump. Malesh collects the ball, back to bowler. Absolutely, it was a fantastic cricket tournament in the 2 days. We are witnessing some wonderful performance from the 7 teams, and at last 2 teams which is qualified for the big final of this prestigious cricket tournament. And we are in the mega final. Right arm over the wicket, Ram Ganesh delivers, looking for the improvisation. Again, he fails to make any contact with the bat. So far, Ram Ganesh is dominating in this first over. As always, in this particular tournament, he is the one who got most number of maiden overs in this particular tournament. And once again, he's enjoying his bowling performance in the big final as well. Ram Ganesh from the far end, seaming in. Right arm over the wicket. Oh my goodness, that ball just fractionally, that ball just missed the off stump of the batter. Saurav in the irrigation, without coming into the line of the delivery, he wanted to slash that one, missed it completely. Luckily that ball just missed that, just an inches, that ball missed the stumps, and wicketkeeper behind the stump did the rest. So far it's a very quiet over. Ram Ganesh once again back to his bowling mark. Right arm over the wicket delivers. This time push that one straight to the hands of cover point region. The first wicket of the mega final. Ram Ganesh
Picking up the wicket of Saurav. Loose stroke there from Ram Ganesh. Something is going in the mind after playing a back-to-back 4 dotted deliveries. Then he wanted to break the shackle. But unfortunately, that ball went straight to the hands of short cow point region. 0 for Liverpool, 2 for the loss of 1 wicket. Two for the loss of 1 for the loss of 1 wicket. Little bit correction. 1 for the loss of 1 wicket. Little bit correction in the scoreboard. 1 for the loss of 1 wicket. Ram Ganesh got a very, very important breakthrough. So new batter came into middle, is a left-hand batter. Prashant Pai will going to face the final delivery of this over. Ram Ganesh so far has been outstanding. Conceded just a single run and picked up a wicket. There is a short mid-off, there is a short extra cover, there is a cover point, backward point, short third man. That is the offside region. In the onside region, 1 at deep long on, 1 at deep mid wicket. There is a fieldsman, there is a short square, 1 at short fine leg. From the far end, Ram Ganesh steady was down the leg stamp, going to be a wide. The wide signal umpire. That's a really problem whenever the left-hand batter coming into bat, they need to change the line. Of course, this is a very good line to the right-hander batsman. The fact that left-hand batter is on strike, and that will going to be a wide down the leg stump. Second run came in the form of extra for the loss of 1 wicket. Again, sensible batting, absolutely sensible batting there from Prashant Pai. Picked up a single and just keep the strike for the next over. First over completed, and after completion of first over, after winning the toss, captain of Air Titans are 3 for the loss of 1 wicket. And Gopi, the first over, as always, Ram Ganesh so far in this particular tournament is outstanding, and just 3 runs for the loss of 1 wicket. Not surprisingly, because the condition is very much suitable for the bowler. बिल्कुल वर्षा की वजह से यहाँ पर पिच गीला हो चुका है, आउटफील्ड भी काफी हद तक गीला हो चुका है सतीश, और इस कंडीशन का फायदा यहाँ पर उठाते हुए राम गणेश, लेकिन उनकी काबिलियत के बारे में दो बात नहीं है। इस श्रृंखला में बेहतरीन गेंदबाजी का प्रदर्शन उन्होंने दिया है और एक बेहतरीन गेंदबाज के रूप में वो जाने जाते हैं। तो निस्संदेह यहाँ पर राम गणेश जो कि कप्तान है, वो स्वयं कप्तानी के जिम्मेदारी को अपने कंधों में लिए हुए एक बेहतरीन शुरुआत हर मैच में देते हुए हैं, और इस फाइनल मैच में भी उन्होंने गेंदबाजी के जरिए एक बेहतरीन शुरुआत यहां पर दी है उनके टीम को। Absolutely, Gopi. The captain is always the inspiration because he is the leading from the front. He's performed throughout the tournament. That's why his team is in the mega final of this prestigious KB's Premier League 2022. From the commentary box end, it's going to be a start of the over number 2. Malesh is experienced campaigner. Malesh, CA Malesh, that was the first delivery, right arm over the wicket, but ball is got an extra moment because he couldn't manage to control that moment of the delivery, because with wetness of the pitch, it's a little bit encouragement what we are seeing for the bowlers, so that Malesh couldn't manage to control that extra movement of the delivery, and white call by umpire. Scoreboard moves on to 4 on the board for the loss of 1 wicket. Malesh, you can tell he was going for that one, pulls that one, but not quite getting hold of that one properly, so that the ball is travels. So short wide leg to the chance of run in a non-cycles, that is gone. The wicket number 2 is back into pavilion. They wanted to steal the second runs and pays the penalty for that. Prashant Pai departs, 5 for the loss of 2 wickets. Where could be no chance of second run, but Prashant desperately wanted to get the second, but good throw coming from the fielder in the deep fine leg region, and a very good throw, in fact, into the hands of wicketkeeper, and he's just complete the formalities of making a run out. So shackling start here for Air Titans. Captain won the toss, selected to bat first, but everything is going in favor of Shetty Warriors. Coming back to these two teams, Gopi, in the league matches, they faced each other, and in that match, I think Air Titans won the match. In the qualifier number 1, I think Shetty Warriors defeated Air Titans. That means comparison between two teams, both the teams
one match each out of two, and that's why it's so interesting in the final which team will going to win the match. एग्जैक्टली सतीश, पिछले 5 मैचेस के गैप में अंतराल में तीसरी बार ये दोनों टीमों का आमना सामना हो रहा है। हालांकि लीग स्टेज के अंतिम मैच में जो एआर टाइटंस ने विजय दर्ज किया था और उसका बदला लिया था क्वालिफायर मैच नंबर 1 में शेट्टी वॉरियर्स ने। अब मेगा फाइनल मैच है और यहाँ पर देखना ही है कि मेगा फाइनल मैच में कौन सी टीम इस श्रृंखला को जीतती है। हालांकि 3 मैचेस की श्रृंखला कहा जा सकता है, एक का बराबरी हो चुकी है, एक की बराबरी हो चुकी है। दिस इज द मैच डिसाइडर और यहाँ पर श्रृंखला के साथ साथ ट्रॉफी भी उन्हें मिलेगी जो टीम इस मैच में विजय दर्ज करेगी। Exactly, Gopi. The next delivery down the leg stump going to be a wide wicket keeper behind the stump, completely missed out. So that 2 wides, that 2 extra runs is a bonus runs for Air Titans. They're definitely going to enjoy that extra runs. With that couple of runs, scoreboard now moves on to 7 for the loss of 2 wickets. And exactly, Gopi. And the big final, it was definitely it's a different ball and game, different bat and ball game. The team which is going to handle the pressure very well, certainly they will going to become the champion. Because it's a total different, isn't it? When you're playing in the league matches, you have got another opportunity as well to bounce back. But here is a mega final. It's a do-or-die situation for both the teams. If they wanted to become the champion, they need to play well. This time he lofted, but straight away into the fielder, down at deep mid wicket. Wicket number 3 is back into pavilion of Air Titans. They are now deep in trouble. 7 for the loss of 3 wicket. This is a juicy full toss, Gopi, and just like we are mentioning about the wetness, not only in the pitch, but even after ball having a contact with the ground, ball is also got as a wetness. Because of that wetness of the ball, even that the batter hits that one firmly down to mid wicket, and he's not really getting the distance because of that wetness of the ball. बिल्कुल, गेंद इस वक्त गीली हो चुकी है, ग्राउंड पर जो वेटनेस है, गीलापन है उसकी वजह से, और इस गेंद को उछाला था लेकिन गेंद पर जो गीलापन है उसकी वजह से गेंद सीधे ट्रैवल नहीं कर सकी थी सीमा रेखा से बाहर। अपने रफ्तार को खोने के बाद वो डीप मिड विकेट पर लपक गया और तनय का विकेट यहाँ पर गिर चुका है सतीश। और मैं समझता हूँ तनय का विकेट उनके लिए बहुत ही बड़ा झटका इस वक्त साबित हो सकता है, क्योंकि तनय ने पिछले मैच में बेहतरीन बल्लेबाजी का प्रदर्शन किया था। सिर्फ 17 गेंदों में उन्होंने 25 रन झड़े थे और यहाँ पर उनका विकेट जल्दी ही गिर जाने की वजह से अब दबाव मैं समझता हूँ एआर टाइटंस के ऊपर कुछ हद तक बढ़ चुका है। Exactly, God, it's a huge wicket. The big fish in the net here for Shitty Warriors in the previous delivery, the wicket of Tanai. This time, one more single is taken. The new batsman came into middle. Chetan Kumar is in non-strikers end, but in the non-strikers end, it's Karuna Sagar, left-hand batter, and in the strikers end, Chetan will go into face the next delivery from Malaysia. So far, Malaysia did a great job in this particular over. He picked a wicket as well, and so far it's an outstanding performance from the bowlers of Shitty Warriors. They really played like a Warriors. They're not really worried about the runs. They only 8 runs they conceded, and they picked up 3 valuable runs. Again off the back foot, just pushes that one down to backward point region for an easy single by Chetan. With that single, Cobra was on to 9 for the loss of 3 wickets. Sensible batting which is required in this condition, and rightly so. No one rises suddenly, even the sun. The patience is key to everything. In this condition, I think the batters have to look for some rotation of strike. You cannot underestimate the singles, and especially in this condition, more than the boundaries and sixes. It's very difficult to get the big strokes. You can get if you get loose deliveries, but I think for the better delivery, hitting a big strokes is definitely going to be very difficult in this condition. So far, it's a slow going. The batters are dealing with the singles, 9 for the loss of 3 wicket. Over number second in progress as Malesh bowling right arm around the wicket. Pulls that one right in the gap, down to deep worker square leg, and ball is not really traveling very quickly because of the wet outfield, and just a couple of runs here for Karuna Sagar has picked up a couple of runs. Try to cut that one. Misfield by the fielder. Ball running out to deep that man region. Again, they got opportunity to come back for the couple of runs. So much required coming in this particular over, and scoreboard now moves on to 13 for the loss of 3 wicket. The over number
2 completed. So 2 overs completion, the completion of 2 overs is the 13 for the loss of 3 wicket. So so third over going to start from the far end. No change in bowling as Ram Ganesh will going to bowl the second over and last over of his quota, and he's bowling final time in this KVC Premier League. Ram Ganesh, wait and see how well he's going to finish this tournament. Right above the wicket, lovely delivery. Look at the line and length, so impressive, isn't it? He's not really changing that line. Every time one he delivers the ball, he's just aiming that line and length so good in irrigation, pitching the ball in the right direction and just getting the little bit of movement as well, and extra bounce as well is get, and it just defeat the bat of the batter Chetan. Wicketkeeper behind the stump did the rest, and there is no possibility of any run. After that power play, we can see that so many fielders out there in the deep, and 5 fielders outside the circle. This time slashing that one beautifully down to backward point region. A long chase here for the fielder, and before the fielder going back and fields that one, they're coming back for the third run as well, and they completed quite easily. One shot call by umpire. One shot call by umpire Atmaram. That means only a couple of runs for ER Titans. That's so important, isn't it? Running between the wicket is concerned. When you are looking for the quick runs, you need to see that where you are, of course, you are able to reach or not. But umpires are very professional. So far, I think umpires did a great job for this cricket tournament, because any tournament, of course, the success of any tournament, if you have a very good officials like what we have in this particular tournament, and of course from the leading from the front, we have Rajaratna sir, the very senior most umpire. We have Atmaram, we have Rajeshwar, and then of course Vivek, and I think Viraj is a very young talented umpire. So 5 umpires in 2 days done a great job, and that's why this tournament's almost running towards a successful one. The mega final, we were watching the match between Shetty Warriors versus AR Titans. Once again, I would like to give special thanks to the KVC Academy for this opportunity, being the part of this wonderful cricket tournament. Meanwhile, one more fantastic delivery from Ram Ganesh. This time he's bowled a fantastic delivery, which is a little bit shaping away from the left-hand batsman. Deviation is got, and the batter completely missed out the delivery. Again, the lovely delivery indeed. Ram Ganesh testing the temperament of the batter with this very strong line and length. Again, the batter it was struggling, quite understandable. The condition is not that much of easy for the batter's ball is not really coming to the bat. Ball is just stopping and coming to the bat. That's why he's hitting some big shots going to be very difficult here. Ram Ganesh delivers outside of stamp once again. One more dotted delivery. 16 for the loss of a 3 wicket. Here Titans need to be very careful, because in this condition, if they're able to get 15 on the board, 15 for the loss of 3 wicket. In this condition, if they're able to get any score around 35 to 40, and you can win the match if you bowl well and field well. Again, lovely delivery, forward defensive stroke, and there's no possibility of any run. Now, only 2 runs came from that over of Ram Ganesh. Outstanding bowling figure. Now, I would like to see the bowling figure of Ram Ganesh. 2 overs, no maiden, conceded 5 runs, and he picked up 1 wicket. Again, Gopi, and outstanding bowling figure. 2 overs, 5 runs. The economy is at 2.5 runs per over, and he picked up a wicket as well. But I think 5 runs per over is not bad. Not that much of bad, seeing the condition here. 5 runs per over. If you're able to get another 20 runs in remaining 3 overs, it's definitely going to be a 35 to 40. I think in this condition, it's going to be a very good score.
बिल्कुल सतीश, और 3 ओवर में 15 रन कुछ ज्यादा खराब स्टार्ट नहीं है इन हालात को देखते हुए, क्योंकि पिच इस वक्त गीला हो चुका है और मैदान भी लगभग थोड़ा सा गीला हो चुका है। और यहाँ पर गेंद जो कि खुलकर ट्रैवल नहीं कर रही है, बल्लेबाज जो स्ट्रोक खेलते हैं उस स्ट्रोक को खेलने के बाद जो गेंद जिस रफ्तार से जानी चाहिए उस रफ्तार से इस वक्त नहीं जा रही है। तो यहाँ पर मैं समझता हूँ इन हालातों में 15 रन एक बेहतर शुरुआत यहाँ पर खेला गया, और बचे हुए 3 ओवर में कम से कम 20 या 25 रन भी अगर ये टाइटंस के बल्लेबाज बटोर लेते तो चुनौती भरा स्कोर कहलाएगा यहाँ पर इन कंडीशंस में। देखते हैं इन बचे हुए 3 ओवर में उनकी पारी में क्या क्या होता है। और गेंदबाजी यहाँ पर शुरू करते हुए गेंदबाज रविंद्रा, और ओवर की पहली गेंद लेकर इस वक्त तैयार चेतन कुमार इस वक्त सामना करते हुए। और ग्रैंड फिनाले मेगा फाइनल मैच केवीसी प्रीमियर लीग सीजन 3 2022 के अंतर्गत यहाँ पर खेला जाता हुआ। फील्डिंग में जमावट इस वक्त करते हुए विकेट कीपर, और ओवर की पहली गेंद लेकर इस वक्त तैयार तैनात ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए तैनात के बल्लेबाज के लिए पटकी हुई गेंद उछालना चाहा विकेट कीपर, चूंकि शॉर्ट तरफबान फील्डर के हाथों में गेंद, 1 रन बल्लेबाज को इस बीच मिलेगा। इससे पहले की गेंद को शॉर्ट तरफबान फील्डर फील्ड करे, बल्ले का बाहरी किनारा टकराया था और 1 रन के साथ स्कोर अब बढ़कर पहुंच चुका है 16 रनों पर 3 विकेट के नुकसान पर। 16 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट। बाएं हाथ के बल्लेबाज लेफ्टी बैट्समैन इस वक्त करुणा सागर सामना करने के लिए तैयार। लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन इस वक्त मैदान पर क्रीज पर मौजूद है, और हर गेंद के बाद फील्डिंग में इस वक्त, हर रन के बाद फील्डिंग में इस वक्त तब्दीली यहाँ पर की जा रही है। और गेंदबाज रविंद्रा इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथों पर विकेट गेंदबाजी करते हुए बाएं हाथ के बल्लेबाज करुणा सागर के लिए काफी लंबे रनअप के जरिए गेंद लेग स्टंप से बाहर गेंद को स्विंग करना चाहा था चूंकि, और गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में, और इस बीच 1 रन का इजाफा यहाँ पर हो चुका है। और इस 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर अब बढ़कर पहुंच चुका 17 रनों पर 3 विकेट के नुकसान पर। हर गेंद के बाद दोनों टीमों के समर्थकों की तालियां गूंज, तालियां इस वक्त सुनाई देती हुई। इस बार खूबसूरती के साथ निकाला फाइन लेग की दिशा में, और गेंद सीमा रेखा के दीवार पर टकरा चुकी है 4 रनों के लिए। ऐसा कहना पड़ेगा बल्लेबाज के पास समय था कि वो सफल होते हुए गेंद को खूबसूरती के साथ मोड़े, और शॉर्ट गेंद थी, गेंद की उछाल को पहचानते हुए गेंद को ऑन साइड पर मोड़ दिया खूबसूरती के साथ, और चौका वो यहां पर प्राप्त करते हुए स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है इस चौके के साथ 21 रनों पर। 21 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट। रन्स इस वक्त चाहिए AR टाइटंस के लिए, और इस बात को मद्देनजर रखते हुए ये दोनों बल्लेबाज जो क्रीज पर मौजूद है रन बनाने का हर तरीके का प्रयास, हर तरीके की कोशिश यहां पर करते हुए। 21 रन 3 विकेट के नुकसान पर। दाहिने हाथों पर द विकेट रविंद्रा एक बार फिर से तैयार। इस बार अंपायर ने उन्हें रोक लिया अंतिम क्षण में, और एक बार फिर से गेंदबाज अपने गेंदबाजी के मार्ग पर जाते हुए। हालांकि विकेट कीपर मेरे ख्याल से कुछ हद तक फील्डिंग में जमावट कर रहे थे जब गेंदबाज ने रन अप पर लेना शुरू किया था, तो इस वजह से उन्हें इस वक्त रोक दिया गया। और इस बीच एक बार फिर से अंपायर इस वक्त बढ़ते हुए स्क्वायर लेग अंपायर की ओर कुछ बातचीत करने के लिए, और देखते हैं यहाँ पर वो क्या बातचीत इस वक्त करते हैं। कुछ बातचीत वहाँ पर जरूर हुई है, और दोनों बल्लेबाज वापिस अपने स्वस्थान पर आते हुए। और इस बीच गेंदबाज रविंद्रा गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए बाएं हाथ के बल्लेबाज करुणा सागर इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। फील्डिंग में एक बार फिर से जमावट यहां पर होते हुए शॉर्ट फाइन लेग पर फील्डर तैनात, और इस बीच रविंद्रा की गेंद, ये गेंद करुणा सागर के लिए अच्छी गेंद थी, अंदर की ओर आई, गेंद को ढकेलना चाहा, गेंद पहुंची शॉर्ट थर्ड मैन पर, और जब तक गेंद को वहां पर फील्ड किया जाता 1 रन का इजाफा यहां पर हो चुका है। बल्ले का बाहरी किनारा लगकर गेंद इस वक्त निकली थी, और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 22 रन 3 विकेट के नुकसान पर। बिल्कुल सही तरीके से, जैसा कि मैंने और सतीश ने फरमाया था, कम से कम 40 का आंकड़ा यहाँ पर पार करना होगा अगर उन्हें चुनौती भरा स्कोर यहाँ पर खड़ा करना है, तो इस मेगा फाइनल मैच में इन हालातों में। और गेंदबाज रविंद्रा एक बार फिर से गेंदबाजी यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए फील्डिंग में, हर गेंद में इस वक्त जमावट करते हैं फील्डिंग में विकेट कीपर, और गेंदबाज रविंद्रा अपने ओर की अगली गेंद लेकर तैयार। ये गेंद अच्छी गेंद थी लेग स्टंप पर आती हुई, लेकिन लेग स्टंप से बाहर की ओर निकलते हुए, और वाइड का इशारा अंपायर का, और वाइड के इस रन के साथ स्कोर अब बढ़कर पहुंच चुका है 23 रनों पर 3 विकेट के नुकसान पर। 23 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट इन द ओवर नंबर 4 इन प्रोग्रेस। एक धीमा क्रिकेट इस ओवर में हमें अब तक देखने को मिला है, और रविंद्रा एक बार फिर से तैयार। ये गेंद इस बार कट किया और सीधे पॉइंट पर,
ऑफ द बैकफुट गेंद को कट तो जरूर किया था लेकिन स्ट्रोक में ज्यादा दम नहीं और द प्लेसमेंट वाज टू रॉन्ग एंड बिकॉज ऑफ दैट ही पेड द पेनल्टी और चौथा विकेट यहां पर गिर चुका है 23 रनों के योग पर और यहां पर आउट होने वाले बल्लेबाज जो कि आउट होकर इस वक्त पेविलियन वापस लौटते हुए चेतन और 23 रनों पर चौथा विकेट यहां पर खो चुका है एक टाइटंस जबकि उनकी पारी का चौथा ओवर यहां पर प्रगति पर और नए बल्लेबाज का यहां पर आगमन हो चुका है और इस वक्त नए बल्लेबाज सामना करने के लिए तैयार रविंद्र गेंदबाजी आगे बढ़ाते हैं फ्लाइटेड गेंद को उछाला गेंदबाज के सिर के ऊपर से गेंद जाती हुई लंगोन के दिशा में 1 रन का इजाफा यहां पर हो चुका है और 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर अब बढ़कर पहुंच चुका है 24 रनों पर 4 विकेट के नुकसान पर रात के 8:35 यहां पर बच चुके हैं और जैसा कि हम जानते हैं ग्रैंड फिनाले मेगा फाइनल मैच इस केवीआर प्रीमियर लीग सीजन 3 2022 के अंतर्गत यहां पर खेला जाता हुआ सिटी वॉरियर्स और एआर टाइटंस के बीच में और यहां पर संघर्ष जारी है और बराबर का संघर्ष कहना पड़ेगा इस वक्त जारी है रवि इस वक्त अपनी अगली गेंद लेकर तैयार ये गेंद इस बार स्क्वायर ऑफ द विकेट करुणा सागर ने गेंद को खेला मिडल ऑफ द बैक कनेक्शन नहीं वहां पर थोड़ी सी हिचकिचाहट जरूर लेकिन अंतिम क्षण में गेंद को फील्ड करने में सफल और इसी के साथ ओवर नंबर 4 की समाप्ति यहां पर हो चुकी है 4 ओवर की समाप्ति 24 रन बन चुके हैं 4 विकेट के नुकसान पर 24 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट 25 in fact for the loss of 4 wicket after completion of 4 overs and pretty good over in Titans point of view कैप्टन इस ओवर में कुल मिलाकर कितने रन्स बने 10 रन इस ओवर में बने और सतीश ने जब माइक्रोफोन मुझे सौंपा था तब उन्होंने कहा था 5 रन का रन रेट इस वक्त है 3 ओवर के बाद अब वो रन रेट 4 ओवर के समाप्ति के बाद बढ़कर 6.25 में पहुंच चुका है यानी इस ओवर में 10 रन बने जैसा कि मैंने और सतीश ने फरमाया था कि 40 रनों के आंकड़े को कम से कम यहां पर पार करना होगा अगर चुनौती भरा स्कोर यहां पर खड़ा करना है तो यह टाइटंस के बल्लेबाजों को और यहां पर 2 ओवर का खेल बाकी है और देखना यह है कि इन बचे हुए 2 ओवर में एआर टाइटंस के बल्लेबाज अपने टीम की कुल रन संख्या को 40 के पार पहुंचा पाते हैं या नहीं और जहां तक सिटी वॉरियर्स का सवाल है इस वक्त उन्हें एक कसी हुई गेंदबाजी करने रोकना है इस वक्त एआर टाइटंस के बल्लेबाजों को ज्यादा से ज्यादा रन बटोरने से और गेंदबाजी इस कोशिश में गेंदबाजी इस वक्त सौंपी गई है गेंदबाज प्रदीप नायक के हाथों में और करुणा सागर इस वक्त सामना करने के लिए तैयार पहली गेंद इस बार टॉप एज विकेट कीपर के सिर के ऊपर से शॉट फाइन लेग पर थोड़ी सी देर से दौड़े इस वक्त नॉन स्ट्राइक रन बल्लेबाज लेकिन 1 रन यहां पर पूर्ण कर चुके हैं गेंद टॉप एज पर टकराई थी हवे में उछली शॉट फाइन लेग फील्डर के हाथों में गेंद करुणा सागर दौड़ पड़े थे लेकिन थोड़ी सी देर से दौड़े नॉन स्ट्राइक रन के बल्लेबाज लेकिन आखिरकार उन्हें कोई दिक्कत ही यहां पर नहीं हुई 1 रन न पूर्ण करने में और 1 रन के साथ स्कोर अब बढ़कर पहुंच चुका है 26 रनों पर 26 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट इन द ओवर नंबर 5 इन प्रोग्रेस एट द स्टार्ट ऑफ द 5th ओवर इन फैक्ट और गेंदबाज इस बीच गेंदबाजी करने के लिए तैयार फील्डिंग में जमावट इस वक्त करते हुए और बल्लेबाज इस वक्त स्ट्राइक पर आ चुके हैं प्रदीप और गेंदबाज भी प्रदीप तो प्रदीप के लिए इस वक्त तैनात ओवर द विकेट ये गेंद ऑन साइड पर उछालना चाहा पैरों पर गेंद टकराए और रन से यहां पर नहीं मिलेंगे 26 रन 4 विकेट के नुकसान पर एक बेहतर लेंथ और लाइन के साथ प्रदीप इस वक्त गेंदबाजी करते हुए और अपनी अगली गेंद लेकर तैयार प्रदीप के लिए तो बल्लेबाज भी प्रदीप और गेंदबाज भी प्रदीप इस वक्त प्रदीप के लिए एक बार फिर से तैनात ऊपर द विकेट गेंदबाजी करते हुए गेंद पटकी हुई गेंद उछालना चाहा गेंद अच्छी थी थोड़ी सी उछाल लेते हुए गेंद के लाइन पर नहीं आ पाए और सीधे पहुंची गेंद विकेट कीपर के हाथों में बल्लेबाज को वंचित करने के बाद डॉट गेंद इस वक्त जुड़ता हुआ उनके खाते में और स्कोर रुक चुका है इस वक्त 26 रनों पर 4 विकेट के नुकसान पर एक बेहतर लेंथ और लाइन के साथ इस वक्त गेंदबाज प्रदीप गेंदबाजी करते हुए अगली गेंद ये गेंद इस बार बेहतरीन गेंदबाजी इस बार थोड़ी सी फुल लेंथ गेंद थी और गेंद को इस वक्त उछालना चाहता चूके पूरी तरह और गेंद सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथों में तो बार बार बल्लेबाज प्रदीप को विचलित करते हुए गेंदबाज प्रदीप इस वक्त एक बेहतर
लेंथ और लाइन बरकरार रखते हुए गेंदबाजी कर रहे हैं। और एक बार फिर से तैयार, ये गेंद फुल टॉस, गेंद को ड्राइव किया, गेंद जाती हुई डीप मिड विकेट पर, 1 रन मिलेगा और इस फील्ड अर्ध बैकअप होता हुआ लॉन्ग ऑन सीमा रेखा के अंदर। और इस बीच बल्लेबाज के पास मौका 2 रन प्राप्त करने का, हालांकि मिसफील्ड जरूर हुई थी लेकिन तुरंत गेंद को बैकअप किया गया था इस लॉन्ग ऑन पर फील्डर द्वारा दाईं ओर दौड़ते हुए सीमा रेखा के अंदर। और इस बीच बल्लेबाज के पास मौका था 2 रन प्राप्त करने का। 28 रन बन चुके हैं 4 विकेट के नुकसान पर। और प्रदीप एक बार फिर से गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए प्रदीप के लिए दाईं हाथ ऊपर विकेट, अगेन दिस इज एन क्लीन हिट, आई थिंक सो, नो इट माइट बीन टेकन जस्ट इनसाइड द फेंस। स्ट्रोक को खेला था, जैसे ही स्ट्रोक बल्ले से टकराकर उछला था तो मैंने शायद अंदाजा लगाया कि गेंद सीमा रेखा को पार करेगी, लेकिन रात का वक्त है, हवा का रुख काफी धीमा है और गेंद अपने रफ्तार को खोती हुई यहां पर पहुंची डीप मिड विकेट पर। अगर सुबह का वक्त ये स्ट्रोक लगाते तो निस्संदेह छक्का उनके पक्ष में जा सकता था, क्योंकि हवा का रुख सुबह का यहां पर इस मैदान पर आमतौर पर काफी तेज रहता है और रात के वक्त हवा का रुख काफी कम हो जाता है, नहीं के बराबर हो जाता है। और यहां पर यह विकेट गिर चुका है डीप मिड विकेट पर प्रदीप का। तो इस मैदान की स्वभावता ये मैदान ऐसा ही है सतीश। कई श्रृंखलाओं में मैंने और आपने यहाँ पर आंखों देखा हाल कमेंट्री दिया है और यहाँ पर रात के वक्त जहाँ तक सवाल है, हवा बिल्कुल गायब हो जाती है, गायब के बराबर हो जाती है और फिर हवा का रुख काफ़ी कम हो जाता है और बल्लेबाजों को स्ट्रोक्स खेलने में काफ़ी दिक्कतें महसूस होती है। और यहाँ भी ऐसा ही हुआ, गेंद को खेला था जरूर लेकिन डीप मिड विकेट पर गेंद को लपक लिया गया और इसी के साथ ओवर नंबर 5 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 5 ओवर्स कंप्लीटेड, इट्स 28 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट। और जहां तक सवाल है छठे ओवर का, तो गेंद इस वक्त लेकर गेंदबाज तैयार ग्रंथ और बाएं हाथ के गेंदबाज इस श्रृंखला में बेहतरीन गेंदबाजी का प्रदर्शन वो अब तक दे चुके हैं। और इस वक्त ओवर की पहली गेंद, ये गेंद पटकी हुई गेंद, उछालना चाहा, विकेट कीपर चुके, रन के लिए दौड़ पड़े, नॉन स्ट्राइक रन पर विकेट कीपर खुद दौड़ कर आए और विकेटों को उन्होंने इस वक्त चटका दिया और इसी के साथ ये विकेट नंबर 6 यहां पर गिर चुका है 28 रनों के ऊपर। 28 फॉर द लॉस ऑफ 6 विकेट्स नाउ एंड नाउ जस्ट 5 बॉल्स रिमेनिंग। तो जहां तक इस मैदान के स्वभाव के बारे में मैंने फरमाया सतीश, निस्संदेह जैसा कि मैंने फरमाया रात के वक्त बल्लेबाजों को स्ट्रोक्स खेलना यहाँ पर मुश्किल होता है हवा का रुख कम हो जाने की वजह से। Exactly, Gopi, and not only the wind is constant, but at the same time, the wetness of the pitches becomes a very big problem. Even wetness of pitch and even the wetness of the ball as well. So that's why even Pradeep is middle that one, and he didn't got that much of distance what he was looking for. Exactly right, Gopi. In the night, it's very difficult to get the distance right as far as our personal experience in this particular cricket ground. बिल्कुल सतीश, हमारे पर्सनल अनुभव के अनुसार यहाँ पर हमने इस वातावरण का बयान दिया रात के वक्त। और यहाँ पर बिल्कुल सही बात आपने कहा, पिच पर नमी रहती है, अगर वर्षा होए या फिर ड्यू जो गिरे तो वहाँ पर पिच कुछ हद तक गीला हो जाता है, तो बल्लेबाजों को ये गीलापन ये पिच पर जो गीलापन होता है उसका फायदा उठाने का मौका मिलता है। और इस बार गेंद को उछाला, लॉन्ग ऑन सीमा रेखा के अंदर या बाहर देखना पड़ेगा, अंदर गेंद को फील्ड की जा चुकी है और मैं समझता हूं कैच को वहां पर छोड़ चुके हैं फील्डर। तो काफी उम्दा, काफी ऊंचा उछाला था लेकिन एक बेहतर प्रयत्न वहां पर लॉन्ग ऑन के फील्डर ने की, लेकिन दुर्भाग्यवशात वो कैच को लपक नहीं पाए। और इस बीच बल्लेबाज इस गेंद पर जीवदान न प्राप्त करते हुए 1 रन का इजाफा यहां पर हो चुका है और 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 29 रन 6 विकेट के नुकसान पर। ग्रंथ एक बार फिर से गेंदबाजी यहां पर आगे बढ़ाते हुए और हरिकृष्णन इस वक्त सामना करते हुए ये गेंद, ओ बल्ले का बाहरी किनारा, थर्ड मैन की दिशा में गेंद निकली, गेंद की गति को पहचानते हुए बैकफुट पर गए, गेंद को ढकेलना चाहा लेकिन लेग कटर गेंद थी, ऑफ स्टंप से बाहर की ओर निकलती हुई और इस लेग कटर गेंद पर खेलने में चूके बल्ले का बाहरी किनारा टकराने के बाद गेंद निकली शॉर्ट थर्ड मैन पर और इस बीच बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का। तो 3 बेहतर गेंदे इस ओवर में ग्रंथ फेंक चुके हैं और 3 गेंदे अब उनकी पारी में कुल मिलाकर बाकी 30 फॉर द लॉस ऑफ 6 विकेट। 3 बॉल्स नाउ लेफ्ट इन देयर इनिंग्स और गेंदबाज इस वक्त ग्रंथ तैयार, इस बार राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए बाएं हाथ के बल्लेबाज करुणासागर के लिए ये गेंद उछालना चाहा लेकिन बल्ले का भीतरी किनारा टकराने के बाद गेंद समझो से 1 या 2 इंच पर दूरी पर निकली, विकेट कीपर तेजी के साथ गेंद पर लपके लेकिन 1 रन बल्लेबाज को लेने से नहीं रोक पाए। करारा स्ट्रोक, करारा प्रहार करना चाहते थे इस गेंद पर बल्लेबाज करुणासागर लेकिन नहीं कर पाए, गेंद की फ्लाइटनेस को समझ नहीं पाए और सिर्फ 1 रन इस गेंद पर प्राप्त करते हुए 31 फॉर द लॉस ऑफ 6 विकेट्स नाउ एंड नाउ जस्ट 2 बॉल्स रिमाइनिंग इन देयर इनिंग्स।
और स्ट्राइक का इस वक्त हरिकृष्णन जो कि लेते हुए और ग्रंथ गेंदबाजी करते हुए फुल टॉस ओवर पिच गेंद फुल लेंथ गेंद थी, गेंद पर स्ट्रोक खेलने का प्रयास किया था चूके, और इसी के साथ यहां पर यह विकेट गिर चुका है, 7वां विकेट गिर चुका है। और अब अंतिम गेंद यहां पर बाकी। बेहतरीन गेंदबाजी का सिलसिला इस ओवर में जारी रखते हुए ग्रंथ सिर्फ 3 रन इस ओवर में प्रदान कर चुके हैं। और अब एआर टाइटंस की पारी का अंतिम गेंद शेष। देखना है कि इस अंतिम गेंद पर उनके बल्लेबाज और कितने रन बटोर पाते हैं। और नए बल्लेबाज नंबर 9 बल्लेबाज इस वक्त क्रीज पर मौजूद, और गेंदबाज ग्रंथ तैयार। द लास्ट बॉल ऑफ देयर इनिंग्स इज नाउ कमिंग अप। ग्रंथ बाएं हाथ राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए, ये गेंद इस बार गेंद कौन साइड पर खेलना चाहा, गेंद पहुंचे ऑफ साइड पर, शॉर्ट थर्ड मैन पर 1 रन बल्लेबाज को मिलेगा। और इस 1 रन के साथ द इनिंग्स इज अप फॉर AR Titans. They finished with 32 for the loss of 7 wickets in the stipulated 6 overs, and now the target for Shetty Warriors is 33. In 6 overs, they have to score for victory to clinch the prestigious KVC Premier League 2022 टाइटल। और जहां तक सवाल है रिक्वायर्ड रन रेट का, तो एक्जैक्टली 5.5 रन पर दे हैव टू स्कोर फॉर विक्ट्री। और सतीश, आप क्या समझते हैं इन हालातों में 33 रनों के लक्ष्य तक पहुंचना क्या शेट्टी वॉरियर्स के लिए मुश्किल होगा? क्योंकि शेट्टी वॉरियर्स के पास न सिर्फ गेंदबाजी में गहराई है, बल्कि उनके पास सशक्त बल्लेबाजी का लाइनअप भी है, और उनके बल्लेबाज अपने क्षमता एबिलिटी के अनुसार खेलते हैं, तो निस्संदेह इस लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। और जहां तक सवाल है एआर टाइटंस का, तो गेंदबाजी में एआर टाइटंस के गेंदबाजों ने इस श्रृंखला में बेहतरीन प्रदर्शन दिया है, और यहां पर वो अपने काबिलियत क्षमता के अनुसार गेंदबाजी करते हैं, तो मुश्किलें यहां पर शेट्टी वॉरियर्स के लिए पैदा हो सकते हैं। और जहां तक मैच के विजय का सवाल है, इस वक्त मैं कहूंगा अंडर दिस कंडीशन इट्स गोइंग टू बी 50-50 एट दिस सिचुएशन। क्यों सतीश? Exactly, Gopi. And just you're mentioning about the possibility of winning this match. You're right. Its match is definitely going to be evenly poised. It's going to be anybody's game. Just coming back to the potential of batting department, what City Warriors has got. And no doubt at all, they got some very good batting department. Leading from the front, the opening batters, Mallesh and Krishna. They're very dangerous opening batters. So far, they got very success in that opening pair, so that it's need to be very important here for Air Titans to start with some wicket taking overs, isn't it, Gopi? Of course, the 32 is not a big total, and 32 to win this match, but you cannot underestimate this total in this condition, Gopi. And of course, you cannot underestimate this total, because one of the biggest and the greatest saying in English that small leakage can sink a big ship, and that's meant if we underestimate this small total, I think they need to pay the penalty for that. Here Titans, certainly they got opportunity to win the match, and even Shetty Warriors is also, they got the opportunity to win the match. So coming back to this bowling department as well, even Air Titans, they got a really good bowling department, and they need to once again, their bowling department will going to tested here in this big final, mega final, against the formidable batting department of Shetty Warriors. As far as the neck to neck, these two teams, of course, they faced each other 2 times in this particular tournament, and both the teams won 1 match each, but it's a total different ball game. But in this big final, if they wanted to become the champion of this prestigious KVC Premier League 2022, I think both the teams need to give their 100% in this particular final. Signal coming from umpire Rajeshwar, little question Atmaram, so that the first delivery from the far end, right arm over the wicket, delivers. This time a bowler pushing the batsman onto the back foot. This is the right strategy to do, because I already mentioned that if Air Titans wanted to win the match, they need to get some very good start from the opening
overs. First 2 overs of the power play is going to be very key here for both the teams. As far as the winnings perspective of Air Titans is concerned, they need to get some wicket. They need to bowl some economical over. Right arm over the wicket, cuts that one quite nicely, but not lack of placement. That ball went straight to the hands of backward point region. I already mentioned is condition is not that much of suitable for the batter rather than bowlers really dominating this condition. 0 on the board, yet to open the account. Malesh maybe a little bit disturbed with the headlight of the vehicles which is just passing in front of the commentary box. We can see that behind that cricket ground some vehicles are passing. The headlight really hitting the eyes of the batters will going to disturb the concentration from the far end. Right arm over the wicket, Malesh pulls that one handsomely into the crowd for the biggie. What a fantastic full shot, Gopi. Absolutely what we were talking about. The condition is not suitable for the batter, but he's not agree with my commentary. He just pulled that one beautifully down to be backward square like region. But short pitch delivery, Gopi. The punishable delivery. You cannot bowl that line, especially for the strength of the batsman. This is the strength of him, Malesh. He's a very good puller of the ball, and he's just pulled that one quite beautifully down to be backward pointer. Deep backward square leg region for one more boundary. One more boundary. You want to finish this match too early. And the runs are coming like a fast flowing waters of the rivers here in this big final. So 6 and a 4. And all in sudden we can see that Air Titans started to feel the pressure. Because 10 runs I think is a big score in the first over from the far end. Predwin balls once again, lofted down to deep longer, 1 bounce and 2 bounce over the rough for 4 runs. He's in a hurry. It is in a hurry, just like what and me and Gopi is mentioning about how difficult it's going to be that getting 33 runs in this condition. But he's just saying that it's not that much of difficulty if you're having the potential of batting like what he's doing in this middle, and he's just enjoying his batting in this mega final. 6-4-4, 14 valuable runs in just 3 deliveries, changing the complexion of this match. Now, Air Titans need to do something special from the bowling. Special in the sense, you need to pick this man if they wanted to back in this game. From the far end, Predwin delivers. Again the full toss delivery. Lucky escape here for the bowler because once again that was a juicy full toss. But this time he couldn't manage to deliver that one where he wanted to do. Because that ball went straight to the hands of short mid-off region. First over completed, chasing 33 to win this match. And Gopi, something different over our prediction, what you were predicted before the start of the innings. Now I think a batter, you can't do the mistakes bowling a full toss delivery to Malesh. He dispatched that one down to deep extra cover boundary for 4 runs. Each and every run, each and every boundary takes a match away from Air Titans. 18 for the loss of 1 wicket. Now 15 to get. 15 to get to win this match, to become the champion in fact of KVC Premier League 2022. Neeru bowling with a short run off. Right arm over the wicket, he delivers. This time, loose stroke he played, but luckily that ball didn't really carry to the fielder at short extra cover region. He tried his levels, he extended his hand to take the catch, but ball just going out of the reach of that fielder, and luckily Malesh got a single for that. With that single, scoreboard moves on to 19 for the loss of 1 wicket. Another 14 more runs required for the victory. And of course, Gopi is mentioning about now because of that expensive over, the match is turned out to 70% in the side of Shitty Warriors, 30% in the side of Air Titans. If they wanted to convert that 30 into 100%, Air Titans have to give their 100% in the bowling. That was a kind of delivery, but wicketkeeper not really backing up the kind of effort did by the bowler to defeat the bat of the batter, but wicketkeeper behind the stump fails to collect the ball, and they got a couple of valuable runs in the form of bye. That is all our bonus runs. Over completed. After completion of over number 2, chasing 33 to win this match. It's a 21 for the loss of 1 wicket, and Gopi another 12 runs to get. And no need to worry at all, no need to panic at all, because the deliveries remaining 24, and out of 24 they have to get another 11 runs, and more than anything else, 12 runs, more than anything else, I think they got 9 wickets in hand, and of course Malesh still there in the middle.
बिल्कुल दे आर लुकिंग इन ए कमांडिंग सिचुएशन सतीश, और यहाँ पर मल्लेश जो ओवर में एक छक्का और 2 चौका झड़कर जो बेहतर शुरुआत वो दे चुके हैं, उसकी वजह से यहाँ पर इस वक्त शेट्टी वॉरियर्स बुलंदियों पर नजर आता हुआ, और यहाँ पर मल्लेश क्रीज पर मौजूद है। तो यहाँ पर उनके लिए ये सबसे बेहद जरूरी बात है कि मल्लेश क्रीज पर है, और 2 ओवर का खेल पूर्ण हो चुका है, फील्डिंग का पावर प्ले समाप्त हो चुका है, फील्डिंग के प्रतिबंध हट चुके हैं और फील्डर इस वक्त मैदान पर छा चुके हैं। अब देखना यह है कि मल्लेश किस तरह की बल्लेबाजी आने वाले ओवर्स में अपनाते हैं। Exactly, Gopi. This time, well pitched up delivery, appeal for caught behind, and he's walking. He's walking. Malesh is walking. Once again, is showing that sportsman spirit very well. He knows that he's nicked it, and umpire raising his finger. Before that, he's walking towards the pavilion. I think it's might be too late, Gopi. The wicket of Malesh is back into pavilion, but just 11 runs required for the victory. And I think maybe that wicket will going to open the gate little bit here for Titans to come back to this match. Wait and see how well they will going to come back. Malesh, after doing a lot of damages, is back into pavilion. Now just 11 more runs required to become the champions of this prestigious KVC Premier League 2022. Look at that standing ovation here for Malesh. Why not? Just like the name what they got, Warriors, City Warriors. They're justifying that name because so far they played like a Warriors, and they're justifying the name for that. City Warriors are in a top. 21 for the loss of 2 wickets. Now 11 more runs required for the victory. The bowler from the far end, Saurav, got a very important breakthrough, and that one breakthrough is not enough here for Titans. If they wanted to back into this game, they need to pick the wickets regularly, and then only they can put some pressure onto the City Warriors batting department. Again, looking for the improvisation, going for the run, chance of run out in the non-strikers end, but wicketkeeper not quick enough in the negation to stop the single from the two batter, and with that single scoreboard moves on to 22 for the loss of 2 wickets. 11 required for the victory, but not really worried about the asking run rate. The asking run rate seems to be a little bit easier here for Shetty Warriors, but you cannot underestimate the cricket. Just like my friend Gopi is mentioning about, the cricket is unpredictable game. It's a funny game. You can't say anything in cricket, and who knows, 1 or 2 good overs followed after this. Definitely the opportunity is still there here for Air Titans to win this match. From the far end, Saurav delivers outside the run off stump, again going for the off drive, missed it completely. Wicketkeeper behind the stump did the rest. So far it's a very good over. As far as the first 2 overs is concerned, I think it's a much better over compared to the previous 2 overs which is bowled by the Air Titans bowlers. Saurav searching for the wicket, searching for the dotted deliveries, bowling from the far end. Right arm around the wicket this time. I think a little bit he's lost his rhythm as far as the run-up is concerned in that particular delivery. He's now once again going back to his bowling mark from the far end. Right arm around the wicket delivers. Again off the back foot. Try to punch that one off the back foot, but not really getting that one right from the middle of the bat. One more dotted delivery. So far it's a very good going here for Saurav. 11 to get to become the champion of this KVC Premier League season 3. Again down the leg stamp. This is a one mistake you cannot do in this situation, because almost you are able to put some pressure onto the batter by bowling the dotted deliveries. When you considered that runs in the form of extra, will give you a lot of confidence for the batter. And score now moves on to 23. Now 10 more runs required for the victory in remaining 3+ overs. Saurav back to his bowling mark. He wanted to fielder a little bit close to the batters to save the singles. This time he lofted a beautiful shot. Lovely looking extra cover drive. Good piece of fielding there by the fielder as well. Altogether it's very good cricket in the middle. And one more addition to total addition of that single scoreboard was on to 24 for the loss of 2 wickets. 9 runs required for the victory. Ram Ganesh is back on strike now. Ram Ganesh, we are talking about his bowling performance so far in this particular cricket tournament. He's a key player for the side of Shetty Warriors. They again are looking for cross-batted stroke, but missed it completely. Lovely over, very good over. And the first better over we can see
the ball by Saurav in this particular big final. Just 3 runs came from that over. 24 for the loss of 2 wicket. Now 3 overs remaining. And if they wanted to become the champion, they have to get 9 runs to win this match. And Gopi, final time in this particular cricket tournament, KVC Premier League Season 3. And before I hand over the microphone to you, and I think it's one of the best experience for us, KVC Premier League Season 3. The first time we were having sharing a mic in this particular cricket tournament, and we got a lovely experience. And one more, I think it's one of the best cricket tournament we experienced, systematically organized. And I think we would like to give special thanks to the organizer for this opportunity, isn't it? बिल्कुल सतीश, हम संगठकों का हार्दिक अभिवादन करना चाहेंगे कि हमें भी इस श्रृंखला का हिस्सा बनने का मौका उन्होंने प्रदान किया. बी अ पार्ट ऑफ दिस टूर्नामेंट और निस्संदेह सिस्टमैटिकली ऑर्गेनाइज्ड केवाईसी प्रीमियर लीग सीजन 3 2022 और निस्संदेह ये श्रृंखला हमारे क्रिकेटिंग अनुभव के बेहतरीन श्रृंखलाओं में से एक जानी जाएगी. और यहाँ पर इस श्रृंखला का क्लाइमैक्स जो कि यहाँ पर गुजरता हुआ सिर्फ 9 रन चाहिए. गेंदे बाकी हैं 18, यानी 3 ओवर का खेल बाकी. फील्डिंग के व्यूह के बारे में इस वक्त दोनों गेंदबाज और खिलाड़ी इस वक्त बातचीत करते हुए, और स्ट्राइक इस वक्त लेने के लिए तैयार अश्वत, और गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए नीलेश, और ओवर की पहली गेंद लेकर इस वक्त नीलेश तैयार. 9 रन चाहिए 18 गेंदों पर. लक्ष्य आसान इस वक्त सिटी वॉरियर्स के लिए और एआर टाइटंस को कमबैक करने के लिए घातक गेंदबाजी की सख्त जरूरत है. दाहिने हाथ राउंड द विकेट. ओवर की पहली गेंद, ये गेंद अच्छी गेंद थी, बेहतर गेंद थी, पैरों पर गेंद टकराई, गेंद को ऑन साइड पर मोड़ना चाहा, चूंकि डॉट गेंदों की सख्त जरूरत है इस वक्त. चंद डॉट गेंदे निस्संदेह यहाँ पर एआर टाइटंस को इस मैच में वापस ला सकते हैं. हालांकि पहले ओवर में मल्लेश ने 14 रन झड़कर एक आक्रामक बल्लेबाजी की मुनसूचना जरूर उन्होंने दिया था, लेकिन उसके बाद एक बेहतर कमबैक बाद के 2 ओवर में करते हुए एआर टाइटंस धीरे धीरे इस मैच में वापस आते हुए. दाहिना तो बढ़ता विकेट, ये गेंद ऑन साइड पर गेंद को मोड़ दिया, फिसल चुके हैं, गेंद पहुंची शॉर्ट मिड विकेट पर, और खुद अपने आप को संभाल कर जब तक गेंद को वो फील्ड डीप मिड विकेट पर फील्डर जब तक फील्ड करे और खुद अपने आप को संभालते हुए बल्लेबाज दौड़ते हुए 1 रन पूर्ण कर चुके हैं. 25 रन 2 विकेट के नुकसान पर. 9:05 यहाँ पर बच चुके हैं रात के, और घने अंधेरे को चीर कर फ्लडलाइट की झगमगाती हुई रोशनी इस मैदान पर गिरती हुई, इस मैदान को चकाचौंध करती हुई, और एक निस्संदेह एक बेहतरीन क्रिकेट श्रृंखला, फैंटास्टिक क्रिकेट टूर्नामेंट केवीसी प्रीमियर लीग सीजन 3 2022 की शानदार प्रगति यहां पर होती हुई. इस बार विद अ ट्विस्टेड बैट, और गेंद इस वक्त सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए. He just played that one with a reverse shot and he's got that one with a perfect placement. 29 रनों पर स्कोर बोर्ड पहुंच चुका है. सिर्फ 4 रन चाहिए, और यहां पर स्ट्रोक झड़ा था बल्लेबाज राम गणेश ने गेंद की उछाल को पहचानते हुए, और इस चौके के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 29 रनों पर. 29 for the loss of 2 wickets, just 4 to get now in remaining 2+ overs, and the target seems to be a much easier now for them. और ऐसा कहना पड़ेगा वो अपने मंजिल की ओर, विजय की ओर अग्रसर होता हुआ. ये गेंद रिवर्स शॉट खेलना चाहे एक बार फिर से अपील, लेकिन अंतिम क्षण में गेंद और बल्ले हाथ का कोई संपर्क नहीं, और गेंद सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथों में. इस बीच रन से बल्लेबाज को नहीं मिलेगा. सिर्फ 4 रन इस वक्त चाहिए विजय के लिए, और गेंदबाजी इस वक्त नीलेश गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए. राम गणेश एक बार फिर से सामना करने के लिए तैयार. फील्डिंग में कुछ हद तक जमावट करने के बाद नीलेश इस वक्त अगली गेंद लेकर तैयार. राम गणेश के लिए काफी लंबे रनअप के जरिए ये गेंद इस बार पैरों पर टकराई, गेंद को फिर से रिवर्स शॉट खेलना चाहा. हर गेंद पर रिवर्स शॉट की कोशिश इस वक्त करते हुए, और यहाँ पर चौका लगाने के बाद 2 रिवर्स शॉट का प्रयत्न उन्होंने किया था अगले 2 गेंदों में, लेकिन सफलता उनके पक्ष में यहाँ पर नहीं आई है, और सिर्फ 4 रन अब चाहिए विजय के लिए. जस्ट 4 to get now for victory to clinch the prestigious केवीसी प्रीमियर लीग ट्रॉफी 2022. ये गेंद रिवर्स शॉट खेलना चाहा, एक बार फिर से चूके, और 4 गेंदों में 4 गेंदों में उन्होंने रिवर्स शॉट खेलना चाहा था, लेकिन सिर्फ एक प्रयत्न में सफलता उनके पक्ष में आई. तो यहाँ पर मैं समझता हूं सतीश, गैर जिम्मेदाराना बल्लेबाजी. अगर आप क्रॉस बैटेड स्ट्रोक कनेक्ट नहीं कर रहे तो आपको स्ट्रेट बैटेड स्ट्रोक्स खेलने चाहिए, क्योंकि यहाँ पर लक्ष्य काफी छोटा सा है. सिर्फ 4 रन बनाने हैं 12 गेंदों में, और यहाँ पर
3 गेंदों में जो उन्होंने स्ट्रोक खेला है बिल्कुल गैर जिम्मेदाराना स्ट्रोक है. Exactly, Gopi. The confidence is different and overconfidence is different, isn't it? Maybe a little bit of overconfidence after getting that boundary in the first delivery. Maybe he was thinking about why can't I finish the match with the boundary, and that's why he was trying Ram Ganesh. But no need to worry, no need to panic at all, because just 4 runs required for the victory in remaining 12 deliveries. I think still, if Ever Titans, if they wanted to win the match, this is definitely going to be, this is a decider over. In this particular over, Ever Titans act to ball one fantastic over so that they take this match into the final over. बिल्कुल सतीश, ये गेंद देखते हैं एक बार फिर से, डॉट गेंद. एंड नाउ 4 रिक्वायर्ड, 11 बॉल्स रिमाइनिंग. और यहाँ पर निस्संदेह सेंसिबल क्रिकेट की यहाँ पर जरूरत है सतीश. और यहाँ पर जो बल्लेबाज जिस तरीके की बल्लेबाजी कर रहे हैं, तो यहाँ पर ऐसी तरीके की बल्लेबाजी अगर वो आने वाले गेंद में करेंगे तो निस्संदेह उनकी टीम के लिए खतरा पैदा हो सकता है. और इस वक्त एआर टाइटंस को इस वक्त बांध कर रखना है बल्लेबाजों को कसी हुई गेंद के जरिए इस मैच में वापसी करने के लिए. एक बार फिर से गेंदबाज तैयार, दाहिना तो ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए रनअप में कुछ हद तक बाधा, और फिर से एक बार अपने गेंदबाजी के मार्क पर जाते हुए करुणा सागर गेंदबाज है, जबकि अश्वत्थ शेट्टी इस वक्त स्ट्राइक लेने के लिए तैयार रहा. और गेंदबाज अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार रहा. दाहिने हाथ ओवर द विकेट लंबे रनअप के जरिए ये गेंद, एक बार फिर से गेंद को ड्राइव किया, मिड ऑफ पर रनआउट का खतरा, लेकिन नहीं, फील्डर वहां पर इस बार गेंद को वो छोड़ चुके हैं. और जब तक गेंद को बैकअप किया जाता बल्लेबाज के पास मौका 1 रन प्राप्त करने का, और 1 रन के साथ स्कोर अब बढ़कर पहुंच चुका है 30 रनों पर. 30 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट. द क्लाइमैक्स ऑफ एसवीसी केवीसी प्रीमियर लीग सीजन 3 2022 इज नाउ प्रोग्रेसिंग हियर. और सिर्फ 3 रन चाहिए बचे हुए 10 गेंदों में यहाँ पर शेट्टी वॉरियर्स को इस केवीसी प्रीमियर लीग का खिताब प्राप्त करने के लिए. और यहाँ पर गेंदबाज तैयार, करुणा सागर, अगली गेंद पटकी हुई गेंद, हल्के से बल्ले का बाहरी किनारा, थर्ड पैंट की दिशा में, विकेट कीपर ने ड्राइविंग लगाते हुए गेंद को रोकना चाहा, विकेटों पर भी निशाना दागा दूसरे फील्डर ने गेंद को फील्ड करने के बाद, लेकिन उनका निशाना चूकता हुआ, और स्कोर इस 1 रन के साथ बढ़कर पहुंच चुका है 31 रनों पर. इट्स 31 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट. जस्ट 2 to get now for victory to clinch the prestigious KVC Premier League title 2022. और सर्व खिलाड़ियों को, लगभग सारे खिलाड़ियों को इस वक्त 20 गज के दायरे के अंदर तैनात कर रहे हैं इस वक्त कप्तान एआर टाइटंस के. और सिर्फ 2 रन अब चाहिए विजय के लिए, और 9 गेंदें बाकी. जस्ट 2 runs to get from 9 balls for शेट्टी वॉरियर्स. और अगली गेंद के लिए इस वक्त गेंदबाज करुणा सागर तैयार, दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए ये गेंद कट करना चाहा, चूंकि बेहतर गेंद, एक्स्ट्रा क्विकर, जस्ट मिसिंग आउटसाइड द ऑफ स्टंप एंड वेंट इनटू द हैंड्स ऑफ विकेट कीपर एंड देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ एनी रन. तो 8 गेंदें बाकी हैं, रन से चाहिए 2. और यहाँ पर अभी भी तख्ता शेट्टी वॉरियर्स का यहाँ पर भारी रखता हुआ. और अगली गेंद लेकर करुणा सागर इस वक्त तैयार, ये गेंद इस बार चूके गेंद सीधे विकेट कीपर के हाथों में, एक बार फिर से गेंद विकेट कीपर के हाथों में पहुंचे. और इस बीच नॉन स्ट्राइकर के बल्लेबाज इस वक्त बड़े स्ट्राइकर के बल्लेबाज की, और उन्होंने कहा कि भैया आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, 2 गेंद लगातार आप यहाँ पर डॉट कर चुके हैं, आपको कम से कम ऑन साइड पर पुश करके कम से कम स्ट्राइक रोटेट तो करना चाहिए सिंगल से लेकर. और यहाँ पर देखते हैं उनके बातों को सुनने के बाद अगली गेंद पर किस तरीके की बल्लेबाज यहाँ पर बल्लेबाज अपनाते हैं. ये गेंद पुल किया, और इस बार गेंद जाती हुई बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर, 1 रन मिलेगा. दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े, थ्रो पहुंचा स्ट्राइकर एंड पर, लेकिन बल्लेबाज रन से पूर्ण कर चुके हैं. और इसी के साथ शेट्टी वॉरियर्स बिकम द चैंपियंस of KVC Premier League Season 3 2022. और निस्संदेह सतीश, what a fantastic tournament has been came to an end. Absolutely, they deserve this champions title for City Warriors. The way that they played throughout this tournament, outstanding performance from City Warriors, and of course they deserve this champions KVC Premier League 2022 Season 3. Outstanding performance. Of course, even AR Titans also, they played a very good game of cricket. Winning and losing is a part of cricket, but
But I think, Gopi, eventually the cricket is the winner here. And even I think the organizers of KVC Premier League, they are the winners because they are the one, they know all hard work to make this possible. Wonderful cricket tournament, no doubt at all. Absolutely, it is a fantastic cricket tournament. KVC Premier League is comes to an end with the champion. I think amazing champion is the Shetty Warriors have become the champion. Congratulations, the winners, and congratulations even for the runners. And I think even every teams, I think they really played a very good game of cricket. And that's it for the day number 2, the final day, and that's it for the cricket tournament as well. Once again, I would like to give special thanks to the organizers for this opportunity. Myself, Satish Sali and Manglore in English, as well as my friend Mr. Gopi in our national language Hindi, would like to give special thanks to organizer for this opportunity. And we are going to the straight away. We are going to the first presentation ceremony. Thank you very much.
ಕೂಡ ತನ್ನದೇ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಸೂಚಿಸಿ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವಂತಹ ಓರ್ವ ಇನ್ನೊಂದು ಪಂದ್ಯ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ರಾಮ್ ಗಣೇಶ್ ಅವರನ್ನ ವೇದಿಕೆಗೆ ಕರೀತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ರಾಮ್ ಗಣೇಶ್ ಇದನ್ನ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯದ ಮುಖ್ಯ ಬುನಾದಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಪ್ಪಾಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಸಿ ಎ ಕಿರಣ್ ವಸಂತ್ ಸರ್ ಅವರು ನೀಡಬೇಕಾಗಿ ನಾವು ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿ ಪಂದ್ಯ ಪುರುಷದ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರೀತಿಯ ಅಪ್ಪುಗೆ ಮೂಲಕ ಕೂಡ ಒಂದು ರಾಮ್ರವರು ಪಂದ್ಯದ ಉದ್ದಗಲಕ್ಕೂ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ತುಂಬಾ ಪಂದ್ಯ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನ ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ದಕ್ಕಿದೆ. ಸಿ ಎ ವಸಂತ್ ರವರು ಬಂದು ನೀಡಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ದೂರದ ಕುಂದಾಪುರದಿಂದ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಜೊತೆಗೂಡಿದ್ದಾರೆ ಸಿ ಎ ವಸಂತ್. ಈ ಪಂದ್ಯದ ವಿಶೇಷಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ವಿಶಿಷ್ಟ ತಾವೆಲ್ಲ ಕಾತರದಿಂದ ಕಾಯ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ನಾವು ಕಾಲಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾವಳಿ ಹೇಗೆ ನೇರ ಪ್ರಸಾರವಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅದೇ ರೀತಿ ನೇರ ಸ್ಕೋರಿಂಗ್ ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಸಹಕಾರವನ್ನ ನೀಡಿದಂತ ಕೀರ್ತನ್ ಇವರಿಗೂ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನ ಸಮರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭದ ಮುಖ್ಯ ಘಟ್ಟಕ್ಕೆ ನಾವು ತಲುಪ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಅತಿಥಿಗಳು ನಮ್ಮನ್ನ ಜೊತೆಗೂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೂ ಕೇವಲ ಅತಿಥಿಗಳು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೆ ಬೆನ್ನ ಹಿಂದೆ ನಿಂತು ಇಂತಹ ಅದ್ಭುತ ಸಹಕಾರವನ್ನು ನೀಡಿದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಅತಿಥಿಗಳನ್ನ ನಾವು ವೇದಿಕೆಗೆ ಕರೆಯುವ ಮುಂಚೆ ಈ ಒಂದು ಕೆವಿಸಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಯೋಜನೆ ಏನಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಭದ್ರ ಬುನಾದಿಯನ್ನು ಹಾಕಿದಂತಹ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲೂ ತನ್ನ ಸದಸ್ಯರನ್ನ ಒಳಗೊಂಡಂತ ಸಿ ಎ ಕಿರಣ್ ವಸಂತ್ ಸರ್ ಅವರನ್ನ ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಆಹ್ವಾನಿಸ್ತಾ ಮುಂದಿನ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಸುಧೀಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಸಹಾಯಕ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ತನ್ನ ತಂಡದ ಗೆಲುವಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸಿದಂತಹ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಹಲವಾರು ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಹಕಾರವನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂತಹ ಹಿರಿಯರು ಆದಂತಹ ಸಿ ಎ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸರ್ ಇವರಿಗೂ ಕೂಡ ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ನಾನು ಕರೀತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇನ್ನೋರ್ವ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧಕರಾದಂತಹ ದೂರದ ಕುಂದಾಪುರದಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನ ಜೊತೆಗೂಡಿದಂತಹ ವಸಂತರವರನ್ನು ಕೂಡ ವೇದಿಕೆ ಕರೀತಾ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಪ್ರದೀಪ್ ಜೋಗಿ ಸರ್ ಅವರು ಕೂಡ ಬರಬೇಕು. ನೀವೆಲ್ಲಿದ್ರು ಕೂಡ ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡ್ತೇವೆ. ಸಿ ಎ ಪ್ರದೀಪ್ ಜೋಗಿ ಸರ್ ಬರಬೇಕು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ. ನಂತರ ಎಆರ್ ಟೈಟನ್ಸ್ ತರದ ಮಾಲಕರಾದಂತಹ ಸಿ ಅಶೋಕ್ ರಾವ್ ಸರ್ ಅವರು ಅನುಪಸ್ಥಿತಿ ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಕ್ಷಮೆ ಇರಲಿ. ಹಾಗೂ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥವರೆಲ್ಲರೂ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳು. ನಾನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡೋದಂತೆ ಹೇಗಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಸಮಯದ ಅಭಾವ ನಮ್ಮನ್ನ ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಎಲ್ಲರನ್ನ ವೇದಿಕೆ ಕರೆದ್ರೆ ಅವ್ರು ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಲೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕರೆಯದೆ ಸಿ ಎ ಮಲ್ಲೇಶ್ ಸರ್ ಅವರು ಕೂಡ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕು. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಭಾರತೀಯ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧಕರ ಸಂಘದ ಉಡುಪಿ ಇದರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಘಟಕದ
ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕೂಡ ಕೇವಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಮನಗೆದ್ದ ಓರ್ವ ಅದ್ಭುತ ಆಟಗಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. CA ಮಲ್ಲೇಶ್ ಸರ್. CA ಜೇಸನ್ ಸರ್ ಅವರು ಕೂಡ ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇಂತಹ ಅದ್ಭುತ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಲು ತನು ಮನ ಧನದ ಸಹಕಾರ ಮೂಲಕ ಅನೇಕರು ನಮಗೆ ಸಹಕಾರವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಓರ್ವರಾದಂತಹ ರುವಾಲಿಯಾ ಇದರ ಮಾಲಕರು ಕೂಡ ಆದಂತಹ ಸುಜಾತ್ ರವರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಸುಜಾತ್ ರವರು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಮೂರ್ತಿ ಚಿಕ್ಕದಾದರೂ ಕೀರ್ತಿ ದೊಡ್ಡದು ಅನ್ನಂತೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪ್ರೀತಿಯ ಸನ್ಮಿತ್ರರು ಆದಂತಹ CA ಸುನಿಲ್ ರವರು ಕೂಡ ಬರಬೇಕು, ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ. CA ವಿನ್ಯರವರು ಕೂಡ ಬರಬೇಕು. ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಆಯೋಜಕರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹವರು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಸೇವೆಯನ್ನ ಈ ಒಂದು ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ಗೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ಷಮೆ ಇರಲಿ, ಕೆಲವೊಂದು CAಗಳನ್ನ ಕರೆದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಈಗಾಗಲೇ ಅವರೇ ಮಾತಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೂ CA ನಿಶಿತ್ ಭಂಡಾರಿ ಇವರು ಬರ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಆಯೋಜಕರಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಯೋಜಕರು ಕೇಳ್ಕೊಂಡಾಗ ತಾವು ಬರ್ಬೇಕು.